नहीं सुनने का है गाना आज, सीधा लाइव सुनने का ही नहीं है गाना, जीतने के बाद सुनेंगे। कैसे हो है दलोस, है दलोस, हाउस द यूज द लोस, माय जान के टोट्स द गोट्स ऑफ द गोट्स। गाइस आज कौन जीतेगा यार? हाँ भाई, अनबायस्ड वोटिंग करूंगा, अनबायस्ड, ठीक है, अनबायस्ड वोटिंग है ये, अनबायस्ड। मेरे को देखने का है तुम में से कितने लोग राइट प्रेडिक्शन देते। अनबायस्ड। दे भाई ना मान रहे, दे भाई कैसे हो दे भाई? थैंक यू फॉर द 10 पाउंड्स मेरी जान के टोट्स। देव भाई ना मान रहे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जी क्या क्या बोल सकते भाई, एक ही टीम है जो हमारी गाफ मार रही है, जेटा। मतलब मेरे हिसाब से लास्ट टाइम हम सारी टीम्स को हरा सकते थे, समझ रहे हो? जेटा इज अवर ओनली पीआरएक्स। ऑपोजिट रन लग। अरे क्या हो गया यार, जल्दी पेमेंट दिया करके, क्या हो गया यार खुशी? बाजी थैंक यू फॉर 11 मंथ्स। मेरे को देना बात क्या सैलरी? देखो, देख रहे हो ना? अरे वो रात को 2 बजे मांगता है, 2 बजे कौन करता है? भाई मैं तो 6 बजे सोया था भाई, मेरी गांड लगने वाली है आज गाइस। ये 6:30 बजे सोया मैं, बड़ी 11 बजे उठा। हेलो बड़ी, बड़ी क्या लगता है, क्या है प्रेडिक्शन? हेलो माझा पण क्या हेलो चल रहा है मामा। गाइस? यार क्या है प्रेडिक्शंस बताओ। प्रेडिक्शन 2-0 ब्रो। नाइस, किसको लेके? वो तो भाई इस बार तो मेरे हिसाब से मुझे लग रही है प्रिपेयर करके आए होंगे, जो भी मिस्टेक से 2 बार तो वो हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं लेकिन मैं गया था कोचिंग करने बट हार गए। कि करे इसको विंक्स। कर सकते कैसे हो ब्रो मेरे हिसाब से 2 बार अगर हारे हैं तो यार प्रिपेयर करके आए होंगे, ऐसे ही नहीं आएंगे। लेकिन एक और इसमें है चीज, क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो हमेशा गोल्ड खुलता है, वो 15 साल से प्रिपेयर कर रहा है, फिर भी उसका गोल्ड खुल रहा है, तो ये हो सकता है। जो तू अन्ना और गोल्डे भाई को टारगेट कर रहा है ना, एक ये दिन मैं गया। बोलूंगा यार सीधा जाके, ये गया, मैं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा। बोलना, मेरे को रिप्लाई देखने का है। रिप्लाई में लगता है आपके गार्ड में कुछ घुसने वाला है, बिग साइज। आ गए गाइस ढोकला आई मेड। ढोकला खाओ भाई। क्या अपना एंथम बजेगा? नहीं अपना एंथम बजने में लास्ट टाइम क्लेम आया था। रुक जाओ, एड्स ऑफ करने दो पहले। ऑफिया 4년이나 걸렸는데 그래도 좀 보상 받은 것 같아요. ये देख रहे हो, ये लोग बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कि जीतने वाले। मैच ही नहीं है जिंदगी का। सच्ची में इन लोग को बी मैं वैल्यू कोच 그래도 श्रेयस भाई, 챔피언으로 시작을 하는 거니까 기분은 좋은 것 같아요. सीन ये ना, सच्ची में बताता हूँ, सच्ची आपके नाम में एक एस एक्स्ट्रा करके मैं कोचिंग नहीं दे सकता। 처음 신인으로 출전하면서 저는 제 아무래도. 플레이 많이 보여줄 수 있었던 것 같아서 되게 좋았습니다. बराबर, मैं बोला कोचिंग नहीं दे सकता, 제가 बराबर। 가지고 있는 팀적인 강점은 젊음 형들 아주 날라다닙니다. हाय बैंक्स बेगिनी, हेलो ब्लैक हार्ट, कैसे हो कैसे हो? Pacific is very strong. Those were the impressions that I got. You know, after a big match win, seeing, you know, the highlights. भाई दी Feeling of confidence. सीधा सीधा कर दो जिंक ज़ेटा को प्लीज। Because we have to plan differently for every team. वोटिंग देखो भाई, Strategic वोटिंग देखो options for each opponent. I'm really भाई। excited. मेरे इसमें 100% लोग बोल रहे कि जी जीतेगा, 199 भी नहीं। थोड़ा लो हूँ लेकिन तुम दोनों को देख के अच्छा लगता है भाई। लो हूँ तो आ जाओ ना, इधर लो ना, उसके घर में किसको ले रहे हो? इधर आके लो। लव यू बड़ा This is a very bad situation.
they have to go inside it to defuse it. After kickoff, we had Yo, Oh, like New the Jersey, man. New Jersey. I like the jersey, man. But Like the jersey. animation देखा animation देखा we figured out a lot of things that we can use moving forward. हाँ anime देखा क्या anime देखा 良かったとは言えないんです Bro, I け like the ど jersey, man. Can we like 最初から order 的な that? 目標は तूने anime नहीं देखा ना まず一勝したいと ये गया ये गया इसकी anime? fucking fake G supporter भेजो क्या anime मैंने नहीं देखा क्या देखने anime? ये लोग का जो वो है anime की character है क्या? अरे पूरा एनिमेशन किया था ये लोग ने we'll come back stronger. जेटा के मैच के अगेंस्ट We've been using this time to improve our strategy and और उठाओ लेवल 3 हेलमेट वेस्ट इंचो दुनिया में क्या हो रहा है नहीं 何 पता が問題だったのかずっと悩みました諦めるつもりは क्यों जल さ रहे ない हैं です मैं नहीं कर पा रहा हूँ 오랜만에 또 퍼시픽 오니까 되게 신나고 좋네요. Gotta aim for the top like. 퍼시픽으로 돌아온 계기는요. Bro, I like the jersey, man. I need to take it. 재밌을 것 같아요. भाई how about कैसे we भाई do कर सकते हैं? some वहाँ से 시너지는 वो लोग के वेबसाइट 샷이 से 너무 좋아가지고 है क्या? तेरे साइज का पता 잘 नहीं 맞는 것 같아요. 킥오프 때 블리드 모습 생각하고 मुझे लिंक भेज दे। 하면은 많이 당황할 거예요. Oh fuck, हमारी size होगी सबसे Kickoff पहले। was वही। a lesson for us. लिंक नहीं पता देखना gfighting.com क्या gfighting.com? Pacific teams are better this time around. We fixed some problems during this से time. बड़े अरे अन्ना को भेजा मतलब हमारा भी size होगा। It's gonna be different. 一番はये गया 練習でチーム全体でレベルアップできてる試合 ये 5XL तक है। まあ बटरा को भी आएगा ये। っています excuse me ステージ1では本当に一試合一試合大切に見てて楽しい試合ができるように माम्बा इतना शांत क्यों है? माम्बा क्या हो गया एक सेकंड मैं थोड़ा भाग के आया ना तो सेटअप कर रहा था फटफट सुबह सुबह कौन गर्लफ्रेंड के पीछे भागा था उधर दे रहा है We learned a lot from the kickoff, but I think the disappointment is having But how about we some do gaming like G today after the games yo kickoff. नहीं एक और है ना I still इसके think बाद। that I'm the हाँ, most मतलब flex in the world. दोनों उसके के बाद बाद करें थोड़ा हो जाए। At the- कर my सकते game, क्योंकि मेरे को बाद में सीधा रात को है यार वॉच Valorant पार्टी नहीं खेला है। to top 4. कर सकते It was not easy, but it was Bro, fun. the jersey is really good, man. तू रात को आ रहा है तू रात को Need कर to रहा है change a little bit. रात को नहीं bro। I hope PRX it's है। gonna be different, you know. PRX क्या? 솔직히 좀 रात 많이 को रात को ना हो 힘들었지만 पाए बोल रहे हैं. PRX कौन से? हाँ, आज रात को ना हो पाए। आज रात PRX Pacific में रात को 열심히 कैसे 하다 होगा? 보니까 हाँ 잘 बात तो 버텨왔던 PRX 것 नहीं है रात को 같아요. कुछ और है 사람들의 시선은 अबे नहीं बाबा आज कुछ नहीं है। 저희 आज रात को है ने। 저희가 우승한 거 एन्ने एन्ने चल रहे 마스터즈 हैं। 준우승은 एन्ने। 솔직히 좀 아쉽긴 Already 하지만 bro code तोड़ा है 이제부터 किसी ने। 시작이라고 생각해요. 젠지가 해줄 수 있는지 ये सब करते हो आप ऑन स्ट्रीम ये सब सोफे पे सोया था क्या? Okay, I am back. सोफे पे सोया था फिर तू? to VCT Pacific Ah, Stage venue में 1. Now we've starting things off कैसे लगता है खुद with का इतना बड़ा Lotus घर Esports लेके versus ZETA Division. सुबह Hey, पे I'm सुने। Quack, your cast for today, and alongside me, learning none other from than you Kimber reach Thing. P2 T69 one day Bro, love 3x you है 4x सेफ्टी के लिए 4x लूं क्या? अबे वहाँ पे साइज चार्ट रहेगा ना Oh, okay, we're almost ready for games. I might let them Oh, know. oh, yeah, So, size no, fit. I'm really Talking excited for about today. size chart Some and really all good that. matchups. Chest Some size teams that 54, weren't able to 50. make their way to भाई the मेरा तो Masters 44 है Madrid, chest। but still had some pretty strong Even by you showings need along 44. the way. ओए 44 मैं हूँ Zeta, there's still something a little bit तो lacking there. As we 48 saw, होगा Zeta felt a little bit predictable. GE just didn't seem क्या? to really क्या? have all their क्या parts कर रही है fully ये? integrated yet. मैंने So बताया I तुझे think for तेरा both of size. these teams, there's a lot to और prove size here के today. हिसाब There's से a lot of देखने progress को। that they want to show. Excuse me. मैंने And सिखाया Carlisle was सब। already talking about it, right, during this Right teacher, pre-match right interview, teacher. that he was saying, you know, we're not मुझे मेरे underestimating साइज के बारे में मालूम know रहेगा how ना much यार they can improve because of the caliber of players that are on here. मेरी आंखों में You know, आंखें this डाल के extra बोल। time as well. Everybody's going to get better. Yeah, it almost feels like there's some more pressure Holy on them, है। a little bit higher expectations because they've already beaten GE so many times before in the past. Now they have to keep those expectations up. Increase volume, But भाई ये now क्या coming है? into the game, you know, भाई ये लोग का that's volume about इतना the कम ceiling. क्यों है? We हेलो? saw kickoffs, but everyone's still growing. All the pieces are in place. And welcome to the stage. I mean, अपना बैनर अपना Look बैनर at this नाम लिखा ये गया ये Look गया at the, Spike going off for yeah, more. man. Oh, it's Gandhi you got the Souls, Gandhi capsule Souls. banners there as well for the teams. I love that. That's so sick. Our new stage, dude. That spike. भाई when it was स्टेज है coming बे up at the स्टेज है beginning, It like shook the stage. Like, it was insane, dude. आ ओ गया जर्सी। baby, let's spit today, Players now bro. taking their place. DM the jersey look भाई cool, सामने yo. हुए डरे हुए लग रहे मेरे को ऑलरेडी Really curious for कोच both बोल of रहा these. था कि भाई इस बार हम Definitely देखो again, जर्सी में तो something हम to work जीते। on, but I mean, you
could see flashes of भाई क्या brilliance. I mean, जानवर Zeta, you लोग kind of दिखते हैं, always know ऐसा that लगता है कि सब एस Definitely मारेंगे going बे, to be लेकिन अपने पास that hard carry. He's going to be that guy you can rely on. You know, they showed in the ठीक है, वाइब्स चिल है, वाइब्स चिल है, ये भड़का हुआ है। up with him, it definitely wasn't ब्लेज किंग nearly लगता है as उधर kind of जाके लॉगिन dominant, करेगा। but Tep's been dominant in our league since its inception, so that's a tough task going up against one of the best duelists we have here in Pacific. And then you got to talk about Yuran and Hyodon. Like, भाई ये लोग का वॉल्यूम कम नहीं है। coming in for their first time, they looked sharp. रिवेंज मैच They kind of fell off as बोलते, time went on, but I think that was more of just Zeta just सेकंड kind of रिवेंज मैच, सेकंड। seemingly running out of energy and running out of ideas a bit. So I think with some time off, this should be a rejuvenated Zeta coming in here against GE. Yeah, right? Like everyone's always अच्छा trying खेले to बस। improve, especially with the अच्छा खेले, coaches now मजा stepping आएगा। up onto the stage. They've got a lot to provide. Immortal Base, thank you for the different perspectives from different membership, regions. मेरी जान। Hopefully that adds a lot more to Zeta Division. But at the same time, Coach Spin and Coach Esports, they are that hope for South Asia. It's not just Polvi. Polvi is a great entry player. But we're also looking at guys like Russ, guys like हमारा भी होएगा भाई, जाओ स्विमिंग we जाओ। want to see them step up. They have shown us quite a bit. They beat Bleed before. So, can they keep on this upwards trajectory? Can they keep showing us their improvements? और जो भी as, जेटा का Pacific साइन डाल रहे Stage चैट पे, Yeah, हट I जाए definitely हिटर्स think को। again, I like the caliber of player on this team. मजाक में I think मजाक they मजाक just need a में बोल little रहा bit more सच में मत confidence, देना, a little समझ more रहे teamwork. You know, set Polvi up nicely. It felt like sometimes they're having a little bit of trouble with their entries and things like that. Previously, it seemed like maybe the coordination wasn't always there. But you've got guys like Blaze King on here as well. भाई वो who's absolutely कोच का cracked out of इतना his हाइट mind. है, फिश He बैम की can जगह पे really फेस बम change मार the रहा है वो। dynamic of a map if he can pop off. ऐसा You know, लेवल। we know Benkai's super smart. We know he's going to be lurking around the map, trying to find those weaknesses in your defenses and things भाई like that. सारे This is a team that can certainly do it. I'm a big fan of वॉल्यूम Coach कम Spin. करो I अपना, पहली really, बार लोग बोल give रहे these मेरा guys वॉल्यूम in कम the करना right है। place and in the भाई right mindset. कुछ But तो that हो being गया said, है, you're still going पैसिफिक up का against वॉल्यूम a बहुत Zeta कम team है। that's still very, very अबे strong. वॉल्यूम कम नहीं लग रहा है टिबोन तेरे Yeah, को? I think that's the main story for today is the fact गधी की that गांड। they are going up against those odds. Zeta Division, they've beaten them several times before, you know, not just in kickoffs, but last year as भाई well. बहुत practice किया मैंने So, सुना। I mean, can they really Yes. show us what they've Yes! got? Yes! Yes! Oh my god, can we live? Yes! डबल I'm कंट्रोलर so happy right देख now. के This is सब the आ best गया day था। ever. ये This is, हुई ना I mean, बात। ये when coming into the LCQ last year, वो right? sentinel Like guys, Zeta was kind of struggling, and I was just saying. भाई पहली बार मेरे को जी का कॉम बाप लग रहा है, Back on tape. That's all बाप you लग रहा है ब्रो। And now, especially with the slight buffs that Chamber has gotten, I mean, you know, he was able to really change the dynamic of Zeta on that agent. What say bro? His back on it, I he really is- feeling he the is G Chamber. comp. He is the embodiment of अरे यार, Chamber is sensitive. Laz. So hopefully he's, you know, hasn't lost his touch. अपना with मैप that. है, क्या हो गया? Headhunters क्या are बोल रहा था? absolutely disgusting for him. भाई That is one of गुस्सा आ जाता है the भाई, biggest things. अपना मैप that पिक sets है, him हेलो। apart. He's so good. He can use early advantage. He's so good at holding the off angles. We are for you. close to 300K, He's so good at trading when he's on yay. that Chamber. For sure, but the Subscribe other करो, thing that I जल्दी want to करो। focus on as well is the fact that we've got a Phoenix pick. It's been In a while Indian NG, since lightning we've fast. seen that. Has Depp ever played Phoenix? I mean, I just like all of a sudden I just had it in my head. I'm like, I don't think so. not that खेल I've सकते seen it हैं। in Pacific. I know that, but नो सेंटिनल He's चलेगा लेकिन maybe नो played it कंट्रोलर before. I'm उधर। not. He's played it a few times before. Okay, I just कोई बात looked. नहीं It's है like तेरे बाबा। he's played it like 5 अपना other बाइंड times. में So हुआ तो। not often, but Not often. But still, it's Depp, man. Like you know, he's generally going to be really, really solid. But with Global starting on Bye. the attack, seemingly जीत जा lining up for some kind of A जीत hit, जाए you do बस। have Hyodon and Yuran paired up at the A side. भाई डिफॉल्ट भी अच्छी लग रही है, Look at this mid. डिफॉल्ट भी setup. अच्छी लग रही है, लेकिन वो लोग का मिड They're पुश है। not gonna mess with the front of B at all. They're completely on the other side of the map. They're actually pushing out a little bit. They're just leaving that trademark to cover everything outside of B. Global Esports, though, definitely taking things a little bit slow, going outside of tiles. There's that hot hands. The flash comes out perfectly. भाई Just अटक tampering गया ये with it लोग, a little अटक bit. गए। Hang back for a पहला second, round going भगवान for के a लिए couple लो। of trades, and then Depp with the swing. Spike carrier dropped. And that's a lot of information for Zeta. Last player left alive, and Ben has to try to पहला recover. round भगवान का, But पहला round unfortunately, भाई अटक shut गए down तेरे। by that Bro, chamber we used to himself. dominate in pistol, Yep, man. this हाँ, is अटक what गए थे वो Laz लोग, does for पैसे आ रहे you. पता नहीं। In these early rounds in particular, he could really set the tone, really dictate the pace. And it's a fast hit here by Zeta towards mid, but नेट it's किधर डाला pretty था well बॉलवीन ने, मैं read देखा by नहीं। GE. They honestly kind of sniffed it out pretty quickly and were Timber able to ये make का some ZETA good मिटा trades, है। but Laz was holding down the entirety of Timber mid अच्छा है। with that headhunter.
and took 3 players out that were Chamber trying to अच्छा see if they could get there to bail out, to see if they could shut Oh, down Dep. Polvi Dep उधर good for 2 था। as well. So already the superstars for ZETA fully भाई online. लास्ट क्या मारा बे लास्ट ने Laz was actually up on the elevator position, so it's a little bit भाई tougher ये for देख रहा है Global Esports to trade that way. But काइट back फ्लाइंग to कर रहा है वो रिकॉन के साथ kind of setups. Got alt orbs being obtained. While the rest of Global Esports just trying to find what they can बहुत get. ब्लाइंड है भाई Bottle बहुत straight ब्लाइंड into है the blender. Here with the पानी पीने के लिए automatic bottle खोल fire around करता हूँ। भाई बहुत ब्लाइंड है Actually ए gonna मेन melt ना Benkai पाई as well with that बी चलो fireball. So ZETA with the 2-0. भाई मेरे Yeah, हिसाब से बी just ही a सही है। straight up record scrap था there. बे। You know, GE trying to death ball it through, but ZETA on point with अच्छा those बी जा Spectres सकते हैं लोग What are you gonna combined do? fire. Yeah, what are you gonna do against that? Mid Right? No, control exactly लो, बी fine. जाओ। Like, that's the way this get. You know, it goes sometimes on these eco rounds. You're just hoping you can maybe get a couple right clicks on those classics to go in those situations. हाँ ना But, हाँ ना yeah, it's a pretty good start here, and so far seems I guess it's a okay third things party out of thing, Dep though. on the Game Phoenix. sound full है बे Good placement with some of those curveballs, and बढ़ा दिया there with the hot hands, very nicely done. Now we go into the bonus for GE. Already this toxic screen for Euron, cutting off a lot of mid and front of A here. You see a lot of teams do this so they can maintain control over the front of B. You do not want to give up this front part of the site as much as you can. You want to make it really difficult for teams to set up into post plan in this B main area, because if you get into a solid post plan, it's really tough to dislodge teams from this spot. Definitely that pulls a lot away, especially with that mid control as well. But I think Global Esports have some options given the fact that it's really early in the round now. चेंबर करे Just trying to get a sense for how ZETA have themselves set up. You still have that toxic screen up around A from Benkai, and they can use that to rotate over. Especially if Benkai gets a pick on this lurk. But ZETA are actually really steady right now. I mean, take a look at how they're positioned. इवन तेरे को वॉल्यूम कम नहीं लग रहा है So far, you know, Laz can just, again, he's so reliable on that chamber. He can hold down one angle, even with just a headhunter. In this case, he's got an outlaw as well. Now everybody has full armor. It's enough damage on Russ. I think one shot with the outlaw would take him out, but still. भाई चार बंदे Setup, here we go. चार बंदे Just executing in. We've got the flashes through. A bit of a counter flash coming out from Sugar Zero, and that connects all the way through. Dep able to get a couple of shots off with that Bulldog. Euron staying hidden inside the Stark cover. If the timing is right, he springs out. That could be huge, but Lightning Fast has him covered. Pops up on top, picks off Dep with that Vandal headshot, and that gives Global Esports the side plan. Lightning Fast continuing to try to push forward. Doesn't want to let that Nice the door nice hit, as it were this time. Blaze now back to trade off, but Euron actually comes back up. The automatic rifles somehow don't quite work out, and it comes down to Laz with the scope, with the shot. ZETA picks up bonus. Incredible stuff here from ZETA. Again, you know, with Laz just being able to sit over on A with the trademark. And then him on elbow, he's able to completely control that site, keep information on what they're doing over there. They're never getting any contact, so ZETA keeps their feet planted. I gotta credit Euron with the way he plays this round, the way he maneuvers himself. He puts himself into the smoke. I love this. He uses their smoke against them, wraps all the way back up to Boba to bail out Sugar Zero, and then comes through with some clutch play. So that's what you love to see from this rookie. Doesn't feel like he really, other than maybe towards the end of kickoff, seemed like rookies. They just didn't. They were just built for this, and that's another thing that they were talking about on the desk is how good the rookies are. We know how good Dep is. ये तो possible नहीं है भाई. And I think just trying to get a sense for how this toxic scene comes out this भाई time. market So it's a bit of a punish तोड़ with के ये लोग ये Benkai, जा of course. सकते हैं बता है. Global Esports on a bit of an eco, so it's not going to be too too substantial of a round, but it's just a question of how much ZETA can get away with. And right now, they're starting to feel confident. Caster volume and game volume are one and the same. You can see they're moving pretty nicely. Although this lurk from Polvi, अलग से reduce नहीं कर सकते. Euron is right behind him, but I don't think he's going to get there in time. Nice. Yeah, not quite. They could have bought enough time for Polvi to come up from behind, maybe pick up a rifle. That could have been something different, but गोलू मूड में है आज लेकिन. It's just going to be walking straight into Dep. That should be an easy भाई headshot. ये Dep को इतने orbs काहे मिल रहे हैं? We're seeing pretty good comms from ZETA. The fact that immediately I was watching the players on the mini map there,
and they were immediately looking back towards the back end of the site, towards A-Link and those kind of things, knowing that there was some space left open there. So it's really good awareness, really good comms from ZETA to kind of recognize where that lurking player might be. And it's an easy shutdown there for their 4th win in a row to start Sunset. And this was kind of an interesting map pick from them, right? Not really a map they were favoring during kickoff, but they sure look good right now. That's the strangest thing, because they definitely did get rolled over by T1 a little bit. You know, it was like 13-7, but then Global Esports had a win against Bleed on this map as well. So picking it was a bit of a challenge. And the fact that they are picking it up this way, a 4-0 start, just says so much. Global Esports actually have to hang back for a second. We might even see a timeout if this round does not go towards Global Esports. Yeah, I'm with you, man. I really think a timeout would be needed if this one doesn't go their way. They have a Thrash right now, yeah. So this might catch Lads, yeah. So he's gonna have to get out of dodge. But fortunately, he is a good agent to have in that situation. God, nice 3. Solo entry on the other side. I guess that works as well. Now you have a little bit of attention drawn over. You've got Lightning Fast with from the shadows, teleport over. We could get the spike planted, but we also need post-plant positions to come into play. ZETA definitely on the spot. They're trying to come back for a retake. They've already eliminated one player, so 4-on-4. I mean, ZETA reacting so well right now to everything that's going on in the map. And again, but getting players out of this post-plant position is really tough. Okay. Bit of a mosh pit. Sugar tapping it all the way half. That's enough. So they have a bit of an advantage right now, and everything's being smoked off outside of main too. So this is a really tough fight for Global Esports to be in. It's a bit of a firing range, but as soon as they can kind of get their positioning, stick it all the way through, it should be enough. George! Is it enough time for Laz? It is! Global Esports could not save the round. ZETA just going on a steamroll. Yeah, I mean, सुन अपना रस ने ब्लाइंड मारा बराबर 2 जन ब्लाइंड हुए Blaze King, you know, with still a couple shock darts left there in the post plant on top of the Gecko utility, trying to do their best to delay. But ZETA's so clean right now. Their shots are so crisp. And then, of course, there's always Laz at this last line of defense, or the first line of defense. Either way, he's really good in that role, and Hirodon as well. That's so what we're talking about. Oh, so good. Rookies, right? But then they come in and they do things like that. And now this is just such a big advantage for ZETA Division. Look at the number of ultimates they've got. Oh, holy Lord! Opening things up with an operator of his own as a raise. I was curious if Laz was going to pop the turn, of course, but going to hold on to that since he still got his op from the previous round. And trying to see if he can find a pick of his own. Good work there by Polvi. Benkai. Double push coming out. एक मारना है Benkai का नहीं हो रहा mid and tiles too. एक मारना था But उसके एंगल पे Hirodon is आके मार just doing such a good job at denying entry around these spots. Global वो Esports wants to try to extend their limbs a little bit, stretch themselves out, try to get an opening here and there. Maybe a bit of attention drawn towards mid, but it's not quite enough for the solo player Benkai to kind of push it to calls. So now, I mean elbow. So now Global Esports with that one player dropped, trying to go back in. Yeah, I mean, you can see though that ZETA's comfortable to play a little bit of post plan in this one. They're looking for a retake setup. They're going to let him use some of that utility, but good discipline here by GE, not committing a whole lot. Obviously going to use the wingman to plant the spike, but the Hunter's Fury is just going to maybe, it did delay the plant, so we got that. Is enough. Oh, counter Hunter's George, baby. And that's him eliminated. Did he even get a tag onto Sugar Zero? Not too sure. But now it's a 3-on-4 retake. A little bit tougher for ZETA Division. Bye. Might have been a little bit overconfident on this one with a retake. Lightning fast, quick work. Yeah. Really nice. That was a really good ping pong in there from GE. They're looking a little more confident here in this round. It seems like they're kind of getting it on, kind of figured out. So Euron and Hirodon, man, are so crisp. Still able to get some picks. I don't know if there's enough time. Oh, wait. Recon trying to pull the attention away. Showstopper, and that's going to be enough for Global Esports to pick up their first win. Really good utilization there by Blaze King of his Hunter's Fury to counter the Hunter's Fury. Yeah, delayed, but I think they were expecting it because they were playing very far back. They were pretty safe here, and he's able to ping him out and get the 2 hits to go. And again, this ping pong right here, very, very nice from the side of GE, and then the late backstab from Blaze King, able to secure the round there. And now, indeed, the tour de force, I believe, going to be
snatched up here by Laz very early. Still have to run it back for Depp, but he doesn't look to be maybe going through a mid push. Yeah, Polvi is there still with that op, but not gonna be going all the way in just yet. I think it's a bit of mental conditioning as well from GE. You know, the past couple rounds, they've let Benkai kind of lurk around this A site. If Benkai gets dropped, ZETA tends to think that, you know, this site is kind of open now because Benkai's on the line. But that's not the case anymore because Global Esports is trying to send a bit more, more reinforcements into this A site. Maybe a bit of a split. यहाँ पे कुछ OP होने वाले हैं. Top mid? बी जाओ. They're doing a good job recognizing where Laz is kind of having tendencies to play on that chamber. So Jiggle peeking there, and then able to go for a wide swing. Ooh, Ops missing there as well. Yeah. Still a bit of space taken, but wow, look at how ZETA responds. Heteron just kind of falling back bound by bound. Now Depp comes back in, a bit of a double. Oh, third! The flash, the run it back. It's just so darn good, and all that's left for this round for Global Esports is just Blaze King. Can't really escape either. Able to take down Yuron at the very least. 30 seconds left. Bro, He's got to save though. Why are they not like faking? Other than him, Money is a little weak on a couple players, so I don't think there's any way that he's going to get back to this. Maybe get a couple picks, but see if he can get it done. Okay. Yeah, I don't know if ZETA wants to continue hunting this. No, they should just guard the spike at this point. There's no more reason to commit any more resources. ZETA's also a little bit low on money. All right, we're good to go. That said, I mean, not too bad from Blaze King, but the adaptation, the adjustments from ZETA, and it all starts off with players like Hiroran again. You know, getting that information up around top mid. Although we did have Global Esports kind of be aware of how Laz might play, they kind of worked into Hiroran's hands. Yeah, they just left him on site. They haven't been playing on the A site directly when they've been going for these setups, so that was kind of a little bit trickery there. And Depp on his own, doesn't matter what agent he's playing. He's crazy. Setup change किया Pacific का. That child of God. Sexy है ना? He is. बहुत अच्छा है. I mean, the best Actually, FPS player तीन to come region out से of compare Japan, किए तो in my opinion, यही अच्छा of all लग रहा है time, मेरे को. It's not even close. अच्छा He's on another level. I mean, not only is he the best to come out of his region, but he's arguably the best duelist we have in Pacific. On top of it, I mean, he is. Yes. I think he probably is. रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ. Like his mechanics are just through the roof, and you saw it there on that triple kill. We've seen it so much last year on Jet as well, but now on different agents. मेरे it अंदर really अभी shows भी that everyone positivity is है, trying पता है? new things. I mean, Global भी है. Esports as well. I thought it was a little bit smart that they tried to Please adjust jinx करो towards जी this को. A site. यार मैं But कैसे you know, बोलूँ that's यार the thing, जी. because ZETA has already built up such a strong जी जीतेगा बे, lead. रुको. And of course, it's that information game as well. Hiroran's just doing such a good Okay, है job. भाई कब Depp से? comes in to, you know, execute and आज secure मैं the Twitter deal. uninstall कर रहा हूँ. How can Global Esports come कभी back into support this करने कर दी game जी at को. this juncture? You've got Win the or time lose, of क्योंकि approach spin. It's काफी round time number हो 8. गया. Let's see what they've got. Yeah, it's going to be They tough. want G to I wouldn't play be good, surprised so if it's maybe they consider mid a little bit more and try to put some pressure. It's really criticism. difficult, though, with Laz there. With that op or with that tour de force or the headhunter, whatever it may be, he is such a challenge to get through when he's on chamber. He is so talented. I mean, we saw him go a little bit in the previous round, right? But overall, he's really solid. If 7-1. it is what it takes, Yeah, then 7-1. He's playing it safe, you know, defense. That's what this composition does. Meanwhile, Global Esports composition is a really sound game. Benkai again trying to take a peek by himself, but it's not quite working out. All of it too prevalent. Op shot whiffed, but it's still information enough. And I think Global Esports does not really want to challenge this. At least not solo. Yeah, and Polvi's waiting for reinforcements. That stutter step there by Polvi saved his life. He goes a few inches अबे जिधर रेस दिख रहा है ना यार, रेस का कुछ भी यूटिल आ रहा है, वो लोग सीधा स्टैक कर रहे हैं. Trades by himself with that Sova. Yeah. Like Dizzy and then like Satchel in, or I like this. बहुत अच्छा खेले. I mean, I think again, when you're going B, especially with the Gecko in there, you're trying to set up for the B main post plants, but with that paranoia, I think they bought enough space to potentially get the wingman in, but they're pulling out. They don't like the contact they're getting. They don't like that paranoia. You know, likely you're going to have a couple players over there, so. Okay.
maybe trying to sell a bit of a fake too. नहीं अकेला नहीं अकेला नहीं if हो they गया don't do फिर बराबर है बराबर एक किल निकालेगा I बहुत don't है think this fake. बस हो गया I don't think this fake is gonna be fun. I mean, look at that simple shot from Laz, and Hiroran still hovering around the A site. The awareness is so भाई sharp. ये from Zeta. रेज They अकेला की know जा रहा they है have वापस the एल्बो numbers में for this बैक game. स्टेप हो रही है साउंड आया होगा Yeah, आया they're होगा so ना good. And look at they're coming from Yeah. every angle. I mean, you've got two wrapping through A main, you've got a couple coming सब from जगह top. वो लोग This is going to be a really रीटेक का वेट कर रहे वो लोग difficult plan for ऐसा GE. गिव नहीं कर रहे राउंड यू हैव Not much utility to work with either for GE. ओह Yeah, let's can go God. hold BT off to defender फ्लैंक spot बीटी spot. फ्लैंक बीटी फ्लैंक Might बीटी just be able to prevent them from breaking through. फ्लैंक but आ रहे वही look बोल at रहा हूँ ना Yoran's वो coming out रीटेक from के लिए रेडी है वो behind. लोग Something that Global Esports did not quite बोला कुछ नहीं हो रहा है expect. बेंच And now that's going to be Zeta with the 7-1. It's clean. Again, comms and awareness are really what is impressing me. We know the individual skill is there for Zeta. Some of the problems came with like depth of strategies and things like that, especially on maps like Icebox, which is our next map. So certainly something to keep your eye on as we go along on the day. But you can see they've got a lot of great ideas. There's a lot of pushing and pulling. They're doing a really good job of reacting to different stuff. Like they're not kind of just holding plant, pat and waiting for the plant to come down. They're being proactive. They get the kill on the Blaze King. There's no follow-up behind it if it's a solo Sova kind of just blind pushing towards sight. That kind of raises some alarms in your head. You're like, well, I kind of doubt that this is the real hit. It wouldn't be usually the Sova doing that. So I know you're a wingman. Yeah, exactly. Right, exactly. So Exactly. it's a little bit tough now. And if anything, maybe this owl drone was a bit of a tell this time. Okay, that's definitely a tell. Thrash coming through. They don't see anything though, so this could be a good site capture by Global Esports. Zeta has to go in with their full investment to retake. भाई अच्छा एडवांटेज है बस to let the से ना drone as well to try to clear that बिना hit. blind So के some tools here for Zeta to work with, a counter pit of their own potentially. So far, so good though. Global Esports staying hidden. Polby sneaking out the front, on towards Boba, able to get one, but Laz with the headhunter answers back. Nice. Thrash able to connect. Kill. But Hiroran! Kill. He actually wrapped back around Boba again. क्यों गया वो वहाँ पे So that's the initial line of defense. Best way to throw them inside. All the way that they're pushing along with Hiroran's utility. Sugar's here with the How double did we kill, lose and that round? Zeta are looking unstoppable right now. Vertical's just a bit off there for GE है, in that post smoke plant. Nobody भी able to है, clear. Viper That ult recon भी है। really है, hurts वो because सब it छोड़ो, immediately पिट के reveals अंदर वो Benkai's recon presence. कोई नहीं तोड़ा That's a उसका huge B-main advantage that सारे Zeta B-main has जा going into सकते this post हैं plan is that और वो Hiroran is not only retain हो गया popping off तो with his भी। mechanics, but he's saving that utility for when he Hold needs on, it but and able to put it to great use. ये सब ना बोल It's just बाबा। insane. I mean, it's so tough because Russ isn't in a position to clear it either. It goes deep enough. Yeah. A really nice recon there. And that's the thing. Sugar Zero by you've got Julo. these players from Zeta Julo. Division. Of course, we know Depp is just that good. 12-6 right now, but Hiroran a close second. That's really impressive for this, sort of new player. Back in again though. Polby trying some. Where is the entry Omen antics. Light? The satchel doesn't Omen quite is- land. Hiroran Yeah, shuts it the down. hit The rate trades come happening. through anyway. You've got Depp with the run it back though. Lightning fast, able to sneak up behind. भाई Shuts गोलू down मार Depp, रहा but है। Laz One gets v two his कैसे हो गया back. अचानक से? All of a sudden, you've got Blaze King left alone. लास्ट को Once more. कैसे मारेगा Really tough. ये देखो ना ड्रोन जैसे ऑफ कर रहा है यार One tap potential, but Laz, you got to feel with that op निकालेगा in लाज hand. निकालेगा He's gonna फीलिंग be है अंदर really का fearsome. I have the spike. You do get the spike. Probably Gut can just feeling, wrap to B. guys. No reason to B जाए try to push through. You know Laz is probably just hanging out. B जा Player you सकते हैं gotta ना worry इधर about ही क्यों potentially लर्क is कर Zeta, रही but है trying the pump fake. एक ही Zeta देखा this दूसरा time स्पॉटेड नहीं ना just ना gonna plant their इधर feet and wait this out. Again, great game sense. He's got a lot of time. Okay, initial tap. Zeta starts to move. He's still kind of paranoid about his backup, but that recon will give him all the information he needs. Oh, but just a bit of a shoulder. That's all Laz needs. Zeta now with Last the 9, belt very close to double built digits, and we are different है nearing यार the end of the first half. For हाँ? Actually sinks at And I mean, again, it's Hiroran on point on this A site who gets the opening kill. It's a good attempt from Polby, but Hiroran's able to take him out before he even lands, really. And no real hope for Polby in that situation if the player is able to take you out of the air like that. Laz is just, yeah, nice, yeah, very good. It looks comfortable for Zeta. They have a phenomenal read right now. Now you've got that Hunter's Fury again. You do have the counter Hunter Fury from Blaze King. You do have Yoran's Pit, which he hasn't
felt the need to invest yet. ये Hasn't लोग really ए had the वॉल opportunity. जो He कर got रहे taken हैं out early. Save it for a retake. Yeah. गेको का exactly. ब्लाइंड I 2-3 think बार that's यूज what करके it looks थोड़ा like he's बीटी के thinking. बीच जा सकते हैं लोग Quack and we'll see how he wants to use it. I thought maybe he'd use it this round just to shut down one of the angles, but what does Sugar Zero do it? What? Oh my He's pushing God. along with नहीं his मार team. सकते हैं कितना A little ब्लाइंड bit of है information for Depp on the other side of tiles too, because of this toxic screen though. It's just so much value. Standing. Bro, This what is setup that from control, ZETA is man? just too darn good. And it's so similar to what we saw in the pistol round. A similar kind of push this time though. You know, just इधर playing कैसे even मारा better उसने? ZETA. I mean, they're just so dialed in. यार डिफॉल्ट में Reads लूट on है top of that too. You know, Oh, no. previously we've seen Haga, that haga, haga, toxic haga. screen, for a bit more mid control. bhai. Okay, going in for the hunt now. Sugar Zero cleans up. Classic standard stuff. But yeah, the toxic screen before we had it towards Last B, round and then in they the started to half. get a read. Duran That bhai, maybe this gulo, round Global Esports can gulo head towards नीचे. it. Yeah, no, you're right. कोलवे का पोजिशनिंग You know, पता G नहीं is क्या trying है to वो dig a लोग little अगर bit, मिड but पुश कर रहे हैं It's दूसरी just बार हुआ getting है so smothered. कोलवे और I रस mean, वहां and से आ again, रहे हैं it's holding down the angle towards bottom mid for Sugar Zero. This time with Sugar Zero, you don't even need Laz to be the one to do it. रस को And उधर again, रखना great चाहिए ब्लाइंड protocols, के लिए great awareness, और यहाँ everybody पे doing ओमेन और the right रेस thing at the रहेगा right time, सुबह के holding the साथ correct angles ज़्यादा for बेटर ZETA. है The trades have been excellent. The individual play through the roof. Nothing to fault. Yeah. You know, just wanting to stop them in their tracks. दो कैसे मारा रे? Oh my God, Hiroran! In a दो कैसे one लिया रे corner, वहाँ से? able to take down two. Russ is the one who कैसे trades him पॉसिबल out. कैसे भी But इनका at this ट्रेड नहीं point, कर it's पा a रहा 3-on-4. अरे कैको कैसे This ट्रेड नहीं could हो रहा be है? an दो कैसे लिया वहाँ पे 11-1 वो? first half. Is this all that Global Esports has to offer? Surely it's going to be more. Lightning fast from the shadows right behind. Depp feels a bit of that heat. Despite being Phoenix, the rest of them, ये गया। ZETA tries to provide that reinforcement. Global Esports has down no A. idea that this is where they are coming from. Only one man can get Heads it, up bro. duel onto Golu. place Golu kick, no कोई- trades कोई found. नहीं It's जीत पा all रहा रे down भाई। to lightning गोलू fast. जीतेगा गोलू जिताएगा भाई The hope of South Offer है वहाँ Asia. पे। A bit of a crowd Last but by तो Lotus मिस ही with नहीं the कर रहा है shot। operator punctures through his torso. नहीं, लेकिन इधर भी गोलू मार 11-1. ZETA ends the first half. Switching sides. वो लोग क्या एंगल Well, में you घुस already के मार feel रहे like हैं you're getting the answers to some questions about what was ये happening during the अपना मैप नहीं है offseason. आई थिंक And you've got to like what we you're can seeing. from end a ZETA. note on Not that. only with This the is agent composition, not the map. everybody wants to see Laz on Chamber. I'm probably the biggest proponent of just stick Laz on Chamber in every map and just see what happens. Because he's just that good. Default But left it's right more है than that, right? Like Depp on this I Phoenix. think रेस He's been ए insane. पे अगर मिड कंट्रोल And ले रहे also तो रेस ए Hiroran पे and Euron too. I mean, we've seen Depp with the Considering retakes, वो but लोग the इतना blind information है that they gather because of और Hiroran's वो लोग utility, ऐसा पुश कर that's रहे the हैं thing और that ऑलरेडी strikes me एक the बार हो most. गया है I तो mean, this उसको team थोड़ा is एडजस्ट करना just doing चाहिए everything Same default नहीं right. They've got the advantages. They're not doing anything too risky. And everything, the protocols are all sound. They're making लग the रहा है हर एक best फाइट जीत रहा है decisions ZETA possible. I think that's Everything kind रे of the direction that AMD Coach हारने का बात Carlo ही is नहीं है steering them G का towards pick it, Icebox and it works out Yeah, just great. it's like Global Esports on the other hand, though, Yeah. I'm not sure what it is. It looks think like they're a their little default bit just off. I mean, like, concept- Hirodon in particular was so sharp on that A site, it made it really difficult for them to, like, अन्ना they का पूछो read फुट कितना where देर people में were आ रहा going है, to be or बता when कुछ they है। were going to be pushing. Like, I saw Benkai holding angle. क्या होना just चाहिए losing पता है मंबा those fights पाँच because they're मिनट so पागे crisp right now. I mean, that's hard to अभी go वो लोग against mid when ले रहे हैं players ना are तो swinging mid you and smoke you're holding that रस angle लेफ्ट से and ब्लाइंड they करेगा still outduel you. अगर अर्ली Then ब्लाइंड it's just में a, it's या just फिर a ब्लाइंड skill. तोड़ा It's just a skill या difference in फिर that ब्लाइंड हुआ situation, and तो that पता है वो लोग sometimes ने मिड happens. पुश किया It might just be an तो off उसके day, काउंटर you में know, ओमेन ब्लाइंड mechanically ड्रोन for you or रिकॉल whatever, और फिर and that's रेस hard to पुशेगा overcome in this ऐसा game. You know, समझा you can be as good कि with रेस util वहाँ and पे all those नेट other डाल things, सकता the है जहाँ पे protocols, फिनिक्स all that पुश can किया be in place, और and it उसको can भगा still सकता just और be भगाया तो a पीछे bad रिकॉन day है for you with your individual सब firepower, कुछ- and that will quickly snowball, So especially. follow Honestly- follow honestly- follow follow bad वैसा चाहिए first, Honestly, day, bad I would first have map. instead of Sova But or regardless, Gekwai, we're going into this as a second matter of fact, half instead of now. Sova, Fade Global Esports would have actually definitely, helped them looking info for that निकालने के लिए pistol पीछे win. push करने के लिए. But it's such a Sova tall is to also blind good Polvi. अभी Trying to get Sova a is bit good against Cypher वो लोग ने Cypher लिया नहीं Anything you get aim They with your man. might as well be like, you know, making use of these steel case chairs. Just leave हाँ the aim ball है back, aim straight to the डिफेंस point, stretch man. out. Yeah, I'm Aim good. defense, Yeah, aim yeah, defense. Yodan was doing it in the break, Aim so he's defense, one लेकिन step major ahead of you, strat man. diff Like, भी है बे he's already vibing. I want to see but- T1 on the Yeah, analyst I mean, test you could once. see ZETA sensing that there was going to be some kind of pressure, so Anuj
they took a pause. They held depth right around the door, ready for a flash in case there was a further push up through B main towards spawn, towards the lobby area. But
wisely, GEELI. Go for it. Okay. Thank you, T1 भाई ये क्या हो रहा है T1 भाई मैं तो Same deep, For yo. great information, though, they sense that there's a bit of movement towards mid. Anuraz slowly inching towards A elbow, senses that it's kind of all clear, so everyone is corralled towards this A site. And pretty soon they will have it captured. How is Global Esports first round खेला ना live on pistols? ZETA ने जो फर्स्ट राउंड खेला था वाइपर के साथ वाइपर बी पे स्मोक फिट डाल के थोड़ा होल्ड करने का ट्राई कर रहा है ए पे प्रेजेंस दिखा रहा है मिड फाइट हो रहा है तो भी ए पे कोई है Great recon though from Blaze King, and the swings come out, able to get a bit of a double, but Last retreats right back. It's still a 2-on-2. ZETA still has a chance, and Last has the optimal angle for this. The headhunter shot's a bit of a whiff, but still buying enough time for everyone to play around the corners. What is this tap with the classic? Now coming back in, Polly tries to stay in, but he's running out of time. वो कोने में उसको एक को मारने के लिए नहीं हो रहा है भाई वहाँ पे मुझे तो बोला गया था वॉच पार्टी मैच का हो रहा है यहाँ पे Laz able to hold that angle with the headhunter. You're on so smart. Gets lit up early, takes a ton of damage, and just says, "Okay, now I'm gonna wait. I'm gonna bait them into Laz's angles and then try to play off that." And then he plays ring around the Rosie on this generator on site so well. Yeah, no, ना कॉल ना स्ट्रैक ना कुछ वर्कआउट कर रहे हैं I feel it's strat diff Oh my god, no choice. The dream is alive. It could be a 13-1 paper thin. I mean, I don't know how Global Esports is going to make their way out of this one. You've got a chance in the fact that, some of the ZETA players have light shields. If they can secure some weapons, this could be a different story. But look at how safe ZETA are playing, how safe Euron was playing in that previous moment. Yeah, I think they're anticipating that there's going to be some kind of close range weaponry due to the economy. पिस्टल में भी किया था और एक वापस से मिड पुश जो in the mix. यार उसमें लेकिन मेरे को पॉली का पोजीशन गलत लग रहा है राइट एमएन लेना चाहिए और एमएन से आएगा वो बूमबॉट नेट करके उनको भगा सकता है वहां से लेकिन क्योंकि वो लेफ्ट से आ रहा था ना लैस ऐसे मार रहा था वो वहां से कुछ यूटिलिटी नहीं डाल पाया अपने टीम के more players towards A site. They might just be able to rush down. डर ही नहीं है रे चेंबर को आया कंसीडरिंग अपने पास दो इनिशिएटर है ना Dark covers all around. पीछे कर सकते हैं पुश लेकिन पीछे नहीं कोई पुश कर पा रहे Okay. The paint shells got there just in time to prevent और इंडिविजुअल फाइट 2-3 हमारा स्टार्टिंग राउंड में इनका मारना चाहिए Yeah, planted for B main. Just got to deal with this, but you can't. That guy's good for it. Alright. Good chance for Global Esports to extend their चप्पल दिया उसने दो को ऑलरेडी in this moment, but ZETA Division actually holding themselves down too. With With the Bulldogs, with Sugar 0, all they need to do is to stay alive long enough, buy enough time. We've got a bit of a curveball being thrown. इतना मारा Division ने 50 Absolutely bonkers stuff there from ZETA Division. Coming in, showing us a new ZETA for stage 1, and they look very This is just the first match. If you end things on a 13-1, इस बार कौन बचा था I स्ट्रैट think लेता it's an understatement to say that they have the momentum on their side. They're यार हम पे तो नहीं हंस रहे ना वो मैं वही बोल रहा हूँ यार मैं उधर जाऊंगा तो किसको मिलूं But to have a 13-1 to come out here to start stage 1. कोई सीन नहीं चैट कोई सीन I will say, नहीं if you're a GE fan, don't get super worried about this because this happens from time to time where you just run into a team that's just way better than the team on a map for whatever reason. That actually makes it easier to bounce back when you get blown out like this if you have the right mentality coming into the next map. You know, you think about Champions, DRX versus Fnatic, right? Fnatic got blown out. Let's wait for the next map. DRX. अपना map pick है 400 0.6 I hope they win and turn this Mentally around speaking, and you reset always need to, steady yourself and and go into have the some next crazy And that's always the kind of thing. ZETA sometimes just feels like your opponents are having that good of a day. But you know what? We're going to toss it back over to Antec to break things down. happens. I think we should have our own this thing. So, stage 1 इससे is बात दोनों से बात किया था अपन ने kicked off with ZETA Division winning 13-1 तो भाई on हमारे the very coach थे first map. Sunset Sleepy है वहाँ पे? Carlo not disappoint with the surprises. रियलिटी का कोच भी है वहाँ पे आशुराई भी है वो है ना ये है ना स्लीपी जो बात कर रहा है यस यस ना वीएलटी का रियलिटी का कोच भी है वहाँ पे
This is the 8th time that he मैं has बाकी played दोनों को Phoenix जानता हूँ in his दीपी के career. अलावा We haven't seen much of it from him, especially not in a very long while. But this has just been something that he's only been straying away from. Laz, we were hoping to see the chamber from him during kickoff. We did not. And you know what? Thank you, Carlisle. Thank you for not being alarmed, because when he walked off the desk, I thought for sure he was baiting us. We're gonna go into this game. Laz is just gonna be playing something more standard, something that we've been seeing from him for, the last couple of months and whatnot. Icebox But no, close jayega. they come out with this new composition, and it just looks flawless. 13-1. This is just utter dominance. I mean, you look at depth. 20 and 10, a 366 ACS to kick things off. Laz, he only died 3 times. Yeah, I mean, we even noticed, Sarai. ये देखो सृजल श्रीवास्तव CGRNT पर ट्वीट किया था आपने, इस पर कब? इस पर नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग फ्रेंचाइज पे है सृजल भाई, ठीक है, जो CGRNT है नहीं, ठीक है। 5 6 जब CG या RNT कोई फ्रेंचाइज टीम तक जाएगा, ऐसा तब नहीं मैं लगा उनके टीम लिए को भी स्पेस ही ट्वीट नहीं किया दिया जी को कुछ भी करने के लिए। एसी नहीं डन था, सीन है। फुल हार्ड डिस्क था इधर। क्योंकि मैं अभी चोक कर दिया अरे कुछ अड्डा, बोलने जाऊंगा ना स्कोर तो देखो तेरे 5 को, से 7 8 तेरे ही प्लेयर्स के बारे में, तो तेरे को समझेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या आ गया मैं आ गया गाइस क्या बात क्या 5 व्हाट डिड आई 6 मिस 7 8 9 10 11 एंड just to give you बच्चा सेंस ऑफ मैच्योरिटी, वो अपना रीजन का जो मैचेस हो रहे हैं ना, उनके ही टॉप प्लेयर्स मेरा ट्वीट लाइक कर रहे हैं, जो मैंने बोला था कि मैं वॉच पार्टी नहीं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है जी? अभी वो लेवल और उन सब के साथ खेल रहे जहाँ पे अपनी टीम्स नहीं पहुंची है, ठीक है। मेरे को पता है जी अच्छा नहीं खेला है, आई एग्री, स्टैट्स मेरे को गंदे लगे, दैट ऑल्सो आई एग्री, बट इट डजेंट मीन कि दिस टीम इज नॉट बेटर देन अपना रीजन का टीम्स, ठीक है। तो पहला बात तो कंपैरिजन बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, अपना लंड जिसे दिमाग में ना एक चीज डाल दो, जिस दिन जी फ्रेंचाइज से हटाना, तभी तुम किसको सपोर्ट करेंगे अपने रीजन में से, ठीक है। या फिर जिस दिन जी ने बोला कि अपने को इंडियन प्लेयर्स नहीं चाहिए, 5 बाहर के प्लेयर्स चाहिए और बेटर प्लेयर्स उठा लेंगे, तब तुम लोग किसको सपोर्ट करोगे और क्यों करोगे, ये चीज थोड़ा दिमाग में डाल दो। डन सीन है। वरना यार तुम लोग एक ही काम कर सकते हो बैठे बैठे, गोट मेरा DM, गोट मेरा रॉसी, गोट मेरा हेलेफ, यही कर सकते हो। और तुमको वो करना है तो वो करो, और तुमको जी को सपोर्ट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन ये बकचोदी ना वॉच पार्टी वाली, ये मेरे साथ मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के 3 रीजन कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। अपना रीजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्किल सेट नहीं है, तुम्हारी प्लेयर्स लाइक कर रहे हो ट्वीट को। डन सीन है। तो हल्का सा दिमाग ऊपर लाओ, क्योंकि शायद से कुछ तो मिसिंग है तेरे दिमाग में, समझा? डन सीन, डन सीन। जैसा जी अच्छा खेला तो प्राउड फील होता है, बुरा खेला तो अच्छा नहीं फील होता है, मेरे को भी वैसा फील हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते, लेट्स वेट एंड सी आइसबॉक्स, इफ नॉट विल सी द नेक्स्ट मैच जब भी रहेगा, लेट्स सी कैसे परफॉर्म करते हैं। हो सकता है जेटा इज जस्ट बेटर, क्या कर सकते हैं, अभी नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, हाँ। लेकिन जी अगर खत्म हो गया उसके बाद तुम लोग क्या सपोर्ट करोगे, क्योंकि इतना तो है कि एसेंशन से अपनी टीम वहां पे जाने को बहुत टाइम है, हाँ। हर एक रीजन का एसेंशन टीम विनर्स को खेलने के बाद फ्रेंचाइज में जाना बहुत टाइम है, क्योंकि वहां से कैसे कैसे टीम्स आ रही है तुम लोग को पता है क्या लेवल की, हाँ। इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, आई सपोर्ट गुड गेम प्ले, आई ऑल्सो सपोर्ट गुड गेम प्ले, दैट्स व्हाई आई सेड द स्टैट्स आर बैड, दे डिडंट प्ले गुड, बट देयर इज अ लिमिट टू ट्रोल, लाइक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो। मेरे को पता है आधे जन ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया रहेगा कुछ ना कुछ, कोई सीन नहीं है, वो लोग को भी पता है कि आने वाला है, हेट आने वाला है, कोई सीन नहीं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अपने को उसके बारे में सोचना है कि इफ नॉट दिस व्हाट नेक्स्ट, इफ नॉट दैट व्हाट नेक्स्ट, समझ रहे हो? एक टीम को इतना नीचे मत गिराओ कि भाई उठ ही नहीं पाए। व्हाट अबाउट पोल?
टिबो ने डाला था ये पोल मेरे चैनल पे, उसको गाना pistol rounds, so we don't get to see anything. लाइक But करो the way लाइक that करो Zeta's लाइक करो playing right now, अभी हम लोग they're खेल just रहे aim हैं 2-3 साल से है, तो उसमें ये ना कितनी भी नई चीजें हो सकती है वो लोगों ने देखी हैं, तो एकदम सरप्राइज नहीं मिलता है। अभी इसमें सनसेट में लोगों को कैसा सरप्राइज मिला कि फिनिक्स पुश कर रहा है, ओमन पुश कर रहा है, वो लोग रेडी नहीं है वो चीज के लिए। तो और प्लस वो लोग हर जगह पे ना चोक हो रहे थे, वो कहाँ टी स्पॉन पे घुस घुस के मार रहे हैं ब्लेज किंग को वो लोग। तो दिख रहा है पूरा कि स्टैट डिफ हो गया, लेकिन आइसबॉक्स में ऐसा नहीं हो सकता, वो टी स्पॉन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई इसमें हेवी तार है, I concur. हेवी स्टैट डिफ था। हाँ हेवी स्टैट डिफ था, वो लोग बहुत ज्यादा दिखा हो। उन लोगों ने सनसेट पिक क्यों की? नहीं रे, लेकिन मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना, अपना जो डिफॉल्ट था ना, अभी पिस्तौल राउंड में भी अपन देख 5 जन मिड पुश किए, उसके बाद अपना ए भी लीग डे, बी भी लीग डे। करेक्ट, इसलिए तो अभी आइसबॉक्स देखो बिंग्स भाई, मैंने पहले ही बोल दिया लेकिन क्लोज ये जाएगा। चीज मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कुछ होगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट मैच का तो कंट्रोल रखने का है ए या फिर बी। अगर 5 जन मिड कंट्रोल रख रहे हैं ना, तो फिर वो लोग रीटेक के लिए खेल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर रीटेक हारा तो फिर मतलब ऐसा 50-50% चांस पे नहीं रख सकते। मतलब जैसे सेंटिनल्स खेलता है रीटेक, वो लोग का है, वो लोग का बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, वो लोग जीते भी है। लेकिन सनसेट तो हमारा पिक कितना ना। हाँ हो गया रहेगा कुछ गड़बड़ी में, जाने दो आइसबॉक्स, वी फोकस ऑन सनसेट अपना पिक नहीं है बड़वे। पक्का? हाँ जेटा का है रे बेबी। पक्का क्या? तो फिर 100%। तो फिर बस प्लीज चेक जी पे। आज हैप्पी बर्थडे बफ आप और फिंकी की फुल स्क्रीन पे विश मिल जाता तो आशुतोष भाई फिंकी बाहर है, मैं देता हूँ यार। आशुतोष भाई मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी जान के टोटे। लेके आया था आइस भी मेल्ट। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, टिबो असली हेटर है जी का, बड़वा सा। मैं जर्सी लिया ब्रो, आप बोल रहे तो जर्सी लेने से हार गई, ये क्या बात हुई? मैं टीमोन की चैट पे आया था थोड़ी देर पहले, उसने मैं स्टार्टिंग में चाय बिस्किट लेके आया, अभी तक बिस they prefer to have इसकी बात I think the global, they certainly could have that, but right now, with how fired up Zeta do look and how accurate they're being, I feel like this no worries boys, India is going good. I mean, we are going to go to Asian picks now, so we're going to find out exactly. भाई मजाक से हटकर भेंट चोत, मैं कल सुबह 6:30 बजे क्यों सोया मालूम है? शिफ्टिंग कर रहे हैं, चेस देख रहा था यार मैं। विदित भाई जो खेला है नाकामुरा के सामने, ओ भाई मजा आ गया, मजा मतलब हर जगह ऐसा लग रहा था ट्रिपल अटैक। मजा आया। Zeta Division's actually picked up. KO picked up by them. I mean, सबसे बाप बंदा वही लगता है। I'm curious to see how it's going to be looking here with this Gecko. But I mean, so much utility, so much great post plant, but as well as just being able to try to keep the fuses off because you have the wingman into the mix, the entry onto the site alongside the Dizzies. I think this could be huge for Zeta. I agree. Let's see what other surprises Carlisle has up his sleeve. We're going to go to our casters, Quack and Paper Thin. हाँ ना, आप चला। मतलब मेरे को लगा नहीं था मेरे जैसा slightly different. I guess we'll just have to find out because it is kind of interesting. You do have that Gecko being brought out from both sides, but also lightning fast on this. Yeah, that's 100% really interesting to me. That's it used to be that you're using that Sage to set up your plants and those kind of things, but because of the wingman, teams didn't really feel like they necessarily needed to have that Sage because Sage on this map felt like it was basically a one-trick where you're just there for the wall, and then you're just hoping that your shots are crazy good. I mean, yeah, the slow words help a little bit, and the heals can help in certain situations, but the rest too. But definitely the wall was kind of the bigger piece of the puzzle, but they're going to try to feed the Alt Orbs early here. Too lightning fast on that Sage. Looking to try to गोलू भाई का balls of steel है। Yes, गोलू भाई मैंने Sage पर अच्छा खेलते हैं, मारते हैं, heavy मारते हैं। On Zeta's side of the coin, this is what a lot of teams are kind of running on this map now with these double initiators. The heavy flash comp where you're really able to control so much space with the extra verticality that's available to you on a map like Icebox because you have the room to throw the Dizzy up and do things like that, over flashes from your KO. It really gives you a lot of space taking ability to really make it difficult for your opponents to play anti-flash or to
you know, turn the flashes and things like that, because it feels like there's just this volley coming. Yeah, exactly. Very attack heavy. It's great for retakes. It's even better on the उसका alarm board भी attacking अच्छा है. side. उसका alarm board देख. City info के लिए. Hanging so far back, especially on the A side too. But then again, it just brings us back into a bit of a full-on pistol battle, pistol firefight on this first round. Bull has made their way through. Yuran gets all of that juicy information. Hey guys, you're hearing a lot of footsteps. Blind. Watch out for this. Dizzy gets sent out. Deb tries to reposition. भाई पीछे देखो. Clears, dropping down on top of him. He's not quite able to land the shots. Yuran crouches down. मारो गोलू भाई. Jump कर Not दे. quite enough to fend off the rest of Nice. Global Esports. Russ, reach out to the Nice. Now that's going to be down to Laz. Hey, ball गलत है. Defuse. Polvy's just sticking all the way through. Lightning fast trying to What about this? He gets the shot. He jumps up with the zip line and he बॉल saves थोड़ी it. गलत हो गई. कोई बात बॉल गलत है. Global अच्छा खेला Esports लेकिन managed to अच्छा stick खेला. defuse at the end. That's bonkers. That's absolutely insane, Laz. You genius. I mean, that wall also ऐसे नहीं probably होता not बहुत exactly जब the place बैठा we है. wanted it. He probably wanted to completely cut off that angle. But still, didn't matter. कैसे नहीं होता? A really interesting setup here. Like, teams are really on this अरे B तो site. Especially with the वाला Gecko है able to give you these plans where if you're kind of given the site कैसे नहीं होता? तीन बंदे हैं, एक बंदा बैठा है. I mean, Laz still though, like absolutely just crazy stuff. But I mean, ZETA look, अगर yeah, plant gets नहीं around, करेगा ना तो हार but- जाएंगे dang, टीम. that's so smart from him. But you wanted to take that deep snowman plant, and GE really able to handle that part of it nicely. It's just a little bit of a fumble there on the save. God! Well, that's just the outlaw stuff, you know. 2 shots ऊपर. completely shatters you if you don't have body armor. There's the third. Maybe we get a couple more. Oh, a bit of a whip. Swaps over to the classic. Russ coming into failure. Jord. भाई पोलू ने मारा लाइटिंग फास्ट का कैम डाला. Love you. The subsequent round now. Yes, very, very good stuff here with the Outlaw. I mean, why you really are going to see teams, especially के साथ Pacific, स्ट्रीम करना ही dive पड़ेगा. into this weapon is because of how powerful it is. On a map like Icebox, it's essentially an operator in this round. Yeah. So you're able to really kind of do the same kind of plays, Yes. even better, because it is 2 shots instead of 1. Makes it so challenging on this attacker's team to try to buy any space. But now you gotta dig in, and even because you have to go for the full armor here, just a Guardian. Full screen इसके बाद करूँ. But many happy returns of the day मेरे जान को देते. Make sure that ZETA can come back into Happy the returns game. of the day. But for now, it just has been They were not even by Global fundamentals. Esports People trying to control लिया, play A पे ना around जेट ने things, पुश करके trying to स्पेस ले लिया. लेकिन ये Tame थोड़ा all रिस्की है. control. I mean, हाँ look बट at how ठीक है वो Polvy's managed करना to sneak पड़ेगा. all नहीं the way पीछे up on बैठोगे top तो of, फेक होके वापस आ जाएंगे. नहीं, 2 एंगल देखना रिस्की है. Learn from Laz. Manages But to catch him fundamental down. strong है. लेकिन ठीक है अभी B The hit rest किया of है ना वो लोग ZETA ने. have already made their way up to the B site, along with Little Bro. They get the spike down. Lightning fast, a bit of a shot through. Not sure how much more they can get. Trying to go up the zip lines now. Lightning fast, nothing but a sheriff. Unfortunately, gets burned by the Fundamentals are mosh pit. strong. Yeah, great anticipation there by Yuran with that mosh pit. एक in a और spot मारता तो where मजे आ kind of जाता. recognized that likely Lightning Fast was going to get pushed off that angle from the मैं top. स्ट्रीम का साउंड कर दे प्लीज. Yeah, really nice there. Laz doing a great job catching the attempted lurk from Polvy. यार वरना You feel like he's always good Game on one sound side of the जाएगा map. Unidon with that Guardian. I mentioned it earlier that, you know, just a little bit of अभी economic ठीक है. fall back into the fact that you had to use full armors, right, because of that outlaw, caused that अभी gun to ठीक come है. out. He's still very, very good with it. Still crisp, picking up right where he left off on Sunset. We pulled you with the operator this time around, though. ZETA on the attack, still फुल आवाज दे दिया रे trying to पीछे get a read जाने of का. how they might approach things for the past couple rounds. Wall आएगा, एक जगह wall आएगा. But now that they've got the thrash, a little bit more wiggle room to push forward. Local Esports, though, actually hanging back, making use of screens, making use of Nade है. rafters, and that's just going to be a little bit tougher for एक और nade है. ZETA to hold. Got Polvy Jord. leads now. Blind band डालो. Jord. Snaps to the top. Jord रे Polvy. Bye. I think we are back, guys. Let me thank you for the membership. जीवन भर में अभी इको है वो लोग.
and they find a really good timing right as Zeta feels like maybe they've got Tibbon भाई आप बढ़ गए हो बढ़ गए. when GE reaggresses and strikes and just completely catches Tibbon Zeta भाई off अभी guard when they're एक just not चीज quite ready. ही मैं Lightning माफी fast दे has been सकता हूँ looking आपको. really crisp so far on बबले this दिखाओ. map. The Sheriffs previously just as good here with that Vandal down to 5 HP, no problem. Russ there holding the smoke angle, and there you go, some smiles now for GE. Now they're starting to feel it. Razer They're Tibbon starting भाई to pick look a lot crisper. जल्दी. You've got Zeta on वरना the मैं back माफ foot नहीं करूँगा. economically once again, where they're into a few Sheriffs, a Bulldog, but the buy is very weak. फिर भी एक मार के निकल सकता है. क्या बोलता है? Should be enough for Global Esports to take things home. पोलवे नहीं डरता रे That's बाबा. just kind of what we were talking about from the previous map too, right? Global Esports, it's not all. एक बंदे को एंगल से कितना निकालोगे? Clean slate, mental reset. भाई घुस गया उसको बचाओ. बच गया. ओ मूवमेंट है मूवमेंट है. Volley of utility from Zeta Division. They really want this site. भाई वो अभी तक कूदा नहीं है यार. मेरे को लग रहा है वो लोग को लग रहा है कि कूदा. वो जॉट. एक्चुअल में रिवाइव कर सकता है. अब कर लो चुपचाप. Still able to kind of नहीं एम लगा के बैठा है. बराबर है. Couple of kills going his way, but Let's go. जॉट जॉट. ए इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं रिवाइव यार. अप another round. Up? It's not a bad round here for Zeta on an eco, but क्या? at this point, things are starting to slide in the wrong direction. For them. To have the no command for Buradon. This is nice positioning here. Trying to cover as best as they नहीं can. चाहिए आप जीतने का आपने कहा. Using that wall against them again. I'd say if there's anything to fault GE for, which there isn't much, very, very good. Some of those walls have worked against them. Zeta's able to kind of take advantage of it, but other than that, lightning fast, his shooting's been crisp. He's been a real nuisance on that A side at times, especially with those sniper rifles in hand. He's going to be taking a peek down mid, as though क्या मेरा मस्तर वो चेंज हो गया. जिंग तब भी बहुत बढ़िया था. Just keeping Zeta Division on their toes. भाई मैं भी अगर ये मैप जीते ना मैं फुल स्क्रीन करके जो बजने वाला हूँ ना चैट पे मॉड्स मेरे को सारे नाम चाहिए सारे मेरा नाम उसमें से हटा देना ठीक है. सारे लोगों का ट्वीट डिलीटेड करके आना चाहिए वहाँ पे. ट्वीट डिलीटेड करके पीछे भी नहीं जा सकते. पॉली भाई ने ऑफ लगा कर जॉट 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 जॉट. गोलू में पोलवी और डेफ में पोलवी क्यों दिख रहा है? भाई वो तो कैमरा वाला आ गया. भाई 4v2 सिचुएशन है. 4v2. पोलवी एवरीवेयर. Coming back into it now, Thrash gains all of the information. They know it's no longer going to be a B hit. What they might not know is how deep Laz is. अगर मैं खाली दो बार अपना माउस इतना घुमाऊं मेरा आर्म वर्कआउट हो जाएगा. Yep, and that gets. Let's go भाई. वॉल भी है वो लोग वो साइड में खेलना पड़ेगा. क्वेश्चन इज क्या वो लोग अल्टी कमिट करेगा. क्या किंजे अल्टी कमिट करेगा. कर सकता है. अरे अल्टी है ना इसका 10 भाई का. छोड़ दिया उठाया नहीं वापस. नहीं खत्म हो गया ना 2 मार. There goes the first tap. अपने लिए खेल गाइस. शॉट बे. पोलवी भी अच्छा खेल रहा है. Global Esports now with the streak. बोल रहा हूँ मैं देखता हूँ कॉन्फिडेंस है. I think Sunset is not on map. Next map मेरे को ban चाहिए next time. सीधा ban. GE great patience to make sure they don't give Laz anything to work with. अगर अनुज भाई ने तेरे को इमॉर्टल बना दिया ना टिबोन को अगर तूने टिबोन को इमॉर्टल बना दिया ना मैं ट्वीट करूंगा अनुज भाई बेस्ट कोच नीचे वाउच +1. कुछ नहीं आप ऑलरेडी सब तेरी गलती मैं हूँ लवड़े.
That's the Easy thing, right? immortality. नहीं मेरी गलती तू है मेरी गलती तू है एक 5 दिन लगेंगे 5 दिन टीमों 5 दिन में इमोर्टल एक हफ्ते में नहीं हुआ 5 अरे देखो सेम लॉबी में खेलना नहीं खाली देखना है मामा भाई आप कृपया ना सॉरी भाई प्लीज कल मैं 10 मैच के विन स्ट्रीक पर था तुम्हारे साथ टीम में खेल के डायमंड हो जाता मैं बचो मत भाई ये होता है भाई ये अच्छा ये कितना अच्छा डिफॉल्ट है ये लोग का कितना अच्छा है भाई जिस दिन बीएलआर का प्रोफाइल बना था क्लियर नहीं था रे सन नहीं है भाई मैं तो खेला इसलिए और वो लोग का थॉट प्रोसेस भी पहला राउंड में जो आलमबर्ट सिटी के लिए डाला था ना वो भी अच्छा था बाकी पूरा मैप लेने लो सिटी लोगे तो बता के लेना Blades for depth, but it is an eco, so let's see how much they're going to be willing to invest on this. There is always that lockdown as a bailout if things start to go sideways for GE. It's like maybe a mid push for ZETA. They want to try to see if they can get underneath, maybe go to the B site. Early alarm bot though, Depth's going to dodge. मजबूत स्टार्ट था ना Vision just yet. सनी को घुसाते थे अपड्रफ मार के प्लांट जस्ट सेइंग वो पहले टिका था ना किसका था वो मर गया भाई Shooting at the after image of this. बहुत अच्छा था लेकिन वो लोग को पता नहीं था कि 3 मिड पे Completely lost the plot. Sugar Zero trying to make use of a little window, but Benkai just says hello, you know. भाई बिल्कुल टीबोन जैसा देख खिला भी वो All that's left is none other than Laz with a sheriff. A good dink on the 2 राउंड पहले ना वो अच्छा स्टार्ट था जब ए पुश करते थे ना तो शायद मिड वाला पकड़ा जाता लेकिन ए पुश किए नहीं वो लोग ने लॉर्ड And just counting down the seconds to that final shot through Laz's Haters, skull. It's 6 इधर to आओ 1. Not much was going to happen in this round, but that was not what I was expecting even with that Blaze Storm. Yeah, exactly. I didn't think he was going to go that deep. I mean, I thought he was going to sneak under tube and try to go for B. You don't see Gep whip like that on the Blade Storm very often. Generally, he's pretty clean with it, but that time around, like you said, I like the way you said it, the after image, going for the the place where they were, not where they are. बदले दो ना यार बदले दो ना On Boiler, just so hard I am to get right any other here. support. I mean, he gets the flashes this time at least, but he's not able to convert on the follow-up. That's what you call the art of whiffing. It's not something that everyone can do. It's ये बेस्ट स्मोक है रीटेक के लिए ये राउंड पर ZETA जी ये राउंड ZETA जीत सकता Back into it, I think one of the things that ZETA has yet to solve is really, of course, aside from the setup, 6-1 है ना नहीं लेकिन स्टैक देख positions that Russ sometimes plays and also pull these operators. अरे भाई ऐसे क्या जब along with depth and tailwinding managed to get a little bit more space. Little homie actually able to get the spike plant down this time. प्लांट करे हर बार It's going to dodge all that. ये प्लांट सबसे बेस्ट प्लांट रहता है डिफ्यूज नहीं कर सकते और बन में स्पैम भी दे सकते हैं ज्यादा किधर से डिफ्यूज नहीं हो सकता Still the thrash, and there goes for Euron to really clear this out. Really make sure this is safe, but भाई अभी किसी अल्टी मारते हार गए गया हार गया काउंटर आ गया काउंटर नहीं डाल सकता था वो There's the lockdown. हो रहा है और क्या Sugar Zero having to push forward. He actually able to take down the initial हार गया lockdown from ओ उसका किल जो अल्टी का टाइमिंग बहुत then क्रेजी you've got Russ. दोनों का एक ही साथ पे अल्टीज आ गई यार नहीं लेकिन उसका टाइमिंग बहुत अच्छा है अटैक का टाइमिंग बहुत इंसेंट था Although we saw, you know, a bit of a fumbled eco, a bit of a fumbled Blaze Storm, he managed to come in with this. अरे उनका अच्छा इसलिए था कि प्लांट करने के बाद डिले करके उसने अल्ट मारा तो मारा था सामने वाले ने मारा भाई दोनों ने एक ही टाइम पे मारा रिलोड अटैक के लिए अच्छे क्योंकि डिफ्यूज नहीं कर सकते वो बोल रहा हूं मैं गांडू The spike is a bit outside of the Viper's pit. Not sure if that's intentional or not. Intentional. You think it's intentional? That's kind of what I've been seeing it a few times across various regions that teams will start doing भाई अपने पास बहुत पैसा है शॉपिंग के लिए जाए जी हेलो hold those angles well enough that you don't need to necessarily go that deep. Generic angle, you know. Yeah. We saw like the toxic and rely on your mollies and things like that. Oh exactly. The snake bite that was shot onto it. But now back in the next round, ZETA tries to randomize and swap back over onto the A side. Tailwind, but look at these anti-flash positions. He takes a second before the blind, the goo hits. So Russ is still able to shoot that down and snaps back onto Depp.
great response from Global Esports. Exactly, the protocol's so good. I mean, Laz has gotten हाँ, into देख the रहे kitchen, नीचे। but Alarm bot, Blaze at least kind of sniffing it out. Still, Laz able to outdo him Alarm bot before रे। taking a fair amount of damage. Oh. That's a bit of damage, but still alive enough. That's it. Him up against Polvi. Polvi has the operator. Polvi has a better chance. On a retake, though, it's going to be a little bit difficult. So He's playing. Laz is sort of playing an anti-op spot, expecting this push. शायद Tucked himself in wow, you're right. behind the hut. I mean, this is. पता नहीं It's a bit of a crossfire too if Sugar Zero turns around. Oh, we read it. Oh. You don't opt the original operator. अरे You know nice what I'm wall saying? डिफ्यूज हो रहा है भाई हो जाएगा हो गया You got the mosh pit and that takes him off of it. Sugar Zero going in for a couple more shots now. Last with the quad kill. And ZETA has managed to Pit ने recover. तोड़ा या बंदे ने तोड़ा? I mean, this is दोनों ने this is Finland Laz से taking Finland this से round Finland over से for Finland ZETA, से getting so deep in the kitchen, able to get so much space and winning that really crucial battle there. The utility threw off Blaze King just enough at the exit towards the भाई defender's Laz side ही crucial है यार। of kitchen. That Laz is able to win that battle, and this is really smart positioning. That's Laz just like you said, kind of he knows how operators like to play. And he's able उसने to पहला ब्लाइंड क्यों नहीं दिया? उसका ब्लाइंड सीढ़ी पे था क्या? Yeah, okay, there we go. He knows there's Gecko diffuse डाल के उसने ब्लाइंड क्यों नहीं दिया रे? GE, like you said, doing so good with क्या their बोल रहा था? Sorry, anti-flash मैं सुना नहीं क्या? positioning. Gecko diffuse डाल के Can't really उसने profit ब्लाइंड from क्यों this. नहीं Trying दिया? to go for the orb, but not सीढ़ी पे था able क्या? to fully snatch it. I That's a great off-position shot for Bolvi. God. There we go. That's what Viper ही नहीं है, Global easy. Esports does now to shut down. अरे स्पैम मारा ले भाई चलते चलते एक जगह वॉल कर दे। Flash for you. Nice. Got very hard to block off. हाँ नेक्स्ट में चढ़ते चढ़ते खड़ा खड़ा से दिखाएंगे बाद में You still have your managing to push through. Depth. Use up the updraft. भाई ये लोग इतना क्यों भाग रहे हैं? प्लांट नहीं हो रहा है। Everyone's already done enough work on the other side. क्यों भाग रहे हैं? Finish things off. And ZETA are very much मैंने back बोला in the था game. क्लोज होगा 4-6. मैप तो उनको क्लोज करना है बिंग्स भाई Scary for GE. It लेकिन looks अनुज so आपको good. आपको गलत भी तो साबित नहीं कर सकते ना आप 3 in a row for हाँ। ZETA has them वो right गया back मुझे in भाई। this thing. Maybe this भाई is maybe an 8-4 okay time चाहिए for a 8-4 timeout चाहिए ब्रो। from GE. वो देखो स्पैम दिखाएंगे अभी लास्ट में ये देखो ये देख भाई That's just unfair. That was how he got the kill. That's unfair. That's just not fair. खींच लिया No other way to put it. I mean, Laz just going for the फंसेगा spray and pray, and it worked. Hitters are I back. think this is a great time. यार GE मत had करो so many good यार। reads, had so many good setups, so much anticipation of what परफेक्ट Zeta's था ना trying उन to लोगों को पता accomplish. लग गया जेट मिड We're पे able to ऑफ shut कर it रहे हैं down उन्होंने nicely. रिएक्ट This किया time ए around, पे I mean, लाइक Zeta करो nice स्ट्रीम work लाइक करो early. सारे हेटर्स मिल गए स्ट्रीम लाइक करो मेरे को देखने का कितने हेटर्स Laz हैं is Laz. ऐसा बोल What are you gonna do क्योंकि against जो that? लोग लाइकर्स है वो लोग And then they're 4300 able to है get deep enough that, अभी मेरे को देखने का हेटर्स कितने हैं you know, Depp and you're not स्ट्रीम को gonna एक साथ really लाइक do करके दिखाओ damage. What are you तुम्हारा gonna do? That's the हेटर्स answer that आर्मी Coach Spin needs to answer फिर because बचूंगा मैं past उन couple पे rounds now, what we've चौथे seen is हेटर्स that, है बे सीधा इंस्टेंट we लाइक had किया those बोलते anti-flash ही positions, we talked about it. ZETA has adjusted. You've got शर्म लोग Laz, यार you know, coming in with such antics. You've got Dude, they just Depp sell trying all to the throw them sharms, off, you know, yaar. going up on top of barrier orbs or walls like that. And it just gives ZETA that much 100 more के 1000 space के to हो गए। work with. It's a little bit tougher for Global है। Esports to make use of that. So now आर्मी है तुम्हारी भी they've है got to come back into control. You've got to dominate the game. You know, throw something, a bit of a curveball at ZETA that they have to adjust back to you. Fully agree. And ये another सिर्फ part of that जीता timeout, तो I यार think, is नेक्स्ट slow मैच the मेरी तरफ से momentum down to गिफ्ट get- to keep पीएस Zeta मैं भी from जीएस really को getting सपोर्ट कर रहा हूं लव यू डन We saw सिंह what happened on Sunset once they did. Ruz, gonna get गाइस spotted गूगल out. करो ना वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट माउस विद गोल्ड Zeta really not इन इट able to do much. ताकि मैं उसमें से गोल्ड निकाल के बेचूं घर भी आ जाएगा समझ रहे He's gonna try to push up. He might catch him off guard. अरे जैसे सीधा लगे बस सीधा हो कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं Almost. अपने पास कंट्रोल ज्यादा है बस But not quite ब्लेज किंग हां gonna make it सेक्सी happen yet. ZETA, you know, maybe it was a bit उधर of से a जाएगा तो bit of टाइमिंग हो accuracy, सकता है but बट But I love this. It just gives them so much information about what's going on in the map. They know that Zeta can push A, and they're all shifting over to B. oh no मार 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 Oh my. Not quite able to secure the kill. Sugar Zero just कोई नहीं वो लोग को ये लोग के बारे में मालूम नहीं है क्योंकि वो बहुत आगे चल रहा था शॉट 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 वो लोग को ये लोग को नहीं मालूम था secure themselves another round.
कोई ना, it was tactical, Blazking का tactical था. क्लियर ही नहीं किया गया लो. क्यों क्लियर करेगा जब बंदा उतना आगे फॉरवर्ड बैठा है? हिटर नहीं है पर लाइक का टाइमिंग. ओह शिट, आ गया. कोई से नहीं तो बस. अभी सारे लोग जिनको लगता है कि जी जीतेगा, वो लोग लाइक करो. लवर्स कितने हैं जी के? लवर्स लिप टू लिप देने वाले आ रहे, स्माइल्स आ रहे. कोई तो दिख गया गोलू को उधर. Especially on this B side too. ZETA hasn't really had successes at pushing past some of these choke points, especially up around green, around yellow. It's all thanks to Esports. That's a good one. Setups. You know, now we're seeing adjustments in the setups, and it works out better for Global Esports. If they can take this one 8-4 as we go into the second half, might be even better for Global Esports. Oh yeah! You gotta try to find a way to deal with this. Short. Walked right into it. Hiroran not having a better time on this second map. Hiroran maybe a little bit better, but अरे टीमोन आपकी वॉल. It's going to be a little bit tougher for Death Thank you. work his magic. मैंने देखा था वो. अरे ये वॉल है लेकिन लग गए. तोड़ के आ रहे हैं वापस से वो वॉल को. He's unreal. Okay. जॉर्ज नहीं हो रहा है. जॉर्ज भाई, जॉर्ज बे भाई, मेरी गांड पड़ गई थी 2 सेकंड के लिए. 2 सेकंड के लिए गांड पड़ गई थी क्योंकि मेरे को लगा वो वैसा सीधा वॉल बनाएगा ताकि लोग भी सिटी जा सके. समझ रहा है? ऐसा वॉल बनाएगा मैं सोचा, उसने अचानक से मुझे कंफ्यूज कर दिया. You're trying to do with this KO. ये साइड और अच्छा है ग्लोबल का. हो गया ये मैप तो. ये मैप इन दी पॉकेट्स है. यस ये मैप इन दी पॉकेट्स. ट्वीट कर दूं. यस कर सकते हो आप. ट्वीट कर सकते हो. थोड़ा एग्रेसिव हो जाए. भाई मजाक से हटकर टाइमिंग पता है? मेरा फोन ऑफ हो गया. फोन ने भी बोला छोड़ दो. भाई क्या है ये टाइमिंग भाई? ट्वीट करने वाला तो भाई. Shots have been great, so who gives a crap what he's playing? Like he's doing really nice, and that's what matters. So I mean, भाई ड्राइंग तो है a little bit that part of the puzzle for GE looks a little bit भाई rough to ZETA me, बंडल but I don't think that it's a bad idea at all. I mean, I think Zade's still perfectly viable on this map. नहीं है क्या? ZETA का बंडल ले लो. जापान का है भाई. Whatever, doesn't matter. Because the rest of GE is भाई इसको चिंचन नोहारा में क्या चीज समझ भाई में वो नहीं आ रहा है. टी-बोन है, टी-बोन मांबा. 15 साल से उसका गोल्ड खिल रहा है. Worked out well against this double initiated composition from ZETA Division. Previously we actually saw ZETA Division play कल जाके बोलेगा भाई शक्तिमान कोरिया का है. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखता था वो, लैम्प के नीचे स्टडी करता था, उसको स्टोरीज में मालूम. Throws it off a little bit. The double initiated isn't quite working. फ्लड आता था, स्विमिंग करके जाता था एग्जाम देने. सुना नहीं है वो सब? लव यू, I think the Harper Viper started to get read सब पता है हिस्ट्री मेरे बारे में. सब पता है. So I think absolutely लाने वाला कौन है? बंदिश भाई का पता है मोहम्मद तेरे को? बंदिश भाई का नहीं बिंग्स भाई सब पता होगा ना. उसको लाने वाला कौन है दुनिया में टी-बोन को? मम्मी ने बताया. आप ही तो it just doesn't quite feel हाँ like तेरे they've got मम्मी a ने मेरे को real सब good बताया. feel. पता है क्यों? Like you said earlier, sometimes not able to support depth, sometimes getting caught in positions where they think they've got the flash and they can push forward, but Poldy's still able to hold the angle with the op. तूने खुद को थोड़ा पता है ना टी-बोन? Getting spicy. There was that dizzy. तेरे मम्मी ने बताया रे गाना, तेरा स्टोरी है. Very easily dealt with. Yep. It's great cover, and I mean Polvy's just expecting. भाई it. पिस्तौल जीत जाए. You know, टी-बोन ने बोला था जीए मैप जीता तो नंगा नाचेगा. लेट्स गो. पब्लिक का बात. Reading it again is GE. They have a कौन सी great दुनिया मेरे coverage से map. कुछ भी बोलते. वो क्यूट है. Both sides trying to throw jabs at each That's other. why he's the best Esports entertainer. just doing a much better job उसको ही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है. slipping and getting a read for these punches being thrown at them. Now hanging back, they're waiting for a movement from ZETA to counter. But it's not really needed. They're just trying to play safe. Yeah, they're expecting a lurk from someone, whether it be Laz or Sugar Zero. But that information right there really huge for ZETA to get. So Hirodon with a nice time knife. You can kind of really start anticipating 30 seconds left. that this is going to be a ग्लोबल लेफ्ट साइड से अटैक करती है. तो बोला था ना टी-बोन भाई. भाई सेक्सी. ऊपर देखो.
गया कंफ्यूज हो गया वो both sides. Some on top इसका साउंड आया ना लास्ट का pipes, some coming out from the other end of 410. जॉर्ज Heaven, and it's just not quite enough. Sugar zero. हाँ देख रहे हो दोनों हिल दे जल्दी Classic. He's got 3 targets to hit. जिंदगी में कोई मार करे He is Sugar Hero. दोनों हिल दे Gotta put on your Please cape. don't fake. Change your costume. Managed to stick it half. Oh my god! भाई मेरी कार्ड फट गई थी The lightning fast, but was able to extend just by a bit. मैं बता दूं एक बात क्या होता है अनुज मैं ना जेट खेल रहा हूं ठीक है ए साइड पे फर्स्ट राउंड पिस्टल राउंड डिफेंस का Louise. इवन भाई सेज लेके ए साइड खेल रहे He gets it. That's इवन भाई आपके हेटर को मैंने ट्रैक किया they're showing great patience here. That they're really being diligent about आपके हेटर को मैंने ट्रैक किया Zeta इवन भाई off guard in the beginning of the round and making sure that Zeta doesn't get any of these flanks for free. Things like that. इवन ने तेरे को ट्रैक किया मामा Really darn close. 22 HP was all he had left. One more bullet from that classic and it might have been over. ओ भाई वॉच पार्टी हो रही है क्या Sugar Zero is trying to do Review party, watch party a ghost अपनी in a बोलो ना marshal. क्या बोल रहे थे Polvi once again with that outlaw, a couple bulldogs to back him up. Zeta just carefully on अपना the बोल side. पर आया कर दिया भाई He's been left wide open here. कुछ नहीं किया उसने यार मैं should be देख नहीं सकता आजकल टीबोन को हेट मिलते हुए lost one more friend which is mama Utilities thrown towards. मैं टीबोन को हेट मिलते हुए नहीं देख सकता यार अपने बच्चे को नहीं ये अनुज बड़वा सब स्टोरी पता करके हंस रहा है गांडू Back in towards the B site. भाई it's like a 5-on-5 brawl here बाप रे it's like a 5-on-5 brawl मसला होने वाला है यार felt like there's a trap on A, I think. बस खत्म भागो नहीं सब ब्लाइंड है वो लोग भी ब्लाइंड है ये लोग भी ब्लाइंड है We're getting valoranted. Zeta are landing their shots. Yuran and Come on, Yuran with the Venkai. classics Possible actually है land things down and यार with the भाई पोपांग स्विंग क्यों करते रे ये लोग the outlaw that he picked यार up. हमें इन्फो देने वाला He बंदा took नहीं down है Ben Guy and now Zeta has नहीं, turned ये- things around. one of those rounds का वो है ये इधर इन्फो लेने के लिए कुछ I है feel so bad for GE ये right call now क्यों because आया? they've been reading this map so क्योंकि well. And this is वाइपर the one time आगे they जाके go. बैठा था ना This is the one time और where they कुछ प्रेशर नहीं था overthink उस पे it and it costs them. Because you have to, they got zero contact Info in A, है ना, and that info gives है you ना, head है ही नहीं thinking ना? it's a trap. Like देखो भाई they're है ना। hiding, they're playing a bunch of like anti-flash positions or something. Admiral Akbar's just whispering. यार वो लोग का in your ear. टाइमिंग पुश करने का भी अच्छा था वो लोग का डबल ब्लाइंड आया ना वहां से है तकलीफ है इनको कि टीबोन भाई Kind of an भाई odd Ascent कैसा है? position from Map Global दोनों team कैसे Esports. कैसे मारा शॉट तो दिखाओ They're still sharp with their shots, especially on this map. Still feeling some of those hot hands. हाँ अनुज भाई ऐसे क्या? कैसे है दोनों टीम्स के लिए There's no Phoenix though this time. असेंट भी इक्वल है जेटा का एक्चुअली बेटर है No, I mean that was भाई हाँ ideal for GE. ऐसे I think जेटा का अच्छा है they didn't make a bad call. मेरे It was सामने just जब happened खेला to- था ना, again, there's 40 like गया था gambling going on both sides, and they just they flipped the wrong side of the coin. Is basically what it boiled down to. हाँ भाई रेडी So टू भाई I don't think there's anything to be super concerned about. They're still hitting shots. Blaze King and Lightning Fast in particular have looked really clean. Russ has looked good too. Polvy's on point with sniping. You look pained. Yeah, in the long run, I think that's the thing, because if you look at how Zeta Division are playing क्या right ये now, लोग the 69 way that करके मेरे को they're shout out holding देंगे these defensive positions, it's so far back. Global Esports भाई doesn't उसने get देखा a झूलते single हुए lick of information. So it comes down to the executes. They make it fast, they make it heavy. It could be enough, but Wingman gets shut down. No spike planted. नहीं चलेगा चलेगा Gotta play चलेगा past the कर toxic सकते screen too, so just swinging out, trying to find one to कर सकते get. कर सकते क्या बोला बे कर सकते बोला ना With the outlaw has to come back into this round. He's got 2 shots in the chamber. I don't know if that's going to be enough though. Even the res gets a puncture on towards Russ. Slow on the other side to deny his one spot. He's looking to possibly pick up the weapon. Tries to mask the sound. एक with बेट an किसका open ज्यादा है shot. किसको किया Killins onto 410. एक और थूके Another एक और cloud थूके burst. insane Still a snake bite as well. Has to push through though. Oh, look at Lightning Fast. With the pistol. Death able to spray. Gets the quad kill. And sticks the landing. Zeta Division. ज़्यादा Just when you think the Global Esports might have come back into the game. Yeah, I mean, you got to feel good about that round as GE. You do a ton of damage with those sheriffs. You have some really nice plays. A really good recognition here, though, by Zeta to दोनों quickly फाइट ले सकते थे shut लेकिन down the रिवाइव far में left angle कंसीडरिंग of दो that ही wall बुलेट है from their POV, because that's where you know that आएगा Wingman's going to go.
He's going to अच्छा get, eco they're था trying to लेकिन use अच्छा that eco edge of the wall to position बेल्ट the जाते हैं spike, बेल्ट and भी जा that सकते makes Wingman go लेकिन further in, so they're not able to get that nevertheless plant डेप्थ down ने as बहुत quick. बात And किया if they had, बट that अपना probably eco would have अच्छा been था round, because they just could have bought time, and instead it gives Depp just enough time to get in there and finish the job for Zeta. But man, that was so close. So a lot of good stuff for GE, despite having a massive weapon disadvantage. Here. He just knows. Oh. Ooh. It's really close तो to मैं it. भाई ब्लेस किंग में Global उसकी Esports वॉल having के some of the थ्रू right आया ideas, बंदा but बच गया वो नीचे कूदा करने के बाद again, when it comes down to how पीक Zeta करते हैं ना are वो playing, मार now you've got this bit of a Great roadblock वाला outside of Hey, B, the retake rest है of them walking into A site. टेक्निकली है क्या इनके पास Zeta's like, maybe if Double we leave blind. the A side open again, but with that operator over there, certainly they don't want to mess with it. No damage done. Either way. इधर उधर हो गया क्या वॉल नहीं नहीं सही है वॉल Don't have Wingman going through yet, though. कौन सा गेम They're देख रहे थे anticipating that Zeta might be around the corner, ready to shoot him down. Bit of Nice. fragment, secures the God. corners, and now they जीत manage to गए go नहीं है through अभी it. से जीत गए जीत गए जीत गए Cut them off on the rotation, making sure that nobody comes through on the मर गया entry. एक बंदा Sugar Zero, though, just a bit of noise, and all of a sudden Benkai has to watch his back. They got to keep that pressure on that backside. भाई रिटर्न कितने ले रहे हो Good thrash. It's going to be tough. Jermon's अबे still able डिफ्यूज to हो stick रही it all है the way. मारा भाई उसने Okay, नाइस back गोलू into भैया it. Nobody from Global Esports is pushing now off the spike. Depp, with the Golu bhai, antics. जॉर्ड बे गोलू जॉर्ड रे गोलू Have their जॉर्ड रे गोलू firmly in जीत the ground. Global गए Esports manages to defend. Just great stuff again from Light. अभी बोले के पास पैसा नहीं है 11-6 It's very 11-6 battle अभी stagey. बोले के पास पैसा He's नहीं है just so 11-6 crisp. मैंने बोला था ना गोलू Shutting से all ये these मारता है all these attempts बम by Zeta on these retakes down so quickly. 11-6 11-6 So fast. ए Great move अभी there आपके by पास Colby. पैसा नहीं है To get up, 11-6 find that 11-6 opener उनके पास would सॉरी make it that much more difficult. Yeah, three kills in that round, and he's pumped up, and he should be. He is having a whale of a map. Yeah, I want to see more lightning fast. I mean, you एमोट लिया डर गए एमोट लिया because he's not just, you know, using the walls भाई for लेकिन some लास्ट क्या cheeky मारता है angle. ना बे He's लास्ट actually डे पे लो getting into the thick क्या of it. मारते हैं And I think that's something that maybe Zeta Division doesn't quite expect. No, I think you're absolutely right. I mean, I जर्सी think तो Zeta's है a lot of times getting caught off guard by the positions of GE. ये गया You know, with certain players being pushed up further than maybe you expect, it's a lot of bait and वो switch, क्या it's कर a रहा lot of है ping-ponging. For the side of Global Esports on this map, we've seen it time and time again. भाई चाहिए And it has been giving Zeta some problems. That was something they were doing pretty well. फातिमा जी on इसका लैंग्वेज Sunset, देखो And Zeta doesn't seem to have that same इसने coverage. पढ़ा नहीं है There's a lot of things that still feel like they need some work. आपने जो पीडीएफ दिया उसने पढ़ा नहीं है फातिमा जी हेलो Precisely. It just almost feels like it's not fully भाई गोलू 17 fleshed मारा out यार yet. Meanwhile, Global Esports चैट look लाइक करो यार 10 के completely लाइक्स करो यार prepared. They have a 10 lot के of लाइक्स करो जल्दी options and ideas, you know, different pages from their strat book to pull out. 10 to 6 Also right subscribe now, करो and, we are close with to double digits 300k secure for Global chat Esports. जो Both लोग sides are नए हैं looking स्ट्रीम for पे that knockout punch. सब्सक्राइब Yeah, कर दो and we are if very it's close gonna to be Zeta 300k I finding their think way back 2000 into this, सब्सक्राइबर you feel चाहिए like it has to come a little bit with भाई it. मारना था It's gonna have to come in the back of this Blade Storm. It almost feels like this has to be that moment where Depp kind of takes over around on this eco for Zeta. भाई अच्छा है Yeah, if it गोली की doesn't, then you're पोजीशन in स्पॉटेड danger नहीं of match point, so or map point. So it's going to be I think G heard this. really, नाइस really. अभी बढ़िया स्पेस है अभी बढ़िया स्पेस है येलो तक है तो भी आ सकते हैं पैंचो पहले येलो भी नहीं था बी आ गए Pulled सब over. Let's see अब आ what सकते मेरे kind को of लगा ए call रीड करेंगे रे लेकिन IGL Russ makes. हैं ये भी सही है I guess it's just waiting ये लोग for चाहिए रहते reinforcements हैं and नहीं then तो slow सीन march होता forward into B. थोड़ा It's कलेश taken हो quite गया a वो while. लोगों ने रीड Felt कर like लिया they were नहीं looking चलेगा इसमें कुछ for any कुछ other कुछ lurks, फर्क नहीं but पड़ता टीबल again, भाई येलो है ना ball अपने up. पास वो टाइम पे येलो नहीं था बी आगे Give सीन हो Wingman a गया little bit of safety there. That's a good wall for that plant. Really makes it difficult. Along with अभी toxic कुछ नहीं कर सकते Yes. रिबन भाई अच्छा प्लान दिया not आपने looking जाके likely. नहीं बाबा मैं एक बात बोलूं क्या नहीं ये उस दिन जो नहीं बोला ना नहीं बोला ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा बोला ना नहीं Good angle for you. Yeah, he's out. He doesn't have any of that. शॉट पे Simple shot from Colby. Repositions. Everyone's still holding up around Jord, yellow. Jord, Jord, From last, it's all baby. that Zeta got. Meanwhile, Jord, Global baby. Esports devours everything. Jord, baby. Fantastic stuff. I mean, just absolutely
Just beautiful. It takes a little Mama bit. bhai. Zeta's able to at least get into Yes, position, queen. but एक भड़वे ने बोला था ये लोग दोनों का हो गया. Depp has run out कौन था वो? Depp rushed over. भाई वो to तो man. भूपिंदर हाँ कौन था रे? यार भड़वे. And it just doesn't seem like शो Zeta बिच रहा has है. the ये same दोनों का हो गया घर पे जा. on Sunset. It seemed like on Sunset, every maneuver that GE was trying to make was accounted for. It was red. Let's go, Blaze. Let's go, buddy. you guys are feeling it now. And you भाई love to जेटा see के it, पास so 3 अल्टी है a little bit of a push to get और 20 बंदे up on सप्रेस है. top of the belt. And it's लेकिन डर जरा भी नहीं. quick hit, Blaze. Oh, he gets caught by Flash. What a setup there by Hirodon. Looking a little bit better this time. Dizzy out. इससे In position to strike. Gets the double. कैसे ब्लाइंड नहीं हुआ रे? अरे यार की खतरनाक. ये ब्लाइंड कैसे नहीं हुआ लेकिन ब्रो? Can't retrieve the spike. You can't get those kills. Only able to get one, maybe a second. She's got 3 more targets to go through. Nice. Oh, action. Yeah, it's just tough. Deb swings ए out. ब्लाइंड कैसे नहीं हुआ ब्रो? No collateral वो kills छुप this गया ना time. उसके पीछे बॉक्स से. अबे तो तो क्या हुआ कोई अगर है ना ऑब्जेक्ट आ जाता है बीच में तो ब्लाइंड नहीं होता. वो आएगा लेकिन बॉक्स नीचे तो नहीं होएगा. भाई ऐसा नहीं है गेको का ब्लाइंड. वो आएगा तेरे ऊपर. अरे तो भाई थूक आएगा तो डॉज कर सकता बराबर. अगर गेको का जो ब्लाइंड वाला स्पिट है वो तो डॉज कर सकता है लेकिन स्पिट ही नहीं है. बॉक्स है ना उसको दिखा नहीं रहेगा ब्लाइंड. अबे जीरो गया करे मुंह छुपाने से थोड़ी ना ब्लाइंड डॉज होता है. That's the thing. We saw a little bit of it on Sunset too. Some of these क्राउच corners. था तो It just works out so well. भाई ये ब्लाइंड ट्राई करूंगा मैं. ये ब्लाइंड हम ट्राई करेंगे कस्टम में. Around a spot like this, but now you're aware. या फिर हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर पीछे से उसने ब्लाइंड किया. You don't have that extra line of flashes here for GE. Similarly to yellow बहुत on अल्टी as है well. ये रीटेक हो जाएगा. क्यों अल्ट वाइपर अल्ट लास्ट की अल्ट पर जी ने भी अच्छा किया. मिड कंट्रोल दिया बढ़िया किया. तो मारना चाहिए. Spike plant secured. नहीं वो कंट्रोल नहीं है. Retrieve a weapon. ओह दूसरा स्मोक ने डाला उसने. Retake with advantages from Zeta Division now. We've got so many ultimates. ये भी अल्ट अभी किलजॉय की भी. Lot to work with. नाइस. शॉट गोलू ना भागा. गोलू भगा रहा भाई. बस Fends off for, you know, maybe one more kill. Okay. But they're not pushing in. हाँ Ben का Slowly going through now. Ben trying to sneak up from behind. अरे Russ has जिंदा to stay रहता रस alive, भाई. but not quite gonna make it happen. Nanoswarm able to burn off the first. भाई मरा तो भी देख कौन मरा देख तो भी कौन. नाइस. जोड़ बे भाई. And with that, अनुज भाई नसीब कौन मरा पता है. उसका टर्रेट डाउन हो गया. नसीब अरे डाउन भी नहीं होता तो उधर देख रहा था एक ही तरफ. वो पीछे से तो भी चढ़ के मार देता. अच्छा था. अरे लेकिन टर्रेट देखता तो वो लोग पीछे देखते थे ना दोनों. वो वहां तक पहुंचता ही नहीं था. नहीं टर्रेट उसने वैसे वो देख. हां किलजॉय मारा भाई. Into that post plant scenario there. सारे स्टार्स अपने पास है. लेट्स गो. ग्लोबल तो बहुत अच्छा कॉल था भाई. कोई और भी मरता था ना. वेरी गुड. थोड़ा टफ होता था रीटेक लेकिन मुझे मरा 60 हुआ. अलग चाहिए. Information star. अरे भाई they would be able to pull फास्ट है ZETA डेप. Doesn't quite work out. Now Deb goes in for a bit of a preemptive strike. कोई नहीं अपने पास है ना बेंका की अल्टे रेस्किंग की अल्टे. ये राउंड जीत सकते हैं. Strategy. Hanging back in, maybe looking for a bit एक of a पिक punish चाहिए बस. towards. They got the ऐसा भी res. करके एक पिक. So वो टर्रेट they're किसमें trying बच to रहा है clear ब्रो. for it, making sure that it can't get punished easily. Yeah, nicely done. You don't know. गलत. He doesn't hear anything. ओए अरे नाइस. हो गया जीत गए राउंड. Last not able to secure the kill. जीत गया. लेट्स गो भाई. ए पुश देखना पड़ेगा. वॉक करके ही जाओ. Pretty much saved the previous round too. Now coming मारना back up. मार जॉर्ड ब्रो. जाओ ए जाओ. It's just his जा skill. रहे बिंक्स भाई जा It रहे. is really just his skill. जॉर्ड पे 560 लगाओ. बेंका अल्टी लगाओ. Now डीप they're अल्टी getting लगाओ. a couple more kills. They managed to push into A. यहाँ से नहीं सिटी से जा. Blaze King. Blaze King सिटी से जा. Sneaky all the way up around B. हाँ गजब. Blaze King ने स्पेस 30 seconds left. भाई जेटा वाले गाली देते रहेंगे. ट्राइड कर रहे करके. विजिट कर रहे क्या अपन.
can at least recover that gun. भाई कम से कम ये लोग का रनिंग में 10 किलोस कम हो गया रहेगा पता है 3 बार इधर से उधर गए जेटा वाले at where Blaze King. Yep. He's doing it right back to him. जीत गया Anuj. The one that Laz was playing for before. But again, I mean, the main factor is time right now. 30 seconds around or so for ZETA. Heroon checks. Got that coming through garage. Something that they don't expect. Global Esports has no idea. Spots 2. अरे दो अल्टी था पता है किलजॉय और वाइपर का खत्म कर सकते थे गेम ये लोग पता नहीं वो ब्लेज की अल्टी के स्पेक पे उधर जाके स्पेस भी है बट ठीक है It's just kind of like playing a stealth action थोड़ा video ये game. था He's just kind of like choices था lines them choice up, lights and secures the targets, taps them all too cleanly. He's playing Ghost Recon. He's nuts. थोड़ा पैनिक ही हो गया यार Fisher up in here. Enemy kill. He is Metal Gear Soliding. I mean, he's just. प्लान क्यों नहीं देख रहे थे मैं नेक्स्ट No, like I love what they do in this round. It's just ZETA reads that positioning from Blaze King. They're like, nah, we know about that spot. We did it too. And then adapt with the lurk. I mean, bye. That's easy. That's. Anuj, we have 3 fucking ults, bro. यार इससे पहले वाले राउंड में भी था वो लोग का एडवांटेज भी था खत्म कर सकते थे गेम साथ में था मैंने एक भी ब्लेज किंग का अल्ट किसने मारा था तभी था क्या उसके पास हां था. There's going to be a lot of half armors coming through. ऑप्शन था कि एग्रेसिव पड़े गए अल्ट कॉल करना पड़ेगा ऋषि भाई को कॉल करना पड़ेगा मामा कहां गया लो एक्सक्यूज यू with the blades पे अल्टी मत मारना कट हो हेलो Of course, ZETA playing a little bit further back. And we got Thrash is available to lock down as well. It might just come down to a bit of a retake strategy. They can't let them get the lockdown easily for free, though. But do we have the utility to shut it down? That's the thing. Heroon tries to toss a fragment. It does land in place. But I don't think एक और यूटिलिटी चाहिए रे उसके साथ नहीं एक ही उससे टूटता बस क्लोज होना चाहिए सेंटर में ना So enough space for Blaze to now deploy the Viper Spin, and he's got a judge inside of that thing. डेव भाई को मारो चक्कू वाले को मारो trying to secure the surroundings of it. The Outlaw cutting down Benkai, but I'm waiting for Blaze King. Spike लेके teammates have fallen all around him, and all of a sudden Heroon appears in front of his face. ZETA continues to climb. क्लोज जाएगा टीमन भाई क्लोज जाएगा और Blade kill, that Outlaw getting some value big time as you would need. That's so fast from Deb, and this is the first, but that's okay. Good for the second. किधर भाग रहा था रे स्पाइक लेके to get up and over the positions to try to make sure that whoever's still in that pit कब जीत जाना चाहिए था यार भाई मैं स्ट्रेस दे रहे रे ऑलरेडी बॉल कम है बीच those angles that you can get from पीछे up करके there. एक मिनट देखना पड़ेगा रिजल्ट में प्लांट क्यों नहीं हुआ Anybody left, they're all in the pit, and then इतना we टाइम can कैसे figure out how लगा we're गेको ने स्पिट मारा time शायद push or throw some utility in there, whatever it बड़ी takes. है That's नहीं exactly गेको ने how you स्पीड want भी to नहीं dismantle मारा है a Viper 5 Spin. सेकंड मैं देख रहा हूँ टीबन की स्क्रीन So पे at देख रहा हूँ this पीछे करके moment in time, या फिर गेको ने स्पिट मारा है फिर जब Esports डेप starting ने to एक feel को that मारा ना वहाँ pressure. पे They cannot अभी let 3 बंदे राफ्टर से आके गोली मारे वो लोग 2 सेकंड्स पे घुसे हैं looking for that knockout punch again राफ्टर से गोली to मारा send us into a third नहीं match. राफ्टर पे से नहीं मारा You know, it's a bit of a double-edged sword. Calling कोई a timeout पहुंच ही at नहीं पाया this ना point, किलजॉय अल्टी Carlisle gets to, you know, have a breather as well and तो gets a कैसे second दौड़ा? to think for ZETA Division. What Split or is smoke? Global Esports going to cook up? What can we do to counter against that? Yeah, it's going to be tough here off this eco. No ult to speak of. So just trying to see if you can ऐसे do some इसमें damage जब भी to डीप ZETA, but किलजॉय अल्ट मारा the है pockets हाँ। of ZETA 5 सेकंड्स पे टारगेट some रखना money, चाहिए so घुसने का बेस्ट 5 सेकंड में अगर ऐसा पूरा साइट मिला है तो वाइपर स्क्रीन्स अल्ट मारना बेटर नहीं है कंसीडरिंग समथिंग दैट वो भी अच्छा है फिर लेकिन राफ्टर्स पे सबको फाइट लेनी पड़ेगी और अगर इस पे अल्टी मारी तो स्क्रीन पे फाइट लेना पड़ेगा ऑप्शन है फिर दोनों ब्लाइंड के साथ अपन दोनों वाइपर अल्ट से भी बाहर आ सकते हैं और Really, as they राइट से invested भी आ so much in सकते that previous round and lost it. Nice angle. I think I saw a smile at that one. चलो ये It's तो very इको calm. है Doesn't really like explode 12-10. and pop off if he celebrates. But he's apparently a jokester. He's apparently very funny. Depp really. I was talking to ZETA a little bit, and Depp really likes his new players. Short Not ready bay. for Blaze King though is Depp. शॉट बंदे में को इस बंदे को मारना था बहुत अच्छा मारा है That's a sharp play. भाई ये नहीं I was gonna see that. Oh, he turned. यही करना था अपने को यही In his brain. Oh my Are we gonna goodness. end this map off of a thrifty and eco win? Really?
Okay. Nice mosh. Mosh kind of blocks off the plant for a भाई अपने को गन भी मिला है ना? Players trying to reposition around. You got Sugar Zero trying to ramp up from behind. But once been twice shy, I feel like Russ is anticipating this now. The rest of ZETA continuing to push forward, along with that flash from Hiroron. They need to clear out yellow. The dizzy sprint by Hiroron doubles back. A bit of a fadeaway shot. He takes down Blaze King. Timer still ticking away. Russ able to deny the back. All you got to worry about is the front door, but Hiroron steps up in the moment when he is needed. राइट की नहीं लेफ्ट की फाइट करनी थी भाई एसेंट के सबने स्टिंगर था भाई स्टिंगर था लेकिन ये मार सकता ना दोनों Probably 90% of the time. गार्डियन वाला guns proved to be the detriment to them. एंटी था And Hiroron's just cracked today. I mean, he's having a ये whale उल्टी भी today. जा I know on this सकता है map he's only 15 to 16. क्यों उल्टी अभी On सामने Sunset on that Sova, he was so destructive. The young guns. भाई अपने को दो क्लियर चांस मिले थे क्लोज करने के लिए हाँ वो क्लियर चांस दो क्लियर चांस अपने को क्लोज करने के flash initially to set himself up. And then knowing, the awareness to know that someone's going to swing out from the other angle, so he spray transfers. Depp now looking for an aggressive pick. Trying to throw Global वही Esports तकलीफ है रे off बराबर their बोला kilter. टीम इनिशिएटर नहीं भगाएंगे कैसा पीछे ये लोग को मैं बोला ना 15 years सही बोला टीम भगाएंगे कैसा भी वो डेप का एंगल कैसा हटाएंगे वो लोग So tough to overcome. ये लोग जा ही नहीं रहे They're just hitting shots like that. जा ही नहीं रहे बोलता But this round, that timeout must be for this round. मार सकते हैं Ask me. अच्छा है रस भाई का अच्छा पोज है किसी को नहीं होता मार दो भाई को रस भाई चलेगा थूक में जाके मार दो नहीं बढ़िया अरे यहाँ से ऊपर Russ sneaks up, able to take down Sugar, but last trades. Players in position to take down B now. यूज हो गई ZETA has an inkling. भाई 21 सप्रेस्ड है Yep. वो लोग का रोटेशन बहुत वीक है ब्रो Can't put up the toxic screen because of that. अनुज भाई सही बोल रहे थे मैच क्लोज जाएगा बात तो है But I really like what Russ did there. Walking चैट में his कितने own. हेटर्स अनुज भाई याद है आपको हाँ सबने नो लिखा था That's not something you expect someone to सबने do. नो लिखा था मैं आया था That's gonna do a lot of damage. Oh my god. What? It's okay, you can heal it. You're Sage. It's fine. Okay. But 30 seconds though, and we're still looking for the plant. Tosses it over. Now secures it. Teammates a bit of suppressive fire. Nice follow up. Nice yellow के position. पीछे Now you've got a mosh pit lineup. Yeah, look at this Where's this lineup gonna Larry. Okay, and Dev has to get a bit of space too. Thresh comes in. बहुत कॉल्वी भाई भी ऊपर चले गए बढ़िया भाई भाई प्लीज फॉरवर्ड हुआ है अंडी बंडी Might just be able to secure off for this round. शॉट 3-1 है अंडी बंडी 3v1 है But not quite the landing. Polvi secures the kill and pulls Global Esports into a third map. This is exactly what you want to see from GE. A phenomenal Did bounce we back. first time win the map against Dismantled ZETA? on Sunset. Yes. And it wasn't super Last time दोनों easy, 2-0 but था ना? frankly, in my mind, भाई, I felt like GE haters किधर है? just भाई, did a much better read on मजाक this से map. हटकर 2 राउंड Was able सच्ची to बोल रहा kind of गंदा खेला read the बाकी positioning, बाप खेला take a little bit more बाकी map बाप खेला control love you for the most part. मैं आया अरे 5 मिनट में कॉफी बना गया Better फटाफट usage of their हाँ utility हेटर combos, भाग रहा है दिख ping रहा ponging हो off of each other. It's All you. those things. कॉफी बनाने Yes, जा रहा Zeta हूँ भाई keeps it लो close. चाय पियो Some individual heroics and things like that. But you have to feel really good. GE, when they've got a good game plan, when they've got that trust going, they look like they Hey can Mamba absolutely SR, take when this is match Mamba away from Jaya? Zeta. It's possible. I mean, they're definitely a lot more prepared on Icebox. Junior है वो? But players themselves too. I mean, Lightning Fast was having a great game on this Icebox. But you know what? Our casters are going to break down all सारे of that tweets action. delete करो And haters we're going to go back to the desk. सारे hate tweets delete करो अभी के Thank अभी you so much, casters. GE is fighting. I mean, it was a close scoreline, but honestly, I felt like Global बंदा was इससे बात very किया था much in अपने control of Icebox. No, they really were. I mean, from the outset, just streaking away with the मेरे round दो wins friends over and उधर over desk again. पे ZETA was really struggling to find a footing there for themselves. So a bit of a rough go of it here for the ZETA division. Clearly still some things that they need to workshop to be able to bring this Icebox up and stuff. I like the compositional changes with their own. It's just a little bit better. So here's the thing, and I don't know if it's the thing that really affected ZETA here, but picking up the KO from Hiroron, it feels like he was struggling to create those openings ये with it. बड़वे ने दूसरे के बर्थडे के दिन भी पैसे कमाए
Just saying. somewhere in the second half. ऐसे सोचो कि आज टूटे जाम पे कप्पा भाई मेरे भी भाई यहाँ तक आ गए थे यहाँ diving in, jumping around, not really यहाँ तक you know, play lineups, those flashes out. जल्दी एंड कर सकते थे भाई इतना क्लोज It feels like that really hurt the first half of your first division. आपके लबे On the flip side, the addition of Sage, Global Esports adding in Sage, taking out the KO, definitely paid off that ball. That one Sage ball came in so संडे रहेगा तो भी लाइव आएंगे so अपन many क्या बोलते times, हैं whether they're in defense or attack. And lightning fast here, obviously. April. Hey, are we going there, Anush bhai? Same place, 26th April. Same place, can do. Tibun bhai can do. कर सकते हैं. Are we gonna have the same cakes? Still damn scary. But for the most part, I do agree. I think that Peteron maybe Third map कौन सा है? Ascent. सारे videos देखा है. full comfort to be able to bring that one up. भाई lightning fast MVP मैं रो दूंगा यार. In a way, and सब analyze करके रखे थे बॉल. they weren't really checking their गुलू भाई का match MVP है गुलू भाई. Any comments? We got flashed by the बोला था and then they thought that they cleaned out that boost spot for the jet, and they did. भाई So he लेकिन got a shot एक off with चीज the है. operator. There was one where lightning fast Blessing was को holding the step back up of yellow, करना पड़ेगा. gets that triple kill on the B ठीक है side. वो वाइपर है कुछ नहीं Really है उनका good भी वाइपर देखना है सुपर timing जीरो or कितना अच्छा just प्लेयर है really बट good वाइपर की दुनिया punishes वैसी from Global Esports that was लेकिन just 12, sprinkled 16 और throughout so 8, many of 18 these में rounds. I just really like how cohesive Watching Global from TV, no looks. fun. Global Did it Esports just looked jinx? on Yeah. Icebox, and There's Death, no yeah, fun. Death You is shout your a total baba, menace baba, here. baba, He मेरे is को lead so मिल जाता है good वहाँ पे. at shooting and did he getting just those kills. But But when when the other team बहुत is prepared for that, मारते हैं How कितना was that? बनाते these are the हैं results. Half I was there. I mean, overall, I mean, the thing that we were talking about before we came Half into you this there, match, no. are they going That to be time able only to we shake lost. off that really अभी क्या एसेंट का one-sided क्या सीन है loss? भाई बताओ बता तो रहा हूँ शुगर जीरो बहुत ज्यादा मारता है बहुत मारता है वो हमेशा The game plan was very sound coming into this one. Zeta still looking 60 uncomfortable. Comes down to Icebox and and Global feeling right at home here on this map. So वही I ना think भाई it's देखो good that they could be able to BM भी move बाप past, प्लेयर you know, a 1-13 वो लोग ने भी respect loss to कमाया open है up the भाई. series and be able to come back in. And क्या I पता think वो they लोग उधर probably रहते should तो और have मारते honestly क्या got a better पता. read It's that all they would be able ifs to do and that buts. because when we saw them But after that comparison sunset, बंद कर दो. there were Support करो smiles on अपने stage players. from Spin, big time, Simple you know, all बात, the players. comparison It बंद kind कर of, दो भाई. it almost felt like they were like, अगर ये yeah, our उधर होता sunset's तो not बहुत really there मारता yet. We kind of ये वो expected this, रहता but है it's okay because we'll run it back जिसको on जिधर जाना है Icebox. वो जाएगा. Honestly, attitude is everything. We've noticed, especially when it comes to VCT. You know, if your head's in the right हो place, सकता है कि that मैं जी में could रहता be तो मैं the, 30 you know, मारता. the thing that carries you All forward across ifs the and finish buts. line. Example समझ रहे हो? वो पिस्टल मजबूत क्लोज गया हो सकता है मैं रेस कार्ड से 4 मारता. तो याद आ गया एक तुमने यूसी से 20 तक आते. मारा तो लास्ट में वो क्या मारा 20 नो यूज. from GE here. हो सकता Yeah, I mean, good vibes means trust, and जी म्यूट करो. you need to trust your teammates in these जी भाई instances. अच्छी बात कर रहे जी के बारे में You लोग. know, I'm happy for Global Esports, but what I'm less happy about personally is we had a little game, and I hate. कितना मस्त दिख रहा है ये बड़ा है. ये जीता. ये बड़ा है. The question was, who Eddie. wins the pistol round on the second half? It was a very size specific is this. question. While I did predict Global Yeah, I won Esports to win the- this, I lost this one. असुराय बोलते. And I hate the ranking. I रुक जा. hate So, that. okay. अरे Can यार I मेरा make an फोन. argument for ourselves? Yes. बाद में जब भी please. बात होगी. Yes, they lost that. यार second फोटो pistol निकालने का था round, मेरे को असुराय का. But then they won the eco immediately after. Global, they dropped it. They had the advantage. They're in the anti-eco. They end up losing the Zeta division. I think that that's worse than losing a pistol round. So I think that we should just keep everybody right where they are. And I don't think that we should get moved down. खाने में क्या खाया Because भाई आपने आज? we might not have been correct, मेरा but Insta at least वो we है ना? didn't blunder the advantage. No, I agree. I feel like we definitely भाई, at least खाने में क्या lost खाया less आपने? RR than तो a मेरे को reel full, post करनी है. you know, लोग उनके आंट punishment खा of रहे like हो. 20 plus Whatever, RR move there. us down to silver. I'm हाँ just ये लोग भी here हंस रहे जोक पे. smiling. So, does this mean Asarai He goes ranks up one. Okay. We go down a peg. All right. ए अच्छा है बे. Plat analyst. प्रेडिक्शन here राइट in करेगा तो रैंक अप होएगा Oh, it's so वरना रैंक bad. डाउन होएगा. I hate this so हम भी much. करेंगे ऐसा कुछ. I felt like they just तू heard तो already that I यहाँ पे did ही है. this, and then they're like, we gotta win this second pistol. The pain, the heart pain. Well, congratulations to your up rank here in Pacific. ऐसा कुछ करे क्या? जा रही हूँ, जा रही अच्छा है ना? You know, Guess those Guess it's really and hard to gain. predict अच्छा game है, something अच्छा game. that- Guess something and that's gain. specific, but and you know what? A win's a win.
could grab. जैसा फॉर एग्जांपल मैंने we पूछा are going टिबोन की to बुंड a में map कितना 3. हाथी का So लूट that's गेस करो something that I can't say all of us have predicted. Guess करो टिबोन And भाई it's Ascent and कोई और करता है क्या वॉच पार्टी इंडिया में देखो I mean, yes, but also, like, not really. I mean, yes and no. Yes. This is a map that, especially last year, we saw them always going to, and they were regularly picking up wins, but they were very rarely clean wins. Tons of overtimes here from Zeta Division. I mean, you think about just the monstrous amount of OTs, how many rounds they had to play, to be able to scrape by wins on this map. And I mean, just look at kind of one of the last times that Global even played this. I think they played versus RQ, and then before that, it was versus Zeta, and that was in an overtime scenario where it was a 12 and 14 loss for the side of Global Esports. So we haven't seen from them yet. So, you know, in this season from Global Esports, I'm curious to see what they have prepared for us with this squad. I mean, the only thing I can really lean on is that we're probably going to see these two players playing Jet once more. Yeah, exactly. I mean, these two have been absolutely critical in all 3 maps, and obviously for when you have a Jet player on a like करो also a make or break region. हाँ ना टाइम पे हो जाना चाहिए You know, and it's from कुछ experience ना and what जाओ I've seen रिस्क as में well ले from सकते हैं रिस्क Colby. में ले सकते हैं When I was क्या पता मेरे just जिंक्स का पावर kind of researching about वो him हो when he गया was still playing, ट्रांसफर you know, not here in Pacific, in EMEA. He actually has a lot of highlight reels that's available कहने का to तरीका watch थोड़ा casual है online, लेकिन that he's played a point lot वही on है Ascent, so at least in terms of comfortability, he's already there. Another thing that I just kind of realized when you get that last map on Ascent, when it is Ascent, is if you're a hyper-aggressive team, no matter how coordinated the opposing team can be, you can always batter around into a site and just brute force your way in, which is what we've seen is the specialty of Global Esports here. I think that, you know, Global is obviously jumping off position going into this map. I don't have any concerns about Colby on the Jet going into this map. I mean, this has been the, you know, 8:30 तक ही खेल सकता हूँ मैं लेकिन ना क्यों 8:30 को प्रीमियर खेलने गए फिर रात को वापस 2:30 वॉच पार्टी वो आज से चालू क्या अमेरिका हाँ आज रात से नाइस बिंग्स भाई ऑल द बेस्ट कितना बजे खत्म होगा ना सुबह 8:30 बजे 9 बजे फिर वापस 1:30 को पैसिफिक इबन भाई करो ना आप भी दिखाओ ना डेडिकेशन ब्रो नहीं है डेडिकेशन इतना ही है करो ना सिंपल इतना ही है डेडिकेशन ज्यादा old डेडिकेशन नहीं map करना with a meta that we've just seen over and over again, especially from these two teams. I don't know. This is the season. This is the season where everyone's gonna shift things a little bit. I mean, again, Carlisle kept saying like we would see surprises. I hope it wasn't only on Sunset. एक सबका निकालना पैनल If का it's going to be the same comp, I पैनल think का there's बटन going to be a निकाल lot पैनल of का भी struggles पैनल का भी for निकाल Zeta Division because it feels like they just really can't click on at least you know here on that KO. And I'm looking at the stats right here. They're not really looking too hot on Ascent. Global Esports also has shown that they might be willing बोलो to पोलवी bring ने a different दिया composition जड़ा को which we बंग्स actually भाई को haven't बोलो seen, जिंक्स नहीं मैं जिंक्स नहीं कर throughout, रहा kickoff as well as convergence from last year. So everything is up the air in terms of like गया how मेरा creative they can actually be coming in किसी to this ने final. कहा डिमन 1 है कम I have to ask किसी you ने guys, कहा now that जेकन we are है at a कम 1-1 कसम से score, बागड़ are your मैच गई predictions still the विजिटिंग same? फाइनल जब And हमने you कहा know, how बंग्स confident भाई are हम लव यू यार Predictions are now. Yeah. I think my prediction Thank you is for the fight, still the brother. same because even though, you know, again, I said that the Bas. wins for Zeta have overall been rough when it comes down to Ascent. I think they, you know, they still usually are able to get those wins. I think that for all of the players on this team, even with the rookies, लव यू गर्ल भाई देखो तो $5 thank you the party आप समझा मेकअप की बनौती है लव यू बंग्स भाई you know, maybe reinvigorated the Ascent from the past year for the squad, but taking a look, I mean, ट्रांसफर हो गया रहेगा here we go. मैं ही It's हूँ just ट्रांसफर हो back गया down रहेगा to just जिंक्स वगैरह standard कुछ नहीं होता compositions for बेटा both teams, पागल no स्ट्रीम surprises डिले रहती at है all. Oh, mirror matchup, standard Rona compositions. Nayak. This is going to be really interesting. Rona I mean, we were Nayak. talking about individually. Now, when you have something like this, it's really going to come down to your ideas. इतनी देर We were comparing depth and Polvi just now. And depth बोला तो करने का just a little bit higher on कोई the दूसरे स्टेट गए थे I कॉफी mean, he सीड्स can लाने go इतने टाइम nuclear if he wants to do so, and he's been able to do that part-time without the help too much of the other player of the Zeta division. So definitely something to watch out for. और उसके बाद All उसके पहले right, उसको we are grind going to करना होता go पानी into गर्म map करना 3. Let's पड़ता go over to our casters. 'cause भाई not मिरर focused कॉम्प on है this. मिरर कॉम्प एनी कमेंट्स मिरर कॉम्प Thank you very much, Victoria, Asarai, and Achilles. Yeah, this is Bye. exactly what we मजाक से हटकर composition, जेटा but का एसेंट kinda like what Achilles बहुत said, स्ट्रांग kinda है want to focus on what is happening around
अगर the Jets 10 as well. राउंड जीत गए You ना have अपन Depp and Polvi, तो and भी we are जीत expecting great things out of them. And I'm starting to look like there might be some kind of mid setup here for ZETA. Starting on that defender's side. चलो रे I'm seeing, बाबा देखेंगे अभी Ascent में क्या है if you भाई include ZETA paranoia strong in है that equation. ZETA strong सही है में Towards some kind of maybe tiles hit, I'm not sure. It looks like they're kind of मिरर है thinking about it, and Mirror I think this is going to be a big-time tile scratch, especially with Laz's position there short. टिबोन भाई आयरन डीले चल रहे 30 सेकंड It's been टिबोन sort of भाई ऐसे जाने anticipated. दे भाई टिबोन भाई खाली Kind of out there to see Bro, if there's going to कल be की that game early भी push, sexy see if है they यार। can catch it. Instead, it's कल just कौन खेल रहा है a pullback right now, a little bit of lead caution. का game कल है PRX यार। है। Zeta ए just बाबा didn't लेट्स play well. गो जिंग बेबी डॉल ये कल ऐसा Really क्यों pull हो रहा है off what they मेरे were को hoping. even Maybe also hoping for a जीतेगा mid hit ऐसा where they लग could रहा है। counter that if GE went through there. टिबोन Now में they're आज just के बाद gonna देख ले पहले हम fan out across the map a bit, playing really टिबोन deep को on मॉम B, में though, देना giving पड़ेगा up so much space here. A little bit of info with Laz, knowing that mid is बोलूंगा relatively नहीं। clear. Bye, 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 Having bye, 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 contact, bye, that's वो लोग का gonna rotation, give them the hello। info that they can slide back over to कैसे that B लीड side. करते रहे लोग They're going to कैसे be right in GE's faces. बोलू भाई Definitely looking to shoot down some initial, maybe 0 points as well. Polvi already diving in, Depp trying to bypass this. See tailwinds onto sight. Angles are favoring Zeta Division for the time being, so a couple of shots go their way, but Benkai comes back into trade. Benkai क्या मारा? Zero from stairs though gets shut down by Benkai too, and now दोनों मारे line up for the shock dart to tase them both down to the ground. Brilliant, absolutely brilliant with that shock dart, knowing they're both going to be super weak. बैंकाई को मैं जैसे ही बोला Unbelievable स्टेप अप करना पड़ेगा बैंकाई मैं किल जा मैंने लग रहा This is the Zeta we need to see. This is the Zeta we saw on Sunset, where they're reading the map incredibly well, and that's what gives them the advantage here. Laz is never really accounted for on short, and that lack of contact there through mid kind of just. What did he say? He said he was funny. He said a bad word. I cannot repeat that word. Man, okay. But that's okay. But that's kind of the Zeta that, that we're starting to see again. bleed Almost as if it's a combination of both Sunset and Icebox. Getting a good read, but also playing really defensively. ये हिलेगा नहीं Not necessarily overextending too much. It's just really early on. You've got the Marshall. क्या वन वे डालते खुद के लिए ऐसा खेलने का यार मेरे को जेट वरना नहीं खेलने Skirmish. Lance's got his back. Lightning fast with the wide swing. But here around there to चलो back him अभी up. जीतना चालू करें Able to keep all the important guns. Both Bulldogs, the Guardian, and a Spectre. You don't mind losing that Marshall in that round at all as Zeta Division. And yeah, Adept did a good job there. Dodging that turret. Sidestepping it just as it was activating. So he wasn't pinged by it. That gave GE a little bit of false confidence. That they could push forward. Try to reaggress the angle. That's fine. It's the ego. Challenge Depp with the Marshall. Might get lucky. He lifts the shot and you can outdo him. But in that depth, they're able to buy enough time with his dash and his smoke to get back and wait for the reinforcements for the rest of his team. So solid start for Zeta. See if they can keep it up. It's also precisely why the desk was kind of discussing this. ये अनुज भाई क्या प्रोफाइल बना रहे क्या खुद Pick and का bans are really important. The fact that this is Ascent, Global is the one that left it open. Zeta gets to pick the side that they want to start on. And starting on defense on Ascent is such a big deal, given how the map is laid out. And they're just doing such a good job at kind of playing defensively. I mean, look at the positioning from Laz. Good angle, takes down one player. That's kind of enough damage. Because all of a sudden, the 3 players on A are prepared for that A hit. And that sends GE over towards the other side of the map. Maybe feeling like if they've got that Killjoy dealt with, that's going to make the B site a lot more tenable to get into. Yeah. इंटरव्यू चल रही है We do need Polvi to pop off in this moment. What Oh, but he just gets tapped. Bit of a crouch. I mean, he had the outlaw, so that's what he was going for. But Yuron, impeccable performance. Now Paranoia pushes him away, but take a look at what's happening on the mini-map. Our observers caught it too. Depp going on a bit of a journey of his own. Alarm bot catches him out, so he just rendezvous to go back with his team. Lightning fast pushes out though. And still feeling sharp. Great flash from Russ to set him up. Oh, Depp's gonna outdo him again. Russ though, quick for the trade.
2-2 है. 2-on-2. Yudoran still has utility, not to mention Sugar Zero as well. Everything available. Meanwhile, Global Esports, they only have their positioning. Rusto with the shot. Swings out a little, catches Yudoran. After hearing that flash getting popped. Sugar Zero now, Paranoia, just to buy a bit of time. Safe space. Catches an unsuspecting Benkai, but now not enough time to defuse the spike. Walks straight into Russ, and look at that side step. Turret nerf, buff karo And na. Russ is involved in every kill in that round. What a great round for him. With that flash over into the alley. Setting up his teammates so nicely. Able to deal with the Laz, cheeky positioning. Trading off of his teammates. Playing time very nicely. Go boys! That's a round that you definitely want to see out of your IGL for Global Esports. Tremendous round, and he's got that no command as his follow-up prize. So depth with the Outlaw and the Blade Storm. Of course, it's Odin time. It's Ascent. you just know it's an inevitability. It's match made in heaven. we don't mess with these. Truly, this is, yes. The Guardian counter for it, though, is something that we've been starting to see now, and Yuran knows to walk away from it. You want to avoid that for sure. An Outlaw as well could potentially be used if you felt like it, but with half armors for side of GE, Depth's Outlaw, on the other hand, could provide a ton of value. Diligent space clearing, alarm bot gone for the side of ZETA. Going to use the drone to really make sure that this space is safe for Polvi to push in. Making a bit of noise too. What is the If Polvi does push in, yeah, Laz is ready to greet, along with Yuran as well, and that Odin. So that's why Depp made a bit of noise, just to kind of bait Global Esports into peeking down this pizza/market area. Funnels them into a day short. As long as they can block off this entrance, they don't get to come in for an easy spike plant. ZETA should have this round. And then you can pop the ult too to make this hit even harder for GE. Gonna have to wait this out or try to get it done with guns. Yeah, you got one player who can Paranoia in. Oh, Ross winning that. Good shot. From behind though. Great timing with this Odin. But the double swing from Global Esports. They capture the site. They know where Yuran is. And they manage to trade him down. Laz is the only one left. Tries to make a quick move, but completely surrounded. It's Global Esports coming back in the game with a 2-2. मेरी आत्मा गई थी ये अच्छी बात है अभी वो लोग इको अपन लीड पे Great work using his ultimate. भाई गोलू ने अच्छा मारा वहाँ पे Now you've got Benkai's lockdown. और गोलू वहाँ पे नहीं मार पाता था दो डेड थे KO Answer और just गोलू yet. A great recon dart there as well. Forced Laz into a bad spot where he had to try to make the भाई drop down. Benkai किल्जल मैंने बे मत किलो वहाँ पे Even easier for Benkai. किल्जल मैंने Benkai Everybody else is fired up, and Benkai cool as a cucumber as usual. Always. बोले भाई उसको स्टेप अप कर दे बोला था आप कहाँ बैठ गए Who knows what's going on inside? बोलू भाई जाएंगे मेरे को फीलिंग आ रही है जाएंगे Oh my god. They know. Yep. We've seen this before. And that's also the other thing about Ascent. It's just how much have teams figured out, which is it's imperative that Zeta Division brings new flavors, especially in this Pacific Stage 1 matchup. कहाँ प्रोफाइल बना रहे हो अपना लिंक्डइन Still very much aware and in position around this catwalk area. मैं समझ गया bypasses it. Reinforced towards top mid. भाई जी अच्छा खेल रहा है Should be an easy spike plan any second now. Great timing on that. Buy a little bit extra time. Take that blade storm. भाई लास्ट राउंड जी का देख बे बहुत प्यारा out of Depp's hands. Gun dart has to be cleared. This looks like a phenomenal post plant setup for GE. You got players up around door generators. मारा तो भी पोल भी मारा बेचारा. Pulls them back in. Third kill secured. Russ Last one देख is having 2-2 a वाला. good game on this map. He's having an insane game. मस्त खेला. Absolutely. भाई Benkai sexy खेल रहा है. One of the best maps we've seen from him so far since his move over to this global esports भाई squad. देख रहे हो मैं आज जिंक्स नहीं हूँ काउंटर हूँ मैं बोला Benkai step up full step Right now, up. RGE in general. He's not really allowing any shenanigans.
नहीं डर from के that उसमें blade है storm of Fnatic. depth to really find any value. And now Depth is able to get into an op, but you do have Polvi with the counter op. Odin's on both sides as well, so. And then didn't need to use the lockdown for GE. The round was clean enough to find those picks early. Enjoy. So now he can really take their time with this. Be methodical on the map. There is a reason. I would like to sorry myself. Towards mid for ZETA. Now they're really crunching in towards mid. I mean, they're really expecting something to come through here. But it is sort of a feint. अच्छा कुछ बोलो यार लाइफ में अभी अच्छा खेल Put some pressure towards पूरा B. खेल रहे तो भी बजे ना सब लोग अच्छा खेल रहे तो बजो ना वैसा अच्छा भी बजो यार ऐसा मत करो यार You should run. Attention brought towards mid is all been for naught. भाई एक सेक्सी जिगल करके सिटी नेट केओ का लेट्स गो yes जाएगा ए किसने पोल्वी का रीड देखा It just pushes ZETA Division a little bit further away as Yudan अनुज reloads. पोल्वी का रीड देखा Yudan तूने get one frag, but traded off by अब्रफ पे उसने जेट को मारने का ट्राई किया पिंग करके लेफ्ट पे ऊपर जहाँ पे सोवा खड़ा है ना वहाँ के ऊपर के लेज पे अब्रफ था वो Especially big guns, yeah. इतना डीप नहीं देख पाया Depth still pressing forward, though. I think he can't quite get out. Recon kind of tags him as well. Blaze King, good information. ओए अपने पास भी है वो गन is firing off. Sugars, you were a couple kills, but हाँ तुम्हारे पास से बेंच अपने पास भी है you got 2 targets, Dep, and you've got an operator. Not an optimal situation to be in. So, tries to back out, but just the incoming rain अपने of पास bullets. भी है you catches in have the it back of we his also head. have भाई it उनका कोच ने भी बराबर प्रेडिक्शन दिया यार So by fight two it looked like it was going to be a Fight two. towards B initially, मैं भी but बजा मारा with that pick and then the quick decision to invest the lockdown as Pinky! well. You got the spike being rotated over. How are you feeling? They're able to use that from the shadows as well to really bypass any of the danger. Shout from there G Paddy Set up for that post plant. And honestly, I think ZETA नहीं अपना अच्छा maybe should have considered the save a lot sooner on that. That was going to be a really nasty diffuse to try to go for. Bye. We are having a good start. Hey Manjadam, what's up? So tricky. Plus he's been great with his utility to set himself up. भाई मेरा तो कंधा It's निकल tough गया to flush him out. Bye, is it like a New Jersey buff यारो? Unless you have the numbers to really deal with it. And ZETA just didn't have that in that scenario. So जो मैच में तूने खरीदा वो मैच हारे just saying. 4 rounds in a row now. I feel like they should be bankrupt. So good time up being called by Coach Carlisle, but he has to plan for the future. And that's the thing about this map, because Global Esports are in the lead now. This actually could be the first time that Global Esports takes down ZETA Division. It's First time in all Pacific. Yeah, really starting to look that way. And in fact, तो ब्लेज किंग को बोला था तो ब्लेज किंग मार रहा है ना ब्लेज किंग को नहीं बोला था बेन क्या को बोला था मैं could bounce back, but right now again GE on these maps with the time and preparation that they've had in the off season done a really good job of kind of figuring out how they can expose the weaknesses of the way ZETA likes to play. And it felt like early on, ZETA was going to be able to read the map nicely, make some good rotations, but after that, GE's been just playing with their food. इतने साल delusion में निकाल लिए एक मैप क्या बात है Just completely confusing ZETA. I don't know if they expected an op Sunset in that ban क्या previous तो 2-0 round, था and, अपना just saying things like that caught Laz off guard. So you really like ब्लेज किंग को बोला था वो वाइपर था ब्लेज किंग था क्या Sometimes it's just tough to read. बेन क्या क्यों मार रहा है He knows. Swings out, bit of flash. Nanostorm to flush him out of position, but Russ bye just bye bye sprays it down. bye It is an anti-eco round, so all he's got to do is to pepper him full of holes. by risk No में ulti shots मार के जा found from ZETA Division, except for the one. Now Polvi comes in. Additional information. क्या हो Russ गया online for the रुस ace. भाई रस में Give it to थोड़ा him. ज्यादा handsome लग He's रहा है earned मेरे को it. अभी गेम प्ले देखने के बाद Although they might want to give it to someone else because he's already got the null command. So True that. Give it to Blaze King. Yeah, exactly. You'd kind of like. एस होएगा एस होएगा एस होएगा मैंने दिया था हराम एस होएगा Russ should be
laptop जेब में, Feeling that one popping off on the stage. Ace पे laptop है क्या? 5-2 Global Esports. यार हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मिल सकती है अपने को. He's been popping off on this map. I mean, this is a tricky position to be in. Getting caught in the frag. Whoa, what a transfer there. ट्रांसफर तो था. Absolutely nasty. Grabbing that. अरे खड़े हो जाओ ना, काहे बैठे हो? Alright, well, this is an important round for ZETA. All these ultimates, they have to stop the bleeding. That's what the मैं रहता तो ना उधर धक्का मारता तो सब खड़े होके ताली बजाओ. बैठे हो, आराम करने आए, खाना So off of खाने it, they go on the expensive flashes. Sounded all throughout B long. Not too many kills, only the one from Sugar Zero as Global Esports expects it. They actually cut them down all the way from Catwalk. Les comes in to reinvestigate, but by this point, information's bad. Global Esports are gone. In fact, they wrapped around from A-main, coming back in to secure the site. I mean, Laz is going to have to go nuclear here. Man, this has to be just a multi-kill. Bro, he's going to play something crazy, I think. I think GE, after that, just like, they're considering going, yeah, good, exactly. Or at least waiting this out a little bit longer. Russ has flashes. Lightning fast as well. They're trying to make ZETA Division double guess they're करा रहे making भाई, them मजा आ रहा sweat है मेरे को. क्या paper thin. खेल रहे हैं ये लोग भाई, इतना double guess करा रहे हैं ना. It's really smart. Now with that knife, you kind of have By a pretty good position idea. में You नहीं have to be है so careful. You know that op is still there. Oh, last what? A triple quad! You said he was going nuclear and he just dropped a bomb of Global Esports. I just... Can I get this? It's just unreal what Laz is doing. The guy is just unreal. लेकिन Heaven नेट रिकॉन तो सब Heaven क्यों देख रहे Okay, थे? let's break down how he just did it though. Anticipating, thinking that he might have crazy doubled मारा back बे. into B, steps back through. Crazy And मारा just भाई. because of things मारा. aligning for him, the flash did not blind him. He manages to precisely pin down each and every one of his targets. You don't have to use any भाई ults मारा now. जॉर्ड. I mean, you get the win on the back of मारा one of the अच्छा तो craziest बोलने का 4Ks मारा अच्छा. we've seen today. Just, I don't know. What do? I mean, hopefully GE doesn't get too rattled by that. Trying to clear open some space. भाई Ben का OP. Get the kill off of that. Guys, Ben का OP. तुम कहाँ जा रहे हो पोलवी भाई जब Ben का ने इतना स्पेस लिया है? A little bit of a distraction, and Benkai wins a duel. Mid से क्यों जा रहे? Timing and position right now, but again, Laz is just feeling it. Walks back down in towards that market position. Can anybody explain? As they try to rotate down mid. Blaze King comes back in for the answer. A bit of pop flash from Herodon now, and that's Blaze King down in the भाई dumps. mid से Benkai क्यों जा 21 रहे जब भी HP साइड left. पे बंदा? And unless, बिना स्मोक के not that OP. much he can do. Tries to jump over to throw them off guard, but Yo! doesn't have enough health to sustain him through all that damage. Throw. Yeah. भाई पोलवी को Don't एक mind शॉट the में ना idea कोने में at all, बैठना था but बस. The only thing I'm और ये लोग को concerned भी about जाना now था. is you lost your बाप counter to राउंड the होता था. easy counter. I mean, most teams have plans, right? वो These days, they साइड know के where the अंदर है वो, lockdowns are साइड gonna के be placed by अंदर. defenders and lineup. Yeah, they have lineups for days. भाई बोल मत अभी ये You rely on 4-2 that के वजह KO. से ये लोग टिल्ट हो गए रहेंगे In यार. particular, a good fragment will take down that lockdown as long as it lands. अच्छा टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है. Yeah, absolutely a good time for a timeout. Laz is getting fired up. Can't let that happen. Question is 5 rounds enough? Gotta make sure. Worst case. Stem the bleeding Worst here. case बढ़वे. हंस क्या रहा है ZETA लोग? starting to Worst throw a case few different scenario looks. देखते कि नहीं लोग? Getting some big hero plays, but it's going to take more than that to beat this GE squad. As we saw in Icebox. क्या Good अपना game डिफेंस plans. The बाप हो executions सकती है? a lot crisper for GE than we saw in kickoff. Global को 3 राउंड भी इनफ है. Yeah, definitely Defense different outside looks from kickoff. And I think that's the biggest thing, regardless of what the result is. Of course, 9-3 पे हुआ. GE fans would be hoping that Global Esports comes up with the win. But regardless, it really shows that throughout that offseason, throughout Masters Madrid, throughout Paperthin being in the elevator with all these players, कभी-कभी बहुत अच्छा खेलते, कभी-कभी ऐसा बीटी देते everyone ना. has worked on all of these maps, and right now Global Esports actually look evenly matched up against ZETA Division, completely different from what we saw in kickoffs and last year. Yep, I'm really impressed. Again, it wasn't an easy Can start. these team beat Sentinel? No. Certainly. Sentinels नहीं. Sentinel. Looking amazing here. Trying to clear that. Sentinels alarm अलग bot, I level believe, पे. with that nano. Just checking in. A lot of utility just dumped in towards mid. Nobody there. Nobody home. So they're going to take their time.
Reload कहीं तो देखा हुआ. Chat like करो. Really try to 10 get के likes an करो idea जल्दी. of what Zeta is doing. See if Zeta's going to go for any kind of aggressive pushes. And nothing being given over. So you know you have a little bit of space, but it has to feel like a trap, right? Like you have to feel like they have some kind of pinch play, some kind of setup off the back of any contact they get. बहुत passive खेल रहे हैं. Sort of बहुत passive defaulting. खेल रहे हैं. Now they're kind of shifting back into a pretty similar position, and Depp so close with that off for a moment, but gonna move his way back up to heaven. Pretty unsettling. Both sides starting out on defaults. Zeta trying to get a good read on things, but they're not finding out too much. Global Esports on the other hand, exactly. In all of these movements, there are some tiny gaps in Zeta's defenses, and it allows for plays. If someone tries to rotate over from this, he might be able to catch a kill onto them. So a bit of attention brought towards A short now, and then lures Hirodon in towards Blaze King's crosshairs. Suddenly, Zeta Division feels the pressure, and both of players try to hide inside a hell. 10 seconds left for Global Esports to get the spike down, though, and Russ manages to get it done. Blaze King still in such a great spot, does the damage, Death still alive. Able to shut down Polvi for the time being, tries to swing out wide, but Ben Kai denies him any joy. Lockdown available, but I don't think Laz is going to be able to repeat that quad kill from before. No, उसने 2 शॉट मारे हैं वहां से. Yeah, he has to go for the save. Just मेरे को पोलवी के साथ 1-on-1 वीडियो कॉल टाइम आउट लो. comfortable वीडियो कॉल करो going for it just yet. Definitely the wise play here for Labs, but just too much space given by Zeta this time. Those defaults started out good. पोलवी को लग रहा है उसका टीममेट उसको मार रहा था. I'm not exactly sure, you know, what's going through the minds of Zeta in that moment when Hirodon shifts back to their spawn. यार मुझे लग नहीं रही तो मेरा टीममेट मार रहा होगा. ऐसा कुछ सीन था. That was going to be the weaker part of the map, the part of the map where GE might explore. But Blaze King, you know, a savvy veteran. Blaze King has been around since basically day one of Valorant, guys. Like, if you don't know, he's been playing previous games and everything. He's been to international events a long time ago. So on and so forth. Everywhere. This guy's smart. वो देख एक ऑफ का शॉट आया. And he दूसरा ऑफ का शॉट आया. Careful checks, right? Yeah. He has no like. How did I even get in through tree into window? And it just sometimes it just happens that way. Zeta Division, you know, a little bit unlucky in that. But like you mentioned, the main factor is still that too much space was given up. Bye. So we want to ये see round being a जीते little तो bit more proactive. next round पैसा नहीं है bro. Down to the last 2 rounds of the first half now. And to try to और accomplish अपने पास that, they're किलजो अल्ट भी आ going to जाएगा. put Depp in this position at short again. Trying to use this cubby to see if he can catch anybody. Getting a little bit too ambitious, seeing if maybe GE gets a little bit overconfident from the space they were able to take in the previous round. But with Polvi there, Depp might be in trouble. Ooh, okay. Good little jiggle. Managed to sneak away. But that's again the thing about this entire map. चलेगा is the angle fact से that भगाया it feels a तो little bit defender-sided. very and nice. if you allow for Global Esports to come up with such a strong advantage, if this first half ends in an 8-4, Zeta Division might be in trouble. उसका lineup था ना अच्छा किलजो का. Very crucial for them to come up with some Ready wins to right निकले? now. Is he gonna I go think with that's also why they're playing it really safe. They don't want to pull off any risks. If anything, minimal risk would peak at the right times. Laz is able to secure surprise kills like that. Phantom में भी लगता है क्या? Blink of an eye. Yeah. सिर्फ ये ना Odin ना. Really trying to Guardian, buy a little bit of extra time. That's a great alarm bot. Deeper than normal. That's going to catch Polvi. Give him a little bit more of information on where these players are coming from. And Laz plays it so well. Area as well. They are kind of funneled in towards alley. Laz, very safe. Nobody pushed out too far, and he's just holding it down. Third kill coming through. Shut down by lightning fast. Sudden though. Oh! 5 seconds left. Blaze King has to push in. Knows one is up by Boathouse. Goes in front of plant instead. Sugar Zero just swings and gets the kill. No time for Global Esports. Zeta Division trying to even out the score. Yeah, and there you go. And there's Zeta putting a little bit more pressure on the map in a couple different parts. चलो चलो That चलो makes एक और their round हो जाए. lives a little bit easier. Great awareness here from Laz. Angle लगा के You know, had रखना been था placing इधर. his alarm bot further up towards the stairs of mid. Pulls it back this time, and yeah, now Laz is getting fired up. Now you can see a little bit of that energy, a little bit of that passion coming through for the veteran. Yeah, that calm anime character, you know, for that, it just doesn't need to do too much. He's happy, like, nice. But now, like, he has to show his final form.
he starts to show his true colors a little bit more. Well, when Laz is popping off, वो लोगों which को he दिखा doesn't, turret नहीं है. yeah, his pop-offs aren't like very grandiose. Turret A पे But वो लोग air when tick he's ले वो popping लोग off, पूरे things are going good. Great flash. Oh, Jord backup bro. bit of a trade. Yuran able to take down his counterpart. But that's another surprising thing about this map so far is the fact that, you know, we might have thought, you know, the head-to-head would have been between Polvi and Depp. वो लोग को पता है air tick है, वो लोग को पता है moments air of tick greatness है. from players like Blaze King, players like Russ and Laz. Both IGLs doing so much and performing right now. Laz trying to sneak away with some of these sneaky angles. Oh, but he's Minimal gonna pay risk factor. price. Oh, Gets away free. How? If he can use that lockdown, that would be huge. Ooh, Odin's still firing away. So dangerous. But they're gonna shut the door. This should give them, if they can clear lightning fast, Bro. suck in on the other side of it, should give them the ability to put this lockdown in. All right. They gotta clear lightning fast first, though. That's the main thing. Good jiggle again. There's the lockdown. Lightning fast. Under pressure now. Forces the paranoia out. Stuck in the animation. The rumbling of the Odin fires away, but Sugar Zero simply peeks out. Peak accurate moments. And with the final shot, secures the defuse for Zeta Division as they tie things up 6-6. I like the attempted trickery there from GE. It's just lightning fast. A little too fast for his own good, where he pulled the trigger just a little bit too soon, and that gave Zeta the ability to quickly और ऐसा भी नहीं वो लोग को टाइम का कुछ इशू था वो लोग ने आराम से प्लांट किया इधर प्लांट करने का वो भी देखा वो लोग ने and then you force that flood where they have to get through that door, back through that door to clear that lockdown. You force those players to come through there, and Zeta knows it. They're just able to hold the crossfire. So a 6-6 half. Interestingly enough, the last time these two teams played on this map, it was 5-7 on both sides, and it went to overtime. Are we destined for yet another Zeta overtime on Ascent? Sure feels that way, doesn't it? It definitely does. Both teams feeling equally matched right now. Of course, it's a bit of a stamina game as well. दो मिस्टेक्स थे कोई सीन नहीं 3 राउंड थ्रो नहीं हुए 2 राउंड Swap sides. And Zeta Division should have has been to like attack. 8-4. We've seen it before, how many executes they've got, especially when you've got players like 6-6 that. is not bad, yaar. Things like Tailwind and Updraft Ultimates, top of Generator and A site. 8-4 कर सकते Perhaps even into B as well, sneaking past Alley. चलेगा but a big improvement from what we saw last no time. doubt about it. I fully So that's a agree big with you. And I W. was going to build on what you're saying. पहला मैप It's भूल one of the जाओ things that makes पहला मैप के अलावा such a I good think player is they that he played takes advantage very of well the they terrain won of the map. last map and He's they so played good well with this map. that as part of Always this game. chance for On the other side of improvement. the coin, I really liked 2 round GE should have been up investing now, in that operator but early take on their attacker side. It put so much pressure on Zeta, forced them to play further back than they'd probably like. And that was a big part of, I think, what Bombs allowed them in to the string league. those rounds together. So let's see if Polvi can get into another Polvi early step operator up करना and पड़ेगा अभी really Polvi को करना try पड़ेगा. to shut Zeta out of this half. मैंने बेनकाई को बोल दिया गलती से बेनकाई मार रहा है रोस्ट भी मार रहा है. Shines the most. Rating 169 पे. Gotta get to that part first, and the pistol is where things kick off. Polvi already trying to sneak down, but blocked off by the dark cover from Sugar Zero. Lightning fast already with the paranoia. This could be huge. Huge. There we go. Oh no. Last Yeah, opening na, pick. bhai. Depp just ignoring Benkai. They know they have the sight. Look at these flanks. Oh, they're ready. Wait, Last. did you just ignore that? There's the Posey? second one. Benkai bye, And Benkai he's bye. still watching the Counter angles. Depp has his back watching up towards the top as players try to rotate through from stairs. Blaze King able to come back in to take down both players. क्या counter किया Still बे? 2-on-3 though. Hiroran tries to get further information, suppresses them at that 0 point. जी का plan क्या था पता है? Global Turret Esports takes a के breather. इसमें Where lightning could these fast players blind position? देगा और वो लड़ेगा. Great info. It's gonna take some fancy लेकिन shooting. वहाँ पे blind में smoke dash हो गया You फिर वो know it's खपल these गया. common spots as well. Definitely one around A main generator. They're all watching it. Perhaps into Hell too. But without the kills, without any leg room, they can't make their way into sight. Global Esports, unfortunately, losing out on the pistol. And what a way for Zeta Division to pick up on these entries. Sugar Zero ये मैप में बहुत मारता है. Polvi क्या हो गया बे लेकिन कैसे भाग रहे हो भाई सर? Again, I like the idea from भाग Global ही रहे हैं Esports. I bro. really, really do. They try to do a really fast flank, but this time Zeta's got their heads on. Like they're so ready for this. An opening shot by Laz. I thought lightning fast
did a pretty good job with his paranoia. He got the catch onto Depp and was instantly ready for the follow-up, but Laz just able to beat him there. You know, Laz with a sheriff. ये स्ट्राइप तो काउंटर हो गया भाई. वो लोग का थॉट प्रोसेस अच्छा था. It's all classics for GE. No investment at all. One rifle for Depp in terms of the full rifle. अभी वाई को स्टेप करना पड़ेगा. ये गेम जीतना है तो भाई जेट बहुत ऐसे में भाई अपने 2 राउंड थ्रो के वो अलग. फॉलो बाय नहीं मार रहे वो अलग. Not only the pathing and the entries, but global esports not quite able to retake now. It's the setups though again. Swinging off of turret contact, pulling नहीं. That's the rifle being dropped. It's a Phantom, yeah. They're able to get it back, but Depp a little overeager there, a little ambitious to clear that turret and pays the price. So stuck around just long enough for Polvi to punish him. Now it's going to be shift over to the other side. Laz trying to work this door. Gonna have to wait a bit. In. Is he gonna read the position? Global को idea नहीं क्या चल. Ascent is speeded. Look at Russ. So good. Pristine timing. Gets the shot onto Laz now. Still plays around the boxes. Couple of shots. He's just doing enough. चलेगा आपके पास गन है ना? The rest of the global esports players are still on pistols, so they're not out of the woods yet. I thought Benkai might go for a walkabout through B main. Instead, they're just going to death ball it. See if this can get over the line with these guns that ZETA has. Double back. Good recon. Oh, tiny tags with the ghost, too. Oh, bye. अच्छा smoke है. Timer still ticking away. Blind shots being fired down through that dark cover. Herodon, another kill in. Lightning fast trying to do as much damage as possible, but knowing where he would be, just a bit of a pre-fired shot. ZETA picks up the second round of the second half. It's still a tremendous eco, especially with just classics invested, to take, you know, so many 3 guns, so many guns away. Right, you're only able to keep 2 expert analysis for the side of ZETA. So honestly, that's a big close जाएगा. अच्छा ही तो था. Doing the best they can with what they had and making it very uncomfortable for ZETA throughout. I mean, again, those setups, you know, playing off of the Killjoy turret from Benkai, Russ just incredibly safe and sharp with that classic too. Global esports are definitely making this. They're making ZETA Division work. And I talked about it before, it's this attacking side because you need to consider some of these positions. That cannot भाई ए पे सिर्फ आवाज करके भेजा रे बे. This outlaw is going to get a ton of value. Only half armor. भाई लेकिन तू balls of steel देख रहा है, उसने dash on तक नहीं किया. Is below the armor threshold. Starting to look like ZETA are slowing things down, similar to what we saw last year. And again, in all these tiny little gaps, tiny little lapses and moments, global esports pushes up. Firing off on the Odin now. Expecting the deep push. Eventually, the shock dart comes in to clear him off that angle, but nobody holding main for ZETA. They are full on. Just going to stack the site. Try to catch them on these entries. This is usually pretty tricky to pull off. That other angle, of course, with the weaponry, they have the stingers. Good smoke too. This is a very interesting one. If they push downstairs, they will get clipped. But that's why most of them will try to go around the other side. Depp trying to catch them on the timing. Here's the reload. Okay, 15 left in the magazine. Herodon with that Phantom making it sing. ZETA Division convert the bonus off of some smart decisions. Yeah. भाई मेरे को एक बात. बता. बंदा स्मोक में इतना गोली मार रहा है. Reload मार रहा है. उसके साथ कोई है कि नहीं स्मोक में? This round it works out because, like you said, he heard that reload as he was pushing forward. Was able to capitalize on the timing, and then Herodon. Oh my word! Hits Polvi right as he's coming out of the wall. Oh my goodness! ZETA ने बहुत अच्छा खेला बे. उन लोग के पास गंदी गन्स थी ना. बीमेन कुछ रखा ही नहीं. उन लोग ने सीधा साइड स्टैक किया. स्टिंगर वाले आगे खेले, फैंटम वाले बान बैक साइड चले गए. अरे लेकिन फिर भी अपना सब था बे. ओमेन ब्लाइंड था, केओ ब्लाइंड था. वो लोग ने दिया भी, लेकिन कोलू वहाँ पे ऐसा स्पैम मार रहा तो उसके साथ कोई है क्यों नहीं? या फिर मत मारो स्पैम. और स्पैम मार के रिलोड कर रहा है. एक बंदा तो चाहिए ना यार वहाँ पे.
delegate some tasks, and he's talking a lot right now. This timeout being called. या फिर वो smoke control it रखने looks का like coaches are going या to फिर trust नहीं in रखने Russ, का who's having a ऐसा नहीं कर phenomenal map सकता individually चाहिए to see if he तो वो can कौन तो ब्लेज किंग के अंदर his होना team हाँ back बे into this one. 16, 10, and 11 is a tremendous रिस्पॉन्स होते scoreline हैं for और a एक बोलो KO. लैंग्वेज इशू में भी जाती है यार ये लोग का Still some जापान more है damage 5 to be जापान done. में अपना लैंग्वेज Half हिंदी में armors बोलेंगे have यार a मेरे few साथ स्मोक में weaker उधर rifles बोलेंगे with the कि Guardian and the Bulldog स्मोक हो गया in the लाइक mix. Yuran. smoke help ऐसा बोल सकते हैं हाँ स्मोक हेल्प आएगा तब तक हो गया वो Kind of समझ interesting नहीं on the attacker difficulty आ side to see जाती one है this early, but होता the ही money है good वो enough now कितना भी बोलो for नहीं ZETA. I was kind of होता curious है if Depp was going to maybe बता try रहा to हूँ मैं outduel ये crucial Bulldog round in है भाई terms ये of अगर जी आ the रहा तो hopping फिर battle on the attacker side, हिंदी में but सोचते Depp's हैं just going to अपन stick with इंग्लिश the में rifles. बोलने तक हो Lightning जाता है fast. crucial round है Bullied हो off गया of his angle एक with बार some हुआ था मेरे util. साथ सीएस में खेल रहा ZETA. था बनाना इन्फर्नो मॉली पैर पे गिरा Interesting आई एम setup जल रहा here. हूँ हाँ होता है Turret there to keep think in an Hindi eye you can on that only positioning speak at in Hindi short. at panic Spread the map. situation Great alarm bot Nice placement, flash, expecting Ben Kai. He wants to get out on those lurks early, and ZETA knows it. अच्छा है लेकिन ZETA slow Very खेल least रहा है Depp trying to stay mobile. Just trying to clear as we need much as find in players possible. definitely The global esports are nowhere to be found. वापस तुझे कुछ I love that they're kind of rotating around towards हाँ, बराबर tree बोला though, लेकिन and अपने just find in kind players of क्यों Ascension push. जीत नहीं पा रहे हाँ The perfect agents to make it happen as well. Simple. क्यों Ascension में कोई और A lot ट्राई of नहीं कर रहा है diligence. Be noting Oh, the turret. that's Okay, really okay. कर दो ना अपने को wrong Doesn't Just to make Depp, though. sure. सब Yeah, no, जगह find in place that's kind of find interesting. in And place Depp's going to try to use that to his advantage. And look at how much ये राउंड room they're बहुत getting. Now, he's still the इम्पोर्टेंट है alarm भाई bot, इधर so- ये राउंड हुआ तो खत्म है टिपन भाई मैं ये Flash बोलूंगा to हाँ get ये them राउंड running इम्पोर्टेंट towards है ये राउंड आ रहा A. तो तो उधर ही But it's that रीड किया नहीं split नहीं setup. नहीं ये वाला There they इम्पोर्टेंट go. Now the green light is इनका भाई lit. दो मार दो इधर Ben Kai in read perfect position to shut them Nice down. smoke, Trying bro. to stay Insane. tucked away under logs. Pop blast through though. He's completely blinded, but Oh, एक और they didn't catch it. वाह एक और जॉर्ज For the spray, that was free go down instead. Lightning fast. जॉर्ज for the try बेबी for- Save the round for global esports. इनका भाई का What बहुत a play. आउट क्या अभी नहीं रुको भाई रुको Ben Kai. Shenanigans. I know. He wasn't allowed to have his little workout of me that he wanted. replicate करने का And इसके instead, he करो just lucky tucked था, himself lucky in that था। corner. A great one. भाई Just What अभी the full lightning fast as नहीं well. नहीं फ्लैश They था never उसने had चेक नहीं glimpse किया of him केवल because ने they had to डायरेक्ट jump आगे through that कूदा smoke. लकी लकी They लकी try to था bully their way in. और यही अपनी टीम रहती ना अपना Almost क्यों get it. कूदता और चेक नहीं करता था बस Phenomenal there. खत्म था ऑलरेडी More इतनी global हेट मिल रही है esports. दो और प्लेट ला लो Now, a little bit deeper into the pocketbook, ZETA have to go. Not quite at a point where they're not going to have a bye for the next round, but और कुछ एरिया के लिए Odin क्यों नहीं spam खेल रही duel. ग्लोबल ना भीमे ने ना Not gonna इवन find ने any value सब for either फ्लैंक्स side, से पूरा really. डिफेंसिव Shock Dart as एक well. राउंड जीत गए भाई चेक नहीं हुआ See if they इससे can find वापस any अभी damage. नहीं ले There's that सकते turret. पैसे के गांड He लगी wants to पड़ी try है to clear it. He's so ना close. राउंड He's में so अपन आगे ना close. पैसे में आगे नहीं नहीं पड़ेगा Caught लेकिन last वैसे ही with a खेल little bit of खेलता damage, पैसा though. या True. बोल दे में बिंक्स Consolation भाई prize. सुपर चैट में गाली आ रही है किसको है Back into it again. I mean, there are these थोड़ा समझ rounds सकता where हूँ we क्यों just रहती है। see ZETA division like kind of getting a good read for things, good ideas. You know, मेरे को नहीं almost समझा steps away, trying to keep them around a short, and then the execution. But it kind of falls apart when some of these tiny little corners are cleared, and Lightning Fast gets to cut जॉर्ज it down. तीन मारा First तीन मारा cross. तीन मारा He gets 3 kills. जॉर्ज 3. Now Colby जॉर्ज बेबी in, and it's just वाह है a भगवान है Lord. भगवान साथ है जी कोई तो एक भगवान भोसड़ी का बोला था वो राउंड हार गया तो हार गया कौन है वो भोसड़ी का Off that angle that we've seen previously. Just able to find spray down. ZETA not really Once a hater said हाँ trying to disguise their movement in that situation. 9-6 वाला Turret round cleared on the other side of the map, and that was the go signal. मैं for और ZETA. अनुज भाई बोल They think, रहे okay, maybe they're 9-7 trying वाला to राउंड flank. क्रूशियल है Maybe they're trying to push नहीं things, so you know we probably got a couple मैं of तो them over तब भी there. रीड किया Let's see if we can take advantage of that. Let's see if we can use these numbers advantage. But Lightning Fast just was having none of it. Lightning Fast. You know, we thought that Labs अब was इस having स्पेस good लो game. यार They ऐसे started to बार pull बार off, नहीं and नहीं जीत रहे ना लौड़े नहीं चाहिए स्पेस अरे भगवान है साथ तू में ले अभी घर पे आके कीबोर्ड ले कीबोर्ड का मेरा स्पेस ले तू बहन चोद अच्छा खासा खेलने दे reading things all day. अच्छा खेल Especially रहे off that previous timeout. Now Coach Carlisle wants that to आरसीबी stay तो in 100% the जीते ZETA needs to adjust something around it. Their Bye, attack, अच्छा you know, खेल again, ideas have been good. भाई Some जी tight
अच्छा खेला ये मैप, And then now, 2 when राउंड they want to बीटी दिया put the pedal on the लास्ट metal, मैप की they तरह, want to go लेकिन faster. अच्छा खेला. They're not quite able to catch the right timing on it. Lightning Fast gets to थोड़ा सा cut them down हल्का as सा they try to एग्रेशन cross. हो जाता है टाइम आउट के बाद तो It's always these 1 or 2
things that they're missing. It's those small things. And those ऐसा monster rounds है at this next level. round नहीं है You have to be so diligent. एक feek निकाल लो guys, And ZETA just tries to see if they भाई can उनके पास use अल्टी speed है and some क्रूशियल वाला timing and एक get over the line. गोवा You know, हाँ भाई तू तो all सब्जी the लेने जा रहा है ना teams in ऐसे वहाँ Pacific जाके दो Northwest, मार के आ जस्ट सेइंग रस के जितने smarts, असिस्ट है ना उतने आपके he's gotta किल्स be नहीं right होते up रैंक there. में You know, so many छोड़ दो मामा high IQ players. Especially yes. Libro just Especially like crazy. I'm catching strays here, dude. Zeta Division अजी कोई trying hate to दे adjust रहा है back around it. Trying to sneak up all the way through. Maybe a bit of a fake as the spike is actually being committed towards B. A lot of movements from them, but they don't find anything. Russ tries to punish and catch them. But कैसे you're रस not भाई के actually बारे में बोला T-bone POE guys, now T-bone going in for the POE. kill towards Benkai. Wow, The B split happening right underneath भाई our उसने noses. चेक ही नहीं किया Got from the shadows on Sugar Zero. He catches lightning fast. And all of a sudden, Global Esports and their setups have been dismantled. Yeah, it's unfortunate for सबसे us. पहली गलती रस I don't say that often, but Russ made a great read, had the right positioning, just the spray was a little bit too wild. And Yurdan has सबसे पहली that गलती big रस kill, that gets him सबसे fired दूसरी up. They're गलती able to keep Benkai at bay. ओमेन ने अल्ट using मारे the किसको combination पता of ही him नहीं है क्या भाई the updraft from जब depth. लाइटनिंग फर्स्ट उधर ही That's अल्ट मारे basically उसने them चेक ही नहीं barreling किया in. Sugar Zero finds one along the way on site, and that's all she wrote. ऐसा कौन मरता है ओमेन Have to हेलो go for the save at this point. Not much left to be done. There's enough okay, money it's not for the another end of buy, the world. sure, but Yeah, the money. you हाँ, don't पैसा want to है। give away the bank at this point. You need to hold on to It's that. not cash. को भी लगना चाहिए ना There's still a खेलने lot of अबे Last round भी ये राउंड likely to be जीतते played. नेक्स्ट राउंड इको जाते ना यार वो लोग वो नहीं लास्ट राउंड में देखो उन लोग ने 8 शॉट प्रेशर किया रोटेशन देनी पड़ेगी क्योंकि वो Really लोग shows, दो I ही mean, खेल this is रहे what हैं वो Zeta रोटेशन के was kind of चक्कर में missing. बी This is साइड why ओपन he होंगे was the आगे coach that's brought in अरे एक for जगह this लेना ही team. पड़ेगा नहीं अबे बी They साइड had that ओपन somewhere near a से couple rounds मैं ago. अल्ट मार के They चला saw गया a bit of उधर a fake सुगर towards a जीरो short अल्ट मार के गया and उधर B अल्ट split. अगर वो मार देता ये लोग मिट्टू भी नहीं आ Something पाते was इतना amiss. फास्ट जो घुस This गए ना time, जेटा वाले being able to get the kill वो on नहीं घुस towards पाते Russ, being able to teleport towards the कैसे back रस of का lightning नाम लिया fast, भाई securing B site. That's what they need. पोलवी भाई स्टेप अप हेलो An important round ऐसे ही खेल रहे पता नहीं do कुछ have तो होगा the कुछ प्रिपेयर किया है tic-tac-toe लोगों ने counter शायद to that ये रीटेक बहुत स्ट्रांग lockdown रहेगा with जी Euron इसके still लिए sitting on his एटलीस्ट पैसा है अगर ये sitting राउंड on his गया Hunter's नेक्स्ट Fury. राउंड Get it पैसा on. अच्छी Let's है have a null command. There he goes. They're gonna pop it. They're gonna really try to bully their way in through. रस भाई एक तो चाहिए Just running and gunning. Russ अरे? gets tucked away and hidden. अरे, But flash Blaze execute. flash does not work out. Flash But execute. hello, Blaze King. Oh, he's gonna get wall banged instead by Deb. Gonna res him. Did they not hear it? I don't think they heard it. Alright, नाइस नेड managed to pick it up. भाई सेटअप चेंज की जरूरत है भाई समझ गया जेटा को भाई Always सेटअप प्लीज situation. चेंज It's रस का मारने का too कोटा risky खत्म to हो push गया out of defender spawn. Can't quite use रस the भाई ने बोला कि मैं lockdown. इतने No मारूंगा kills going their way. अरे लेकिन Even आवाज at तो आ रहा है दूर 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 Guy's feet. He's gonna have to back out दूर of दूर it. दूर करके आवाज तो आ रहा है Getting a little वेरी bit श्योर dire. कि फ्लैश आएगा ही आएगा Save. Oh, Oh, he gets caught. फ्लैश से पहले वही आया दोल भाई सेव Oh, करो Laz. क्या किसको ढूंढ रहे तुम हो लोगों ने नोटिस किया no. क्या एक चीज सबका जो With that, abilities a का कीबाइंड है flawless, ना a pulsar flawless win spells coming in from Zeta Division. VCT Pacific Now the smell of That the is game, the for smell of observer. victory हाँ बट slowly अरे हाँ ऑब्जर्वर का ही रही slipping away from Global इधर दिखा Esports' रहा है grasp. ऐसा They're gonna have to तो make an EMA adjustment. का These mid EME pushes है have been devastating. है। The last two rounds have been mid hits. रिप्ले में सी For Zeta, that's what's broken open this B site for them. अलग Laz अलग so I good think on this these is the off last angles, round, so I good guess. at नहीं keeping your अब flank एग्रेस जाएगा secure. प्रॉब्लम वही है Time पता है and कि time अब है ना again. जब लाइट गंदा बाहर रहेगा ना अब देखना कुदर ना नहीं ये लास्ट Zeta भाई two है गंदा rounds भाई नहीं ये away लास्ट भाई है from taking this इसमें win. करो करो प्लीज Locked एग्रेस down to their own Hunter's Fury as well. Still keep Benkai locked down in नाइस कर check. रहे हैं No KO Hunter's Fury flash just something. yet for Blaze King. they A will couple leave it orbs alone. away. हां KO फ्लैश एंड गो You don't आउट really want to. चलेगा 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 Oh no, चलेगा Polly! Oh no. इट्स ओके ट्राई अच्छी ऐसे Not जीतते quite landing things up. हो गया अच्छा Russ ट्रेड makes थी it a trade. Need to make Indeed, plays, on towards man. step as Can't well. ट्रेड थी You do have these ultimate set up for the retake. एक भी जा रहे हैं ये लोग तो They're trying दो to be दिखाए अभी proactive एटलीस्ट on ये it तो to कि get उनका जेट है नहीं घुसने के information लिए डैश as वाला तो well नहीं as है to एटलीस्ट deal a क्लोज bit of कॉर्नर्स damage क्लोज towards क्वार्टर्स Zeta भी तो Division. खेल सकते हैं बहुत कुछ ऑप्शंस खुलते Without हैं जेट depth, मारा the तो executes are going to be that much more difficult on the attack.
attack. Exactly. So you're really going to have to Nice, rely nice, on this nice. lockdown, Rotation I अच्छी think, है. from Laz. And I think that might be why they're thinking about, A, tuck it in the cubby,
But look बस who's भाई reading this pretty 2 well. राउंड हो Ross, गया so अभी नहीं smart, but I think प्लीज they're sort of aware. It doesn't God matter. He's just better. Spike down mid. चलेगा प्लेस चाहिए अच्छा। भाई डिफेंस में भी प्लेस चाहिए लेट्स गो Knows he's in a bit of a tough spot now. Yuran समझना catches him out. कोई ना 2 ए पे It does show that he already had a bit of an idea as to what some of these Zeta division players are about to do. 30 seconds left. But now that he's gone, numbers evened out. Zeta gets to barrel through. Global Esports just don't quite have the numbers to reinforce these sites safely. 20 seconds. You'd like to see Yorudan be so careful. An early lockdown, anticipating this pressure. Yeah, this is a good time for it. Yes, you can clear it, but this buys you a little bit of time to get over. 10 seconds left. Okay. भाई जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सामने किलजॉय का अल्ट Make है sure that you get the spike planted safely. जल्दी रिटेक करो Plans his own lockdown now. हाँ ठीक है Global Esports has to push up front. They're trying to catch them by surprise. वो बेचारा काला ही था पूरे टाइम Wall banks in. Counter wall bank from Yuran. Pushing out at the right time around stairs, and the trade's coming through. Yuran looking for the final player who is detained. He actually just slips right past. He doesn't know. Oh God, Ben. Not enough help. Very close to it, almost winnable for Global Esports, but nonetheless, with the right ideas, with enough resources, ZETA Division pulls themselves over right to the edge of the finish line. There's 2 rookie things happening in that moment. One, you don't recognize where Benkai could be sitting with that detained. The other is the flick after he got. So it works out in the end. I mean, again, ZETA anticipating. He just gave him the hello. Hello love from India मेरी जान. But yeah, that's good stuff from ZETA. They're able to get into it, and the Hunter's Fury coming in, trying to shut this all down. But Death still able to find Benkai. This is where ZETA Division just goes in full force, no fear. Great execution. जीजी लग रहा है जीजी आपके साथ रीटेक इम्पॉसिबल Benkai not quite able to. है ना भाई मेरे को क्या मारा 2 मारा बेचो कैसे 2 kills back to back now onto the third. Lightning Fast shuts him down, but the damage has been done. ZETA Division right up towards the edge of it. Looking for the closing play. Never mind. Lightning Fast wants to deny. Smokes off the spike. Blaze King pushing in. First hit goes his way. A second kill now under his belt. Lightning Fast pushing along with his teammate who has fallen now. Sugar Zero trying to stay tucked away and hit it. Buys enough time. No defuse available. And that's gonna be the end of the game. ZETA Division, Sugar Zero just with the विनेबल तो था अच्छा खेला लेकिन विनेबल था ये बहुत लेट है ना प्लीज बनाए बे बहुत डिफरेंस पता नहीं मेरे को तो बहुत वेल के लाइक्स एंड स्टेट नहीं यार लाइक्स एंड स्टेट यार of success on their attacker side, having really good reads. भाई सुनो सच्ची टू समराइज दिस पहला वाला मैप बहुत गंदा ठीक है सेकंड वाला मैप बहुत बाप चैट बहुत बुरा हुआ लेकिन सेकंड वाला मैप 2 राउंड वो लोग ने किया हेवी वाली सीन्स ये वाला मैप में भी वो लोग ने 3-4 राउंड हेवी वाली सीन्स हार गए हैट्रिक हार गए हेवी वाले सीन्स लेकिन कंसीडरिंग लास्ट टाइम से इस बार बेटर खेला ग्लोबल 2 मैप बेटर खेला लास्ट टाइम इससे बहुत लेफ्ट राइट था 2 मैप बेटर खेला That spot, ZETA too Ross strong, having a tremendous performance. Guys, here we on tried. Ascent, ZETA too strong. But ZETA हाँ जाओ अभी तुम लोग ट्विटर पे अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता जाओ ट्विटर पे जाओ कितना सोच रहे थे वो 1v4 जो लैज ने मारा है वहां पे 4 और राउंड भी तो यार हाँ वही मैं बोला ना और फिर एक मिड से रोटेशन दे रहे जब है ना अपना बेंका ऑलरेडी बी पे मार के बैठा है पॉल भी घुस रहा है शॉट पे भाई सीन क्या मतलब अभी वो 2v4 वाला राउंड है ना उसमें केओ के पास अल्टी थी ठीक है और वो राउंड के बाद वाला राउंड वो लोग का इको है तो ऐसे टाइम पे अल्ट नहीं यूज होना चाहिए टेक्निकली डिफेंस सेटअप भी पता नहीं क्या जेट को ए हेवन से खिला रहे हैं ओमन ए शॉट में ट्री पे खेल रहा है और मार्केट पे क्यों और 2 बी पे अलग ही कुछ और वो भारी पड़ा अलग कुछ सेटअप्स बनाया था एसेंट में एकदम बेसिक वनीला कॉम्प पे भी खेलते थे तो भी अच्छा नहीं बेटा देना हां नेवर माइंड एनीवे जीजी अच्छा खेला नेक्स्ट टाइम एंटी जीजी एंटी टिबोन की वजह से आ रहे चलो बाय बाय गाइस ये बाद में आ रहा है फाइमैन बाद में अभी थोड़ा
लंच विंच करके ब्रेक लेंगे फिर आते हैं, जिम भी जाना है। That was an incredible win by Zeta Let's Division, मतलब but honestly, जिम वाला जिम के GEELI was बाद fighting Zeta all का the way individual through, plays and बहुत they had crazy some दिख रहे very convincing rounds. Zeta का No, they really did. individual I plays mean, this crazy. was, I think, in the end, a little bit more of a one-sided scoreline than I had Cat बोल anticipated. रहा था Again, I was तू talking जिनका, about how मैं Zeta, नहीं। oftentimes they come into this map, they end up playing incredibly close bye series. T1, bye Mamba, bye Big Bye. I'd say, Bye. Love you, love you. It's like 75% of this map, it really was that back and forth, that really neck वो and लोग का neck individual play plays बहुत between अच्छा both of है। these squads. Lots of clutches from both मतलब teams, but Zeta ultimately Depth और just last a bit 6 better. year। I mean, typically over here in Pacific, we see a lot नहीं, of G का defenders किसके and against है पता sided नहीं। advantages on Ascent, but this was very much a battle of the attacking teams. Yeah, if I could just hyper focus on some of the Yeah, things अभी here, इसकी मैच है बे। I think because of Pacific the fact X that champs, Heron was DRX. performing, I would say for Zeta Division, there were some rounds where he अभी just अभी feels का like, मैच भी अच्छा है। he kind of misplaced himself in the map. And Secret that's versus where you DRX see, है, Jesse again, J you know, बोलते। the staple global esports where they like to spread themselves across the map, try to pinch as slowly as possible, but then create those lurk scenarios. One example of that was that tree position where Heron wasn't aware of the lurk that came from Global Esports, which opened up that A site, which Binks, allowed तेरे को them ये to देखने के बाद get into खेलना the है ना? site and bully. I believe that was Sugar Zero हाँ, ये and Depth. देखने के बाद Those खेलना kind है, of फिर rounds Premier happen खेलना है। pretty often here for Global Esports. हाँ, And एक like मैप बचा है। Big Berthin was saying, the boop on the head for Benkai where he wasn't spotted at all, gets a 3K. Very big things like that for Global was happening. Let's just say both teams coming away with this one. Zeta, they can hold their heads a little bit higher because they get the win, but maybe go back and just check some corners. Even in Premier, ये देखना So चाहता many हूँ। moments where I mean, Chat में अभी ध्यान दे रहे थे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। जी बार लोअर Premier में ब्रैकेट। कह रही साढ़े 400 सिनर्जी नहीं देख रहा बंस भाई, सिनर्जी डीप मान भाई लव यू। है दिक्कतें हैं टीम में दिख रहा है, लेकिन एक मैप अच्छा खेला है, इम्प्रूवमेंट है। लास्ट मैप जीत सकते थे, Yeah, I तीन think so. चार I राउंड think यू this is खेला। a really good showing from both teams, starting off the stage one. But you're right, there are some mistakes that are very fixable, and we want to Plus see one. that kind of tighten up, Plus cleaned one up बोलो, plus for one Zeta बोलो। Division, so you don't rely just on Depth's crazy 3-4Ks to you know Zeta की तरफ बोल रही to है। change that momentum तेरी around. दोस्ती है। And we also हाँ? had some really critical timeouts क्या बोल रही है? called by each respective coaches, so I think they have a lot of good ideas. बोल जल्दी यार, मुक्का मारूंगा ना ऐसा। Yeah, I mean, I think both teams had a very solid approach to, especially this last map. I mean, clearly. गेस करो इतनी खुश की दिख रही है। Everything to do when it comes down to Yes, Sunset on that first नहीं map. सो A यूं lot में of work ज़्यादा, to be ठीक done है? to try to get 4 themselves o'clock. up to a playable level with that. 10:30. But same could be said for Yeah. Zeta, a bit more over on Icebox, where they continue to have a 6:30 rough to time. This 10:30 was is how much? a lot दो more घंटा। of an even match between दो these two घंटा ज़्यादा squads, लेटा and भी I है। think that Two both and teams a came half in with hour. decent game plans, and Zeta were just able to be a little bit more clutch, have नहीं slightly कोई। better reads, and stick to the game plan a Women little bit need better. more sleep. Yeah, I just love how भाई I एक think में वो for रील the most बनाने part, वाला हूँ, जो they पिंकी It's had a lot scientifically more proven now. पिंकी grasp सोती है on some of the वर्सेस मैं, tricky एक plays वो that रील। मैं क्या करूँ? what उसको was नींद it नहीं आ रही, that मेरी गलती। Global पिंकी Esports जब did. There was उठती है that ना, pinch play that तभी we saw मेक on श्योर mid करते कि मालूम where पड़े कि it just हाँ didn't मैं work उठी out हूँ। for तू Global अंदर Esports. के and side they में were उठ। able to sniff it out सुन। very quickly. So these kind of मैं उठी हूँ, situations, तू भी उठ। those कल kind देख मैं of किधर quick से। adaptations really helped out Zeta and just evening That's out right. this entire दरवाजे का बात entire कर series and रहा हूँ। दरवाजा third map. तू डैह करके बंद करती है अंदर जाते की वक्त, side Most सोए। fun situations are, I mean, again, डैह करके just बंद keep करते हैं। emphasizing- मैं उठी हूँ, घूम के जाना It's पड़ता है। not- I mean, we had our तो दरवाजे पे predictions, के गुस्सा निकालते घूम के but जाने के I तो। think a lot of us, सुबह सुबह। maybe not me, but a lot of us, तू अंदर thought it सो was रहा going to है। be a 2-0, so I'm really glad भाई to see इम्प्रूवमेंट तो अच्छा था, मजा आया लेकिन। Yeah, you know, NT again, I think the rebound from रूस Global MVP है, shows a lot about लेकिन the रूस ने ability 2 to राउंड थोड़ा just reset their mental- किया। their mental because मेन getting I dominated think for main long mistake stretches is dear not something Paulvi. that feels good ये तो at सोच- all. So हाँ, be able कुछ to दिन सोच के Paulvi सुबह- could have played a lot better this map. बाकी Benkai played good, Golu played good, Blazkey played good, Russ also played good, but over the above वाला उसका ये वाला था मैप, समझ रहे हो? टाइम टू शाइन वाला मैप था, बहुत अच्छा स्टार्टिंग में बहुत मार रहा था, But you know what? रुक गया We've अचानक seen से। odds overcome all the time कोई ना, here in Pacific. मजा आया। And then we're रुक now जाओ, looking at मोबाइल the चालू board करके for जरा two देख क्या है। MVPs for us. Chat, And Laz, जो uh, 5000 you know, लोग we were यहाँ से talking गए about ना a bit अचानक about से the performance, ट्वीट having a करने। debate between who's the MVP here of Zeta, Depth or Hashtag Laz. Binks भी लिखो। Yeah, I mean, you could मत गिर। argue both of them honestly, मेरे को because बाहर again,
again, Depp, he's the multi-kill king. नहीं और He's मैच है lower basically bracket. throw into a site, he'll give
लोअर ब्रैकेट है। मुझे क्या पता, तू वॉच पार्टी कर रहा, मैं थोड़ी कर रही हूँ। राउंड रॉबिन है ना, एक टीम सब टीम के सामने हाँ, तो खेलेगी। तुझे पता है, तू जवाब दे ना। राउंड रॉबिन मेरा थोड़ी वॉच पार्टी। ये लोअर ब्रैकेट है। हेलो, मुझे क्या पता। राउंड रॉबिन मुझे क्या पता, मैं थोड़ी वॉच पार्टी कर रही हूँ। कौन सा लोअर ब्रैकेट सबसे लड़ना है? राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन मेरे को पता था, मेरे को पता था। मैं टेस्ट कर रही थी अपने हस्बैंड को, बस वही है। बग्स भाई शुड जॉइन जी, उधर भी यूसी करेगा, अच्छा लगेगा ऐसे पूरे दुनिया के सामने यूसी देखते हुए तुम लोग को। वो भी है, पॉइंट है रे। भाई इवन भाई एक मिनट मेरे को सुनना है। क्या सुनना है टीबो? I still favored ZETA just given the historical matchups and whatnot, and that kind of just remains for me. I think that Global still showed that like they can be a team. I agree, कुछ दिन Binks घर पे नहीं रहेगा आपको They do come up वही with यार, very solid वही। ideas, and there is a lot of firepower on this squad. It's really just about aligning it all to, पर मुझे to maximize ठीक the है। output of it. Whereas ZETA, we know that शायरी this is a पढ़ो team that प्लीज, can इतना just बड़ा really मैसेज कैसे? peak, jump way up to the top and contend with everybody, but then also fall back and have some rough games against teams that you might not anticipate. So I think that widely they kind of remain exactly where they were for me after kickoff. Yeah. But yes, right? I mean, everybody's improving, right? We see how much Global Esports have really put into figuring out some of the maps here. Some of them not so much yet. It's This guy came for Convergence. It's an improving process, but then ZETA just also did the same thing, and so it's kind of gone like that. If I could just like physically move Yeah, it, they're moving in scale. parallel alongside each other. They both get a star. Yeah, for like sure. both like thumbs up and a star, and they both been doing really well. Now we were discussing about the rookies a bit, especially you, Asura. You know, you really you were observing Hiroron a little bit. And do you have any, I guess, thoughts I knew you it. want to I share knew it. from मैं आप लोगों backstage को here? टेस्ट I think he's on a level where he's Guys, trying to ये do so बड़ा many बेर किधर things मिलेगा? on his Please मेरे को role बता that देना, sometimes he रखना। just misses those slight fundamentals, right? He sometimes forgets to check this angle. He sometimes forget that he has to hold this certain हल्का position तो so that they जिंगिस don't lose back that on map हो, control. कभी है So these पेपर है, tiny कभी है। these tiny bits for Hiroron costed some pretty crucial rounds here for ZETA Division. Yeah, I mean, I think that the KO is something that still is just going to take some more iterations for him to really get the handle of and have it feel like a natural agent pick for him. Looks like right now it's still just a little bit rough, but that's something that's, you know, obviously going to come with time. Well, we are getting ready for our interview with today's MVP from ZETA Division, and I'm just really glad, first of all, I have to say, I'm really glad to see Chamber back, and I hope to see more of him this stage 1. With that, let's go over to the stage with Jen and ZETA Even Division's paper है, MVP. कल है, परसों है, परसों है। अभी टीम Thank you guys, and here we have ZETA Division with कल ही the है ना W मतलब? on the board कल after after their second victory match is against Global Esports. Now I'm standing here with Laz for a quick post-match कल है, interview, हाँ भाई, and कल। of course, fans are already sending so much love to Laz. But Laz, congratulations. Now I want to start with Sunset. Guys, 13-1. भाई Laz तो मॉडल जैसा लगता है Completely भाई। demolished Global Esports. Dap on Phoenix, तुम and you कोरियन back on ऐसे the star chamber. हो ना So talk to me about why देख भाई गेम भी अच्छा खेलता है, दिखता भी अच्छा भाई। जेलस हूँ मैं, जेलस। 3セットが13対1でイボンभाई大差をつけ आप た試合 खेलते に भी なり नहीं हो ました。 दिखते भी नहीं デッ हो プ選手がフェニックスだったり、ラズさんが बचते チェンバー क्यों だ फिर ったり इतना と構成に変化があったと思うんですけど、どういった意図で Last はい、まあいろいろ試していく中で、この構成、この組み合わせでいくのが一番強いかなっていうのをチームで話し合って、今回、大会で出せたっていう感じです。でまあ個人的にはこの大会でチェンバーを出したっていうのがすごく嬉しく思ってます。
So we tried a lot of different comps during our practices, and we figured that the new comp that we did on Sunset was the best choice that we made. Personally, I'm glad that I get to play Chamber again at the tournaments. Yeah, as you mentioned, we love seeing you back on that Chamber. Do you feel like there's extra confidence and extra oomph when you're running this agent yourself? And will we get to see more of that Chamber on different maps? 我々ファンのみんなも、ラズさんのチェンバーを見れるっていうのがとても喜んでると思うんですけれども、ラズさんがチェンバーをやってる時になんか特別自信があったり、なんか気合が入るような運気があったりします。あとまたもっとチェンバー見れますか？そうですね、まあやっぱ他のセンチネルのエージェントよりアグレッシブなんで、普段より打ち合いが増えて、で個人的にやっぱりこういうスタイルが自分に一番合ってるので、気合も入りますね。もう自然と入る感じがします。で他のマップで見れるかどうかはちょっと今は詳しくは言えないんですけど、他のマップで出た時にお楽しみっていう感じですか。Yeah, so compared to other Sentinels, Chamber is a little more aggressive. So I do feel that I'm a bit more aggressive. I feel more into the character and the agent when I'm playing Chamber. And regarding the other maps, you'll just have to wait and see. Right, we'll just have to wait and see. Just briefly, I want to talk about Icebox as well, because I feel like that was your only struggle today. What do you think went wrong, and what do you think made it tricky? My God, Jessica. 今日のアイスボックスについて印象だったんですけれども、何が問題で何が原因で結構なかなか思い通りにいかなかったのかなと感じます。そうですね、なんだろう、簡単に言えば、もちろん相手にうまく対応できなかったっていうのが大きいと思ってます。でそれも結構普段の練習相手とかと戦い方がかなり違くて、攻め方、戦い方をされたのはかなり久しぶりというか初めてレベルかな。で高専も初めて見るようなもんだし、で大会の場で今まで対応したことがないようなことをやるっていうことで、ほとんど初めてみたいなもんだったんで、そこで苦戦したかなと思ってますけど、次はすぐ良くなると思ってます。यार इतना प्यारा Say it out इंटरव्यू और simply, इतना प्यारा we couldn't नोट्स adjust to what they were doing to Questions us, के साथ। and they're a completely different team from the usual teams that we मैं practice सेंटर में against. रहूंगी, मैं And सेंटर में there was a lot of रहूंगी। first times. Seeing their comp was the first time. The way they play the game was the first time, especially on Icebox. So it's something that we really see at the tournament circumstance. So I think we'll be able to fix it by the next time we go against GE. But yeah, it was a lot of surprises today. The stylistic difference kind of caught you off guard, but यार तुझे कोरिया congratulations जाएगा ना? once again, Laz. Unfortunately, that's all the time we have for मिलने this वाले interview. हैं, So में। best of luck in your next match, and I'm gonna toss it off to a short मिलना break, नहीं। but don't go anywhere because after टाइम ही this नहीं रहेगा break ना। we have Team Secret. यहाँ पे taking 10 on फ्रेंड्स DeathAdder. रहेंगे मेरे, यहाँ पे 10 फ्रेंड 20 फ्रेंड्स के साथ मैं घूमूंगा, टाइम ही नहीं रहेगा इससे। उसको पूछना ना। ना मिलने वाला। Life is hard यार। इबन भाई। क्या आप भी वही देख रहे हो? एक सेकंड टिबन भाई। How would we go to another Discord? There's a mole here. थोड़ा व्हाट्सएप करना है टिबन भाई। एक सेकंड में There's आया। a mole here. We gotta go to another Discord. इग्नोर हुए आप जैसे। टिबन भाई मैं आपको मैसेज करता हूं, रुको। Let's go to another Discord. There's a mole and a rat here. आराम चल। साला ब्रोक और कौन ब्रोक करता है गाइस बताओ? मैं नहीं किया। कपा क्लोज कर सकते थे ना यार। हमेशा टोक करते हैं अपन, चुप। जीबे मामा। मैं बोल नहीं सकता, बोल देता तो विवाद हो जाता। क्या है, मेरे को भेज। स्क्रीनशॉट भेज इसको। भेज। एकदम गंदा नीच आदमी। किसने लिखा मामा क्रिंज करके भेज? क्रिंज नहीं है रे पापा, नीच कैसे? इंजरे नीच आदमी है, नीच। इस नीचर। भेज मामा। टीबन भेज रहा है ना? तू भेजना। तू भेज। टिबन बड़ा हो गया रे अभी, कर लिया उसने। कौन
मोबाइल खोल के वापस देखो 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 पेज बड़े होल्ड कर लोगों पिंक्स का। होल्ड कर टिबोन भाई इतने भड़वे हैं। मैं बोला वैलो खेलते तो बोलता यार आई प्रॉमिस मैं स्ट्रीम यार देख भेजा तेरे को डिटेक्टिव कॉप करूंगा। कल जो प्रॉमिस फैमिली किया टाइम था बाबा, हाँ कल लेट भोसड़ी हो के जो गया प्रॉमिस डिनर किया में। तभी कुछ नहीं। हाँ मैं फैमिली नहीं हूँ मतलब। तेरा नहीं है वो तेरे को पता ना। मामा भाई शर्म करो हैशटैग के साथ पढ़ बे सादा शर्म हैशटैग के साथ शर्म करो। नहीं भाई एक भी कंट्रोल के लिए देखो, फाइट जो नहीं किया बोला वो भाई। सच बोलो, उसमें कुछ गलत नहीं है। 4v2 दर्द हुआ रे। वो 4v2 में अगर अल्टी मार के शादीशुदा, केओ आप पूरा रहने दो। अंदर जाता था ना। कौन सा पिंक सिंगल है लौंडे? मैं भी सिंगल हूँ भाई। हेलो भाई बैचलर हूँ मैं मोस्ट एलिजिबल। पिंकी इधर है करके मैं आंसर नहीं दे सकता। नीच आदमी हैशटैग। टिबोन इस बात में खुश हो रहा होगा ना बहुत खुश गया। अच्छा मैंने क्यों उस आप दिन हमेशा बता ऐसा दिया बोलते हो कि मैं सिंगल नहीं हूँ। आपको पता मेरे प्रोस्पेक्टिव मेरे प्रोस्पेक्ट्स खराब कर रहे हो ऐसा बोल के। क्या प्रोस्टेट है? प्रोस्टेट वो 4v2 के बाद फपल गिरे अपन। टिबोन तू जा रही भाई प्लीज। थोड़ा मैच 2 राउंड चालू अटैक हो में जाता। और 2 राउंड डिफेंस में। मतलब रस अगर वो मिड में मार देता ना शायद वो भी राउंड जीत अब जाता। जीतेंगे यार इस पर। एक बार जी भूख लगी ना मार्क कर रहा है रिकॉन साइड मॉलो शॉट करना था। नहीं रिकॉन मॉलो हेवन किया ठीक है। वो लोग का हेवन देखने का नहीं है। शॉट में वो लोग निकले लेकिन उसने अल्टी क्यों नहीं मारा? क्योंकि नेक्स्ट राउंड अगर वो लोग राउंड जीत जाते ना नेक्स्ट राउंड वो लोग इको जाते। तो टेक्निकली एक अल्टी यूज करना फॉर 2 राउंड्स इज नॉट बैड। मैं चला वीएलआर पे कमेंट पढ़ने। ब्रो वीएलआर में भी कमेंट कर सकते भाई हैं। ट्विटर पे हेवी हेट। ट्विटर पे चल रहा है क्या कुछ? बूम बा ऑब्वियसली नॉर्मल है अब तो। बूम बा हैट्रिक नहीं हुआ हो रही होगी तो सब ऋषि भाई को कैसा लग रहा होगा बे? रोज हेट मिलता है। हाँ? मैं टैग ऋषि हो भाई को वो अंदर से अलग। ऐसा नहीं लग रहा हो क्या कर रहे हो यार? रोज हेट का भाई क्या ट्वीट? If GE wins today, if GE wins map 1, I skip my gym today. बस लड़कियों का ट्रीट पढ़ो आप मामा भाई। भाई आते पहला वो आया भाई। मैं तो फॉलो भी नहीं कर रहा होगा हाँ वो भाई। अलग बात। टीबोन में आप ट्विटर पे हो? व्हाट्सएप पे हो? ए ट्विटर ए लाउड है टीबोन फॉलो करता हूं तेरे को। अभी बोला करो। बिंग्स में आपको करता हूं मेरे को। टिबोन में आप 1 मिलियन फैमिली में कुछ लिखते हो कि नहीं टिबोन भाई? अंकल्स के जैसे गुड मॉर्निंग गुड दिन नाइट। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आएगा स्विच व्हाट्सएप स्ट्रीमर 1 मिलियन वाह। वनटे हो गया चल। तो जीतो यार वही मैं बोलता हूं। एक जीत गया ना। 0-2 की लिखा है? कौन लिखा है? किसने लिखा है 0-2? अच्छा प्रोडक्शन। Welcome back to VCT Pacific Stage 1. चलो, ZETA 100% moves on votes. up being the first to gain one championship. भाई तुम कौन सा ट्विटर पढ़ रहे हो? मेरे ट्विटर पे तो कुछ नहीं है। तो टैग नहीं होता ना। माफ करो रे बाबा। साला सो रूड है यार। तो बात नहीं गाइस, जिस दिन फ्री फायर वापस आया ना फिर मैं बचूंगा। टट्टो पे रखेंगे हमको ये। आलोक देना मुझे। अगली बार ईमेल करना पड़ेगा। एनी प्लान्स फॉर टुनाइट प्लेइंग? टिबोन भाई इंटरव्यू देके। किसका? I think they would have like no practice, but I think the player they got is still pretty good, so I think it will be a very close match. Who's winning then? Still us, but it will be a close match. All right. Well, good luck today, and I'm gonna keep my eye on you. Esports में जाना पड़ेगा टिबोन भाई। I'm watching yeah, she's Hey Tivon, eyes on it's envy. time to go.
The guy who likes clove. Well, Asterai, Team Secrets lineup. भाई not much जेसी has भाई अभी भी changed, खेल रहे and things are गेमिंग coming भाई in ये मेरा stronger वो है by the मोटिवेशन end of kickoff. Who should we be on the lookout for on this roster? Definitely Jesse Vash and Envy. And it's because of the reason that they are the players that activate the other players of Team Secret. All right, we're gonna dig more into this later. DRX is ready for their interview with Jen. आगे विनर्स तक क्यूटीज आगे बे How do you feel? मेरे से भी ऐसा इंटरव्यू करे तो अच्छा लगता मैं क्या बोलता था जब मैं स्टेज पे बोलता था मेरे पास है तो मेरे पास नहीं आता था तू जा रे बोल क्या बोला इसने बेचारे को इसने रुला है क्या बेचारे को ये हारा तो भाग गया आती ब्रो क्या प्रेडिक्शन है 101% DRX जीतेगा भाई सबसे क्यूटेस्ट लोग हैं वो देखते माँ को देख स्टैट्स देख यार स्टैट्स not really giving her much to go off of there, but I don't know. We'll see, I suppose. Now, a lot of shuffling around for the DRX roster since we last saw them in February. Now, with this roster, the question is, with Bane in, who's playing what role? Ben first time देख रहे हैं ना अपन So for those who don't know, Bane, this is a guy who has been in the DRX system for quite some time. He has been in their, kind of academy, their trainee team for a very long time. And then has been loaned out and has played on a multitude of different teams. Was playing on F4Q and Korean Challengers. Went over to China for a bit as well to play with all gamers before. So, he's been around the block. He's been in the scene for a very long time. And he's finally being called up to the main team by DRX. This guy typically does play duelist. He's quite good at it. बल्ले बल्ले कर रहे As you हैं say, of who is going to be playing what? Do we see him stepping into playing duelist over the likes of Buzz? Is DRX going to lean into more double duelist setups, similar to what we see from Paper Rex and whatnot? There's a couple different things that they could do. I think that DRX is probably just going to end up doing the DRX thing, which is take a guy who's very good at playing duelist and then make him play something else and make him good at that. Sen का PC देखा तेरा setup में मस्त I know you're not as biased, should I say, towards DRX. Yeah, but at least from my experience, watching this team as well, remember how they brought in Foxy9 and they were just like pretty good with with that kind of adaptation. So not PaperX, but DRX is coming into this series still having that experience that they know how to cultivate these type of players with the very little time that is given them to adjust with that particular new addition. Now, I do have to ask, and like the graphic we're seeing here, this one is surely hard to predict. Team Secret was the very first Pacific team to defeat DRX, and that was last year. What's the secret sauce, Asterai? What is it that, oldest goat in the VCT? So, the lore that... what did you say? They go A. There's a Haven now, so what is कौन है रे एकदम experienced player just है कि Angel है not going international just yet was they do like to scrim a lot with the Korean teams, so I think it's just more of they have been just basically diving into this type of region. They know already the ins and outs. The movements of DRX because they've been playing in this region for the very longest time. That's really interesting information. Team Secret scrimming a lot against. Bunks भाई अपना next premier match कभी है? For a while, but I gotta give props to Jeremy here. I mean, granted, Team Secret, they put up some really tough performances and some really great efforts in the kickoff. Whereas obviously we saw DRX faltering a little bit. As far as like KD is concerned, I'm not shocked to see Buzz. But the fact that Jeremy's beating him in pretty much every other one is a damn good sign here for Team Secret. Yeah, both of these teams historically have really incredible moments. And, we also have tons of data, obviously, since last year on their map win and loss percentages. In fact, we're going to go to the vetoes right now. Here's to see where they're going to be taking this one. Newest, strongest map that I would say for Secret has been, especially with Haven being removed, I think has been so maybe they have been banning Bind and not showing as well, at least in kickoff. They weren't showing as much splits
But you're right. They have been kind of crazy on split last year anyway. अरे Their मत roster is kind of करो insane. यार Okay, but they please. actually banned Icebox, and I don't. नहीं यार. DRX, I mean, they haven't played this at all, nor have Team नहीं Secret, so I'm यार. curious if भाई DRX ऑडियंस को भी एक expected मिलना the चाहिए Secret बैन just करने का also मैप. just move away from Sunset, सारे रीजन and के that सारे both teams ऑडियंस would वोट just kind करो of कौन leave it, सा and then they मैप could ban बैन it in the होना second चाहिए. round. बैन I'm चाहिए. very curious to see if DRX does have a एक very मैप solid जो game plan किसको for नहीं this देख. map coming into it, but with their own pick, they're going to be leaning on Lotus once more, and this is something that has bit them in the rear in the past. Yeah, I'm just loving the Sunset pickup here. For some reason, it's the first map of each and every day, which I'm a big fan of. You know, I like that. I like seeing, you know, the सारे newest places maps लेके or आऊंगा मैं newest कोरिया से. agents being used or being एक played. I वो think भी, it makes it really exciting, and I'm not surprised Breeze has gone straight through, and both of these teams have been okay on Breeze. And Sunset, this is the first time we're going to see Sunset from both of these teams this year. Yeah, and I mean, historically, when it comes down to debuting, hasn't been great for DRX. So this does have me a little bit concerned. I think they need to be so over-prepared for this, because you think about, you know, they were talking big game about their fracture all the way back at Champs in 2021. Played it, didn't look great. They didn't play Lotus for the longest time last season. Played it in the grand final. Got absolutely VCT bombed match on it. bolte. So now they're going for Sunset, and I don't know what to expect. I don't think any of us do, but you know what? We can ask someone. We have a guest with us. He loves cat cafes. He loves watching VODs. Why many it's teams Team Secrets prefer coach, to bind ban? Warbirds. दोनों का strong Welcome. map पे रहेगा ना. Get over here. मेरे को तो मजा आएगा अभी Jing is back. I know you had to कल run भाई backstage. कल मजा आएगा. कल मजा आएगा. It's actually crazy. This venue is enormous. Anyway, welcome. You know, Secret was looking really strong by the end of kickoff. And what was the game-changing factor there, the wake-up call? And what can we expect for stage 1? Yeah, so for us, I think it was just like we were playing really sloppy in our first series versus Talon. Meanwhile, Teddy's just chilling. After that, like we took us some time. Like the DFM series wasn't clean at all, but like we were still able to get better as like the weeks went on, or like as the matches went on. So I think for us, it's just hitting the reset button, making sure that we start on time, because like especially some of the maps, like we went down like pretty bad early on. So yeah, just make sure we start on time and then clean up a lot of the messiness. All right, and Aster had a question about NDG. Yeah, so you were mentioning about how Hi, it Adi. wasn't super Delete clean that. at the start. Adi, NDG haram, feels like he had Jade. some, you're laughing. You see what I'm We going joke with about this a lot. Yeah. So what's up with NDG? How were you able to kind of address some of the issues that he had during kickoff? Yeah, I mean, for him, it was just a lot of nerves. So like, we even talked about this like a few weeks ago, where like he was super like tense whenever he played. So it's like, just relax. Like, you're gonna mess up no matter what. Like, it doesn't. No player is perfect, so you're gonna mess up, and that's okay. So like, don't worry about it. Don't fret about it. Just play your best game. Now, I was curious because, so every single time it seems that I have predicted for your squad to win a match, you don't do it. Did you predict us? Well, we'll get to that in a little bit. No, I mean, why do you think that there's sometimes these swings where you come in and you're so dominant when no one expects you to be, and then sometimes you're not able to get the wins where we think that you should be, on top? What do you think kind of leads to that semi-inconsistency? Yeah, I think nerves can play a little Will bit. miss Into it. money Like, though. Jing always on top. When we play to like not lose, that's when we play bad. But when Too we many play to memories win, with like, Jing. if we lose versus Paper X, like Paper X is expected, like last year's Paper X, like Paper X is expected to win. So like there's now no nerves, nothing. Like we just play our game. Whereas like maybe versus a team that we're supposed to beat, we like play to not lose the round, and we're not willing to take risks, or like we're too much in our heads. So it's just about like leveling that out. Like don't worry about it. We're gonna make mistakes, and that's okay. But yeah. Do you find that in those kinds of games, like when you're calling timeouts, it's mostly just reminding the players about that exact fact? Yeah, a lot of times we do like most Go of my karo, timeouts gaming tend to karni be hai. like, okay, like it's just a tempo, like let's reset, breathe for a Kya little pata bit, mind and then we freak can out go on mane and nahi fix nahi. stuff. And I have to ask you, last year you were the only team to defeat both DRX and PaperX. Now DRX is looking a little bit different this year. A lot of changes suddenly. What are your thoughts on DRX now? I mean, the core is still there, so they're gonna be good no matter what. As long as they have that core, they will be good. So just because they had like some roster changes. Guys, we are close to last 9K minute, likes.
we'll treat them with the same respect as they were previously. Like कर दो stream. Not really, just because like Predictions it's been so Tipun bhai. long to the point where you can start to phase out like anti-stratting and focus more on yourself. Like you can go back and look a little bit, but you don't want to delve too much into it just because it's been Hey, a month Pankado. and a half, 2 months. So You free, you don't kya? want to rely too much on the anti-strat. Yeah, just focus on it. Well, keep focusing on yourselves. You guys are looking good, looking good. Anyway, all the best on your upcoming match against DRX, and take care, Warbirds. Thank you, thank you. Have a good Bye-bye. one. Wait, you didn't answer. Did you predict us? Oh, hell yeah. Oh no. It's okay. I'll balance it out. Okay, thank you. I mean, this is really Achilles' fault. They do it just to prove Achilles wrong. We can't have them doing these kind of They things. lost I 2-1. truly am They believing. lost 2-1. That's the thing. Like, you know, it's up to them. I mean, look, they've come close so many times. You know, LCQ last year, even this year with kickoff. Anyway, let's get into it. We're going to go over to our casters, Quack and Paper Thin, for this highly anticipated match. DRX बोलते चटी खोलते DRX बोलते चटी खोलते. Thank you very much, Victoria, Achilles, and Asura. Yeah, it's a big match. It's a big one, but the सिर्फ predictions दिखा रहे seem लोगों to को रे swing all दिखा over the रहे. place. Meanwhile, taking a look at the map picks, you know, this is just kind of interesting. The fact आपका that we're गेम पे starting to रोज shut on देखना पड़ता है. Sunset. कुछ बोला हमने? No idea what to expect here from either side. They've never played it, so you know it's fun coming into a match when कोई सीट you पे just नहीं है get to टिबोन. kind of experience it, right? You get to see this for the first time, see what both teams are thinking. एंट्री Coming नहीं है into वो a new सीट पे map. कहाँ से रहेंगे? I think they're both going to have very good ideas on this map, frankly. I think it will probably be decently contested. You know, Lotus for DRX, again, kind of up and down for them, as Achilles mentioned on the desk. Breeze is the decider. प्रीमियर मैच can come स्ट्रीम down to करने a bit वाले of an तो aim स्टोरी dueling डालो. map, मेरे which का has me आइडिया a नहीं little है. bit concerned for DRX because by the end of kickoff, सब मेरे Team आत्मा के Secret ऊपर was है. really popping. I mean, Jeremy in particular started to look phenomenal on the duelist. NDG got his बंक्स nervousness FC out of तुम्हारे it. He मॉड started का playing सुन great. लो. बहुत You know, कोशिश हो Envy रही is है. Envy. He's always strong. 40 Jesse रुपए में Bash had सुनूं some big मैं. moments. So, like, the whole team. आदित्य भाई कैसे and जिम even जा रहे Morgan हो? had some good moments. आदित्य भाई. So, like, I'm really... मादर चुत मच्छर कहाँ से आ गई? really, sorry, Achilles gave me a look and it made me I'm really keen to see if we can get to that third map and how their relative firepower will shake up, because Bane's not a bad player at all. Like, he's been on the DRX भाई prospect तेरे को team पता है before. टिबोन वैलो इंडिया में और ग्रो कैसी हो सकती है? बोलो. राइट स्टोर. हाँ ना, एक्चुअली सबके घर में प्लशीज. नहीं, एक्चुअली एक ऑनलाइन राइट स्टोर होनी चाहिए. पोस्टर्स हो, फिगर्स हो, फिगर रिंग्स हो. फिंगर क्या? फिगरिंग्स बोलते उसे. फिगरीन. फिगरिंग्स. उसके बाद फिगरीन. वीपी का कूपन कोड, ऐसा कुछ समझ रहे हो? ऑनलाइन स्टोर अच्छी आइडिया, अच्छी है. मर्च हो ब्रो, मर्च. हाउ कैन यू फॉरगेट मर्च? ऑफिशियल मर्च. डब्ल्यू आइडिया भाई. लग तो सेक्सी है भाई स्टेज वेज. तेज सेक्सी होना है. Mama, what are your thoughts on this? I told him not yet. And what? Not yet. Not this time. Not yeah. this So time. Not this भाई time. स्टोर पे स्टेज पे किस में लौड़े? I mean, that's the thing. Store एक Will मर्च they ऑनलाइन still स्टोर, be राइट as ऑफिशियल strong as इंडिया. they've been भाई लेकिन before, रीजनल even प्राइसिंग के with, साथ ही 10,000 का प्लशी नहीं prospect लेने वाला. player ठीक है. joining their current ठीक है, roster. वो बात कर लेंगे. Will आते Team ही आ Secret रहा start to प्राइसिंग. go on भाई this भाई. upwards trajectory? Will Team Secret improve तुम्हारे जैसे and कोड भाई suddenly महीने be का the 50 team लाख. that takes down ये ना DRX बोलियो again? आप. ठीक है, I रोज think they आप really फ्लैट के can. I बाहर really like बालकनी You're में not आप just फोटो fixing डालते हो. हम नहीं. No, Right. no, I'm the जब opposite. 10 जगह आप रोज कास्टिंग कर रहे थे हमने बोला इनकम के बारे में कुछ. थर्ड वेव कॉफी Better than स्टारबक्स most. आप Although जाते हो, Achilles हम is नहीं. usually right there with me. थोड़े और सरबत दोनों नहीं जाता प्लीज. मेरे स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं. उधर नहीं जाता I मैं. really think that right now the ये four गया, team ये secret गया. showed at the end of हम kickoff, तो really ऐसे ही pushing पूछ रहे थे. GG. देख रहे हो स्टारबक्स ना? कॉफी This प्लेस should नहीं, वो still be मिल्कशेक the मिलता है उधर. favorite ठीक है. team here. Even साला I 400 even क्रीम think I डाल के would've बोलते picked हैं. थर्ड वेव भाई, कॉफी अच्छी है. थर्ड third वेव wave- third wave is still nice. in the lineup. So I'm very confident in this team right now. I really like लेकिन बेस्ट क्या है the तो भाई way that they जयपुर started में. to play Serious together. life. Their ideas got really good. They were able to weather some rough maps like But best क्या है तो Warbirds was talking भाई about. DRX If जीता they don't get 2-0. off to As those simple rough as. starts, then that's got to be scary for DRX, because दिल जीत you know, रहे that आपने. might be one of those win conditions you're looking at. You get somebody like Fuzz or Mako to really start popping off early. या फिर दादी. And
I think it's a bit of an uphill battle. I'll be honest. Bane is good. He's been on other teams like F4Q and Maru. Sure. Of course, he was over in China for a little ये while. कौन सा मामा भाई है यार? Caster. So, Post real question caster. is how do you ship Buzz off a Duelist? You probably don't. He's too good at it. And you got Foxy9 as well, yeah. So Yeah, exactly. It's a bit of a thinker, this one, but, you know, it's DRX. They are kind of like the pride of Korea, which is the country we are in. So they're definitely going to give it their all. We will see how they might shape up, especially as Stage 1 continues to proceed. But for now, I mean, let's just see how things start off. You know, we're starting things on a blank slate again. Sunset, never seen neither team play on this one. We've never seen any compositions that they run. How will it shape up? How will it go? I guess we're going to find out. I mean, my guess is that both teams run pretty similar comps. Again, this is a really good point that Astro All the best, guys. That Team Secret has scrimmed a lot against Korean मैं teams उस दिन in the मैं past, देख so रहा था I think they have VCT generally vertical stream कर रहे very थे similar watch ideas on party how to play a map, and they're not too far off here. सच्ची में? Some changes. It is the double सबसे initiative. पहली बात आप AORUS वर्टिकल Team रिलेटेड Secret, जोक्स yeah, ना मारे, versus the ठीक है? Fade only हमें मारने just दे, stacks on the Fade आप for ना initiative. मारे Otherwise, you बेंच have a Viper for Mako. मैं कहा क्या Only one कीबोर्ड पे खाली एक ही जोक होता है वो है but of course हॉरिजॉन्टल the लेटा है Cypher उसको. can provide a little bit of extra उस smoke. सिटी के 10:30 नहीं हुआ अभी कॉप मना Sure, मारे on Sunset, especially if they're starting कभी things ऐसा on सोचा है defense, कि this दोपहर को composition, कॉप you know, करेंगे might give वर्टिकल them, रात को खेलेंगे बिग्स some भाई के साथ? सोचा है कभी ways to deal with सेल्फिश like बढ़वे? Buzz, for example, especially क्या if कहेगा she मैंने has सुना the नहीं. right हाँ, trips. दोपहर But को कॉप apart करोगे from that, वर्टिकल रात को बिग्स curiously भाई के enough, साथ खेलेंगे? talking सोचा है about, कभी? you know, Bane, or we've all seen Bane being a duelist, they put him on the Omen. So I mean, that is essentially another one of those agents that duelists can easily shift into, right? I mean, everybody is thinking about Tens in that role, right? Sure, As he went yeah. over to the Omen for Sentinels and was able to take Masters Madrid on that. Maybe so eventually a it plays a Clove? bit like a duelist because of the TPs, Yeah. and the paranoia, right? So that'd be interesting if Bane plays Clove, huh? I would like that. गेम प्ले कब होगी इसके I बाद? think Clove is really good. Really, really good. I think a lot of people are underestimating Clove. If I'm being perfectly honest. Like I think there's potential there, and I would not be surprised if a team like PRX decides to go with it. For sure. Yeah, I feel like they एक क्लो ले नहीं सकते ना अभी वो हो रहा है ना? Agent's toolkit. But ठीक for हो रहा now, है ना again, वो? I mean, just back into it. Both teams looking ready to go. Bro, where is compositions He's wise? not there, You know, yeah. it's a double controller. Can DRX really make use of it to kind of, you know, go in for their classic like executes to break it to sight? We've seen it before on other maps नहीं, before, flow भी allowed नहीं है. especially when they did it on Icebox. Yeah, that's the real question for me. Part of the whole DRX equation is a team well known for their executes. Is that going to be something that I can see it going two ways? Either they're going to lean heavy into that because of the lack of time, where that's something that we're just going to make some really good executes, and you know, use Bane as a paranoia machine, essentially. You know, with a few smokes in there too. Smoke of course. machine. Yeah. But or are they just going to go a little more default heavy, a little bit more spread the map style, try to look for picks, those kind of things? If I had to go based on history, yeah, I'd probably say they're going to go execute heavy. But I don't know. You could convince me either way, to be perfectly honest. I mean, obviously the defender side to start, I think, for them, but you know, it's so hard to predict. Yeah. Is the real truth of it. We don't have enough data on either of these. No, and now we are on a map, right, that we've never seen from either team as well, to make Drawing things है. more complicated. A lot of question marks in our minds, but the fans are प्यारी definitely चीज just लिखी है rooting for them यार. nonetheless, especially, you know, for Buzz and whatnot. And that's just it. You know, can DRX continue forward? This sign says if you win, I'll buy the DRX team bundle. capital. Chat फिर से VCT ये कप 2 है. इस साला कप नम Only देंगे. if they win. Only if they win, You know, man, that's what pressure. I've seen is people tweeting अमेरिका at से करोगे players सब like, करूँगा you know, यार. whoever wishes me a सब happy करूँगा. birthday first. Yeah. That's the one I'll buy. Whoever, yeah, just clout farming to get capsules. Amazing. Let's Well go done. Well done, baby. social media. Guys, Sunset once again. Wow. Oh Yeah, my you've God. really outdone yourself. लास्ट टाइम Yeah, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था करके वापस. he has taken over the marketing for Sentinels, that's for sure. Well, so yeah, Team Secret on the defender side. Actually, no, it is DRX on the attacker नाम side. My DRX mistake. So लिखा आगे? this is where we're going to see about these हागा कोई तो हागा ideas. If it is going to be a little bit execute heavy नहीं उसका इन गेम में भी for उसको DRX, दिखा or if they're just Do they not going to change? kind of नया try player है to ना? rely on trades and a little bit of teamwork to get in there. Smoke out to mid early.
भाई क्या रे कौन है Pieces बे of वो? utility thrown into mid and B main to see if there's anybody 7th around. floor पे डाला है Push उसने. from Team Secret. Trapwire was there for DRX, so they know there's going to be somebody potentially nipping at their heels. Yes, Mako will wait, but he isn't going to be watching the spawn angle, expecting potentially nipping क्या है? that they might go through, but the timing good for him. See if they can get through this defensive setup of NDG. Pretty critical that क्या बोल रहे हो भैया? pushing it for that big old flank. क्या बोल रहे Bash थे आप? able to step back and walk away from that boombot for now. Although DRX gets the spike plant, they have no idea that they are being completely surrounded. They have to clear this back angle. DRX dominate करेगा और वो. भाई heavy need आने वाली है. B main, I mean, look at this. Easy pickings for Borkum right now as he gets up a double. Foxy and Mako a bit of a trade, but as they go back into it, Vash leaves themselves exposed as he tries to go in for that spike defuse. Simple shot for Stacks. भाई DRX है बे, DRX है. It was not easy at all for DRX. Pretty good ideas दो here from जगह से Team 3 Secret. चौके भी जीते. Send in 4 for the crunch, and then just leave Jesse to try to stick the defuse. It just didn't quite work. It was very, very close to working. They were just that चाइना extra नहीं gun करेगा भाई, नहीं कर might सकता have भाई. made the एक तो difference. पैसिफिक के साथ Jesse उसका was क्लास involved, है. I don't know. उसके बाद 3 रीजन करके गांड लग जाएगी मेरे को. It's ऊपर spicy भी for करना. sure. कहाँ से मैं चाइना करूँ? Again, DRX with some good diligence with those Impossible है मेरे लिए. trapwire placements from Foxy9, keeping their heads. ऑलरेडी दिन में 3-4 घंटा सो रहा हूँ पैन. वो भी मैंने चाइना को दे दिया तो क्या होएगा Push मेरा? for the orb, be able to feed it over to Envy, build towards those rolling thunders. डायरेक्ट कमबैक मास्टर संग Stacks इनकमिंग already बोलते हैं लग रहा well है. on his way. बेन कैसा खेलेगा? मेरा आइस ऑन बेन है. Already. Could pick up definitely a couple more kills in this round, but DRX बड़े really, shoes में really गए taking वो, बड़े it slow, shoes really में. taking their time. Yeah. Worried because it has to be in the back of your mind after that first round that Team Secret is willing to get aggressive on this defender side. They actually, contrary to what we thought, you know, they're not going to go for that default-ish. They're going to work together as a team and really work their way in carefully, you know, methodically, meandering, clearing out every single bit of utility, every corner. And then now coming into it, Buzz. Again, once more, they are surrounded. The paint shells almost tagged them up. Taking a ton of damage. But they're still able to secure क्या the मारा? site हेलो. as it comes down into it. Foxy POV Only दिखाओ. one kill secure, one gun stolen away तीन by मारे Team उसने. Secret. DRX makes it safely into the third. Yeah, a lot of damage taken, but not many kills found, so DRX able to stave off death. Foxy9 Blue Blues, 4-0 happy to start. birthday. Having some huge impact with that rifle. Oh my word, Bye, that bye, is bye, pretty bye, bye, nasty bye, there, bye, bye, Foxy. Pretty interesting, like sticking him, you know, before when he was on that duelist, he would run amok, and then I think Stacks might not have enjoyed that too much. They want to, you know, get him to play I with think the team DRX more. clean 2-0 If he's on a Cypher and he doesn't have that mobility, ये लास्ट पर अच्छा he has खेला. to play with the पहला team. मैच बहुत गंदा. 2-1. And that बाकी aim, दो I मैच think अच्छा it's खेला. been दूसरा भी जीत a सकते pretty हैं, good कोई shift सीन for Foxy9. That is He's had too strong. reasonable amounts of success. It maybe isn't what you want entirely, but overall, you know, gotta be feeling like maybe there's a little pressure on him as well. Good fault line. Back Mako off. Oh, sound आया ना. Tripwire gives him enough room to back up. Oh, The crossfire is crossfire great. बनाया बे. Sexy. भाई DRX जीत Still, गया that's है. DRX a fold. DRX With का that aim देखो punish. भी. चलो फिर. 3 players करो, left on the लगाओ side of match. Team Secret. DRX might just be able to pick up the bonus. Looking that way in with that toxic Sorry creep set मामा up भाई. towards Sorry A. यार बुरा लगा तो. होस्ट थोड़ी NDG's के. getting too far ahead of himself. Burst from Foxy9 will do the trick. Got our ultimates. The Eurostep coming underway. 40 seconds left. इतना तो You know, वेट whichever उनका भी side नहीं they जितना ये decide लोग to कर रहे go हैं. towards, they'll have numbers advantage. And a lot going in for them. As कैसे long as था they कि don't बंदा? get stabbed in the back क्या somehow, बोल रहे भैया? DRX should pick up this round. It's full upgrade on rifles though. मस्त खाना Back खाया. of those क्या early है आज picks. खाने पे? So the discipline paying शाम को dividends. protein. Smash though takes down Foxy. Grilled chicken. Spike planted. Last player Pain standing. picks up Jesse Bash. Envy with a bit of a आधा grilled sneaky chicken और थोड़ा pop-up. salad. Catches onto पूरा Buzz. महीना वेज में. Tries to, you know, reroute his pathing in हमारे towards गांव में market. शिव जी का वो है. But nah, it's He's got to think about a save. Just not. तो much जा रहा else to नहीं be है? done. जा रहा अगले हफ्ते. even with the तो वापस कब utility. आएगा?
And you're never quite sure where these DRX players could be positioned on the site. There could be a crossfire on the other side of market too. Work from home. I mean, work from Gaon. Killer. So he's not going to want to. Udhar big setup hai, udhar stream. Too courageous in this moment. Opting for the save. DRX Clean picks जीतेगा up ना? the bonus. 4-0 lead पे. It would not surprise me at all to see Bane TP up on top of that box. यार DRX market 13-0 at करना least चाहिए. once, फिर हम लोग just बोल because सकते Tens समझ रहे does it all the time. Bad And tech. like हम एक को जीते. all the players, you know, in the world, and especially here, have a lot of respect for Tens, the way he plays. So that, it's got to be in your mind the way he's able to punish people right there on top of that. में baby इनका भी. That pillar in there. And it really just, so what we're seeing from DRX so far, Quack, is that they're playing patient. They're kind of deathballing. It's not exactly execute heavy. It's more that they're just expecting aggression from Team Secret, and 2 times out of 3, they've been right. So now I think definitely, you know, Warbirds is probably going to tell them to pump the brakes a little bit, play a little bit, or it's a tech pause. I thought this was going to be a timeout. ऑडियो इशू हो रही है. हमारे में नहीं हुई है. This is the first day and everything. भाई हमारे में भी तो हुई थी ऑडियो इशू. तभी नहीं लिया Tech tech pause. pause. Welcome to the Ham Quack Paper Thin podcast. I was gonna ask you if you're feeling panda today. Panda? Yeah, when Bane earlier Technical pause बोलते. the interview, Audio the arrival interview, he said Jen asked him how he was feeling. ये हमेशा 30 सेकंड डिले में चलता है साला. I know, that's what she said. Nobody knows. Maybe you're feeling lethargic and hungry for bamboo. I don't know. I mean, bamboo's actually pretty delicious. Really? Yeah, sure. बनता है रे. Why बैम्बू का not? सब्जी बनता है. Actually बनता है. But yeah, I mean, हाँ. Bamboo thinking shoot ना about the क्या game, बोलते हैं? that's precisely like you said. DRX is going for that slow but steady style, and as long as they, you know, gain control versus certain areas, they're prepared enough. They can go in for their execution. They can secure the sites pretty much freely. Team Secret, on the other hand, you know, also a bit prep heavy, relying on a lot of counter strats and anti-strats. If it's a map like Sunset where they haven't encountered any of this before, VCT they're going to have to adapt on the fly. Oh my God, this fast hit from Jeremy. He's going ham. DRX just completely evades it. Buzz making a quick push in towards the B site. Team Secret still playing it यार safe. ना सब तोड़ा बे. Able to get the ये लोग plant फिर down. से पीछे जा Very सकते similar हैं. to the last Fatality है. game. जाओ In पीछे. a lot of ways, Team Secret's going to have all 5 members, but this time around, not nearly as much damage. Stack's still sitting on a Nightfall in case भाई ऐसा things लग रहा look है a DRX little भाई bit सामने defensive खेल ही difficult. नहीं रहा है. Again, when you're in this B main area, so Oh, difficult to Great defuse. Nightfall. Yeah. मारो. It's going to connect onto पाँच all जन. of them. Paranoia's out 5 too. जन tag है. Trying to go for some blind sprays. खत्म करो बे Jeremy खेलेंगे. keeps them at bay with his interesting angle. Good fault line from Envy as well. Morgan starts to stick नहीं, down. मर जाएगा, Was मर not जाएगा. able to spray all जाएगा of बे. them down. It is just one heck of a firing squad. भाई देखा इको राउंड में भी वो लोग ने I mean, अल्टी कमिट किया. पहला DRX वाला seems to गेम be ही आ रहा है क्या वापस? Making all the right decisions to avoid Foxy 9 any of 10-1 this बे. early contact play that Team Secret's trying to go for. This is an eco, so whatever. Not as really impactful. भाई मार रहा है बस Jeez, ऐसे. Foxy. The crowd loves it. Going absolutely nuts right भाई now. मजा आएगा. PRX versus DRX. Old days याद आएंगे यार. Now for real. Bro, but tomorrow Yeah, it's now that they PRX get to buy up. versus T1 है bro. That's अभी ना what कभी I'm तो thinking होएगा about. ना Like, PRX I mean, versus for the DRX. past 4 rounds now. Bro, you know, how we would saw this G from versus Team PRX? Secret Can we last year watch when that they just someday? repeatedly went to A हो side, सकता है वो भी. especially on Haven. सबके साथ सबको खेलना पड़ेगा क्या? हाँ ना round DRX robin are है ना. repeatedly है क्या? heading into B. Yep, and they've just pretty much I been would doing the like to same see things. G winning Find out against in the PRX. open, That would be awesome. double back into B main, make it a firing range. T1 में I would Yeah, also like to be and the it's prime part of the minister. nice part about having a fade in there is you मांबा भाई. क्या have a hater lot है of बे मामा ability ये? to एक clear ना some बे. of those close 100 angles का where hater है it's मेरे. like, भड़वा है. Haters Player थोड़ी भाई versus मैंने Exactly. भाई मैं मुझे लगा सब And so अपना I अपना think विश बता definitely रहे तो that's मैं got भी to be अपना part विश of the बताया. idea behind that. Is stacks on that fade is देश maybe going to be a के लिए little more support ही नहीं. impactful है ना? on this side of the map versus सपोर्ट है A. लेकिन विश बता रहा हूँ मैं अपना. And if you can kind of disrupt NDG, keep him off मेरा balance, क्या विषय and बता. make it a retake heavy Good in cast. I idea for miss Team my Secret. baby. You know, if you have that B main control, it's so difficult to undo it. It reminds me 23rd of, April you को know, है some of the G other versus sites like, PRX. you know, Wow. Bind B or something like मजा आ that. गया where भाई उस दिन. It's really, really challenging if you're able to get comfortable
to deal with it. Mumbai And you can see every round they've got that trip there as well, right outside of the B main door. This time around, it's going to get cleared though, I believe. Okay. हम लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे यार. Plays around the smokes. Let's just satchels in though, along with the blue bot gets a bit more information, but some sprays coming through Jesse fast from inside of the dark cover. Not something that DRX expected. इसलिए ये नहीं पसंद. Pushes out, gets one more ये tap भी on the reason bait का as जिसे ये नहीं well. पसंद मेरे. Rookie does not expect it पूरा whatsoever. जिंदगी मिड करो या बी A करो. is यार no नहीं longer a viable option. ना Along with angles the भाई, operator ना signing angles. off. Mako has quite an impossible task ahead of him. Yeah, this is near impossible. I mean, yeah, he can get the spike. He's got a time. He could, you know, go to the other side of the map, but he's going to be walking into death. Yeah, as soon as that poison cloud ran out. Miracle, miracle. Exactly where he was. Huh? Good job here by Team ये गया. Secret. A good recovery, and you can see why the A site maybe not, you know, where they're right to really speech comfortable going. You got to try and change up. You got to go for something different. हाँ भाई जब मैं बोलूँ तो हिट. हाँ भाई. बोलूँ तो ये बट ठीक है भाई. Great plays मैं here करूँ by right to Jesse. speech. Really crispy. बताओ सब. That third kill in particular. हाँ? I think it was Where is the amazing. right to I mean, apart from speech? third kill, मुझे hiding तो inside of बराबर the WhatsApp smoke. आता है स्ट्रीम And पे I मत think बोलियो. I think Jesse, I wanted to see this. I think he's chocked up to clear this trip outside of B main. And I'm pretty sure that's what he's going for. Scanning ahead. Yep. There There I it saw it is. in the last round. I saw it get cleared on the map, and I'm like, Jesse has a lineup for this. इसको अगर through Love to पड़ता see तो it. Oh wow, Hunter's Fury as well. Actually catches Buzz for a second. आधी Not पड़ी, quite आधी final पड़ी, beam though. आधी पड़ी. Tried Now to get a little, TRX. yeah, a little help on the ping from NDG. भी गया तो Try जीते. to get that सिंपल final चीज है. on ए his जाने rear के to लिए go, but छोड़ दे. it's not quite there. इधर NV1 ब्लाइंड away from स्टन है Thunder, though, छोड़ back. दो. करना ही नहीं. They got it. They got the order. Very भाई मैंने बोला था ना फीड अच्छा है इसका. DRX slowly doubling देख रहा down कैसे into भाई it. कैसे सही कैसे सही बोला देखा. सही More बोला of a split close push. corners वगैरह ना Jesse Bash बोला straight था, out. वही तो Bro, Stacks they are now just peeking different. outside of the बना market. देता हूँ एक एनालिस्ट वीडियोस Trying to soften up the 60 sight, seconds soften में. up some What of these went wrong with flows. GE? The rest of the हाँ team वो now लोग जब भी looking for कमेंट्स में that तेरा top रैंक lane. पूछेंगे तब भी क्या लिखेगा It is तू? that retakes game, but like you mentioned, Paperthin, it is that rolling thunder Accident too. available. bro actually कर सकते it's a great वो Fire it off. Has to push out now. चालू है. Forkum trying to provide some additional support. Paranoia, although it Oi! does timing a little bit क्या बोल off. रहा है? Able to take down Mako, but it's a one-on-one versus Bane, where Forkum What is they Lewis could have done reads better. the That's all. headshot to seal the deal. उससे अच्छा मामा मैं आइडिया दूँ. Smoke. बोला. Top Just right 5 around the street edge. food. With the weaponry, though, Game it's छोड़ दो just मतलब है, nothing बहुत but a सही dig. game. Bane secures it. Top 5 street foods With का that, कास्टिंग करो वहाँ जाके. DRX back in the lead. It was so close. और यहाँ पे पानीपुर में ठंडा ठंडा तीखा तीखा पानी डाल दो भैया. Oh my god, दीदी ने बोला और तीखा. Steady as ever. और तीखा. Foxy doing a great job here on point. These crossfires have been भाई हो brutal. सकते हो That सकते. DRX is able to find, whether Potential it's तो the है guys, crunch from potential B तो है. main and market, जल्दी setting up 2-0 outside of gaming हो Boba, जाए. making things really, really difficult for Team Secret. This is the problem, like, if you get into retakes against DRX, very few teams can find a lot of success breaking them. They're so well disciplined, no matter who's playing एक for them. टाइम पे This is something कितनी Termi has टॉप done टीम हुआ well. करती थी ना DRX. He's been around. Ever, yeah. Yes. Vision Strikers days. Yes, he's good at ये एक getting साल के people break में थी वो. into crossfires, into post plans, इधर उधर being होता है patient, देखो. disciplined with their ऐसे utility है, अब देखो usually. Fnatic कैसी थी अभी Seeing it कैसी है. on full display here on Sunset. अभी भी अच्छी है भाई. हेलो. कैसे और Heretics जो खेल रहे हैं ना हाँ, भाई. Heretics. Once you get the sights, Heretics you know how बाप to है. hold those chokes. वो And भैया दोनों है ना. Don't हाँ, let their Heretics के bullets साथ अभी through. दिल वो हो गया. Team Secret now back onto a bit of a half buy and young lad. just trying to get a feel. ये mistake था ना जी, मैं ये वाला It's पेड़ not mistake. quite able to catch anything though. थोड़ा हो जाता. बोला गाइस किसी ने तो Wise बोला था. Jeremy to get out of there quickly with his blast packs after that prowler. DRX is looking to set up a play. Not पहले able to अपने find पास it, जो so यूटिलिटीज थे ना वो good यूज नहीं discipline हो रहे बराबर. from Team Secret, and now है ना मामा. the entire force बंदा of पूछ रहा DRX मामा shifting कास्टिंग over छोड़ दे. towards मैंने the बोला A site, कास्टिंग ने मामा को छोड़. getting ready. Oh, Jeremy! Shot bait. 2 taps. 30 Bane seconds left. thankfully trades it right back. This is not a round that DRX should be losing, but some individual heroics, and all of a sudden you might be looking at tables turned upside down. Envy now with the Guardian taps away. All that's left is going to be Buzz. भाई क्या Forkum खेला makes it a BTS. trade, and
this round that should not have been won was just taken DRX over by Team जीतेगा भी. Secret. And it's just the good patience now from Team Secret. You're seeing that they're being a little less aggressive on Bang some bang of those Bamba moments. मेरे against आ रहा है Works कॉम्पिट में a Ascent treat. में That में is उसको बोला snap शर्म shot. करे That बड़वे first को. one was At the fault line from Indy as well. वंश तेरे को वो चैटर नहीं आप इसका चैटर आप बज रहे हो ठीक है अगर लिखा रहेगा तो हर्ष श्रीवास्तव देख. अरे हर्ष है क्या मुझे वंश सुनाई दिया. That one got NB fired up. And ऐसा हर्ष को भी नहीं you know, जानता. you heard Warbird talk about it in the अरे pre-match लौड़े interview, मेरा right? Where he घंटा was saying स्ट्रीम पर है इतना मार खा need स्ट्रीम वीडियो बनाया था इस पे. if they could turn it around ये right पता here, है right now, बिंग्स if they बैठता है could ऐसे string a हम few more तब rounds वो together, करेंगे. then you most हाँ likely ना. it was only a minor इसको शर्म नहीं आया बोलते हुए ऐसा. ये वो थोड़ा तो शर्म कर ले बॉस. you have a showstopper. पहले एक बंदा आता था ब्लू करके. Borkum's TP. तेरा Not a बहुत lot to गाली. play with, but Mako and Buzz only one away from their ults as well. 10 बार बोलो नहीं करता लेकिन हर बार गेम में Looking आता. to see if they can steamroll some of फॉल्ट these इन और ults into स्टार्स a था win. उसका. BLU करके याद है चैट. Like what they see. Gonna go on a little bit of an explore. Got some good coverage in mid. Could be a little bit of a duel for अल्टे Foxy भाई coming up. अल्टा है. He had to go down to just the Sheriff. They're gonna stack up. Same movements, yeah. Stacking up, trying to get a good feel for things, but wow, NDG with the position of around market, the trip. भाई Able to get the wall bank down on that सेक्सी player. रिकॉन दिया बे. And then, of course, सेक्सी Jeremy coming in रिकॉन support दिया as well. Setups coming in from Team Secret denies DRX the entry. B is no longer, you know, a viable option. Yeah, the spike's down in market too to make matters worse. So great setup there from NDG. The wire working a treat, his positioning able to avoid the prowler. Now they're going to body block it because of the TP. This is very, very smart. This is something that I think we've ever seen one other time in Valorant history. बट अच्छा नया जो अपडेट आएगा ना उसमें शायद पिकअप अलाउड है. Stack up players on top of the spike to make sure that the Omen बात तो है, बात can't तो है. TP on it and grab it. ये आपने वैसे नया वर्ड NPC कहाँ से सीखा टिपन भाई? Just curious. That's what DRX is gonna do for now. 2-on-4 still a little bit tough, even if they मुझे do ऐसा get क्यों लग रहा that है कोई तो spike कास्टर planted. बोला था. Perhaps with Marco's Viper spin it might have been different, but yeah, Caster given the होगा body तेरे block, लिए, मेरे लिए hater है वो, no hater. way that round was यूनिवर्स gonna बोला be था वो मुझे DRX's. याद है. Yeah, fantastic awareness. यूनिवर्स फ्रेंड का वाला And yep, counter timeout, right? तेरे को पता है याद किसका रखूंगा बेबी. उसी के साथ खेल रहा हूँ प्रीमियर में भी. सबका लिस्ट में. I was worried that that was not going to be a countdown, and it was going to say 2 words that I will not mention. मेरे लिस्ट में क्या है? Remain unspoken. Do not, yes. सबका है ब्रो Words नाम. that shall not be named. एक दिन ऐसे बचाऊंगा ना तुम लोग. मेरे में क्या है? This is also a little bit interesting because again, तेरे लिए you know, कैसे होगा बे? तू मेरा बेटा है. this is not something that CHUMMI did really often last year. Right? DRX just मैं बोल रहा हूँ often chat में having जो a मुझे good hate time देते and ची being very much in ऐसे लिखते control हैं. of things. But now this year, especially सबका with the नाम roster याद. being shuffled around so much, एक they दिन look a देखो little इनकी bit ऐसी lost. की तैसी करो. CHUMMI has to intervene, give them Pa, some pa, instruction. pa, Yeah, bam, bam, and it's bam, just, bam. you know, the way that टिपन भाई एक जेन्युइन क्वेश्चन है. बोलो भैया. इतनी साल से आपकी हगास गेम प्ले इतने डिफरेंट गेम्स में दिख रही है, मतलब कंसिस्टेंटली. नहीं भाई कभी- अच्छा खेल रहा हूँ आजकल मैं. कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार आई लव माय चैट, तरस आ रही है मेरे को? हेलो में क्या? आई लव माय चैट, मेरे को उन पे तरस आ रही है. I कभी always ऐसा लगा? loved it. अभी तो लिस्ट बना रहे थे तुम भड़वे. लिस्ट बना रहा हूँ एक दिन ऐसे करने के लिए कुछ. लिस्ट आया है मेरे map, पास. anticipating some of that pressure is no longer going चैट to में be कोई there. तो लिखा मुठ So now you got मंत्री to का make a लिस्ट. change. See exactly what it looks like. Looks like they're kind of spreading things just a little bit. कहाँ जाता है Mako बेस का again रिकॉर्ड? going to be on A main duty, पता है इसको making sure मारने that के there's लिए. no lurks that are going to be Pressure attempted वाला. by Team Secret. वैरायटी है, So they are वैरायटी आगाज है वो. drifting in this direction. Okay. भाई बोरकम का मॉनिटर कितना ब्राइट है Smokes भाई. though. 3 कलर बदलते देखा मैंने Are अभी तक good. चेहरा. Some counters coming up now, and it just calls for the signal to spray through. Buzz managed to capitalize on that to punish down लुल हो on गया towards बस के साथ enemy. लुल. So a bit of a TP away, and Borkum tries to stay alive, but still, how long can you really keep yourself alive if DRX is trying to pull up a bit of a split? Buzz trying to go in for this quick 180. Doesn't quite go through. Jeremy, even with a showstopper, gets shut down mid-air by Mako. Stacks now coming back into it too. And all that's left is none other than NDG. भाई DRX ओपी टीम में भाई.
Tries to walk up. सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन टीम जो लगता है ना यही टीम लगता है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू मी इज easily wrap back around elbow and none the wiser. Able to get the spray down though. सबसे heavy disciplined team. Yeah, got caught by that vulnerable. I like their DRX versus KC. DRX जीतेगा. DRX is late है भाई. DRX हारेंगे. Interesting start. I don't mind at all what Team Secret does here, where the smokes come up and they just kind of let loose. Oh, there's just enough of a gap there. But Borkum does a great job here behind Jen, getting 2 kills. Jesse tries to step in, just couldn't find the spray in time to take down his opponent. And then Mako is Mako. You know he's always good for one. If that showstopper would have ripped off, you know, it might have been a different story. But that's the shot. So back into A main again. Initial contact. Not really feeling all too much, but still watching in case there are potential lurks or potential sneaky players pushing through. Grenade! Oh, it is going to be some smokes put down in the mid. And ping's coming down already. Bro, I hate this map, bro. Reasonably aware of this attempted pressure. Jeremy, you want to initially take contact. Oh, he's shot right down by Buzz. That's that Jing peek. Satchel into the kill. Off of it onto the next. Buzz is looking to tear this round up. Paint shells lands right on the dot too. 2 players left, and they're probably going to go in for that save. कल तो ट्विटर फटने वाला. I mean, the pathing and everything, the reads, just trying to condition Team Secret to focus a lot of their resources into this A main position, and then doubling back into B. Yeah, this is Buzz's round. I mean, the way he anticipates these positions of his opponents is so good, and then the immediate grenade to counter the Boba push from Jesse, the icing on the cake there. That's the thing about DRX. I mean, you might have some of these new players, but the मेरे को लग रहा है 13-5 या 13-6. I mean, Buzz, Stacks, Mako. 13-6 वाली game always expect a lot out of them. 2-0 तो clear है ना? हाँ, 2-0 clear. Absolutely, absolutely. And that's, कल की prediction again, why they've been at so many international events, why they're constantly talked about, why people kind of scratch your heads a little bit if you pick a game and predict against them. You know, it's just, Bleed versus really good for a long time. I just was tough है यार, close है. so impressed with Team Secret. From Buzz, and he's getting fired up as well. बरस ने टैलेंट का retake बहुत प्यारा टैलेंट. Attacker side. कल T1 जीतेगा PRX से guys. देखो. Really powerful. You do have that rolling thunder again for Envy, something to worry about here. Any comments? कोई predictions बता दो अभी Kevin. They're waiting to see PRX 2-0. Really good position to set And Jeremy Talon up as well. 2-1. Exactly. क्या बोल रहे? Bleed हारेगा कल? Talon Mako can get that Viper's pit down. Bro, come on. Be a lot trickier. Blade is cooking new lineup, man. To play retake on. They're gonna dominate tomorrow, man, with the So they know that there's some players on the other side of B main. Buvat goes out. There was Paranoia as well. Thought they were gonna try to साला खेलने का मन तो करता है यार देख. Double back into A, but Chat like करो यार 9 के likes को 20 बंदे बचे यार 20. Considering just kind of double pumping and just holding और subscribe करो and जिसने नहीं waiting it किया out a है. little bit, see if they can get some rotates, but Stacks, for whatever reason, thinks, okay, well, maybe A is going to be the better option. 298 को Got 350 बचे 350. really don't have a lot of information. Blade was Stallone and Maybe it is still going to be a B hit. Got to worry about mid, and the smokes are up, and the door is down. as soon as they break the door, though, look at this, the instant response from Team Secret. They've got to watch market. Oh, there's that perfect rolling thunder from Buzz, shuts it down with the shorty. It'd be a good double spray, but then Mako comes back in for the trade. Buzz tagged down 8 HP from the shadows denied, and Borkum is here and ready to play. And DG just stays tucked away. चलेगा वो लोटा अच्छा वो मरा वो. Have to shoot their way out of this one, and they managed to do it. Borkum not quite arriving on time. Mako invests the Viper's Pit to secure this round indefinitely. How's Borkum going to work his way around this? Bit of a dark cover. Good peek into it. But again, crossfire, 2 players set up right in front of him. By heavy team में Impossible बैठ round, यार. virtually Heavy impossible. team है यार.
for Borka to work his way out of. Oh, Secret का map pick है ये. that's so hard as an Omen player. You just don't really have much to work with, you know, especially if you don't have a paranoia. It's near impossible. Love the idea here from Team Secret, but the counter reaction from Buzz, once again, so strong. Having the wherewithal to immediately switch to that shorty and push on the back of it. Yes, correct. Incredible, I agree. yeah. Fire affected, like, doesn't matter. I'll just use shorty. One pump, that's it. Yeah, exactly, dude. Like, you don't need to be, doesn't matter if you're stunned or not with that thing. Like, you just got to get him close enough. And now, Holtz, again, cycling well for DRX. Okay. Judge, though. Nightfall execute. Oh, wait. भाई And the last word, just imagine it भाई with a bit of a steal. मैं बोल रहा हूँ भाई Trade back up though. बफ करो रेस को बोल रहा हूँ Here comes Team Secret with a bit of a retake attempt. Good double peeks out. Envy नहीं नेट बराबर managing किया great था for उसने Jeremy. बराबर था क्या हाँ 2-1-2. वो ट्रैप तोड़ने के लिए रहता है मेन Taking back up around the pillar. Stacks comes up from behind. Mako able to hold his own as well. Once again, the mainstays of DRX staying consistent throughout this first half. This is very impressive. Again, you know, Bane hasn't had to do much on the Omen, but again, Omen can be भाई वो अल्टी दिखाओ एक as बार long as you kind of have the right smokes at the right time. Love it, if love you've it got too. some good paranoias, you know, you're getting a lot of value for your team. Bane's had a couple of nice kills, but this is a team effort. Foxy popped off early, then Buzz showed up, had some good moments for Mako and Stacks and everybody. So this is a team effort, and you've got to be really impressed with what DRX has done so far. The map, you've never seen it from both teams, but imagine they lost it on because of that. And on top of that, you know, having to switch out a player on उसने short मारा notice, लेकिन एक को पता है because of that you just gotta like what you're seeing. And again, this is where Termi, I think, really shines, is he does a good job with new talent, with young talent. I think it's something that a lot of people don't give him credit for. You know, yeah, there was some stumbling with Foxy, but in the past, he's been really good about integrating new players into this roster really quickly. सब लोग full screen में देख रहे हो हेलो full screen से हटो जल्दी हटो At first, yeah. Stumbled a little bit, but you can see that they are still steady enough to pull off ये the गया performances रे such as ये this. गया ये गया बे फातिमा जी Surprise one up against DRX. email फातिमा Definitely जी showing that they are here to play this year. just because इसको आफ्टरनून में वॉच पार्टी नहीं करना वर्टिकल करना है साला हेट Certainly खिला that's रहा got to weigh on them. You know, that you don't miss many international events. They want to get right back into it, right back into the swing of things. Don't care who. आपकी जांग तो बहुत On सेक्सी the है team, don't care how. 200k में बताया काफी टाइम हो गया You gotta 350 be सब feeling 350 that. सब You're good enough to get there. Like stoic, studious. काय kind of गाली दे रहे हो नॉर्मल चैट करने बोला था गाली दे रहे हो the अजी coach and the entire वो team देखो sometimes. बे Yes, हाँ absolutely. Termi is both of those things. You hit the nail on the head. इमेजिन घुसते घुसते वो रिकॉन आएगा कौन तोड़ेगा वो Secret on the सड़क के ऊपर वाला other. बंदे लोग साइड के अंदर और Always रिकॉन good with the preparation. Now that they are on the attack, will they be able to dictate the pace of the game? Starting things off with a bit of paint shells, a bit of utility invested, pulled the rotations over from DRX, now cutting noise, trying to... Ooh. And that Mako utility might have actually been too good because they totally went over to B. And I think Team Secret's going to re-explore the map here and either re-aggress through market or shift all the way over to A. And it's definitely seemingly the better move potentially because all of DRX except for Foxy is stuck in Nova. पावर नैप ले लेता इतने राउंड में तो इतने टाइम में You also got that toxic screen. 30 seconds It's a little bit pesky, but right now it's not up. Team Secret gets to walk in. Heavy traps Footsteps being heard now. Foxy calls the rotations over. Oh, look at that. Oh, wire. Great trip. Doesn't quite connect it or convert into the... Okay, initial kill gets Jeremy. Bit of a team kill by Buzz. Sexy Buzz. But as they continue to push Hey, forward, Bane का kills दिखाओ वो भाई मार रहे हैं Bane. Foxy 9's damage has been done. Dark cover in front of NTG as well, and By Bane on the defuse just knows that NTG would push past it. It's both pistols on this map going the way of भाई DRX. Bane अच्छा खेल रहा है Definitely felt like एक वीक में 300 maybe के a हुए तो must-win कुछ गिव for अवे Team Secret in नहीं this क्यों भाई situation.
given how one-sided the first half was. Bro, सच्ची में ना भाई That Panvel follow-up 5 में pistol रेस after नहीं you था get kind मैं of bullied like that when it's like a 9-3 or a 10-2 or even an 8-4 to some degree. टीम किल किया रेज नेट से भाई 12-4 चल रहा है बेन बे पहला गेम में ये देख बस ने मारा फॉक्स को Low to the ground, not anticipating that. Yeah. Crazy. Would not know unless like ये भी you 20 dealt मिनट with में it करता before. Maybe then you'll send a boom bot towards that Crazy. just to clear it. Basically map में ही दोष है DRX definitely in the हाँ lead. बे सच्ची में बे And expecting ये मैप में सिंपल सी some चीज kind of है B इसका ये entry, मत है quick B वो entry here is Foxy, setting up those wires right where maybe players are going to be sprinting into the site, but a little bit slow to start here from Team Secret. Doesn't look like they're fully committed to coming in just through B main. They're way into mid. Just looking to punish a little with these sheriffs. They can secure a weapon or two. DRX definitely knows to anticipate this, so playing extremely safe. Buzz with the outlaw. Punches right through two players. ओमेन का ब्लाइंड भी सेक्सी है इमेजिन अगर मरता तो इमेजिन swung over the head. कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकता है कैमरा नहीं है ब्रो अरे कैमरा ऑन ऑफ का साउंड आता है ना वो पूरा जगह थोड़ी ढूंढ सकता है कैमरा The outlaw as well. DRX, they're up 11-3. It's वो पूरा टाइम कैम में था ना उसने साउंड नहीं दिया ऑन ऑफ का तो साइट अंदर जा रहे थे ऊपर देखेगा कि बंदे को ढूंढेगा पहले ऊपर देखूंगा मैं अगर साइपर है तो इवन भाई आप ना कैमरामैन राजू भाई के बेड टाइम स्टोरीज बनाओ ठीक है सारा भाई बेड टाइम स्टोरीज बनाओ आप It's a little bit unfortunate for Team Secret, given that this is their map pick and it's not really quite going the way that they want to. But who knows? Perhaps this is the round where things turn around. They've got that full buy. You've got Jeremy going in for a bit more rehearsed plan as they stream in towards elbow. more utility to clear this angle right off of this. Great positioning, great shots too. Where is Able to catch on the first, a good dink. But nonetheless, better coming out from Very Team Secret deal against DRX with Brimstone and Fury. Not the agent Brimstone. Oh yeah. अरे ऑटोमेटिक निकला मुझसे सॉरी पकड़ो सारे दो I mean, I like Brimstone. Maybe not so much on this map. शिट यार डायलॉग अपने आप निकलता है मुंह से I could. I wish I had Steve Bloom's voice to pull off the Brimstone lines, but साउंड दिया ना Just say दिया ना just say bub a bunch. नहीं सिर्फ एंगल देख रहे हो लोग दिया he has done some Wolverine. Oh my god! ओ उसको भी लगा Okay. ब्रो That's not quite gonna happen, but I did not expect a double kill like that. बड़ी पे Yeah, that was pretty nuts from Fox. भाई वैंडल रहता तो सर तीनों डाउन थे 18-10 right now. Bane 13-5, playing so safe, so cautious, really steady in the back line. The game plan here, I think, really smart as well for a new player coming into a roster. Don't put a lot of pressure on them to TP all over the place and break open sites and stuff. A lot of times he's just in the back line, just covering his teammates, playing for trades, playing cautiously. Yes, exactly. That sometimes is enough. You don't necessarily need to outshine your teammates or anything. Definitely talented players nonetheless. Sometimes it's a bit of a culture fit as well. And let's see how DRX utilizes some of these players. आप कोरिया गए अगर DRX has to play way back because of this rolling thunder. इसलिए अगर आप गए क्या वहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछोगे कि मेरा वाला सेटअप क्यों यूज करते हो करके Stacks. नहीं सीधा बताऊंगा मेरा क्यों कर रहे हो Cyber Cage blocks off so much. Great rolling thunder from Invito allows for the भाई rest of 15 फ्लोर से गिरा किसी ने देखा क्या Now you've got Stacks and Buzz. भाई 15 फ्लोर ऊपर गया था So this time, try and make use of some of 15 these माले positions. से गिरा है वो बेचारा NDG though able to catch out against Stacks. Now looking like much more of a bit of a tricky situation for DeathAdder. भाई कमबैक क्या But it's just going to be Jesse Bash taking them to school. Once And a really good kind of test of patience for both teams on that, knowing that that rolling thunder is in जब play. तूने डायलॉग We मेरे see that सामने DRX मारा was ना
feeling it out to see if they were going to maybe just send it at the site initially to try to go for the execute, but it's patient. Once they started getting contact, DRX tried to press back, right? They tried to say, okay, we're going to get ahead of this Rolling Thunder if we're going to do anything about this. They can't. Team Secret holds tight, and then they send the Rolling Thunder, and Jesse gets just enough ahead of it. And he's able to find that corner. कैसे नहीं गया TS गया रे कैसे का मैच बाद में That's kind of what we expect from them, especially if they have the reads, they know the timings. It's always fun to watch how they just let their plans rip. कैसे ऊपर गए प्लीज अरे नहीं क्या है ना TS गया बोल रहा हूँ Yeah, he doesn't have this tripwire to deal with. There's not a lot he can do to clear it other than shoot it. Somebody won't be ready for his position. क्योंकि वो बड़वे नहीं होते तो दोस्त नहीं होते टीपो He's got all this info. Yes, he knows it's going to be an A hit for the team. वरना ऐसे वो होगा ना कि ऐसे नॉर्मल बातचीत होगी हाय बिंग्स हाय मिथुन कैसा है घर में सब ठीक है हाँ शोबिन ओके बाय range duels. एक्चुअल फ्रेंड्स भी लाइक बड़वे क्या है Team Secret टीमो respects करके आगे बोलते हैं मामा They don't want to mess with Mako's corner. He did some damage the last time from his position. So now they're waiting out the smokes. Toxic भाई जो बड़वे नहीं होते वो दोस्त नहीं होते और जो बहुत बड़वे होते वो भी दोस्त नहीं होते जैसे Oh, Buzz. No way. Good little right click. That all comes down to stacks. 30 seconds left. Spike planted. I just noticed that his keyboard shortcuts, it says VCT. अभी इन लोगों ने देखा है Gosh, it does. अभी कास्टर्स ने देखा बाय है कमबैक सीन है बे सारे कास्टर्स का सेम ही सीन That's something I never look at. Like I know. I don't normally look at it, but just because it's a virtual. बिग बाय सुबह के 7 बजे आपका स्ट्रीम देख रहा हूँ लव यू मेरी जान 6 to 11. Team Secret slowly picking up करेक्ट steam क्या now. भाई लाइफ लेसन समझाया मैं तुमको They're looking good on this attack side. What a drive-by by Jesse there. Yeah, Bane gets one, but this time the corner is accounted for. That paint shells. भाई मारते तो है यार TS वाले Nice job here by Team Secret. And who knows, maybe it's just an attacker-sided affair here for both squads. A lot of ults, Showstoppers and a Hunter's Fury. For Team Secret, a couple ults on the other side as well. Showstopper and a Girl Theft. If anything, I'd say looking a little bit more likely for Team Secret as they anticipate this push coming out. Jesse Vash with 2 Hunter's Fury kills. Mako trying to spot some heads, but not quite any connections. It all comes down to Foxy. The stab off this initial onslaught. Good sprays, but not quite able to do it all by himself. So 1 on 3 now, Mako. Spike planted. Initial flick, spots the head, gets tagged by the yellow drone too though. If he थोड़ा gets सा बाइंड beat में by तीन some वनडा of these माको में players खाली 3 together, वनडा that's going to be tough. In fact, they're just going to play it safe. Oh, he tries to sneak through, but spotted by the recon. Plays around the pillar. Double dips back in, and that's how he gets punished by Jesse Vash. Fantastic. क्या आपने इन जनरल फैक्ट्स बताया पता नहीं भाई Jesse almost gave up a kill to Mako there. And wisely just got crouched, stayed crouched. Waited for his moment so he could get out, regroup with the rest of the team, and don't give Mako any of those easy 1v1s. There's only one, give it up, and then there's lot of girlfriends in double held. Plus you have to study Fist bump. fist bump Yeah, fist Jesse. bump fist Really bump chill. Really chill. He's always chill. Jesse's just the definition of chill. bro it's 11-8 bro Aren't, I don't know. from call it 11-4 timeout it's or 11-8 Not feeling so chill. Yeah, I mean, I think. let's go Mako That stinger. Okay. Takes Jeremy right out. Don't need it. Just getting a read against Team Secret. क्या हो रहा है निकल रहा हूँ मामा रुक जा The utility there. What? A drive-by, a paranoia right after it, and then a follow-up. That's great synergy. Sensing the timings too, but now that his teammates fallen, Mako knows to back up, holds the off angle सुआ का instead. सीन है He's got teammates watching the other entrance if needed. They can't go this way. I mean, By with Suan where and Jesse Heavy is, Rain. I think you need to go to the other side of the map right now. Foxy 9 then would have to be the difference maker here. If he falls, B falls along with him. He might just walk into this. The crowd is cheering it. Oh भाई my god. क्या है Alright. That is, as they say, squeaky bum time. भाई क्या टाइमिंग एक बार थोड़ा कैमरा खोल के सेल्फी ले लेते Stay तो tucked away. If then Foxy pushes out.
And every ult in the world here. Oh! Bhai, Now the neural kya net becomes huge. timing There it hai. is. Picks up the Vandal, spots them through his cyber cage, sneaks under their noses. It doesn't ignore, man. No idea. Oh, they heard him put that down. Buys time for his team to arrive on scene. Stacks with the 9-4. Bane up from behind. It'd be down to 1 HP. It's the headshot from Foxy9 and a thrifty win for DRX. It starts off with Mako's stinger kill around around 8. Yeah, great adjustments here By on the Bane fly by लेकिन DRX. अच्छा Not खेल रहा having है a बे timeout वो। called by Termi. बाकी लोग And तो I OP know players है लेकिन Termi gets a Bane lot of flack for the lack of timeout calling. good fit. But I think people need to understand that there's a lot of good reasons behind why he was doing that for so long. And he's now able to have a lot of trust in Stacks because he was forcing Stacks last year to have to adapt on the Binks तो fly. है। Now you can have a little bit more trust. You can have a little bit more comfort, a little bit more cushion before you decide to start calling your own timeout. You can maybe wait an extra round or two to see if your team can do it themselves, to give them that confidence, to have that trust in an IGL, to be able to kind of figure बहुत things out सुंदर as it खेले goes. बंग्स आप। So yes, it at time was But frustrating watch if you were a DRX fan last year. But believe me, I personally feel like there was really good reason behind it. And I'll stand on that. I'll die on that hill. क्या Yeah. कैम है बे। Trust in IGL Stacks. And it really shows. I mean, if he's able to adjust mid-game like that on his own, now the calls are on their way. Oh, like Timing just so- shy of an inch. You see. Jeremy able to sneak the entry through. Yeah! Showstopper even connects onto Mako. And it's going to be Okay. Team Secret looking to capture the sites. Jeremy overextending his welcome just for a second. Stacks able to shut him down. Didn't even hit a bullet. Deploying drone. Unfortunate. But at the very least, the team is here. Vash still on the op. Nobody's able to go for any sneaky peeks. Scanning ahead. Great spot for his recons to There they connect. are. Stacks This dumped guy. it though. They might not realize Stacks He come his out market. comeback is Oh, real होने yes, वाला he है will. dude। Shots. Last player Bane and Stacks though. One enemy What? remaining. And all of a Oh sudden, my God! it'd be great भाई once again. almost था ना। One more round. Almost. Isapa, let's go. अल्टे डॉज भी हो गया था एक स्टेप उसको उधर चाहिए था बस। Nice try there from DRX on that retake. Stacks being so sneaky, but Buzz just overstaying his welcome and B main pays the price for it. Jeremy with a great follow-up from his showstopper, but a little bit off the mark after that. But you can forgive him for that. अब The उछल first ही two रहे were थे quite good. मैप में। लंबा लंबा हो गया। Just trying to keep things alive. One Bill more Marco round. ulti One more somewhere. success to one more. But DRX looking to close this one out. Jeremy going for the quick entry. Now you've got a bit of a split push coming Yeah, towards A. yeah, They managed to man. capture Cool. elbow. Mako What trying up? to stay hidden. NDG Cool deals is with it, him brother? just quick. And that's going to be the spike down pretty soon. What is Foxy9's game plan here? Yeah, that time Team Secret turns up the tempo and it catches Mako off guard enough. He thought maybe he had enough time to use that utility. Jeremy takes Bane off the top of that box. Really nice diligence. Very good. God. Oh, what? भाई। 2 snaps. Push forward. भाई उसका स्पैम तो मारा। Borka past that box. Pops the showstopper. This could be it. अरे। NDG dodges. Goes back in for the third kill. Stacks now playing God, off of God. the defuse. Secures the round नहीं for लगी। DRX. I mean, भाई you gotta like सेक्सी what you खेला see here बे। from भाई DRX. स्पैम में चौथा मारा You know, बे। being dealt kind of a tough By hand coming into this sexy. match. They handle it very, very DRX. nicely. Foxy popping off, Bane slotting in so well. By with his Bane first OP. match with the Bane the अच्छा tier 1 DRX team. He's again good played for their prospect team before, teammate but Bane। absolutely tremendous stuff and a slow आपके start पास 1 मिनट है for बस Team Secret या फिर यहाँ cost पे them रुको dearly once again. ऐसा बोला उसने। Let's see if they can turn it Don't around worry, here. bro. You It need seems 45 like this seconds, has bhai. been a problem that Warbirds identified coming into this match, and yet his players haven't quite figured it Angado. out. Yeah, that's it. What you doing? We've got some great performances that our analyst Huh? desk will break down. You're not making tea. Well, it looks like we have seen Ah. the peak into sunset for these two teams for the first time. Oh, And no. DRX, you know, the predictions doubt them.
And yes, they didn't make their I'm first wondering. international event, but they are not to be trifled with or underestimated. Yeah, gotta say, I think just across the board, a lot cleaner than I was anticipating from DRX, both on Sunset and with Bane in this roster. They just slot him in, say, okay, you're just gonna be playing Omen. He just does his job. He gets smokes out. He gets paranoias for retakes and just, staving off attacks and everything. So plays that one perfectly smoothly, checking off boxes. And then everybody else is just playing gorgeously. Foxy9, what a beginning to the map for him. Come here 1 second. Yeah. And because of that, this Team Secret just could not find that rhythm that they were kind of hoping for. I was talking about how it was so important that Vash and Envy become the enablers here, but even then, when you can see them setting up, it still wasn't enough for players like Jeremy and DG to kind of feed off of. When Vash and Envy are already out of the equation, they just can't seemingly connect themselves into that round win. Yeah, I mean, again, one of the things that we are used to talking about with last year's and previous iterations of DRX, even when they're not getting those first kills, they're starting. मैं टीम को मुझे नहाता नहीं नया नहीं क्या बोलता सुबह कौन नहाता है ऑफिस थोड़ी जाना है यार मैं हमेशा रात को नहाता पता है आज मैं सुबह नहाया क्यों बे मैच थी ना दोपहर को मैं सिर्फ 4 ही घंटा सो पाया कल 2:30 को मेरी स्ट्रीम एंड हो गई उसके बाद मैं चेस देख के बैठा चेस हाँ इसका विदित गुजराती कल मैं स्पीड का स्ट्रीम देख रहा था हैवी बकचोदी थी भाई मतलब अपने देश का चेस हो रही है और ये बंदा चेस स्पीड तो मेरे देख रहा समझ में भी नहीं आता क्या देखो बात बाप के लब मतलब उसने एक लूडो खेलने। ऐसे तेरे को समझ में आता है कि चेस हाँ उसने मुझे एक आता है ऐसे बंदे को हराया ना टिबोन जो 47 मैचेस से हारा नहीं है किसी से किसी ने समय ने नहीं रे विदित भाई समय स्ट्रीमर है वो फेस है चेस का किसके सामने खेला था कल विदित समझ रहा है जैसा तू वैलो का फेस है मैं वैसा समय फेस है मैं वैरायटी का फेस हूँ इंडिया में अगर कोई वैरायटी स्ट्रीमर है तो मैं ही हूँ क्या बात करो दोपहर का कौन सा गेम खेल भाई तू ये विदित किसके सामने खेला था कल जी वॉच पार्टी हिकारू भाई हिकारू तो इंसेन है क्या कौन सा था ये रैपिड था क्या था नहीं 1.5 आवर अरे तो ठीक है हिकारू रैपिड में तो भाई अभी ये लोग का क्या है फॉर्मेट पता है ये लोग का ऐसे है कि सब लोग लड़ो जो टॉप पे आया ना वो वर्ल्ड चैंपियन से लड़ेगा और उसको आ रहा है तो वर्ल्ड चैंपियन टाइटल मिलेगा अभी कौन है मैग्नस से कौन है नहीं मैग्नस खेल ही नहीं रहा मैग्नस को बीच में छोड़ दिया था कुछ तो था नहीं उसको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आया उसको वो मना कर दिया हाँ भाई बिग पीपी एनर्जी भाई वो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है वो वर्ल्ड नंबर 3 ने ही करो हाँ तो चेस फॉलो करता है क्या प्रॉपर्ली मैं कभी कभी देखता हूँ मैं पहले जब भी विश्वनाथन आनंद सर थे ना तभी मैंने पूरा फॉलो किया था मतलब मैं देखता था ना एक मैच है उसके बचपन का कैस्परोव के सामने खेल रहा था हाँ एकदम छोटू सा था ना मैं देखा था बच्चा खड़ा होकर घूम रहा है भाई दूसरी मैचेस देख रहा है चालू मैच में अभी भी घूमता रहता है 5 बार 2 बार कॉन्सिक्यूटिव हो गया था ना 2022 और 3 2 नहीं 5 बार ठीक है थोड़े फैक्ट्स पर लेफ्ट राइट चेस मस्त गेम है मैं तो स्ट्रीम पे खेलता था पहला बहुत खेलता था रे लेकिन मैंने परस्यू नहीं किया मैं ना भेंचत में सच्ची में सब गेम्स खेलता था पता है मैं बैडमिंटन में अच्छा था लंड कुछ नहीं किया मैंने चेस में अच्छा था लंड कुछ नहीं किया सीएस में अच्छा था लंड कुछ नहीं किया डोटा में अच्छा था लंड कुछ नहीं किया सब में अच्छा था तू हाँ क्या था डोटा 2 अच्छा I was one of the friends of 3GP. 3GP was India's one of the best Dota teams. सब जगह गांड दिए मैंने सब जगह क्योंकि मैं हमेशा फन के लिए खेला कभी वैसा मन से खेला ही नहीं पता नहीं गाइडेंस ही नहीं थी भाई वो तो है भाई गाइडेंस तो नहीं थी जितना भी सीखे सब अपने आप सीखे भाई सब खेला है पता है फन के लिए सब बट किया ना भाई अभी हाँ, कर अभी अच्छा चल चैट को मालूम है क्या अपना मिलने का स्टोरी मेरे को याद दिला
apparently मैं हेवन क्यों किया था, मेरे को लगा कॉम्प हाँ है। याद आया। अब था सीन ऐसा कि अनरेटेड था, मुझे लगा कॉम्प और ये बकचोदी कर रहा था और हम लड़ लिए। मेरे साथ एक और बंदा था। कौन था? मैं किसका तो पार्टी में था हाँ। और कॉम्स के वजह से अपना लड़ाई हुआ था और तेरे मॉड्स भी मुझे भर रहे थे और मेरा डो जो मेरा था वो बोले भाई इसको देख, इसके मॉड्स भी तेरे को भर रहे, तू भी वो भी भर रहे तेरे को, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरे को क्या, मेरे को मजा आया गेम में। फिर ये सब हुआ गाइस, लड़े हम लोग, ठीक है, फुल भर दिया एक दूसरे को। उसका दूसरे या तीसरा दिन रिद्धिमा आती है, फिफ्थ बंदा ढूंढते टीम के लिए। रिद्धिमा चैट में आके बोलते खाली रैंक देके बोला खेलेगा, मैं बोला खेलूंगा, पता चला सेम टीम में। बोला ठीक है भाई चलो भाई। दैट इज हाउ वी मेट। टीम में आके इसको समझा कि उस दिन वैसे कॉम्स क्यों हुए थे। भाई हम लोग टीम बना, एक मैप खेले थे स्क्रिम का, हेवन, कोई बांग्लादेश का टीम था उसके सामने, एक्सेली या कोई तो था, एक्सेलआर पता नहीं क्या था, एक्सेली स्पोर्ट्स, एक्सेली तो बांग्लादेश का एक्सेली बेस्ट हाँ। था। बांग्लादेश। और फिर पहला मैच खेले स्प्लिट, सामने रैड सिंडिकेट, पैराडॉक्स वगैरह। ओल्ड डेज अच्छे डेज थे यार। ये पैंडेमिक में अच्छा लगता था बैठ के गेम खेलने को। ये मावी का बाइक कौन सा है बिंक्स? गुड क्वेश्चन। भाई बढ़िया दिखता है यार। सामी वाला बस मैं लेट टू बता दो जी। जेटा में कौन जीता? जेटा जीता 2-1 एक मैप जीते। सामी किधर है? वो पढ़ाई करने, वो बाहर है, एब्रोड, इज एब्रोड। फिर तुम पे तो एक्सप्लेन कर रहा था कैसे स्टार्ट था। Hey, Pankado! Your reel is live! सॉन्ग चेंज करके गुलाबी सारी हो जाए। Hey, Pankado! Oh yeah. Going into Lotus, given that you do have just the समय by is O नाम में क्यों? Bane coming into the mix, so that's where things could be By a little is bit O shakier for DRX. समय So by while I is do think O that they नाम still में have the क्यों upper कर? hand coming is into this O map, ना I think क्या? it's gonna lend itself to being a little bit closer. Yeah. बस मैं Also फैनेटिक did बाहर हो have गया क्या? Binks, नहीं who नहीं was मैचेस बचे, lamenting, काफी our मैचेस बचे stage हैं। host, that she never gets to do a pick, and I think she agreed with us actually. And But the Valley is a find nice out with game. Agent Pixar, it True. looks like they like to play double controller on this map, understandably. So let's see what it is. Curious to Drum see roll. where we're going to go, and it looks like, okay, Secret just going to be sticking with the same stuff. Obviously, there's some change-ups in quotations for DRX because it's going to be Mako going over to the Viper, and then we get Bane here on the Omen, but Stax just gets to play back-to-back games of Fade, so classic and comfort. NA by NA पता है I'd is say, for O क्या DRX. है? And Secret just still believing in this composition, not wanting to go back अगर to इस something that I stream guess करता है, has अगर किसको a देखना million है hours of तो tape on it. रेगुलर स्ट्रीमर है But क्या? I'm curious to see how improved this इंग्लिश पर्सन could बन look for गया them. है। So something that I've seen, DRX be very good in Lotus अरे in सीरियस है, is एक बार just समय को अप्रोच करो, those एक स्ट्रीम link के लिए control he loves plus to that swinging come doorway on outside of people Mound. stream That's and such a educate more strong about point for them. So this, Secret and definitely love has it to and I contest agree. that. I know he's a All very right, we very are good ready guy. to go into map 2. जब होना रहेगा तब Lotus, होएगा रे। Quack and Paper Thin, what are your votes for the round differential? जब जो होना रहेगा तब वो हो जाएगा, टेंशन ना ले। Thank you very much, Victoria, Kilios, and Aserai. I'm going to go with less than 5. I do think that this is going to be a close game. I think it should be pretty close. If this attacker side for Team Secret is as potent as it was previously, then certainly you got to give a slight edge to them. They did some real damage on this side of the map. So, for DRX, it's all about weathering this early storm. No, Mako over on the Viper. If you guys remember, he's pretty darn good at Viper. It's pretty darn good. Pretty darn good.
you know, I think back to some of the way he would play. DRX Pearl on 2-0 Viper, लग really रहा है. kind of Really counter ratty, into- yeah. Yeah, and really ratty, and also saves his Viper's pits for retakes and things like that. So, kind of curious. ये That सबसे hasn't main been the है, MO mid for का them on this turret map तोड़ो. so far this year, where they'll use those Viper pits early to take space and things like that. But, you know, Mako's style, a little bit different than some, but maybe more of a team idea. Just a tap of the spike. Truly is going to be incredible popping player. through. Who is? Mako. Oh, yeah. क्या सो गए क्या सब लोग? Actually, I'm just हेलो? gonna change my answer. देख रहा 'cause हूँ. We're not on that rank board thing. We don't have our ranks yet. We haven't gone for our placement, so I'm just gonna change my answer just to mess around with Victoria and say that I think this is gonna be a क्या quick game. blind DRX is दिया gonna take बे, this क्या really quickly. blind दिया Bane is बे. gonna start things off with an initial kill onto Jeremy. क्या A hop over मारा and he भाई. just clicks away. Stacks One now with a bit of a enemy double two. And all of a sudden it's gonna be Envy, भाई who's not गलत quite team है able बे to do all DRX. too much. Too many targets in front of him. And Team Sexy Secret's timing है ना? C approach just kind of got fumbled. Yeah, and this is all three pistols आप so कब far खेलोगे? going the way of DRX, and certainly खेले ना इसके बाद? concerning start हाँ, once मैं again हूँ. for Of Team course Secret. भाई. मेरी आज long Eagle just stream होने वाली locking long. things down. Foxy continues लॉन्ग to be क्यों रात को भी है तेरा कुछ? अबे 8:30 तक खेलते ना. वॉच पार्टी क्या तेरा रात को? हाँ 2:30 को. इसलिए. 8:30 को क्या वॉच पार्टी पे? एने. अबे एने रात को ना बाबा. हाँ तो वही तो पूछा मामा ने. तो तू सोएगा क्या अभी? whatsoever. नहीं मैं trying to use सोच रहा हूँ this अभी toxic ये screen. खत्म हो जाएगा फॉर Sneak up एग्जांपल past 6:30 को Rebel. ठीक है. Door already फिर open 2 for घंटा Bane. वैलो खेलते हैं. See if he can spray someone down, but फिर 8:30 there's enough बजे time there मेरा प्रीमियर है. for Team Secret to squeak on through. They're just going to try to death ball it. तू रात को अलग Buzz स्ट्रीम gonna करने have वाला है क्या? to नहीं ना. Put down some good shooting. हाँ तो He's got 8:30 stacks बजे there. तक खेल ले मेरे Little bit साथ. across. Oh man. Well, Enemy remaining. The death Spike ball down gets A. received, gets taken really फिर quickly. मैं प्रीमियर स्ट्रीम करके match चला यार. जाऊंगा. He's getting hit by the paranoia now. He knows that he's going to mess around. He tries to left. swing around, but ए वैसे तेरे को प्रीमियर में ऐड कर सकता हूँ मैं. खेलेगा? 2-0. क्या yeah, चीज? Bane. प्रीमियर. What a phenomenal way to start his VCT Pacific ये career. देखना चाहता हूँ मैं. on ईबो और Sunset. प्रीमियर जरूर देखना Solid. चाहता हूँ मैं. अगर Yeah. देख एक ही Really मैप good. खेलने I के mean, सिर्फ. he was अगर Yeah, तू yeah. player. 9:30 So बजे many तक assists, खेलेगा तो 16 बता. to 10 in the scoreline. So हाँ? nobody नहीं, missing a मैं beat जा here रहा हूँ, for IPL है DRX भाई, so मैं far. आपको देखना है. And they've got a great शर्म करे. great follow-up here for their bonus. And They kill that especially dude, again on this they defender side. चल रहा. Such an attacker-sided map at times. More यार, damage कौन they करेगा do. 30 साल में? Full buzz. This is going. बाप रे. Look at that snake bite. Just really making sure that if anybody pushes that corner, it's a little bit easier for 30 से Buzz. मारा ए पे If बेंच. he goes deep. Bane as well, moving up on top. This is Covering that पर A door. वापस Yeah. जीतेंगे क्या DRX? Locked फिर off. से? That's हो right. सकता है डायरेक्ट Team वो Secret काम has खेलता to है go डायरेक्ट. through either B or C. मतलब कुछ Yeah, हेवी yeah, स्टैट्स yeah. नहीं It's a है. site that's pretty बस tough to discipline defend है. against. I mean, once you get the spike down, that is. So, wow, good C's coming in from stacks as well. Incredibly well timed. DRX are controlling the pace of this. Again, though, even with Team Secret's guns, now that Buzz has pulled away from A, Rubble. Ouch. Balls of Yes. steel है बे बंदे का. Took a tick of damage there. Most of that was from the decay. Oh, was. Oh, Oh. my God. Spike down A. क्या मारा बेन ने. Both of them are down. It's not impossible for Team Secret to recover from that. And you don't have any of that KJ utility online. 30 seconds left. You lost NDG in that exchange to check for Mako's late lurk. You can just set this up. You got plenty प्रीमियर of कब time खेलोगे? here. 8:30 बजे. Envy trying to get ahead of it, but कंफर्म actually, in नहीं है fact, nobody's कि there. मैं They're स्ट्रीम getting करूंगा नहीं. pinged अगर out by मेरी here. हालत So टाइट aware होगी that तो somebody फिर could be नहीं pushing आएगी. this. लेकिन Okay, try Foxy spots up barrels, tries to go in for the spray with the Spectre, knows that he doesn't quite have the optimal range for that duel, runs up around the other side, team instantly here to receive and help him out. Jesse Bash, although he did get the first 2 kills, Foxy9 will put him in a coffin. जो It's पहला just बंदा स्पॉट spectacular किया दोनों को awareness उसने from मारा. DRX. To know that somebody was likely to push through the top A area, and they're just Seeko ready for it. Tibbon Foxy Seeko plays it Toda. so well, realizes he's got 2 players there. He doesn't get the initial spray to go. Has to back out. Throws the turret behind him just to make sure nobody can chase. I mean, And the his thing- crossfires are yeah. so good, dude. That was the one that really
set it up for me. I mean, you start things off with Buzz and Bane in that beautiful combo. Very oppressing stuff just to take control of the rubble. If Team Secret ever wants to reapproach the A side, they have to walk through that. And unless they're able to take out Bane somehow, who is tucked away really safe. It's really tough. Same thing now going in this round. It's a bit of an anti-eco. Death Ball works out for the time being. They take down Buzz. Paranoia does connect onto Bane as well. Borgum doing great work with this. However, Mako well-timed on the Toxic Screen, just able to push them off, and he even gets a collat. Exactly. Bane trying to fire off away as well. Team Secret having to hang back for a second. They did manage to retrieve a weapon though, I think. Phantom in the hands of Envy. And again, no KJ. All that util's dead. This is so brutal. Okay. Bane just has to stay tucked away. Foxy9 in case they try to rotate back. Team Secret gonna tap the spike any second now. This is just giving Foxy more time to move into position. Stacks now making his way off of B. Very tough for Team Secret. They're gonna try to sneak. Cover going out. Got trees blocked off. Everyone's here and ready to party. Envy trying to lose contact. Able to take down Mako. That's quick. Gets the angle onto Foxy9 as well. Envy taking things into his own hands. Just does the round for his entire team. Incredible decision making. That's incredible shooting from Envy. I mean, this guy, we know how good he can be. 2:30 बजे आएगा फिर सुबह भी आना है पता मेरे को 2:30 वाला स्ट्रीम खत्म होएगा कुछ 8 बजे और फिर 1:30 को वापस पैसिफिक तो मैं शायद सुबह 9 साढ़े 9 बजे सोऊंगा Envy actually pushes out front, actually catches Foxy9, and then anticipates the player peeking out अमेरिका from the कितना बजे stairs. 2:30 The sensing. अरे पहला राउंड है I'm surprised he didn't say the other word that Asura was laughing at last time. इकोनॉमी का एमसी बीजे हो रखा है We go back into it. Next round, it's going to be DRX on a bit of a half buy. And he's got a pit here on the back of that 4K, so this could be a really, really difficult round for DRX and put Team Secret right back into it. That's so needed. Again, oh my God, Jeremy. Quick moves. Kill already for Team Secret. Make that a third as everyone starts to chime in. Buzz, despite having the Vandal, is going to have his work cut out for him. Not quite able to retake Game by changes himself. watch party 3-2. Team Secret definitely not out of this game. Yeah, a huge breath of fresh air for Team Secret. Able to hang on to that Viper's pit. Now you've also got Seekers. Buzz does have a showstopper. One away from a Nightfall for Stacks, so sitting in front of there could be some counter ultimates in the cycles. Envy's just so fired up right now. Straight on there. Why are you sitting in front of me करके भाभी के इसमें So we got DRX buying back up. Are they going to go for that same rubble hold? No, not too aggressive this time. Definitely a good one-way smoke शेर है तू हाँ बाबा शेर है तू It's that same kind of execute. Snake bite in the same place. See if Team Secret this time is going to be able to deal with that crossfire if they decide to push that way. Take down the baby door. Head on in. आज भी फोटो भेजना पड़ेगा Out any contact out of A already. Gotta worry about Jeremy. Not gonna see the feet. As Jeremy pushes. How is that? Doesn't see anything yet. Alright, Robot does. Huh? Do a bit of information. Ben is playing nice. But Team Secret knows like, it's just too risky. That got the paranoia out. That's huge. Until we gone, they might just be able to, if they can take this site, DRX doesn't quite have enough utility for the retake. Actually doubling back into B now. Stex was not prepared. Showstopper will connect for Buzz though. Not able to plant the spike, but Jeremy turns back around. Bad Buzz. Mako getting one for himself as well, and that's all down to Jeremy now at 2 HP. 30 seconds on the clock. Opponents could be anywhere. ऐसे लोग आगे अगर रैंक गेम में मैं सीधा सरेंडर कर दूँ. Secret. It's got some momentum. Buzz just shuts it right down in that round.
Not much time to work with here. Has to grab the spike and plant 10 it seconds immediately. I have the spike. Look at the player cam. Jeremy's eyes constantly shifting towards the map. No time at this point. Tries to bait out Buzz, but yeah, he's not feeling it. भाई बस क्या मारा बे. He just had to stick it. I mean, risk it, but he decides to go to see if they're going to try to put Wait, it instead look during at the plant. Bit of a gamble there. Doesn't quite pay off. Not quite a concern. Oh, Buzz. Oh my goodness. Buzz is dialed in. He's on one today. उसके बाद में चाय पिया. As usual. As usual. And that's again the thing about DRX. We're seeing great and solid stuff from Bane. You know, he's doing his job. Nothing too flashy. Foxy9 on the Sentinel now, not quite allowed to go for his usual antics. It kind of allows for the team to work. Team Secret, on the other hand, you know, they've managed to break through, but Likes करने बोल, chat like करो. so far. You've got all of these ultimates now, though, and they should be able to make something happen. Envy with the Viper's Pit available. If they invest a bunch of ults into this and it doesn't work, there is a lockdown as well if things go real bad. Yeah, Nightfall could be invested by DRX. I think they should. They might as well. Foxy's one away from a lockdown of his own. You should run. कभी भी मैन के एक्सपेक्ट्स के बारे में नहीं पूछा. Secret pushes them away. क्या बोलते हो? Brings the timer down to 25, 20 seconds. It's pinged. But they might turn off. Foxy's kind of aware of it. Yep. भाई क्या क्लियर करते हुए. Buzz going in along with it. Initially found Envy. But Envy's still a menace. Staying inside of the Viper's Pit. He goes in all around the corners. Now outside of the Viper's Pit, he slipped around. Jeremy working along with him. They bought enough time. They pushed DRX away. They taken down stacks. Team Secret again. The younger player shine. भाई कैसे जीते Probably a little बेटी closer है? than you'd इतना like. बाप के ना DRX भाई. You Viper invest the ultimates, you get the मूड win, you में still got बे the Envy. showstopper. That's fine. Envy is अबे तीन में से तीनों राउंड इसने जीता है शायद. Honestly, yeah. with how quick he is to react to stuff. Look at him. He is बे किल trying शॉट to keep पोजीशनिंग Team देख. Secret in these rounds. He is single-handedly doing it, it feels like. The awareness that जब this इतना guy सब होता है has, एक बड़ा दूसरे जगह पे कैम देखता रहता है. Any arguably, comments? I mean, I might actually just say he's the best player out of Philippines. I think so. I'd agree with you. Alright. Oh boy. Good flash. Well, no, that was a team flash. ये ट्री क्लियर करता है क्या वो बुम्बा? Visual kill, but because it's just नहीं, pistols, सिर्फ close. Team Secret Close still tree. able to walk away पूरा with the ट्री kill. क्लियर नहीं कर सकता. I think Jeremy meant to turn away from that one. Spike But planted. that's it. Spike goes down. It's only Foxy9 with the stinger. Maybe stack. 9% का ऑलरेडी है. क्या 9% का? Not the end of the world. Losing one player as long as the rest of this is clean. टिपन भाई मेरे 300k पे क्या गिफ्ट दोगे? Taco? कितना बात कर रहे हैं तेरा? No way. 2200. Damn, Stinger for Foxy. 298 हो Good गया क्या? response coming out from Jesse Vash too. Although pretty Foxy did good. pick up the Good weapon now, response. moving around with the positioning, just तुझे camping मैं that door, it अपनी makes दिल it गिफ्ट pink. दूंगा ले. Foxy9 is starting to feel very uncomfortable in this position, and he walks into the double How stack. Team about- Secret tie things up 4-4. टिपन भाई तुझे बता. Yeah. तेरा maybe एक साल a का little revenue. bit spicier than you'd like for Team Secret, but still, job done. Still plenty of money in the economy. A couple players, some decent bankrolls behind them. Bash taking up for a little bit of a team flash. Finds How some big about impact kills टिपन at the भाई end of the we round. go on a tree Double stack. sponsored by you. Sponsor Get a little laugh out of Jesse. That's कोई और तो नहीं आने वाले. दो ट्रिप About होना that team चाहिए. flash नहीं potential. सिर्फ मैं और तू That's समझ all रहा है? That's alright. It happens to the best. it does. इधर जाने का बोल रहा हूँ. Still got the round, and now aggressively यार अगली taking बार back. लोनावाला में क्या दो घर बनाना पड़ेगा. एक बिंक्स में अकेला, इधर एक और गैंग अकेला. Mako's pit to work. मेरे को सुबह उधर रात को. Oh, he goes in for a showstopper, मैंने एक connects डायलॉग onto a मारा. third. Friend of heaven is friend Just a of little bit man. overheated for a second. Morgan able to shut him down, भाई but क्या Mako coming खेल back रहे हैं बे in, बज लेके? asking Team Secret to take a seat. कैसा टॉपिक चेंज किया ना मैंने टिपन भाई? Dude, Buzz. Man, Buzz he's sexy put खेला. up some huge multi-kills for DRX, and this is... टिपन भाई मुझे Again, दिन I mean, देंगे DRX मतलब is भाभी को really नहीं happy दिया है. to बात try तो to है. take भेज this रहा हूँ space मैं. by Rubble. Or they made. The
utility there मुझे from दिल देगा मतलब भाभी को नहीं दिया. excuse me, from Oh Bane my backing God. him up. That is nasty from Mako. Playing with the timing off That's of it, the especially Mako vibe. working along with Bane, बस because क्या they चला. know that Team Secret's going to take control over it. Team Secret's going to set up for something. Just as हम they're भी about वही to कर set up, रहे हैं. Buzz goes in. हाँ ज्योति के टीमोन में आप क्या करते हो? हम भी वही कर रहे हैं. हाँ बे. Stuck on the side. हाँ अच्छा हुआ ये ओपिनियन उधर नहीं Their दिया. way sneakily forward. Buzz this time going to be playing back with Bane. Going to show him a bit of a different look. As this A push continues. Just Bane on site. Buzz going to try to hold the door. See what they've got. This is everybody thinking about making their way over. But Derek kind of pulls off all of a sudden. Binks be like, I will not as like quick to as they were go on a expecting. trip like that. Makes them check B, but without baby door cleared, you gotta know that they backed way off and they wrapped all the way around to B. That's what you have to be careful of here as DRX. But let's see if they can make another crunch. You work. see. Right side sound he knows that they could be rotating over onto B. Foxy9 knows it's too risky to peek out, so he just doubles back, lets the lockdown go. Lockdown थोड़ा. And Team Secret gets the site. Look at क्या देख Mako, रहे though. टिपन भाई? मैं तो बस Dodging all that utility. गेमिंग का. Oh, saw the barrel. भाई क्या क्लियर That's gonna करते be, वे लोग. securing yet another kill. Jeremy's gonna be the one that blocks off baby door. DRX continues to try and push through, but not quite able to swing past Jeremy. Oh, NDG now chiming in. Foxy9 out from behind. Jeremy swaps over the classic just to keep भाई himself क्या alive. खेल रहे हैं बे DRX? Takes them apart. It's just, again, showing a different look. आपको कोई मॉनिटर गिफ्ट देगा तो वो भी आप वैल्यू के स्किन खरीद right लोगे. towards बात rubble, तो है. just fighting for that space every single round. It felt like for DRX, and this time they pull back. This time they pull off, and it gives enough of a pause here Chat for like Team करो Secret like करो. that 10 के likes से हम DRX बहुत put नजदीक themselves है. into good positions, never really ceding control over B, and that's eventually where they try to make their way into. And Foxy9 not having any of it. Mako clean as heck. Mako with a Viper's Pit and a Judge. It's a clean 2-0 Tibun bhai. Scary, scary, scary. I think I'm really curious again if Mako's just gonna hold on to that Viper's Pit. And it looks like he is. This time Team Secret's aware. They know what DRX is trying to do. They find that little angle. Mid-flight too. क्या that's मारा sick. बे? Still, they have to know that they are on. दोस्तों ने नाम रखा है NTL W. NTL मतलब? DRX knows that they shouldn't be pushing out too far too. National that team pit league. now. So you don't have A, you don't have C. Yeah. You go into B, that's all the Killjoy utility. Yeah, it's going to be tough one way or another for Team Secret. Certainly they can get it done, but not making it easier for them, especially with the low buy on Team Secret's side. Judge and a stinger, a couple sheriffs. That's all you got to work with. Pinged out the choke points are up around B as well. भाई crazy That's Link मिर्ची है. blocked सब off, ठीक हो Heaven जाएगा. blocked off too. Stacks just disrespecting the smokes, walks out front, क्या face up the triple. है Foxy9 getting a couple himself. क्या है मैं bro? DRX picks up a 7th win. They've got 3 rounds in a row now. गलत टीम में बे DRX. Brilliant stuff. And again, I've said in the past that next Mako is the side. kind of guy who likes to hold on to those Viper's Pits sometimes for retakes and stuff like that. But in this case, this is what we've been seeing from DRX so far this year, where it's the Viper's Pit. Control space. ये देख ट्रायंगल बनाया है बे मारते मारते. I didn't hear him. All right. I don't know if he said Kaja, which is like, let's go. That's what I think he said. Tibun ये देखने के बाद तेरा विव देखना पड़ेगा. कैसे लग रहा है? Either way, DRX starting to celebrate a little. It's still 7-4 though. They're able to come back if they play their cards right. Pinky है. Have the full buy in this round. Jesse Vash still on the Seekers. अनुज भाई को Stacks on the पूछते हैं. 9 Exen क्या कर रहा है? Bane? Oh. So aggressive. He has been hopping up just to check. This just makes it so much easier for these rotates to come through for DRX, where they could swap sides of the map because they have so much pressure on one side or another. They know what's happening. Pressure being felt up around A. Some shots being fired up around C as well. Senses gives the warning signal to Team Secret that they should fall back.
Now they know that Bane is in a bit of a tough spot. Playing it patiently. Envy knows the swing's about to come. Takes down both Buzz and Bane. So good. The way that Team Secret takes their time on this A hit this time, they get themselves in a position where they're ready for where Buzz and Bane have been playing. One next to the door. Did he just say Envy's just so fast with that transfer too. Absolutely insane. Now DRX, whenever they try this retake, dropping off of heaven, walks right to welcome and open arms with Jeremy. Okay, क्या सीन है ये लोग का starts off with a bit of a double. Team Secret knows where he's about to approach from. नंगा नाचूंगा क्लच के ये लोग क्यों नहीं मार रहे? तो पता है उधर है। वो लोग नहीं दे रहे ना पोजी स्प्रे I was like, he's gonna use that toxic screen against him, but Borkum not fooled in the slightest by it. And we switch sides. A pretty exciting half. Exciting half नहीं है, attack Saturday game खत्म है 2-0 DRX. Kind of running away with it, but is it good enough? You know what I mean? That's their attacker side. I don't know. It could be. It's kind of like sometimes. I think people forget that sometimes Pacific is like upside down land with like what side on the map is actually better. Yeah. Like we've had this like last Different year. styles. Yeah. Like Ascent was just attacker sided earlier today. Like I mean you never know what you're gonna get. Apple Apple. It's like a box of chocolates. But that's what's fun. I mean, I think that if we can expect the same level of success for players like Buzz and Bane, then it would work out on the attacking side because they have worked together pretty darn well. And then, of course, you got Stacks with the exceptional calling today. Foxy9, you know, he's just doing incredible stuff. He's fundamentally that strong, mechanically that strong. But we are also starting to see Team Secret adapt to some of these things, where especially up around A Rubble, you've got players adapting to the timing of things. That round previously, Envy shut down both Bane and Buzz because of such reads. It feels like about 3 of those rounds for Team Secret that they won were Envy. Envy won those rounds. Yes. So that's great for Team Secret. Envy is, I fully agree with you, the best player from the Philippines that we've seen so far, and he's showing you why. He can go toe-to-toe with anybody. And he's so fun to watch. So looking at the guns, Jeremy looks like he's going to go for a Sheriff. Goes for Jesse. 3 classics otherwise. A little bit of utility. So Jesse not going to be getting the heal. It's going to be the dog and the bird. B का सामान तोड़ के C जाएंगे. But the whole zoo. Yeah, and as usual, DRX. The whole zoo. Well, we're not playing the zoo comp here yet. Not yet. Okay, DRX. A जाएंगे लोग ना. Mako, it's about half damage there. Has to concede the territory for now, but DRX certainly with all these ghosts wouldn't mind a little bit of a longer range skirmish. Rotation ही नहीं कर रहे वे वो लोग. Not gonna be that long though. Okay, got Team Secret backing off. They've gotten the information that they wanted. 50 seconds left. Anticipating a bit of a fake as well. They fall back and watch B. Tap on towards the door for DRX, but they're not fully walking through tree. Yeah, they're really being diligent about this. They're expecting some kind of trap to be sprung on them. If they go, this is going to be tougher, I think, if they go B. They're not going to realize it, but 30 seconds left. There we go. 30 seconds left, though. Paint shells well timed by Jeremy. Sheriff shot fired off as well. Pinpoint headshot coming in. DRX, let's go. DRX swap over to the Sheriff and his rifle will work out. This is good. Jesse Vash. Bane क्या मार रहा है भाई? Able to fight back भाई पूरा टीम ही लोग कैसा है बे? हर एक बंदा. And that's another pistol round. Flawless pistols for DRX today in terms of their round score on it. Haven't dropped a single one. And now they're gonna. Are they really gonna grab a bunch of rifles? Are they they're just going all in here? Like it looks like they were really gonna try to swing this game, try to end it, try to throw that knockout blow. Same time to fade reveal. Bane so tricky. Great movement. Making it hard to find those right clicks. Stacks is getting into it. He's fired up. Yeah, 3 rifles and then a Sheriff and a Ghost for
DRX. Really interesting purchase. You don't see this too often from them. Usually it's like Bulldogs and some other stuff. Feeling confident, feeling like they can close the door on this map. I really wonder why. भाई दरवाजा खोलेंगे यहाँ से blind वहाँ से nade. Secret, never know. Especially what if they force? Of course, right now it's just और Jeremy on the show. केस में करेंगे शायद. For the time being, DRX feeling confident in their choices. Lol, prank हो गया. Calling Previous मिल round, गया इनको. getting a good sense for things. Jesse gets all of this delicious information right now. Pulls out the Titan Mail Mace. They have no idea. एक He बात slipped बता. by. Turret. इसने सरप्राइज कैसे किया? All right, first pick. उसने वो दे करेगा ना. Main answers back Smoke to किया है. Vandal. Smoke किया. When in doubt, Vayne is on Rubble. There we go. Oh, nice That's retake what होने वाला है. the Nice Showman retake, players do. bro. Morgan now comes back in for a bit of a right click. Gun मिला. Indy Fit भी getting है. taken out. too. Drifty, let's नहीं है नहीं है go. possible नहीं है. Mako still pretty much in control of it with his snake bites. अभी smoke fade हो जाएगा मार देंगे. गन है ना उनके पास भी. एक ही है ना. एक Binks vandal is है. here to support as well. Going for a bit of a tap. Secondary dark cover coming out. One enemy remaining. Hello. All you got to do is just continue to spray. करेगा. Peek out at the right बोला time. था नहीं. Good amount of weapons taken Watch away from party के अलावा DRX. कुछ और भी गेम Yeah, खेल ले. this isn't the end of the world. They're able to keep 2 of the Vandals, but you know Jesse maybe could have got a little bit more value, but just did not expect Vayne सीधा to है. be up there. मतलब मेरे में Great lurk by एनर्जी him. नहीं है कुछ Again, बोलने को he's उससे. been so good at that तो this मेरे को year in रात को भी particular, करने वाला. especially on मेरे this पास map, right? answers How many है. times have we seen him just completely bamboozle his मैंने तो कुछ opponents ऐसा टॉक्सिक कुछ बोल and get दूंगा these कि great kills? Yeah, well, he's no doubt about रोहित that. भाई He's फिर smart. YouTube देखना छोड़ देंगे. हाँ? TikToks That's देखेंगे it. कल I से. do think, like, economically speaking, because, you know, a couple of players from before on DRX were on those pistols, they're able to buy back up a little bit, making this round पापा के pretty पास जाओ. competitive for Team Secret. DRX looking to secure yet another bonus. And if you push Team Secret off this round, they're on an eco. So you can see the Valorant methodology कब से बाद में एक that मिनट DRX बाद. is working with in these anti-eco buys, and how they've been able to bank up even still a ton of money. And who knows, Bane's got a from the shadows. You could play around with that बी potentially. पे a little जाएंगे bit, तो try to नहीं ये लोग. get into the back, get into their heads. बी आवाज करे दरवाजा खोल के सी या ऐसा कुछ. Maybe क्या लगता है? it's completely read by Team Secret so far. Let's see if this is going to क्या be a वापस commit बोला? or if they're going to बी पे नहीं shift जाएंगे towards C दरवाजा and खोल के shift towards सी the जाएंगे. door. जा सकते हैं. Turret there. It's going to If he give you. knows now. Unless they, Yeah. I mean, they need to get a But read. does DRX know? They Mako, figured it out. Mako might just call for that C. He does. Yeah, door open. Heavy reads. Now it's going to be NDG quickly rushing over, Nade भी trying तोड़ to दिया. कुछ भी नहीं keep them at bay, but there's not much that he can do. If they Bye. plant out in the 30 open seconds for him, left. then he might be able Back to spray them down, but nah. Playing a stays. very Going beautiful for that plant Valorant. up around the stairs. Perfect snake bite, direct impact. But that's, you know, just a little bit of chip damage. I'd love to see Bane TP behind them when they try to make the retake. I think that would be just so funny to watch. Okay. Alright, a little bit of paranoia. Buzz on the other side, watching for those peaks. Stacks and Buzz, the mainstays, taking what is there. खाली कर रहे DRX बे 10 to लोग. 5. Don't even need a TP. Just a खाली कर solid रहे hold हैं. by the guys on the site. Bane just watching the off angle to see if there's any lurkers, and लगता है there उड़ता are not. पंछी रास्ता भटक गया है. This is just उफ खेल रहे so हैं. close. Chef's kiss gameplay We've ये seen लोग. this sort of approach from DRX a couple of rounds now, especially in the second half, where they create a bit of presence on one side. पूरा cut टीम noise, देखना start 10 to rotate 10 over, 12 even 12 if Team 13 Secret gets a bit of a 14. read. They 14? make the quick move to, you know, head over onto C. yeah. Answer And है I mean, WhatsApp Stacks is करूँ. making some really good calls here today. That decision to move off of B after they got the turret contact. क्योंकि And of course आजकल it हम helps that ज़्यादा Mako's kind of टॉक्सिक taking नहीं a हो little गए bit of यार. space as well, but मैं still, नहीं भाई सिर्फ तू. the coordination, मैं the तो वैसे की communication वैसे ही looking हूँ. really मैं solid. किधर टॉक्सिक Still, हुआ यार. yes. मैं कहाँ Fundamental भाई? DRX stuff, and पता नहीं I last time gotta कब say, गाली you दिया know, होगा मैं. बड़वा Stacks बोला क्या IGL, तूने? maybe a bit of credit मामा to Coach बोलियो Jeremy, मैं but टॉक्सिक हूँ. everyone's playing their part. That's always उनसे ज़्यादा टॉक्सिक आते textbook जिंदगी में कोई नहीं DRX भाई. Valorant style. Exactly. तो बंदा आप चाहते हो पुराने क्लिप्स वायरल हो? Again,
there's anything Termy's good at, it's getting people in the right position. Try to do their पिंकी आ jobs. जाएगी ना Do their job. I mean, again, I mean, like holding हाँ तो एक और crossfires, बुला you लेंगे know, किसको putting your नहीं तो utility एग्जाम in the पे right टेस्ट कर लेंगे places, all that stuff. Actually क्या NPC Certainly जैसा superb. बेटा है क्या Bane's, slot you know, been around the team long enough. He has a pretty good idea as well. हाँ भाई जब भी Oh my कोई God, एक Zach. बंदा ना रहे इसको दोस्त बुलाया उसमें भी प्रॉब्लम Away for a second, Jeremy with the classic actually connecting on the box. Borgum says, no, you're not going to go through Link. It being out with the Sheriff, a double connection. ऑलमोस्ट था Only a bit of a ऑलमोस्ट था trade, and that's going to be फर्स्ट the ही मार दिया बे thrifty लंबा win जाएगा for ये Team Secret. Something that we did not expect. अनुज भाई को भी पूछ सकते हैं उनका जिम हो गया रहेगा It's a massive, massive thrifty for नहीं, Team Rajesh Secret. bhai, They usually desperately रात को needed आते हैं, 8 that. o'clock. They're able to kind of bait DRX into these close quarter battles. They're able to put Stinger, the classics, to good use. The Sheriffs as well. Not ready for Envy to be tucked into that corner at all. So a good repeat, a good comeback. WATCHPARTY बोल दे Team Secret, let's see if आज they can प्रीमियर get स्ट्रीम करोगे something rolling. सोचते First 3 rounds of the half were not great. They try to set up a push, but yeah, they're able to get the Omen into the rubble position, and TRX is really turning up the pace. Okay, Buzz has made his way through. Slipped right underneath them. Tries to deliver the uppercut, but NDG shuts him down instead. Perfectly read. And then as we come back into it, it's going to be Foxy9 going in for more. They're relentlessly pushing forward into the C site. Jeremy answers back with a bit of showstopper as well. Jesse Vash falling off of it. Picks up the head of Bane. Now it's all down to Foxy9 for 1-on-2, and with two players staring down his barrel, not quite able to push past it. There we go, Jesse. नहीं लेकिन बस की अल्टी That's आएगी ना looking good. That was some बस की snappy अल्टी का भी shooting. है नहीं कमबैक पॉसिबल नहीं है Now it seems like Team Secret's starting to get a अब ये read लोग का on things. heavy DRX ulti trying to जाना change बचा, up the heavy. tempo. I don't mind this call at all. नहीं from WATCHPARTY है कि नहीं है ना DRX, but it's just handled so भाई well. मेरे You know, NDG ज़्यादा on point. स्ट्रीम्स Quick जो back up, फॉरेनर्स है वो bail रात them को out. देखते हैं Jesse there to clean up the तो job. एने उनके लिए So समझ रहे certainly हो स्पेसिफिक तुम लोग के लिए timeout warranted, I think, for और TRX to ये try नहीं to है सबके लिए reassess wanna things a close little it bit. now, 3 rounds back to Get their back. heads back in the game, just a skosh, like to say where I'm from, which means a little. Very Midwestern kind of dialect, a skosh. आज कंट्रोल करो देखते हैं I have no, you know what? I actually have no idea, dude. SKOSH perhaps. But relentless, I mean, regardless, excuse me, it is just DRX right now pretty much having a good plan for the second half. Team Secret able to fight back for a second and हाँ ये एने मिस ही wanting नहीं to कर definitely सकते close things out. The timeout has been called. लव यू बंग्स बाय सबका देखते हो आप एने And a पैसिफिक good करियर time में for लव one, यू for sure. Try to see if you हम can भी आते हैं देखने भाई एक्सक्यूज मी ठीक है maybe find a way to punish some of this, you know, प्रीमियर early लाइव होगा aggression that Team Secret's सोच been रहे doing just उसका like they were सोच doing. रहे You know, maybe something like that. You're really close to a couple ultimates. 5 जन है क्या पहले वो देखना Gotta पड़ेगा go towards those alt points, alt orbs. ये राउंड मारा तो कमबैक Get like 2 ults हाँ online. ये राउंड अगर ऐसे ही मार दिया तो फिर नहीं ये राउंड मारा तो कमबैक नहीं नेक्स्ट राउंड अल्टी है नेक्स्ट राउंड जितना क्रूशियल है लो DRX hears it, and then no, we're just gonna go straight to beat. Oh, Buzz, Jesse, good idea on the pathing, but unfortunately, as the lands, it's gonna be Jesse Vash takes him down instead. हाँ A little bit more prepared for this one. हाँ भाई Go with the game बोलते plan, हो even तब with उम्र the नहीं दिखती है echoes. तुम्हें कब DRX बोला not उम्र quite का able to land their shots for now. The firepower is still prevailing for Team Secret. Spike has been lost. 15 साल में कौन खेलते Bait, stack it again. 15 साल में तो मैं लैंड खेला था भाई That's what I'm thinking. 15 years मतलब कौन सी क्लास I don't know if they can. 10th class. They're a little worried that he's going 10th to में push नहीं that खेलता angle. था क्या भाई 10 तो तो मतलब मेरा 15 इयर्स नहीं है इसका Kind मतलब of deny it. कितना है Yeah, तू? try to deny it. ब्रो मैं 50 स्टार्ट किया seconds. था What is- मल्टीप्लेयर मतलब What are एफपीएस Bane's वाली options? सीन इंजीनियरिंग में गेम He's खेलना gotta कभी get चालू the किया site था CP TP. play. तेरे को पता That's- अनि मेरे को that's कब it. मिला था There's हाँ। not a lot of other 15 का था options. Some तब time. गोवा में वो You भी could just try to work Stick this. through door. नहीं 15 में तुम लोग गोवा गए थे Try to work the अरे link. 15 साल का था तब 15 अरे था वो था ना टीएम क्या है वो 30 seconds Joseph left. just ICG takes नहीं था link. नहीं ICGC So far. आईसीजीसी यार इंडियन वो तो मैं भी गया था गोवा में ना हाँ गोवा में होता था So that's it. मैं Yeah. तब था प्री प्यूबर्सन चाइल्ड I was starting to really feel it. बिना दाढ़ी का बच्चा हुआ करता था मैं ये क्रूशियल राउंड है अगर ये जीता तो कमबैक इज रियल है Now,
भाई जेसी को कुछ तो हो Think गया about है rumble मार रहा है control so अभी far. Both teams making great use of this one spot. Yeah, it took a while for Team Secret to figure it out, and I mean this was an equal round. दे दिया उसको क्या दिया DRX wasn't even really messing with it. एनर्जी का मैच See if कब this है time पता नहीं मजा आएगा लेकिन एनर्जी का Maybe they मैच try a counterplay, but you know it's already being Last synced time out मजा here, नहीं so आता, Team इस Secret बार आएगा expecting लग some रहा kind of attempted aggression, and there's just too much util for really DRX to do much about it anyway. Trying to make their way through towards C, trying to clear any of that util It's that they time can. for some too many ults The alarm dude bot, but the Nano's still there. अभी अल्ट है ये तो For राउंड NDG. जीतनी चाहिए Right in that landing zone where the Razes like to go. ये राउंड जीतना ही पड़ेगा DRX को कुछ Fight भी हो path जाए does not allow you to head into C. Meanwhile, Team Secret pushing out on the other end of the map too, going in towards A main now. A lobby, excuse me. And you'd love to वो get लोग को ahead पता of है ना DRX अभी so भी they 3 can't A put पे these ultimates सी into क्यों नहीं जा play. रहे Like if you can do that, if you can shut the round Exactly, down before right? it even really begins, that's why they go for a play like that there. Don't let them set up and everything, but here comes the lockdown for now. Bane setting up for that big push. Everyone from Team Secret is trying to respect this. So easy pathing for Buzz to go through. Catches an unsuspecting Jesse Vash. इतना जल्दी आया ना वो Compared to the previous round now. Viper's अगले comes up राउंड as में well. ओमन और ये He अल्ट has करेगा one of his own. Not quite able to use it for the time being. A paranoia being sent out by Bane to connect it towards B-Link. 12-8 confirmed. Maybe now takes a step forward into the fray. Mako just fires down. The one choke point catches onto all of them. Buzz and Bane chiming in as well. मैं बोला ये राउंड क्वेश्चन था ये राउंड लेकिन जितना ये पॉसिबिलिटी राउंड जाएंगे And this kind of becomes the problem for Team Secret now is that देख लियो लिक the ult अभी side हारा तो favors DRX a little 13-8 bit, right? With this lead, अभी हारा तो हारा invest a lot into that round, and maybe you know if Team Secret's able to pull it back मेरे को close लग again, रहा है maybe बी get वापस हो a सकते few हैं more into cycle towards the end. ये अल्ट of भी the क्रूशियल था half. ना ये अगर हारते तो कमबैक ओमन पता है कार्ट मारने वाले Get that पूरा extra उधर little जाएगा oomph they Bangalore? need to get over the line potentially. We're getting close to that less स्पीड than करने वाले 5 के राउंड ये लोग score line. You know what I mean? कलेश हो Like, we're सकता not है थोड़ी too far away. Getting close to it. Not yet. It is already that scoreline. Even if DRX makes it a 13-8, it's already ये अल्ट के लिए रेडी बैठा pretty है much less than 5. That said, Team Secret does have a chance in making this really competitive. You still have those two defensive ultimates from Envy as well as NDG. रेस का अल्ट There for a retake. अभी देखने हैं क्या अगर now or Jeremy बड़ी as well. एंगल्स वगैरह क्लियर हो चुका है Diligence being done here by DRX. I always want to watch out for Buzz though. Yeah, no, I ये know. डोर तोड़ दिया क्या इसने ये Especially with बीटी the है showstopper, right? Exactly. सबका डॉट है इसका नहीं Just watching इसके बाद the वाले score. इसके बाद Jesse Vash trying to gain information, but nobody's there for now. Door opened, tapped again. Borkum knows they haven't pushed into B yet, so it's very likely going to be A. ओह Oh, दिखा ये मरा वो Jesse in the back. साउंड है साउंड नहीं प्रॉलर गया ना Great ऊपर follow up off the back of that prowler. Oh, Combo sick. play. Ooh, but Borkum वेट gonna get Bane down. उसने नॉर्मल प्रोडर पे कहा ना हाँ प्रॉलर उसके पीछे गया Counter lockdown एक के coming पीछे in. गया ओमन मर गया वो छुप गया दूसरे को बड़ी Just waiting for ये the राउंड भी optimal जीत time to गया peek out. ए ओमन रेड क्रैक है नहीं Time ना around the door to make them think that nobody's playing around tree Right. any longer. Mako knows that Borkum's there. Still able to find a couple kills as Team ये तो Secret मारेगा tries to अभी। rotate back onto the site. Last player It's all down to भाई the Stacks now, ने and क्रेजी मारा शायद Stacks not quite able. वेट ओमन Stacks आठ ने अभी भी क्रेजी बाकी मारा है सी Stacks करेंगे shuts पट down से the हो गया entirety of जीजी Team बेबी Secret along with Mako. चलो Yeah, भाई the खेलेंगे discipline here guys, from let's DRX go. is just so good. Getting close to the site, kind of working their way up. नीम खेलता है बेटी यार Immediately एकदम anticipating that lockdown, शांति से ना falling right back in a tree. सारे एंगल्स खाली करो Buzz there again. The Lotus combo डालो with him and Stacks sets वो that up. I mean, कालिया वो देखा उसने he's brilliant. भाई मैको ने दो Okay, रैंडम Mako. That Okay. was through the smoke. The time, he That's- senses it. Yeah, that's just one of those where you just gotta shrug your Shots shoulders. as accuracy Team बढ़ Secret जाते say, हैं what ना। can we do? You know, when they're reading the timings and reading the pace of the game that well. Guys 500 likes left for 10k likes जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी लाइक कर Down to an दो 8-12. Team Secret in danger of losing this first matchup now. I did not certainly expect this to be
a 2-0 for DRX. We're one round away from it being the case. See if we can push to an overtime for Team Secret. But I thought, really, in my head, I thought Team Secret, at worst, would lose like 1-2. Because I thought they looked so good at the end of kickoff. Thought they kind of figured it all out, but it's yet again another slow start, that thing that Warbirds was so worried about. And they just can't seem to quite find their footing at the beginning of stage 1. Because they've always been a team that, you know, does really well when they have tape to study, when they are prepared for it. Right. But DRX are pulling out these different plays now. You've got the combo of Buzz and Bane up around Rebel. Even on the attack, they kind of tamper with Team Secret's aggression onto its Rebel. And we're watching it right now as Bane just sidesteps everything with a shrouded step in towards Jeremy. Mako and Buzz securing each and every single one of their own angles. Envy so far has been the hero for Team Secret. Can he do it again? Only for the time being, until Foxy9 and Mako arrive on the scene. 13-8 DRX opens things up in stage 1, day 1 against Team Secret. And that's finally the round where DRX decides. Just saying, हम लोग 2-1 हारा थे. Just मामा गया? इधर ही तो है. इधर ही हूँ भाई. ओ लो गया क्या? और तू नहीं खेलना चाहता है उसके साथ तो बोल दे ब्रो. मना कर दे भाई, नहीं खिलाना मना कर दे यार. मत कर भाई. वाह भाई, मैं पूछ रहा था मामा गया कि इसने बोला जस्ट सिंग हम सिर्फ 2 है ऐसा बोला इसने. पंकड़ो आ जाए गेम. मेरे को अंदर किया. वैलो लॉगिन करके देखेंगे, कोई ना कोई रहेगा भी. टाइटल चेंज कर दो. वॉच पार्टी डन. वैलो नाउ. प्रीमियर 8:30 ऐसा डाल. गाइस इतनी हेवी मेहनत चल रही है. 300k करेगा कोई भाई? सीधा जा रहा है. मैं आया वॉशरूम जाके फटाफट. हक के भी आओ थोड़ा भाई. वो तो गेम में आ गए ना. मूत नहीं जा रहा हूं मैं. हेलो भाई मेरे को भी मूतना है यार. मुत क्या लॉगिन करके रहो. मैं लॉगिन करके तेरे पार्टी में आके जा रहा हूँ. हाँ. रिबोन भाई मैं सुना आप लोगों के फोरहेड के बारे में कमेंट करते हो. आपके फोरहेड में कुछ देखा है खुद का फोरहेड? फोरहेड नहीं, आप 5 हेड हो. 5 हेड. मैं आप किसके बारे में बोल रहा हूँ? ये क्या लिख रहे तुम? आरसीबी विंस टुडे. आरसीबी जीत गया ब्रो. इनवाइट करियो. ओ भाई स्पोर्ट्स लाइव सीधा भी ऑप्शन आता है. मैं वो क्या देख, तेरे को रिक्वेस्ट भेजा देख. कौन है भाई ये सब? कौन एडिट है? बुलाओ. हाँ ऑब्वियसली. वाकले हो गया. वाकले क्या पिंकी को बुलाया? अबे कोई ना कोई आएगा ना 2 पे. हाँ 2 में से एक तो जो पहला है वो. व्हाट्स किक. Okay! 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 चैट 10 के लाइक्स करो. तो आज लॉन्ग स्ट्रीम होने वाली है क्या? भाई जी अच्छा खेला. नेक्स्ट टाइम और सही होगा. सनसेट बहुत गंदा खेला. एसेंट अच्छा खेला लेकिन 3-4 राउंड डुएबल था. मतलब हम लोग क्लोज कर सकते थे अपना एसेंट भी. और आइसबॉक्स भी अच्छा खेला लेकिन वो भी हम लोग बहुत जल्दी क्लोज कर सकते थे. मतलब 13-6 या 13-7 पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट है काफी. Which is very nice, but we need to see them win. This punch
ये सीधा सीधा खेल रहे कि है 5-10 मिनट? क्यों फूकना है तेरे को? भाई खाना खाना है लौड़े, खाना नहीं खाया दोपहर को। ओ भाई सीधा बोलो ना, फूकने जा रहा हूँ। वीडियो कॉल करूँगा मात्र चोट तेरे को। बताओ 5-10 मिनट है ना कि नहीं है? हाँ मैं थोड़े 5 तो मिनट मैं तो होगा ही। तो मैं टीमोन को कॉल कर, फोन पे कॉल कर। डन बैठ। अबे अभी अभी तो इसने कहा यार। किसने? मम्मा ने? कॉफी पिया ना उसने? अभी अभी तो इसने बोला। मैं थोड़ा एम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। MW1 है बट 99 है। MW1 क्या होता है? वाकले। वाकले। मैं MW। यार टीपोन बताया नहीं, कैसा लगा यार सोफे पे सो के उस दिन? क्या बोल रहे हैं? सोफे पे सो के कैसा लगा? अरे डरते क्या? रुको डीएम कर। मैं भी डीएम। तो आ रही है? हाँ यार फिर से पानी का बोतल बाहर छोड़ के आया। कभी कभी लगता मैं चूती हूँ। किधर गया टिबोन? डीएम कर रहे हैं हम लोग। हम डीएम कर रहे हैं। हाँ आ तो गए सब। हाँ नहीं ये कौन आ रहा है? वाकले आ रहा है? पता नहीं, कोई तो एक को बुलाओ। हाँ मैं थी वो। पिंकी तुमने कुछ मांगा है क्या जेटा से? हाँ अरे बाहर आओ ना, मेरे को भी करना डी। फुल लॉन्ग स्ट्रीम ओपा, थैंक यू। आज रेडिएंट नहीं रे, पॉसिबल नहीं है रेडिएंट।
230 से मैचेस है पता है। ओए लॉबी में आके बैठो दोनों, रिबन पिक्की। अरे माम्बा आएगा। पिक्की हेवी बेल्स बजने वाली है, ठीक है? तूने क्या मंगाया? अच्छा चाय। मैं जा रही हूँ। और कुक भी आने वाला। किधर है माम्बा बे? ला ना 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 मेनाडी से मत खेलो। अरे चिल है यारो, क्या करूँ? ये लो छाती पे लेके जाओ। मारो क्या पंखे से तुमको बोचे पे? रहेगा का आवाज? बकचोद बंदा है मेरे का। भाई कोई माम्बा को कॉल करेगा ड्यूड? खाना बंक्स का सोल के मैचेस है विजय में। भाई को बुला, हो गया फाइनल। हाय क्यूटीज, जल्दी आओ जल्दी आओ। आया आया। कब से स्ट्रीम करो, थोड़ा आराम ले लो, ठीक है? लाइक करो 10K। आ गए क्या? एग्जिट करो। आ गए, कब से रुके भाई? सब कलर के रंग दिख रहे। बाहर आना टीमोन। आएगा। एक्सियन के बारे में सोचा और चैट में भी आ गया बे। एक्सियन जस्ट सेइंग, मैं तेरे को बुलाने वाला था, इसने बोला वो ने क्या? मना किया, ऐसा बोल रहा है। टीबोन बोला वो क्या मैंने एनपीसी नहीं- है क्या? भेंचोद कर गया ऐसा। मैंने ऐसे नहीं बोला, एक्सियन सच्ची बोले, ये लोग झूठ बोल रहे। यू नो एक्सियन माय नो नो, मैं नहीं स्ट्रीम बोल रहा देख कुछ, ले। मैं तो खाली कंप्लीट करा था सेंटेंस। सबसे पहले मेरे मन में जो आया था वो तू था एक्सियन। एक्सियन में सच्ची मैं ऐसे नहीं बोला यार, सच्ची। समझ रहे हो? तुझे पता है मैं कितना वेलविशर हूं तेरा। समझ रहे हो? टिबन भाई मेरे हिसाब से ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं एक्सियन भाई। ला 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 ला। सॉरी भाई बंदे को ड्रैग तो कर लो। छोड़ना। ए डीजे बोलना ब्रो। टिबन भाई डीजे का नाम उदास है चेंज बे। हुआ है। आज पार्टी नहीं है? डीजे का आज नाम है ना चेंज हुआ पार्टी। है टिबन भाई। हाँ डीजे का नाम चेंज हुआ है। क्या है अभी? आपने तो देखा तो सही मेरा स्टोरी टीवन भाई। वो देखा हाँ नहीं मतलब है, वो वो नया नेक्स्ट डीजे नाम बोल रहे हो क्या? नेक्स्ट किया है उसने। वो मैंने देखा। अच्छी अच्छी है भाई, अच्छी। क्या है नाम बता? हाँ पता नहीं। अरे मतलब श्रेयस डीजे नहीं है अभी, एडिट। कुछ और है। डीजे एडिट नहीं क्या है बता एक बार। कन्हाली किसकी ले ली? लगा ही था मुझे। क्या
टाइमिंग पे आई हूँ मैं। सॉरी नहीं बोलना चाहिए था। अभी तूने ये बोला ना, अभी इसको पूछ किससे इंस्पायर्ड है। सॉरी उससे तो डबल सॉरी बोलेगा। अभी बोल किसका अरे किससे सिंगापुर भी इंस्पायर्ड है। डालना बासुंडी पैकेट लॉस बोल ना टिबोन, इसको पूछना किससे इंस्पायर्ड है नाम। किससे इंस्पायर्ड है? स्ट्रिक्स से दिया होगा और को। टिबोन जाके मेरा मैच हिस्ट्री चेक कर एक बार। रुक जा बोल एडिट। मेरा मॉम डैड का लास्ट इनिशियल गया टिबोन गया। Really, गया। that was really sweet यार। खत्म पूरा जीत भाई, ये बटवा इसका डेंटो हो गया मेरा। खाली कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री चेक कर भाई। 10 मैच एक का बात विनिंग बता, लास्ट हफ्ते तो मेरे साथ ही था 83 में भाई। 2 दिन में खत्म कर दिया, 10 मैच जीत गया इन अ रो। Hey, can you look at a Immortal 3 in the lobby? नहीं बिंग्स भाई आपकी बात नहीं हो रही अभी। अभी मेरी बात इसलिए हो रही बिकॉज़ ये भड़वे ने मेरे को D2 तक लेके गया था। ये बड़वा तो है। तुम कूद गए तो मैं लेके गया। टिबोन भाई आपके साथ जब खेलते तभी होता है ये सब। हिंचो टिबोन का करियर इतना डेथ मैच खेल के इतना गंदा खेलता है ये बड़वा। टेस्टिंग कर रहा था। क्या टेस्ट कर रहा था भाई? उसका करियर देख मामा। देख रहे हो, इतनी स्पोर्ट्स प्लेयर भी इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। तू क्या 540 हर्ट्ज मॉनिटर टेस्ट कर रहा है क्या? भाई खाली डेथ मैच खेला भाई, खाली डेथ भाई मैच खेला। टेंस कर रहा है ना? हाँ इसलिए बोला मैंने इसको। लैपटॉप टेस्टिंग कर रहा था भाई अभी मजा आएगा। कल रात का मैच अच्छा था। सेन का कल पीसी मैं और देखेगा, एडिट तेरा 6 लोग सेटअप 2 मस्त मैचेस लगेगा। खेले, दोनों मैचेस $2,500 ओनली। यस इजी। $2,500 में हेवी वाला नहीं है वो। $2,500 मिड रेंज। मुझको बता। देख एक्सियन आया लाइव, मतलब इधर वैलोरेंट में। सब टिबोन की गलती है। लॉगिन करके आया मतलब क्या? तूने चाहते पिंकी के एडिट के लिए अपने साथ? ऐसे ना करो यार। ऐसे हेवी पिन ड्रॉप साइलेंस है, हेवी। ऐसा तो आई कैन लीव अगर एग्जाम ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं नहीं यार, एडिट भाई हर बार नहीं यार, अभी इस बार मैं ही जा रहा हूँ। चलो बाय बाय। चलेगा एग्जाम को बुला। I was joking man. When I joked, that time you came. ले बिंक्स आ गया तेरा। क्या ऑर्डर किया इसने इनके? चाय। चाय कौन ऑर्डर करता है बे? पूरा टाइम बैठ के स्ट्रीम करेगा तो कैसे बनाओ यार? भाई चाय पिंकी ने एक चाय बनाया था, लेकिन मेरे को उसको दूसरा चाय बनाने के लिए वो नहीं करना था। भाई इतना चाय मत पी भाई, नींद दिन नहीं का आएगी 2 रात चाय को। कोई भी पीता है। भाई मैं चाय ही नहीं पीता भाई। ये आ गए ना वो। नो शुगर टी, नो शुगर टी, नो शुगर टी बोलते। अबे दोनों सर्वर डालना नहीं मिल रहा है तेरे इमॉर्टल 3 के वजह से। ओए मांबा के फेक सब्स है क्या? नहीं यार, इसको कॉल करना था। Match found. Split. Bro, can we like play 5 controller? यार एग्रेसिव मतलब ये खेलो, क्या बोलते भाई हैं? भाई मत करो प्लीज। बिंग्स भाई प्लीज कृपया ना लो, प्लीज रेस लो प्लीज। भाई जिसका आया वो खेलेगा, वैसा रख करते हैं, बाकी रैंडम। नहीं बकचोदी मत करो भाई प्लीज। बिंग्स भाई मामा क्लो पे हाथ रख। बिंग्स भाई बकचोदी मत करो। मैं मना करो मत कर भाई। भाई जिसका है वो है, रैंडम हो जाए। एस्केडिंग 2 पे आओ, मांड मत कर भाई। मैं इमॉर्टल 3 होके नहीं रो रहा हूँ, देख रहा है भाई। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है चुप रहो तुम। मामा तू ले ले सिर्फ रेस फिर। जस्ट सिंह मामा भाई लास्ट टाइम जो रोया था ना रैंक के लिए, वो नहीं खेलता मेरे साथ। लास्ट टाइम कौन रोया था? मेरे को याद नहीं। नाम बताओ जरा। मामा भाई क्लो पे हाथ रखो चुपचाप, विवाद। मेरे को आएगा गो। भाई चलो मैंने रखा क्लो पे हाथ। भाई क्लो पे रख यार। अरे क्लो पे रखता हूँ भाई। एक सेकंड अबे वो तो अभी सब क्या छोड़ो। होगा? रैंडम आएगा क्या?
रैंडम 5 मैन में ये टीबोन ने इंस्टा लॉक किया है। क्लो पे रख एडिट, क्लो पे रख, जिसको जो मिला वो मिला। वाइपर भी अच्छा है। नहीं क्लो पे रख, क्लो ऐसा है क्या गाइस? जस्ट सेइंग, अगर तुमको मालूम नहीं क्लो मुझे ही मिलेगा। अबे इसने क्या लॉक किया बड़ुआ बे। इंसान है यार। भाई ये क्या अरे यार मेरे को क्या मिला? ये क्या आदमी है भाई। अबे सोवा की क्या जरूरत है इस मैप में? मुझे बात है पिंकी को किक करेंगे, किसी और को बुलाएंगे नेक्स्ट गेम। गाइस उप्स गाइस, गलती से मिसक्लिक हो गया गाइस। भाई हम चारों का एजेंट्स बराबर है, सोवा कहां से आ गया? मामबा चीटर हराम ज्यादा है, मेरे को ही मिलने वाला था। हैशटैग भी नहीं आता मुझे। चलो ऑल चैट पे बकचोदी करें। क्या करूं मैं इसका? मारो। वैसे अच्छा है डबल कंट्रोलर। यो टकलू बोला। मामा भाई चुद गया क्या आपकी? अरे आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट भाई, 2 मिनट शांति नहीं रख सकता भाई। टीबन माँ कसम कितना भाई। हिल दो। यार तो बोलो मैं स्मोक करता हूँ। मैं दिया स्मोक। One enemy remaining. हेलो मार बिंक्स नाइफ कर जॉट। देख रहे हो भाई, गॉड गेम प्ले भाई। वेल वॉल्यूम आज कम क्यों लग रहा है सब? ओह ये ना अभी नहीं लिखेंगे कुछ, नाइफ हुए ना। अब नहीं लिखेंगे। मामा आप स्मोक कर लो, मैं आफ्टर के लिए रखता हूँ पुल और ये सब। डन भाई डन। एक क्लियर बट उसे का गया, मैं स्मोक करूंगा। खाली ऐसा ही। एक है स्मोक गाइस, हेवन स्मोक भगा मैं। भाई हेवन का स्मोक तू ही कर भाई, ये ना हो उसका सेंटर डॉट जो है ना माम्बा, वो हेवन पे डालो फिर हो जाएगा। ओ भाई शॉटगन मेरी फैंटम लो। अरे फैंटम ले उसका। रीलोडिंग। भाग जाओ। टीबन भाई जाना नहीं। टीबन भाई क्या टीबन? जॉट वो देख एनिमेशन, बड़वे एनिमेशन। They will scurry. अरे तेरे कान में किधर? अरे मैं फैंटम बैक प्लीज। Your phantom? What do you mean your phantom, bro? It is our phantom, brother. चल यार तू भी क्या याद रखेगा? ए कॉल से खेलते बी पे आवाज करके पे आओ, ड्रोन रिकॉन करके। ठीक है भाई, बोनस खेल लेना गाइस। मामा तू स्मोक देगा क्या या मैं दूं? Let's make some chaos. एक तू दे, एक मैं देता हूँ। लेट देम, मैं सीडी करता हूँ, तू हेवन कर। उनको लगना चाहिए दोनों स्मोकर इधर है। पीछे जा सकते हो। केजे यहाँ पे। वॉक करके पीछे, वॉक करके रिकॉन पीछे। रिकॉन पे डालो। वॉक करके पीछे आना। गुड रिकॉन, ग्रेट रिकॉन। ए आ जाओ। वॉक दे रहा मैं, रुक। ये रोटेशन हो चुका है। ए आ जाओ। आ रहा हूँ। केजेबी पे। Nice one, me. यार Spike down A. Let's go boys. मैं इस बिट न्यूज़। अभी एडिट बोलेगा वापस मुझे मेरी फैंटम दो। नहीं यार ऐसा नहीं यार।
Favor me. My 80 80 80 80 drop in a smoke. Peek me, baby. CT. 80 80 80 bone 80 80 bone Elbow गया. आजा स्पाइक वहां का प्लांट है. अरे भगवान. मैं और पिंकी DRX जैसा खेले. Deadly duos. This is the continuation. DRX चलते हैं सब Can I जन. get a drop? है मजनू. Bruh, bro, almost 1 year now. Can I get violent screen, please? I'm begging. I'm stuck in bronze. You won't. There are people watching my stream for 4-5 years. Drop, Tibund. Right here. Okay. T-bone mother chod drop दे दिया. Enemy spotted A. Take flight. Blocking vision. यार शॉटगन की मां की आंख मेरी गन लो. Back like I never left. Go AP guys. गन है तेरे पास Binks. I can smoke guys. किधर चाहिए? T-bone के लिए रुको, ये जाएंगे. एक ही साइड पे. एक हेवन है. Enemy spotted A. हेवन मार T-bone. साइड स्मोक दिया है. Enemy remaining. लास्ट ए साइड है. बीजा पिंकी बीभाग. 30 seconds left. देख रहा हूँ बीभाग. अरे यार आना मार देते. Spike down A. हेवन प्लांट दे रहा. बैकअप दे वहां से. इधर नीचे. T-bone mother chod. और बाद में चैट मुझे बोलते हैं इतना गाली मत दो T-bone को. Player. T-bone हाय गंदे. और बाद में चैट मुझे बोलते हैं अपने दोस्त को गाली मत दो. T-bone भाई, आप कितने साल से गेमिंग कर रहे हो? जितने भी साल से कर रहा है नहीं करना चाहिए. पैकेट लॉक फिक्स हो गया ब्रो. पैकेट लॉस था. I think that question is mystery ऐसा लग रहा है. Time to explode. मैं पूछ सकता हूँ भाई. देख लो. जाना तो बोलो. बीजो जल्दी बीजो. भाग के बेस से भाग के बीजो. बेस से. मेरा देख मत Binks तू. ऐसा वॉल काटना ऐसा. सिटी रोटेशन हो रहा है. ड्रोन में. वॉल काट ड्रोन कर. बैक साइड फुल दे रहा मैं जा. My turn. ए 80 लो है. T-bone कुछ तो कर ले टीम के लिए यार. कुछ तो कर ले. तेरे वजह से बी जा रहे हम लोग. T-bone हरामजादे. T-bone गंदे प्लेयर. देख लो है. अरे क्या लेट खेलता है ये यार. एक बात सुन ले T-bone सुनना. मैं रीटेक वेट कर रहा था भाई. सच्ची बोल. चाहते हैं. Stay taut as a boss team. अरे मैं रीटेक कर रहा था. सच्ची तेरे लिए बी आ रहे. हेवन रोटेशन काटने का छोड़. T-bone भाई. गंदे अभी. तुम लोग हेवन से मर रहे क्या? गंदे टॉप फ्रंट गंदे जल्दी. T-bone भाई go to top. T-bone भाई. T-bone भाई. मैंने एक दिया दे दिया ऑलरेडी. सुनो ए आ जाओ. रैम्स जाते. यार यहाँ पे स्मोक करना है. लो हेवन स्मोक मत कर. निकल दो. यहाँ पे स्मोक.
चाहिए तो बोलो स्मोक मैं दे रहा हूँ हेवन 2 है इधर है स्पाइक तेरे पास स्पाइक है एडिट हेवन स्मोक दे सकता हूँ हेवन स्मोक खोलेगा पूरा हेवन कट ऑफ हो जाएगा आजा 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 स्मोक दे चप्पल राइट साइड है कॉर्नर कॉर्नर क्लोज राइट साइड है विंग्स में राइट साइड मार दे अरे ब्लॉक हो रहा हूं मैं विंग्स में सैशल करके मार दे राइट साइड एक बंदा है लोडू हां वेल स्मोक है नाइस ओपन प्लांट पे कवर दे हेवन रुको विंग्स का राउंड है रुको मारो मत बस हेवन प्लांट है विंग्स हेवन स्मोक करो मैं 3 है अरे 120 रहना 120 स्काई सब जगह से एंटी वाह भाई एक मारा दो बंदे 120 फिर भी गाली मुझे ही पड़ रही है बड़वे तुमने कब एक मारा था टीवन भाई यार मेरे साथ एक बंदा आओ ना यार हेवन देने मैं अकेला कैसे मैं आता हूँ कैसा कम आई विल कम मेरे पे अल्टीमेट भी है सुन मम्बा हाँ भाई एस्ट्रा यहाँ पे स्मोक डाल यहाँ पे और यहाँ पे एडिट मेरा स्मोक इधर माम्बा स्मोक नहीं चाहिए सीधा जाके फाइट ले मैं बूमबट फेंक रहा हूँ तू मरेगा तेरे पास अल्टी है मैं इधर पहले अपना वो डैमेज वाला कुछ नहीं चाहिए सीधा भाग अल्ट मेरे पीछे भाई हेवन -70 फील कर रहे हैं स्मोक दे सकता है माम्बा एक और है दे क्या बिंक्स तेरे सामने दे सकता हूं स्मोक नहीं है कॉल दे मास्टर शूट लेफ्ट में गया पहला अंत नहीं मारा बाद में मारा मेरे मरने के बाद मारा टीबोन भाई सोल वैंडल किस पे देखा मैं तो किसी पे है सोल वैंडल टीबोन में टीम ने देखा ना टीबोन भाई जल्दी दो ड्रॉप दो चलो बी अ गुड बॉय क्या चाहिए सोल सोल सेंटिनल ऑफ लाइट तो मांग ना बड़े तेरे पास है मिट बे ड्रॉप दियो मैं समझ में नहीं आया क्या करना है अरे गन ड्रॉप कर लोड़े मेरे को दे पिंकी वॉक कर वाह ब्रो ऑफर ब्रो गोट बिंग्स बाय यार मार सकता था इसको एमेन जा पिंकी एमेन ए जाओ ए जाओ तीनों भी है शायद भागो जल्दी साइड स्मोक हैंड प्लांट एवन दो क्या कर रहे हैं जी मैं जाके बैठना चाहता था और पुल करना बोलता चाहता तो तुम्हें अंदर दे देता तेरे को तेरे पे स्मोक देता बैकअप दे पिंकी को Last player standing. तुम्हारी मौत का इंतजार भाई मेरे को एक बात बताओ भाई दो मारा दोनों 80 है ये देख लेता
फ्लैंक कौन देखेगा? फ्लैंक नहीं है भाई। और तू किस खुशी में गांड मराने जा रहा है एडिट? हां बात वो भी मैंने देखा। दोनों क्रॉस खेलो ना वहाँ पे, मेरे पास नेड है, मैं पोस्ट प्लांट खेल रहा हूँ। प्लीज मुझे ड्रॉप दे दे। दो मारा, दो लाल, फिर भी मेरे पे बच रहे लोग। अरे बिंक्स बेट करके मारते हैं बे। शर्म कर बड़वे। देखना था बेबी। अरे मैं नहीं देख सकता, मेरा पोजी स्पॉटेड है। हाय अंधा हूं मैं। Spike down B. Last player standing. कॉन्फिडेंस भाई ऑन टॉप। बिंग्स भाई एक बिंग्स भाई स्मोक है, इधर भी थे तो बोलो, दोनों स्मोक्स हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे को मारने दो ना, कहाँ मर रहे सब? ट्यूलिस्ट के साथ कोई नहीं है, 3 बी 1 ए। भाई टीबन जानबूझ के थ्रो करता है, पता है, मेन से आते तो मैं स्मर्फ आ रहा हूं। बराबर खेल रहा हूं, 5-4 इको करना चाहिए, थिंक गाइस, इको करना चाहिए। सुन एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 स्मोक डाल के स्मोक हटा। ग्लोव यहाँ पे स्मोक कर, यहाँ पे स्मोक कर। किधर सिटी और दूसरा किधर? हेवन। एक और स्मोक डाल के हटा। नहीं मतलब मैं साइट में आने बोला क्या? तुम में घुस रहे हो। मैं तो आने का कोशिश किया। Down A. मैं हेवन में मर रहा हूँ भाई, साइट कैसे जा रहे हो तुम लोग? ओके बेसिक्स खराब हो गया है क्या रे एडिट? ट्रेड लेने गया, सब लोग गुस्से में, एकदम एंड में आया, सब लोग गुस्से साइड, फिर मैं आया बाद में लास्ट। मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, तेरी मम्मी ट्रेड लेगी साइड से वहाँ का। अरे ये लोग घुस गए ना, तीनों लोग, दोनों लोग, फिर मैं घुस गया इनके पीछे। यार दूसरा स्मोक भी चाहिए था रे मेरे को, बोला भी तेरे को 2 स्मोक डाल के निकाल। टिबन क्लच नहीं होने वाला। क्लासिक ले रहा है भाई, क्लासिक ले रहा है, क्लासिक ले रहा है, नीचे से ही भी करो। अब इसने स्मोक चू दिया मेरे को, मैं मार लेता हूँ। मेरा नहीं था वो, उसका था। उसका था भाई बजना है खाली इसको। पिंकी यहाँ पे रिकॉन दे, आगे जाके ड्रोन करके अल्ट मार। कोई नहीं दिखा तो भी अल्ट किधर तो मार। ठीक है मैं एंगल होल्ड कर रहा हूं। ठीक है उसके ड्रोन के बाद ये वाला अल्ट, ये वाला अल्ट। मामा सिटी पुश करा। आई स्मोक कर, कैसे पुश करूंगा? ऑफ है मेरे पे। ओ स्मोक कर, सिटी स्मोक कर। लाइन घुसो अल्ट में अल्ट मार बोला एडिट। एडिट भाई जाओ गाना बजाओ। Spike down B. कैसे मर रहे हो बे? क्या पता भाई, सोवा के अल्ट में एडिट को अल्ट करने बोला, स्मोक कर रहे हैं। स्मोक नहीं, मैंने ये किया, पुल किया था, बैक साइड और अल्ट करने वाला था मैं। बैक साइड मैंने नेड किया हुआ है, कोई है ही नहीं बैक साइड। मैं आपके साथ आ रहा हूं। अरे जितना बोला है उतना करने कैसे नहीं आता है, इसलिए तो गाली खाता है पता है, लंडे करके। एडिट थोड़ा साइड सोवा के अल्ट में अल्ट मार, मैं पुल कर रहा था, सूती है। किधर चेस हो गया? किधर स्मोक चाहिए था? मैं स्मोक चाहिए क्या? जल्दी बोल। Spike down B. अरे यार ऑफ है, तोड़ उसको। मैं लो बिंक्स में, मेरा ट्रेड लोगे तो बताओ। मैं रीटेक कर रहा मेरा बैंडन है। स्मोक वापस ले रहा, भाग के लेके बॉम्ब लेके आ। ये कर सकते हैं, ये कर सकते गाइस। अरे यार पुश इट अप, एक रोम्स में लो है, सारे बी है सारे। चलो 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 भाई इधर है।
अभी वापस भी जाओ, इतना आवाज कर लिया है, वापस भी जाओ वॉक करके। मैं पे स्मोक कर रहा हूँ। ये दो स्मोक दे यार। नहीं एक ही है मेरे पे। रुक जा टिबन, रुक जा। रोटेट मेरे पे अल्ट भी है गाइस। मैं सिटी कंट्रोल लूं? नहीं क्लो को जाके करने दे। बोला नहीं फिर भी जा। तू एवन ही रुक मामा, तेरे पास अल्ट है। बीमेन चले जा, चुप जा पूरा, पहले मामा को बैठ लेते। एक पुल डाल दे वहाँ पे। बड़वा बनती नहीं। वही कर रहा हूँ। ये कैसा बना इमॉर्टल? तेरी बूस्ट होके बना यार। मतलब प्लांट में ले मामा। पीछे से आया। अरे प्लांट वाले मतलब इधर बैठ ऐसा कोने में। प्लांट में ही पीक कर। Let's keep the faith. मैं सोच रहा हूँ ये क्या रुके बिंक्स भाई? इधर ए तो मैं और टिबो ने सब बी किलो, वेंट ने 3 बी किलो, दोनों स्मोकर बी। हाँ चलेगा। मैं दे सकता हूँ। वहां से यहाँ पे और यहाँ पे स्टार डाल के रखा एक्स्ट्रा। ये 2 स्टार डाल के रख। पिंकी बी में इन्फो ले लेना। तेरा वहाँ पे डबल सेट चला सकता है। अपने दिल से बात चाहता हूँ पर रात की आप हग्गू हो। थैंक यू। बीच में कट हो रहा है आवाज। मेरा मुंह पे आ सकता है सैशल? तेरे मुंह पे नहीं आ सकता। बी पे आवाज। एक मिड। बी में स्मोक किया मैं। 1 मिड। एक। ठीक है तो आके ले टिबो स्मोक दो ना। ऊपर चल रहे। मैं पुल है इधर मेरा। भाई ना मेरा बूमबॉट उसको देख रहा है ना। नेड कैसे मर रहे हो? मेन से मारा मेरे को। आप स्मोक इन 7 ए जा रहे। हेलो कैमरा देखो। एक हेवन है फॉरवर्ड। आ गए कैमरा देखो। स्मोक दे दे। नहीं है। ट्रैप पे फंसेगा कोई। ट्रैप पे फंसेगा टिबोन। No more charges. Revealing आ चुका है। सिटी नहीं ये नहीं इसने नहीं मारा मेरे को। बट स्टिल एक बार देख ले। साथ में किलो जो भी है। मेरे पास स्टार्स है ही नहीं यार। 30 seconds वेंट से भी आ सकता है पिंकी। वेंट से भी आ सकता है वो सीन है। पिंकी इधर चले जा वॉक करके। रैम्स चले जा। स्मोक किया है मेन से आएगा शायद बैक उठाने। जाते रहे पिंकी जाते रहे नीचे जाते रहे। सीटी तो नहीं है ना बिंक्स भाई? बस पिंकी 10 seconds left. साइड पे है। बैक अप टू बस। वेल प्लेड गाइस। टाइम नहीं है। अबे उसका नेट गया है। पिंग देखो बेस में जाके मारो। दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. मस्त मारा रे ट्रैप वाले को टिबोन। Oh, he stole. हेड मारा मैंने। What? I didn't stole a kill, bro. You stole my kill, yo. I didn't stole your kill. मैंने दिया बड़वे। इंसान है मशीन। Love you. Nice climax. क्या सीन गाइस? एक क्लियर। बीमेन भी साउंड तो नहीं आया कुछ। मिड वॉक इन करेंगे। कांटेक्ट क्रॉस के लिए क्रॉस यहाँ पे बैठ क्लोज। मैं मिड पे स्मोक दे। राइट इधर से स्विंग करेगा ना। रैम स्मोक दे। एक हेवन है। एक बार इधर उधर है। जा बिंक्स जा मेरे। Spike spot. रुक यार रुक जाओ गुस्सा। मैंने गुस्सा। बॉल चाहिए बिंक्स भाई बॉल। We're here
Because we're बॉल the चाहिए तेरे को best. टिपन भाई Don't any of you forget that. I meant to say game मुंह खोलो अर्ली इन्फो खेलना है क्या? रैप पे खेल वो लोग साइड पे तो नहीं आने दो मुझे एक शरीफ यार साइड खेल मैं बूमबॉट नेट सब है रे दे दो ना मैं अगर बाय करूंगा तो नहीं आएगा थोड़ा पहले पीक में मरेगा तू नहीं बाबा कोई नहीं है 10 के लाइक करो चैट एक क्लियर मिड वल्नरेबल है मार एक और कुछ स्टार डाल यहाँ पे स्मोक डाल दे दूसरा मर गया वो नेट डाल माबा नहीं है मारा पहले मारा ये जो 40 है मिड नहीं हो सकता है अरे हेलो मैं बोली आ गया केजे मेन अरे तो सिटी आ सकता तो बोल मेरे को कैसे पता वो सिटी मेरे को यहाँ पे मारा उसने ऐसे कैसे पता मेरे को वो क्या कर रहा है कब मारा वो थोड़ी पता है मेरे को एक बीमेन है वेरी नाइस लास्ट बीमेन इजी क्लास पहले इसमें बैठ गया भींचो दूसरा केस डाल एंटी नाइस ऐसे बैठा था पूरा Anyone have any splints? I may have jabbed my fingers. क्यों ये होल्ड है पे क्यों नहीं हो रही है एक ही बीमेन एक ही खेलो यार मेरा बीमेन मैं सुनो एक ही हेवन खेलो 2 बीमेन खेलो एडिट यहाँ पे एक स्मोक डाल यहाँ पे एक स्टार डाल एक यहाँ पे स्टार डाल एक यहाँ पे ये 4 स्टार डाल ये तेरा डिफॉल्ट हमेशा 4 स्टार रहने दे ठीक है और यहाँ से खेल मेरे मार्कर से खेल मार्क करके रिकॉन करना बिकॉज़ मैं वो स्मोक कर रहा हूँ कंट्रोल लेगा दिख ही नहीं रही है केजे है पर स्मोक कर एमएन स्मोक कर राम चाहिए क्या ब्रो राम चाहिए ए पे 2 है बिंग्स ए पे 2 है One enemy remaining. लास्ट 7 है One enemy remaining. नाइस बस मैं कैसे मर रही हूँ मेरे को नहीं समझ आ रहा अरे you pushed through the smoke now I was going to play off that smoke भाई एक कोई तो सेंटिमेंटल के मुंह में मेरा लंड सॉरी मेरी एक ड्रॉप दे बिंग्स भाई बीवी वर्सेस बेस्ट फ्रेंड भाई ड्रॉप दो बेस्ट फ्रेंड प्लीज आज बेस्ट फ्रेंड प्लीज तू मांगा नहीं है यार अपना भी स्प्रे है यार भी फास्ट हो सकता है स्मोक दे बीमेन दे दिया और स्मोक डाल दे स्मोक का सीजन पुल अरे यार का एडिट मेरी जान पीक लेने से पहले पुल ले फिर फाइट ले तेरे को कोई मना नहीं कर रहा है फाइट लेने पुल तो कर No one beats my firepower. कौन मना कर रहा है यहाँ से खेल स्मोक डाल कोई दिख गया जिगल में पुल कर और फाइट ले मैं भी नहीं डाल रहा हूँ इतना जल्दी रोटेट करके हार रहे अपन उसका स्पैम आया यार उसका ब्लाइंड तेरे साइड पे आ रहे पुल तो यूज कर भाई you need to recon out right just bounce your recon out this wall अभी मैं यहाँ पे आ गई अरे क्रॉस खेलो ना रे यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस खेलो ना ए स्मोक यहाँ पे पुल रेडी रख देखिए यहाँ से गोली मार पुल गोली मार मेरे पास स्मोक है मैं स्मोक कर सकता हूँ ठीक है भाई साइड क्रॉसिंग का स्मोक दे सकता हूँ पूरा इवेंट ब्लॉक कर सकता हूँ बिंक्स मैं बी खेल रहा बिंक्स ठीक है
मींस मैंने वो किया तो क्रॉस हो सकता है राइट में राइट में सेव कर इधर दो बंदे सीन मार दिया है। अबे इजी है बे, मैं और टिबो ने 3 BQ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जाऊँ क्या एक लूं? एक खेल मैं और तू A 3 B, वरना रैंप रैंक सब लीक होएगा। 2 B सेट के लो, एडिट यहाँ से खेल हर एक राउंड इधर या फिर ये बॉक्स। पिंक्सेस लेट देम एंटर करेंगे ना तब खाली एक बेसिक रिकॉन में मार दोगे ना, वी कैन गेट वन पिक इजी आउट थ्रू द स्मोक ओनली। यहाँ पे क्रॉस के लो बस, कुछ नहीं है भाई, क्रॉस तोड़ ही नहीं सकते। I'll play behind this thing, you can play side. तू उधर जा किसी के, मैं इधर देख रहा क्रॉसिंग नहीं देख रहा है यार तेरा कैमरा। अबे है कैमरा है सब कुछ है, तू टेंशन मत ले। मिड हेवन स्मोक चार सीन नहीं डाला है भाई बंदे ने भाई, है ही नहीं स्टार। भाई मैं वल्नरेबल वगैरह सॉल्व कर रहा हूं आज एक साथ Last player standing. अबे मैं भी जा रहा हूं, वीडियो हो रहा है मेरे को भाई। मेरे से ना हो पाएगा एडिट में, तेरे को कुछ नहीं बोल सकता। एक काम करना अरे स्टार्स है ही नहीं मेरे पास। Super easy to pick off. मैं और टीगो नहीं खेलते, तू 20 60 कर, हम लोग रीटेक करेंगे। तो स्टार्स नहीं तो तेरे मम्मी के लिए यहाँ पे 2 स्टार डाला है। तुम्हारे लिए डाला था, हमारे लिए तो क्लोव है ना। मेरा क्या पूछ ना, उसका केज है ना डेट। क्या ब्रांडेड बंदा है भाई, पूछ ना। मुंह में मैंने लंड फंसा है क्या तेरे? हेवन जा मामा मिड नहीं ये वाला खेलना। ठीक है क्रॉस तू इधर, मैं बूमबॉट नेट करूंगा यहाँ से। एक का सीन है। I've got your trail. ये वन रीटेक, मैं पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ। I can fight. एक मिनट है। रुक एक हेवन जा रहा है। आजा हेवन आ जा पूरा। Like I never left. Spike planted. दोनों साइड Enemy spotted B. एक सिटी है, एक हेवन। मार उसको ऑफिस। My turn. Last player standing. लेफ्ट से ही आ रहा है, लेफ्ट से ही टिबोन। नाइस भाई केस क्या कर रहा है मामा ऊपर? तेरी माँ का टीबोन, मैं तेरे को चप्पल मारूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ साले, मैंने मारा उसको, मेरे नीचे मेरे वो घूम रहा था, कैसे बीवी मारा ने उसको? दोनों साइड बोला। अरे था दोनों मार के नीचे कूदे थे। मैं भी खेल आराम से साइफर के अल्टीमेट देखने वाला था किधर है। नहीं हो रहा, बीवी ने धोखा दिया। तू भी तो खेल रहा है, खेलेगा बिंक्स। पंकड़ो तेरे को अगर कोई 20 सेकंड बाद पहले मार रहेगा ना तो बोल सकते कि हेवन आ सकता है या ऐसा कुछ। दोनों साइड इज अ वेरी रॉन्ग। मैं एमएन इंस्टेंट स्मोक दे रहा हूं। No peeking. है एमएन है। नेट डाल, जब मैं बोले यहाँ पे नेट डाल, नेट हाथ रख कर। नेट नहीं है भाई, नहीं है भाई। जेडिट मिड देख लियो, बनियो एक मिनट छोड़ो, मरने का नहीं, हेवन आने दो, कोई दिक्कत नहीं। चिल्लाते मार रही है वो बुलेट। यहाँ तक आवाज आ रहा है ड्रोन कर पिंकी, ड्रोन कर वहां से। स्मोक दे एमएन डीप दे रहा हूं, 1 सेकंड एक और है मिड, रेना मिड। तुझे मरने का नहीं, याद रख। लो है रेना मिड दोनों उधर क्या? रेना मिड था, रेना मिड दूसरा गाफ में मेरे गांव में पक्का। एक साथ रीटेक करेंगे। रुक मेरे पास स्मोक। प्लांट पे निकलना, दोनों प्लांट पे निकलना। रीटेक स्मोक दूंगा मैं। मार एडिट, तेरा राउंड है।
planted. Last God. Good game खेला मैं। God. मैंने रेस के बम में मारा यार, वो मेरे ऊपर आ गया। एक तो स्काई किधर दिख नहीं रहा है। 11-21 इन्फो मांग रहे हैं। जो Ascent 2 रात को प्रीमियर खेला। क्या भाई वार्म अप नहीं हुआ था खाना भी नहीं खाया था लौड़े भूखे पेट खेल रहा हूँ मैं। एक दिया एक ड्रॉप दिया सुनो ए लास्ट टाइम ये ऐड किया था सुन ये ऐड करेगा मैं बोल रहा हूँ तू तेरा नेड हाथ में रख बस और कुछ मत बोल। डिप स्मोक दे जब मैं बोलूँ यहाँ पे क्रॉस नेट डाल। कुत्ता तोड़ दे ठीक है तोड़ सब कुछ तोड़ दे। सिटी यहाँ से खेल साइड मत छोड़ मामा। कुत्ता तोड़ बस। स्मोक पुल स्मोक। मिला ओ शिट तू क्यों नहीं भागा। क्या सीन बिग 6 हो गए मेरे पे 2 सेकंड में किधर चाहिए spike planted. क्रॉसिंग के लिए दूं नाइस विंगे क्रॉसिंग के लिए दूं जल्दी बोल। क्रॉसिंग के लिए मैं आ रहा हूं। अरे मैं तो ट्रैप्स में खेल रहा था बाबा। One enemy. नाइस स्मोक के अंदर ही नाइस बेबी बुला मेरे बीवी को सड़ी के मेरे को नहीं बोला। हाँ फिर ठीक है I am loving it. ठीक है मामा को बोला ठीक है Match point. Party's over. Love you D-Bone. एडिट तो ब्रेन डेड तो है तू माना मान ले आज। एक बात बता टीबोन भाई बाबा मैं उधर खेल रहा हूँ कि मैं साइड पर एडिट में खेल रहा था। मैं एक ही चीज बोलूंगा तू प्लेट के नीचे चोदू बस और कुछ नहीं। अरे नहीं आता है राष्ट्रा खेलता है प्लेट के नीचे बिंक्स मेन स्मोक दे रहा हूँ ड्रॉप दे स्मोक दे वो हाथ में लेके बैठ नेड यहाँ पे देखे मार तेरे को मरना नहीं मेरे यार। डिप स्मोक जल्दी। है क्या बिंक्स कितना है मामा तेरे गांड में भी हाथी का लंडी है नहीं मजाक से नहीं रिएक्ट कर पाया मैं इधर बोला वो करने। अरे भाई नहीं रिएक्ट कर पाया मैं शॉटगन है क्लोज। अरे अरे क्या अरे मेन स्मोक है मेरे पास कौन है Player standing. ओके और लेता मजा। एडिट मेरे पास स्मोक है। I feel bad for Indian they are late बोलेंगे उसको फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है। 9 सेकंड्स मैं उसके साथ ऐसे ही रहा हूँ भाई उसको कभी फर्क नहीं पड़ा है। रुकेगा 4 सेकंड स्मोक है। नहीं रीटेक स्मोक दूंगा तू रुकना मत कर। राइट साइड एक्सट्रीम राइट हां ये पीछे ही है इसके। ये क्या जॉर्ज स्मोक एडिट I mean Jord clutch. Nice on edit. Defenders ये बिंग बहुत माइक्रो मैनेज करता है पता है क्या अरे रे मयूर जा रे माइक्रो इन्फ्लुएंसर है इधर माइक्रो मैनेज Binks, me personally wouldn't take it, Binks. Just saying you are a ex T69 member, so you should learn by now. ये बड़ा ऊपर कैसे मेरे खेला मैं जा रहा रुक किधर जा रहा है 8:30 बजे तक खेलना भाई। ऐसे ना कर एडिट यार आ जा यार एडिट यार गया एक और फ्रेंड एडिट बोला नहीं भाई नहीं एडिट आ जा यार एडिट स्ट्रीम चल रहा है यार क्लास जल्दी कर लव यू लास्ट ने 8:30 तक प्लीज। अरे नहीं यार जाना पड़ेगा इसको पार्टी करनी है पर भाई यार सैटरडे नाइट है डूड अबे हमारा भी जिंदगी सैटरडे भाई एडिट सैटरडे नाइट है तो तू जाके क्या वो खोलेगा अरे हैव क्लब टू का रीच अर्ली ब्रो जल्दी जाना पड़ता है क्लास बाबा मेरे को भी जाना है -1 फ्रेंड तो सेक्सी केला Binks भाई how was my performance यार it was very cool dude very cool
जो नहीं, क्लचेस मामा। किए है ना आपने नहीं ले तू सेट मैक्स स्केल भी ये बोलता है आपने 2 राउंड बस गांड में हाथी का लड़ लिया, उसके अलावा आप अच्छे हाँ खेले। वो टिक वो 2 राउंड्स मैं वर अभी एक ही एजेंट ले रही स्मोकर सब क्लो पे हाथ रखे। ओ नहीं तो नहीं बकचोदी नहीं भाई प्लीज, ये मैं बहुत हो गया, मैंने नहीं भाई, नहीं हो गया मेरा, हो गया भाई। वापस मैं भाई मैं अपना खेल रहा हूँ, तुम अपना खेलो भाई। बिंक्स खेल ड्यूलिस्ट खेल लेता चुपचाप। हम भी करेंगे भाई बकचोदी भाई। भाई इतना मेहनत से मैं रात को ऑस्ट्री मीलो जमा करता हूँ गाइस। शर्म कर मामा, इधर ट्रायड में कर रहा है, गाली भी चैट मुझे ही भर रही है पता है। इसको क्यों बोल रहा है, उसको क्यों बोल रहा है, टिबोन को क्यों गाली दे रहा है। बट यार हाथी का लंड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे? टिबोन की गाफ भी तो बड़ी है यार। क्या लैंग्वेज। आई लाइक हाउ लंड बोलने में दिक्कत है लेकिन गांड बोलने में दिक्कत है। Some accurate plays now. ए मेरा लास्ट हार है, गए जाओ guys, हार मत। गए। मेरा भी एक last और है। हो सकता है शायद। नहीं हो गया। नहीं लेट हो जाएगा। मेरा खाना वाना भी बाकी है प्रॉपर। भाई अभी चालू होगा आईपीएल, बैठ के चिल करके यार देखने मिनी का। गू बुला रहे मेरे को। हाँ मिनी गू क्या? मेरे को मिनी गू बुला रहे। मिनी गू बराबर बुलाएगा। मिनी नहीं पूरा गू ही बुलाओ ना। एडिट ले लेके ऐसा एजेंट दिया कि जो माइक्रो मैनेज कर नहीं सकते। आई लाइक इट। स्मार्ट बॉय एडिट। नहीं मैं तो सब में करता हूं। अभी बिंग का कुछ सुनने ही नहीं वाला भाई, खुद का खेलने वाला। एक चीज बोला था सोवा कैल्ट में अपना अल्टरनेट नहीं, तुझे कर रहा बैक पे। अरे चुप रहे, वेट करके किल्स लेता है भाई, सबको बोलता है ये करो वो करो और खुद को अपॉर्चुनिटी ये करता है। हाय हाय हाय, सब जगह मैं पहले घुसा ड्रोन के तेरे। हाय हाय, इसके बेटा तो इधर है बे। कौन रे? तू। गाइस एक्सक्यूज मी, आई नीड टू डबल सेट। भाई क्या समझता भाई, अपने लोगों को फ्लैशर तीनों पीछे आ जा। ब्रीच रेज है सामने, हो गया गाइस, खत्म, टाटा बाय बाय। Last player standing. सब पीछे आता। अरे वो थोड़ा रहता तो ठीक है सिटी का तोड़ दो। पिंकी ये तूने क्लच किया ना, नंगा ना तुम, मैं नंगा। हम दोनों साथ में यहाँ से मैंगलोर तक जाऊंगा मैं नंगा। तू नंगा नाचेंगे हम तू। उनको पता है। ठीक। अरे यार मैं और वीडियो बना रहे भाई थे हम दोनों नंगा सालसा करने वाले थे मैं और टीम। ठीक है, नहीं देखना था मुझे, इसके लिए मैंने क्लच किया। नहीं मुझे तो देखना था ना, लेकिन दोनों एनाकोंडास टकरा साला ये मामा सस्ते पे मैं बता रहा हूँ, मैं सस्ते ये मामा बहुत सही ब्रो, क्रिंज ब्रो। अच्छी एडिट जी, ये मामा सस्ते बेबी। यहाँ पे जो मैंने मारा मुझे काहे छोड़ के गए? अरे क्या छोड़ गया, क्या मतलब, तेरे साथ ही था, तेरे पहले में मर गया, तेरे पीछे रह गया। सैचल कर, मैं हेल्प करता यहाँ से। नहीं करेगा वापस। सैचल है नहीं मेरे पास। एक लेना नहीं है। क्या हुआ? ना हो पाएगा ये, ना हो। बोल ले रहे बे, इधर से वो करो ना। वो करो फास्ट। भाई 4 राउंड है इधर, जाओ। थैंक यू फॉर द सिटी स्मोक। चार लोग मेरे पास। Spike down B. एक ही स्मोक था मेरे पास। सिटी हेवन करूं या सिटी करूं? Teleport's ready. ऊंचा तो नहीं किया था हेवन।
एक मैच कॉल मत दे, अपने आप समझ जाएंगे। डन से, ये मैच में कॉल नहीं दे रहा। अच्छा क्या दो टीम डन से। वन बुलेट भाई एक में 3 मारेगा ये। शुभन भाई ये राउंड क्लच किया ना, फिर से सालसा पार्ट 2। डूम खेल रहा है भाई। सारे स्मोक कर दिए मैंने। 30 seconds. नाइस वन। विनेबल विनेबल। अबे यार वो मार के। और कहीं मॉड है तो बाहर आओ। Let's go. ब्रो एक गोल ले यार, विंग्स एक ओडिन ले, भेंचो चला इधर। अब मिलेगा ऐसा नहीं है भाई, एफबी कुछ तो कहां चलाओ मैं पिंग कर रहा हूं। मैं क्या वो नहीं पता यार। मैं पिंग कर रहा हूं। तुम करो पिंग। मैंने पिंग कौन देगा? सारा पिंग क्या दे रहा हूं? मैं बोला मैं पिंग कर रहा हूं। 5 पिंग। वाह चलो अरे बिंक्स पहुंच गया बी साइड। पता है ये पे बकचोदी करी इसलिए पहुंच One enemy remaining. सिटी है इधर ही। क्यों? अच्छा तुम go go go। लूप तुक्का बाप। चला है क्या पिंग की? कुछ लगी क्या इधर? भाई 20 जन ने पिंग किया है, क्या लगेगा? 30 तो मालूम तक नहीं पड़ा रहेगा कहाँ मारना। सही है। आपके पास फ्लैशर नहीं है, इम्पॉसिबल है। पिंकी मेरा पिंग। अरे उनका फ्लैश थोड़ा रोक सकते हैं। मैं रोक सकता हूँ, मैं सीज कर रहा हूँ। नेट करेगा इधर। There. वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेट। There. Right here. लो है वो। भाई अपना रेस कहाँ पे? वाह भाई ठीक है, नेट क्या सब दिया, बैकअप दिया। तुम क्या सैचल करो ना क्रॉस। ये सीरियस करो ना बे। यहाँ सैचल करके यहाँ पे रिबॉन्ड नेट जीजा। मित्र अपने क्लोज बूमबॉट जीजा। सॉरी मेरे को सुपर चैट आया है कि मैं एजिल कुछ पे करूँगा तो खेलो। ठीक है टीबन भाई, बोलो टीबन भाई, टीबन कॉल मत दे बोला। इधर भेज गलत। चलो सी करो, चलो हेल्प कर सकता हूँ अगर मुझे ड्रोन और रिकॉन मिलेगा तो। सी बोला था ना, एक बंदा बी क्यों जा रहा है? रुको रुको रुको, बिंग्स और मैं वेट कर उधर ही। तोड़ दिया क्या तूने सब कुछ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिटेक खेल रहे हो? मत मारियो। रीचार्ज करेगा अभी बता रहा हूँ। 110 ब्रीच। दोनों बैक है, बैक स्टैब है। जी तो जाओ, मैं बराबर करता हूं। दोनों बैक स्टैब है क्या? कर लेना तो पता चल जाएगा, कर लो ये। मेरे को ब्रीच ही दिखा। इधर क्लियर है, क्लियर है। मेरे को रिकॉन क्लियर है। इधर है, बी साइड है। ब्रीच लो है। Enemy remaining. क्या कर रहे हो? इधर ही जाओ, रुक। बी के बाहर ही। क्या? अरे हेवन लो है, लो। अयो नाइस राउंड बेबी। अबे ये मत गन आउट थी। मैं गन आउट थी। अरे मैं कुछ बोला ही नहीं यार
टीबन भाई आईजीएल का काम होता है, मतलब आईजीएल जो बोलता है सब सुनना चाहिए ना। हाँ मैं तो नहीं बंदा नहीं सुन रहा यार अपना। मैंने 2 मारे, टरेट तोड़ा, सी जा रहे ना सब किया मैंने ताकि उसका चीजें उठे। पिंकी को ड्रॉप दे, टीबोन पिंकी को ड्रॉप दे। गाइस मेरे और पे अल्ट है गाइस। और भी लेते आ जाओ। कौन है क्या हमारे पास? पकड़ा 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 पकड़ा। नाल बचा के रखा है। सीटी कांटेक्ट पे बता मेरे को, एडिट कॉल दे। पूरा होगा कॉल दे। तू पीक क्यों कर रहा है पहले भाई? पीक में उसने पीक किया भाई, आगे आके ऐसे। 120 किसको मार रहा था मेरे पहले? ओमेन 120 है पिंकी, इसको मार मेरे मार्क पे। 120 है पिंकी ओमेन। रेज लो है। तेरा टाइम गया क्या हुआ? भूल गई। शिट मैं स्मोक कर रही थी। जो मार रहा था बाहर आके। अरे यार न्यू प्लेयर हूँ यार मैं। अबे मेरे को लगा मुझे यहाँ से मार रहे, क्या सीन? खाली 1 सेकंड बाद पीक करता ना तू, एडिट फ्री फंड का मिलता तेरे साथ। उसने पीक किया, मैंने नहीं किया। मैं इधर छुप रहा था कोपरे पे, उसने वाइड स्विंग किया। तो तू क्रॉस नहीं करना था ना। और इसका वो नहीं मार, एक किल मारना है मेरे को बस। देना इको इको यार। हां इको रेड तोड़ के आ रहा हूँ। आईजीएल बोलेगा, आईजीएल इको है, नहीं करना है, क्या करना है? नहीं करना है, फोर्स करो। एमेन गए तो मौत है, अभी बता रहा हूँ। नाइस वन टू वो भी रेस और ओमन है। आ गए। सी से आता है। हाँ ए से आता है। 2 ए थे, दोनों। अरे इसका 55। मैं बाहर जा रहा। Sweet dreams, asshole. Hi, fight's not over, you know. Can I get a drop? यार मेरे को आईजीएल करने से मना किया, लेकिन मैं हंस तो सकता हूँ ना। भाई इसको म्यूट करता हूँ, जो कॉल से का बोलना। मैं तो कॉल ही नहीं दिया, मैं तो हंस रहा था यार। कॉल दो टिकोन। हाँ सी आ जाओ। फिर भी टॉप फ्रैगर हो बिंक्स तो। इस स्पाइक लेगा ना, मैं ए पे थोड़ा सा प्रेजेंस दिखाएगा आईजीएल। ये पे यूटिलिटी नहीं डाला गाइस, ये पे यूटिलिटी नहीं डाला गाइस। वो ड्रॉप है हरामी। इनको नेट करके भाई मुझे इसका सीन लग रहा है। Out of charges. इधर कवर मिलेगा क्या? नाइस। कौन प्लांट है? सीलोंग का प्लांट है गाइस, सीलोंग का प्लांट है। बिंक्स बहुत सिटी। तो बिंक्स तेरी आवाज कर रहा हूं मैं। दोनों सिटी अभी भी गन नहीं लिया है। पिक कर पिंकी। मार पिंकी। सीलोंग का प्लांट। ये भगवान डिमन भड़वे मार। मेरा प्लान है। पिंक है, मार पिंक पे यूज कर रहा है पिलर पे मारते रे। अरे यार अंदर जाके मार। हो गया मेरा। मैंने हगा नहीं मादर चोद टिबोन, मैं इधर प्लांट दे रहा हूं। बोलो I could just stay with. लेगा क्या देख। व्हाट इज दिस स्ट्रैट? अच्छा था ना, आ रहा हूं। मेरे को पता था एक बंदा भी पुश करेगा। टिबोन ना छोड़ो।
यार यार आईजीएल को इतना डिमोटिवेट मत करो यार, इट्स ओके यार, चलता हाँ है। भाई चलता है टीपन में। पिंकी मेरे को बस यहाँ पे एक स्कोप दे ना मेरे मार्कर पे। भाई गांडू है। ठीक है उसको पीक ही नहीं करना था रे। मेरे मार्कर पे स्मोक दे। अरे मेरा माउस अटक गया। एक बी पे ब्रिज। Give me the plan. Give me the plan. No, मैं plan कर दो। Off your feet! Again, monster on the loose. Spike down A. Player standing. Blank. Easy clutch. दूसरा कहाँ है बे? दोनों उधर ही है। मुझे मत दे स्मोक प्लीज। दोनों उधर ही है। वेट करूंगा बेबी। $30 seconds left. पक्का उधर। बाकी सी जा की तरह ट्रैप इधर है, वो लोग दोनों वहाँ पे। वो सड़ी का प्लान नहीं हुआ है। कहाँ से आएंगे बिच? उधर से आएंगे, लेफ्ट साइड से ऐसा लग रहा है। हेवन से आ सकता है। ए पीछे दिखा। पीछे बंदा है क्या कीबोर्ड? कहाँ पे दिखा भाई? कहाँ पे? पीछे ही दिखा, तेरे पीओवी में ही दिखा हमको। तो चिल्ला के मेरी गांड फट गई। ऑब्जर्व थोड़ी हम लोग भाई, मेरे सामने। अबे पहले मैं प्लान करता हो जाता। भाई मेरी बीवी नाइफ हो गई। एनी कमेंट्स? मेरे को एक तो स्टन किया उसके अल्ट में। ऊपर सवाल है बिंग्स भाई। मेरे ऊपर क्या? किसी और का एजेल में नाइफ हुई है वो। तुम करो स्पाइक। मैं प्लांट इको करना है, बाय कर रहे। मैं सी लूंगा, शॉट करो, मारो बंदे। क्लोज है, क्लोज। नहीं देखा। Spike down C. Guard. दो भी पुश। एक सी, दो भी पुश। भी पुश है, याद रखिए। सही है, क्लियर है। वेरी रियलिस्ट। हिस्सा घूम के। अबे तो ट्रायड निकला। इवन के एजेल पे एक राउंड में जीत रहे। हेलो। हाय तो वो भी चूतिया तोड़ी है, वो भी आएगा। भाई कैसे आ रहे हैं? डुअलिस्ट नहीं हो रहा क्या? दो गेम में मालूम पड़ गया रेजमैन कौन है। एडिट दिखा दो, अब दिखा दो। मुझे सच्ची गुस्सा नहीं आता क्या ना? यार मुझे कंपेयर नहीं कर रहा है मामा भाई। सुनो ना भाई, ये जाना है कि मैं एडिट करूंगा, जाओगे क्या? आगे कुछ चाहिए था भैया। रेजर फ्लैशर ही नहीं है। भेड़ गिड़ क्यों लिया इसने? भेड़ अच्छा है, लौड़े इस पे। कोई नहीं।
फ्री का प्लांट है, फ्री का प्लांट है। मिल गया क्या? तू क्यों बैक स्टैटिक रेटिंग्स है ना? I'm out of here. One enemy remaining. मार। तो बोला था रेजमेंट के बारे में। रेजमेंट के बारे में। मैं सैचल से तुम्हें मारा हूँ। Nice one, Edit. Nice one. Thank you. क्या मैं सैचल कर सकता हूँ मित्र? पिंकी यहाँ पे स्मोक देना, यहाँ पे स्मोक देना जल्दी। माउंट पे खेल रहा है। अपना एक खेल रहा है। एंजॉय। साइड के पीछे। पीछे। ब्रीच यहाँ पे। स्लीकर है। रुक सी लॉन्ग माउंट कंट्रोल इन पे। मिल गए। नहीं है मत आवाज मत कटी बोल। यार 40 है। गेको 40 है। मेरे पे रिकॉर्ड मार। रुको बिंक्स भाई का। Go. Out of charges. जाओ गुस्सो सी अपना है अभी। सी लॉन्ग आ सकता है ये। एक वाटरफॉल। One enemy remaining. I'm out of here. Real से हम मिंदू। क्या भागाओ बे। Switching sides. क्या फ्लर्ट करके मार रहा है तू? एंट्री मैंने दिया। अच्छा एंट्री लिया। I'm being a man, bro. I'm going in front. Being a man मतलब पहले नहीं था? Wow, bro. Congratulations. अच्छा। अबे अब कुछ vulnerable है? मेरे पास है नहीं है ये राउंड नहीं है। एडिट भाई चैट पूछ रहे कैसे लग रहा है बीइंग मैन। बात करना यार एडिट। अरे हेलो अच्छा मैं बात कर रहा था आवाज नहीं आ रहा था। ए पे एक बॉट इंसेंट रिकॉन देगा एक क्लियर है सी है। गार्ड बचाओ प्लीज। गार्ड बचाओ। हाथ रख लो पीछे। तीन बंदे पिक किया। नेड है। मैं वो कर रहा हूं प्रॉब्लम कर रहा हूं। ले ले ऐसे। Spike planted. भाई दो लोग हैं वाटरफॉल दो एक वाटरफॉल। One enemy remaining. ये पता नहीं। वाटरफॉल। नाइस। क्या कर? मस्त रहेगा। बाय करेंगे बता रहा हूं। बम्बा भाई आ जाओ देखो। पहले रिकॉन दूंगा भाई फिर मेरे पास वल्नरेबल है। मैं वल्नरेबल फेंकूं? अच्छा चलेगा। हां तीनों एक साथ करते हैं। मजा आएगा। डन। मैं रिकॉन नो एडिट हटना मेरा लाइनअप है उधर। Quick feet, quick trigger. ओके। Go. तीनों को छोड़ रहा हूं मैं। दिया ही मोची। टीबोन भाई काम बचा लो। सी हो गया रिटेक करेंगे। आ जाओ फाइट करते हैं। सिंगापुर सर पे खेलेगा कब से हम लोग। अरे क्या
लेफ्ट साइड मेरे आ गया गन ले रहा मेरी गन ले रहा है गने 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 One enemy remaining. लास्ट इधर था साइड का आजू था इधर है साइड साइड है साइड है तू बोल भाई खाओ Was he stun? Was he stun? Was he stun? मेरा फैंटम है इधर के को पे आप कैसे मुझे दे रहे हो? Different. पैकेट ला आया था रे पैकेट ला देखा देखा थैंक यू 5-11 झूलो दोबारा स्मोकर है भाई हेलो किलजॉय का बोल रहा हूँ ओपोनेंट के मेरे को दियो भाई ये ओपन है कंप्लीट अरे क्या सी आ रहे क्या प्लांटिंग ब्रो बोलेगा अबे क्या लैग है ये राइट साइड क्या भाई देखा वो कैंसिल हो सकता है over 80 अल्ट प्लांट ही है क्या हो गया बेबी एडिट वाह भाई ऐसा सेक्सी सीटी में मारा कुछ ठीक है गाइस देख रहा हूं एडिट सेक्सी मारा एडिट सेक्सी है गाइस मैं छोड़ देता हूं जॉब छोड़ देता हूं मैं हैं मामा मैंने सारे एबिलिटीज छोड़े मालूम ठीक है भाई मैं कल आता हूं भाई देख रहे हो गाइस भाई मेरे सारे फ्रेंड्स माइनस हो रहे हैं एक होते हैं मादरचोद दोस्त और एक होता है मादरचोद दोस्त ठीक है उसके भी हम ज्यादा मेगा महा चलो ये आएंगे रिकॉन दे रहा हूं नेट मार क्या नहीं आ रही तो बी के बार इन्फो ले दरवाजा खोला स्मोक नहीं है मेरे पास ओमन लो है एक रीटेक एक बी में एडिट सी डाल रहा सी डाल कांटेक्ट पे डालूंगा नाइस एक सी जा रहा है भाई तू बोल रहा है बच्चों और क्या 50 है मदर अरे सी जाएंगे लोग गाइस विल टेक सी जोत निकला रे ओमन लो है ठीक है ओमन लो है एक स्पैम मारियो बिंक्स इधर सुन मेरे पास रिकॉन है Enemy remaining. सीटी होगा 105 प्लीज नहीं प्लीज इन पे मार दे प्लीज ये बाबा नहीं पीक करेगा वो टाइम डिल प्लेड विद हिज माइंड मैन यार सीटी होगा इवन भाई आपके पास भी कभी यूज कर लो आइजेल टिबन भाई एक बड़वे ने बोला सिटी होगा मैं मर गया व्हाट टू डू कुछ भी हो जाए यार आईपीएल मतलब ऐसा फ्रीडम दे रहा है सबको अच्छा खेल रहे हैं सब लोग और क्या ड्रॉप दे मामा भाई ड्रॉप दे इसीलिए हम लोग राउंड निकाल रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ स्टन नेड कर दो मेन मैं रिकॉन दे रहा हूँ इन केस दे कम इन केस ठीक है पहले तू रिकॉन दे रिकॉन से अच्छा वो गोटी पेक ना नहीं रिकॉन बहुत सेक्सी है ट्रस्ट मी अरे पर वो पिक ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा अभी तो करेंगे ना फ्रस्ट्रेट होके नहीं करेंगे भाई अच्छा कंट्रोल रखो गोटी फेंक रहा हूं अंदर
टीबोन बा आपको गलत आर्मर सी कर रहे बे, आर्मर सी कर रहे। नहीं रुकना, मेरे पास फुल यूटिलिटी को कंट्रोल दिलाने का एडिट। आजा नहीं आजा अरे कंट्रोल देना था। Spike planted. ठीक है वहां पर। नाइस वाटरफॉल। Player standing. यार गेको चाहिए इसमें यार। क्या चाहिए? गेको। क्यों? ये विंगमैन के लिए। Your question is a good question. So it's 635 no? 65 का पता नहीं, 5 जरूर दिख रहा है। सुनो ना। अरे ओपोनेंट में कितने ओपोनेंट्स है? 5 ओपोनेंट्स वैसा। इको कर लो भाई, अगला भाई का नाम। इवन इतना जल्दी कैसे मार रहा है? क्या? पूछते हो। हां बिंग्स पे प्रीलोड। क्या? हां भाई क्यों कर रहा है? भाई जेल ने बोला ही नहीं क्यों करने। मैं तो बोलता मेरे से सोलो ही करा लो भाई। मत करो। ऑब्लिया उससे अल्ट करेगा वो। ठीक है मैं छुड़ के चला गया टिपोन। मेरे पिंग पे मार। वेस्ट हो गया बेटी चोद। अल्ट ये साला बिंग्स मेरे लिए फ्लैश तोड़ दे बस, वो लूंगा उधर भाई। तू मुझे छोड़ के गया भाई, मैं थोड़ी। सुना एडिट सी स्टार्ट करो गाइस। मैं ए पे अर्ली इन्फो निकाल रहा हूं, छोड़ देना। हां वही बोल रहा हूं, ये अर्ली इन्फो ले रहा हूं, आएंगे तो लग रहा है मुझे। बीबी खाली एक। अरे भाई ओ टीबोन प्लीज सीलो मार। तोड़ेगा ना भाई। हां तक नहीं रहा शॉटगन से तू तोड़ेगा इतना तू। I'll show them. Lintikkayo. चिकन टिक्कायो। तोड़ा मैंने तोड़ा। गन भी दिया मैंने। 1 है। स्टेयर्स क्रॉसिंग देख रहा हूं मैं, खाली चिंता मत करो। एक 3 ये आ रहे। नाइस। क्या लगे? मैं तेको बचाने आई थी बोल। देखो ठीक है। मैं थोड़े से पीछे आता तू। मैं मेरा बचाने आई थी बोल। सीटी आ सकता है, रुक। इसको मार रहा है। आजा। भाई क्या कर रहा था बे? मुझे अरे मादर चोद है क्या लौड़े? आर्मर था मेरे पे। सॉरी भाई। एडिट को क्यों गाली दे रहे हो भाई? कितने शॉट्स पता नहीं बे भाई। मेरा फ्रेम ड्रॉप क्या हो रहा है? मदरबोर्ड बोला शायद। मदरबोर्ड है क्या? मैं गाली दूं तो मैं ही गाली खाता हूँ, ये गाली दे तो भी मैं ही गाली खाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। एडिट मत स्टार्ट वो उसका वो तोड़। क्या? सी आएंगे वो लोग उनको सी लगा है। इस बार लिसन दे विल कमिट अल्ट्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस। रीटेक खेल सकते हैं मेरे पास। वो तोड़ दे यार, एडिट मेरे लिए ऑफ कर रहा है इसलिए। पिकी यहाँ से जंपिंग का आवाज देना सिर्फ आवाज देते रहे। ब्लाइंड हो गया मैं, उसका भी ब्लाइंड हो गया। नाइस।
One enemy remaining. Side है. Last C side. Okay. Don't open. Can be close. सिटी में एक साथ खेलो. प्लान करने दो. बाइक है जाओ उधर. बाइक है मारो ना. सेकंड स्किल. Wait, don't worry. मेरे पास आर्मी है. डायरेक्ट कर रहा हूं. ले गया क्या? शायद से प्लांट पे जाके अल्टी मार दे. Don't fight it. ए जा सकता है. Let him. ए जा सकता है मामा. ए पे रुक. प्लीज साथ में खेलो जो भी है. एलिंग जा अल्टी पे जल्दी मार सकता है. 30 seconds left. एक कर. एक ऐसे. कीबोर्ड माउस भी दे दो हाथ में टीमों तेरे को. Last player standing. शिट पे. मार्क करने के चक्कर में. जा. टाइम नहीं है. Spike planted. मार्को सुनाई नहीं दे रहा उसको. भागने वाला था अभी बट चलेगा. टीबॉल ने हवा में रेस को मारा. क्या जिगल कर रहे हो? नहीं रहा था उसका नहीं. ओमेन भी डबल रागास हो गया उसे. ब्रो वो था बे वो शॉट था वो. मेरे सामने रियल देखा मैंने रियल टाइम. Make their fear your weapon. तोड़ दे. तू तोड़ नहीं रहा है वो. अरे वो इसका फ्लैश था. ब्रीच का भी फ्लैश था. ब्रीच का फ्लैश ठीक है मेरे को दिक्कत नहीं है. हाँ तो उसका भी फ्लैश है. मैंने तोड़ा था वो. उतनी जल्दी नहीं आएंगे. मुंबई सर्वर नहीं है बाबा. चल. भाई वो तो समझेगा तो उसका तक लिया ना. तो जो बोला था बोल दिया. बोल दिया भाई. आ गया. आ रहा हूँ. टीबॉल का हेल्प. बिंग्स कांटेक्ट के पहले रोटेट मत करना. You should run. Let them have it. नेट है क्या? नहीं है. रिटेक कर. सुन एडिट. टर्न 1 दिया. स्टॉप कर दिया मैंने. अरे यार. शॉट. एक सिटी साइड है यार. पक्का नहीं है. रेस. ओमन था शायद. Player standing. यार पे था मेरे हाथ. मामा तू किसको ढूंढ रहा है रे? बोला सिटी से आ रहा था मेरे को. एक सिटी साइड है बोल. उसका कुत्ता प्लान कर रहा है. Spike planted. उसका कुत्ता नहीं प्लांट किया. नॉर्मल प्लांट किया उसने. एक मेरा मार्कर में है और एक सिटी है. क्रॉसफायर है. एक ऑन माय मार्कर लाइट हियर. क्रॉसफायर का सीन है. नहीं है लौड़े. एक मेरा मार्कर राइट 2 मिनट रुकेगा भाई. मैं स्मोक करूं. नहीं. सिटी स्मोक. एक मेरा मार्कर राइट हियर. दोनों साइड है. हां. Remaining. दोनों साइड है. बुलेट टाइम मतलब अपने को डिफ्यूज करना उनको नहीं. ऊपर को क्या था ये? बॉक्स से पीछे मिल गया. ये वो मोनिए वाला मूव था. मोनिए मेरे से रूलर कैश बंडल इज लव. क्या शिवराव कर भाई. मैंने किलजॉय को मारा भाई. थोड़ा नेड वेड फेंक ना तू. रेस सर मॉली देख रहा है ठीक है. इससे बढ़िया नेट फेंक दिया मैंने. डैमेज दिया ना मैंने. साथ दिया बस. भाई मैं आता हूं. इधर फेंका इधर. जब उसका ब्लाइंड आया तब उधर आपके लिए फेंका मैंने. पिंकी भी हो सकता है. यहाँ से खेल. अगर ये राउंड ही गया वो लोग डालते हैं. इसको पिक करना यहाँ पे पिक करना. मैं रिकॉन करूंगा. रिकॉन डाला. ना नहीं आए. अंदर नहीं आए. कमिंग इन. नहीं. They will pop. बेचारा इसका अल्ट ओपन वेस्ट होगा. हुआ. They know.
स्मोक दे Fire in the hole! Spike planted. कुर्बानी भाई आ गया लेट्स गो Nightmare's over. इनके अल्ट है घुसके मार पिंकी अल्ट 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 यार मैं स्टन हो बता दी कौन आ रहा है वो इससे हार गई है अरे यार मैं क्या करूं हो गया गाइस चलो मिनी टाइम भाई मेरे तो पीछे ही पड़ गए थे ये लोग इसी से को बेचो लेकिन ऐसे कुछ नहीं इज्जत की सवाल है बेचो लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा आ गया भाई नसीब स्ट्रीम आ गया यार इसके स्ट्रीम के वजह तो से मांबा छोड़ दो बोल रहे पोपड़ी के शर्म कर रहे तू मेरे नीचे बैठा है झूल ले साले एक लास्ट हो सकता है नहीं होगा भाई नहीं एक हो सकता है मेरे यार एक हो सकता है एक लास्ट कर अरे मेरे अंदर ताकत नहीं है ब्रो मैं इधर एक मांबा यार एक यार मांबा एक यार मां कसम यार फ्रेंडशिप के वास्ते फ्रेंडशिप का वास्ते है मैं जा रहा हूँ भाई गाइस एडिट एक यार एक लास्ट एडिट यार लास्ट मेरा काम जाएगा भाई उधर मुझे 7:30 बजे पहुंचना है मैं लेट गया भाई नेक्स्ट सुपर चैट में तेरे को सीधा जीप पे करूंगा एडिट यार अरे मैं आ रहा हूं नहीं सच में यार एडिट यार पुणे पार्टी याद कर अरे मुझे सच में जाना है यार सैटरडे नाइट आ रहा हूं एडिट का समझ ठीक है एग्जाम को बोला अपना अब एक काम करना अगर ये भी जा ही रहा है तो नहीं ना भाई एक लास्ट फिर बाद में मैं भी जाऊंगा ना यार एक हो सकता है और मुझे इमॉर्टल 3 2 बार नहीं देख सकता मैं यार नाइस गेटिंग यू इट हर्ट्स भाई मैं ओबीएस वो कर रहा था आ गया एग्जाम आ गया गो कर चलो बाय गाइस हैव फन वो कहां से मामा चला गया मामा को बुलाओ मामा है ना मामा आ रहा है मामा आ ना पिंकी तेरे को लीडर बनाया गो कर गो करो ना गो रुक जा मेरी गांड सुलग गई है मेरी बैठ भाई लाइट में आंखें कितना ड्राई हो जाता है रे एक सेकंड वॉशरूम जाके आया मैं यार लाइक कर दो स्ट्रीम को करो भाई कौन पेंडिंग है मामा आजा भाई गेम में आने देगा अकेला खेलेगा भाई ये जिता दो हेलो एक्सी हे बड़वेश हाउ आर यू हेलो वाह भाई आवाज आ रही यस दोनों जगह आ रहा है दोनों अच्छा हे VLT Exion how are you हाय VLT पिंकी हाउ bro आर यू change the tag name bro टैग भी है क्या लो क्या टैग लो भाई ये सीसी तुम्हारा लो भाई कौन सा टैग किधर तेरा तो सेंसन है ब्रो 7 no the name he's saying VLT T-Bone VLT Binks वैसे Exion यार ये क्या हो रहा है यार नो न्यू क्या हुआ? गेम कोई गेम ही नहीं आ रही अच्छी क्या पूरा गेम खत्म हुआ क्या पिंकी हाँ बे सारे गेम खत्म हो गए मैं थक गई हूँ अभी गैस स्टेशन भी खत्म ये सुपरमार्केट भी खत्म पैल वर्ल्ड भी खत्म अब एक साल वेट करो ब्रो नेक्स्ट ईयर बिंग्स हेलो माय फ्रेंड आप हो वाह
Hey Binks, don't you think it's high time you fuck Streamlabs OBS? Who the अभी भी fuck स्लॉब्स uses यूज करता है ये। Streamlabs अभी भी OBS? स्लॉब्स यूज करता है ये। हाँ बे। हाँ। शर्म आती है क्यों? Binks? क्या फायदा बताओ? Binks 300 के होना है, शर्म आती है? आधा तो वही कहता है। मैंने उतनी बार बोला है उसको। भाई स्लॉब्स कौन यूज करता है भाई? शीर है। पैलवर्ल्ड में न्यू अपडेट आया क्या एग्जैक्ट? हाँ कुछ तो आया नया। क्या फायदा कुछ तो यार? नया बॉस। जब आना था तभी आया नहीं। क्या भाई पागल डेड है बच्चे। वो तो हाँ वही ना। बोलती थी भाई। देखो भाई, इसमें देखो व्यूअरशिप ट्विच में हाँ मैं वही देखी हूँ। 100 में है 100। Bro, how can they kill the game, bro? साला पोकेमॉन Not गो में enough ज्यादा बंद। Bro, why would they kill the game? They should have Match just found. it had like this thing, like EFT, what swipe, wipe, वगैरह, and every Bro, the bosses, something like that. they didn't know यार the game would blow up that much. Small developer. They were not prepared only, I think. Yeah. Bro, shall I take Brim? Hey sexy corn. Hello Binks, long time no see. कैसे हो आप? आप कैसे हो यार? I am good यार. I've been missing you यार Binks. भाई जीता दो गाइस, क्या खेलूं? मैंने सुना you were missing me Binks. I was missing you. आवाज कट रहा है तेरा बिंग्स। I was missing you. तुम्हें स्ट्रीम करोगे डिले ऐड कर। ये लगाने का डिले। क्वालिफाई हो गया ना क्या डिले पर? और स्ट्रीम स्नैप बेंच प्रीमियर में भी। He won't play गया गेम। अबे स्मोक ही तो खेलता हूँ इसमें। अच्छा है बेक ग्लोब अच्छा है। उधर से ही खेलना है तेरे को। क्या कर रहा हो कॉर्न? खेलता है। Thanks by sexy, thank you. Guys 11 के likes करो। टिपन भाई थोड़ा काउंटर रेड हो जा। क्या इसका पीसी गया क्या? पीसी नहीं ओबीएस गया। क्यों यूज करते हो स्ट्रीमलैब्स ओबीएस? बताओ बिंक्स एक बात बताओ क्यों? 6.5 घंटे से स्ट्रीम का कुछ नहीं हुआ। एंड मोमेंट पे हुआ। क्या खाएगा बोल भेजो नहीं। डिनर इज सॉर्टेड। तो मुंबई से विजिट करते सामने सारे इंडिया ना। अरे बाबा मैं तेरे को बता रहा हूँ स्ट्रीमलैब्स ओबीएस हटा के नॉर्मल वाला ओबीएस इंस्टॉल कर ना। बहुत गंदा दिखता है नॉर्मल। क्या वो गंदा नहीं है बराबरी है। ये इसको इसके लिए मजा आता है क्योंकि उसमें सुपर चार्टर वो सब भी आ जाता है ना वापस। Out of charges. हाँ। क्या सीन गाइस, क्या सीन? यार भाई ए एंट्री पे एक सेक्सी रिकॉन दूंगा, पटाख से मारना। नहीं बी में रिकॉन आया ये देख। क्या कॉल दे रहा है टीम क्या बिंक्स? टीप अपडेट डिफॉल्ट मेरी कहानी मारनी है। ए हो रहा है। हां ये यार आई एम फ्लैशिंग। भाई सब लो है। नहीं है। मैंने मारा एक। Down B. लेफ्ट साइड तेरा लेफ्ट। एक क्लोज लेफ्ट है। से नहीं क्लोज मारा लेफ्ट। ये राउंड बिंग्स की वजह से आ रहे हैं। Spike planted. मारा। नाइस वन। बस एक ऊपर एक नीचे। क्लोज राइट। 121 लो है। मुख से जा। अभी रिकॉन के लिए मत रुकना। स्मोक में ही है क्लासिक ही लेता। स्मोक में क्लासिक लेके घुसता था यार।
क्रॉस में जाता लेफ्ट साइड से एंटी था क्योंकि लेफ्ट पे अगर इन्फो मिल जाता बैक नाइस पिंग यार जक्सिकॉन वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो सिंगापुर कौन डाला यार अरे पता नहीं था चालू भाई यार चालू एक गेम खेला नहीं साल बाद चालू 344 पिंग केरला में या फिर युगांडा मत बोले यार ये नहीं है भाई एक्सियन ओपन में थी सी हो रहा है क्या 50-50 हो रहा है मिड है बहुत सारे सेव करना पड़ेगा रुक अब बंदा यार इतना बज रहे थे किस चीज में मेरे पास क्लासिक है 104 मारियो माउस हेलो क्लासिक था मेरे पास ब्लाइंड हुई अलग सिंपल का उसने का आवाज क्यों आ रहा है अरे मेरे पास क्लासिक था रे मामा हो गया ना सही ठीक है लेट्स प्ले अब होगा अब करते हैं मैं समझ सकता हूँ अब मैं बैकअप देना आया मुझे नहीं मिला सॉरी जल्दी पीछे टिक करो भाई पैसा कहाँ लेके जाएगी कीबोर्ड आप हर रोज कितना किलो हकते हो 5 चलो आगे अपने गेमिंग 7% रुकिए रुकिए तेरे साथ बीजीएमआई खेलने को आज गोल्डी भाई वो अलादीन के कारपेट में घूम रहे थे पिंकी भी लगा अरे यार खेलना है अंकी के साथ ये क्या डांस करके खेल रहा ब्रो दो है ब्रो मुझे जी nobody cross me should be नाइस पैकेट लॉस हां नाइस पैकेट बी का सीन हो रहा फ्रेंड्स मिड का सीन लग में ट्रैप है ब्रो आगे इधर गया एक फर्स्ट लाइन अरे वीकली कोटा होता है लेट्स प्ले लेटर ये क्या चल 68 क्यों गई वीकली का कोटा होता है कोटा Spike planted. मेरे पास रीटेक का रिकॉन है मत कर डीले तेल लगाने गया अरे ऐसे खेल मैं भी बिना डीले का खेल रहा हूँ अरे कोटा का मैच कंप्लीट करना है और कुछ नहीं वीकली 2 मैचेस जो होते हैं ना वो कोटा का मैच कंप्लीट करने का है फुकट फ्री क्यों बैक साइड अरे तो क्वालीफाई हो गया नाइस भाई मैं बिना डीले का खेल चलेगा चैलेंज इधर ही होगा गाइस 9 बजे तक आ जा Okay, they tried. Now it's our turn. तो आज कैन क्या पक्का Turret out. ठीक है Placing ये swarm मैं grenade. प्रीमियर के लिए कब से शांत क्यों है अब है नहीं है मैं गरीब हूं यार ये मेरा गलत सोचा गांडा से हूं वजह से हारी बोल रही है माफ करना बिंक्स वजह से क्या हाँ हाँ बोल शांत क्यों है क्या भाई हेवी पैकेट लॉस आ रही है क्या सीन गाइस बी रिकॉन है आई एम कमिंग टू गिव यू फ्लैश नीचे भाई क्या पैकेट अरे मैं लॉस DQ क्या हुआ है bro। BS क्या भाई लंड अरे मैं सर्वर है लंड सर्वर एक साइट है ऑलरेडी अरे राइट से अरे राइट Spike planted. Last player standing. भाई क्या लंड सर्वर है वेरी नाइस पिंग ब्रो कुछ तो है सर्वर में भाई मेरा FPS गिर रहा है 50 तक ए बेंगे हाउ अबाउट यू प्ले फ्रॉम साइट यू लाइक 10 times steady व्हाट इज दिस ओके भाई शेरिफ वाला जो भी है मेरे साथ आए बीम स्पैम मारने के लिए Placing swarm इसमें grenade. पैकेट लॉस की गलती नहीं है शर्म करे Placing sentry. अंकिता सी क्यूटी तेरी एंड क्या अरे ये तो वेरी जाओ नाइस सर्वर हेलो बंग भाई हेलो मंग No prisoners. प्रीमियर कैंसिल चैट से बताएगा बोला वाह ए कोई नहीं गया ठीक है जब चाहिए तब नहीं आए ये लोग
Out of charges. I told you it's Mumbai server. You guys don't entry. care. It's not Mumbai. Placing swarm grenade. No, keep him. Swarm grenade out. ऊपर है 55. You had your fun. My turn. अरे जाने दो, मरने दो इसका पहले। मरने दो हाँ. मरेगा भी. Last player standing. इधर आया ब्रो, पीछे जा रहे एक। God. Sorry, कुछ भी इग्नोर करो ढंग से। Anyone have any splints? I may have jabbed my fingers. Guys, मैं थक चुका हूँ गाली देने में। Hey, nice server, you having fun. ऐसा बंदा सब फाइल छोड़ दो एक्सी अभी तक। भाई बी में ना तो बताओ ना गाइस, बी में ना तो बताओ ना मैं फिर भी तेरे ऊपर हूँ मैं। मजा आ रहा है क्या एक्सी? यहाँ पे स्मोक दे। ठीक है, let's play some serious games. Mid में होगा, okay? Mid shot. BNB. Nice. Refreshing. Is ready. Bomb buddy. Still in sight. इधर ही. 120. One enemy remaining. Never left. मिड में किससे मेंस आया वो मामा? भाई मैं मिड पे था, अभी आया ए पे मैं। ए शॉट कहाँ देख रहे टिबोन? टिबोन सेम गेम प्ले हो रहा है अपना, क्या सीन? आ जाओ भाई। क्लोज करे एक्सियन। अंदर। Last player standing. Wow, nice close, Binks. Nice close. Nice close. 40 है वो. Nice close. Meanwhile जो ए प्लेयर है। Meanwhile भाई मैं मिड में था। उसके बाद शॉट होने के बाद भी वो 2 मारा शॉट पे। अभी 2 लोग एक दूसरे को ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो मेरा क्या गलती? 1 सेकंड। मैं कैसे जिंदा रहा? यार व्हाट सीन टिबोन, सेम गेम प्ले. अरे 2 लोग रेना को कौन मारा भाई? 148 था रेना। प्रीमियर पता नहीं अनुज भाई के ऊपर है प्रीमियर। भाई बी में आएंगे, मैं फुल सेक्सी वाला अल्ट प्रीमियर का आइडिया नहीं है फिलहाल, 2 ही जन ही है मेरे पास। होगा बस चैट तो बोल रहे प्लेयर्स को म्यूट कर दो भाई। Amen. Deploying drone. Prepare air shot all कर, thank you. Amen smoke. हैं? 80 bro. मुझे नहीं क्या नहीं सर मैं bro. Fine हो गया। 2 लो है। रहने दे. एक कांटेक्ट तो बताओ। सिर्फ अल्ट पे मत खेलना, किल जाए अपना सोवा का भी अल्ट है। टिबन मरा। भी जा रहे भाग के जाओ। क्लियर है पूरा। घुसेगा भी। साइड के लो। ठीक है, गो साइड। 30 seconds left. इनको ए ओनली ब्रो। ए भाई रुकना भाई, क्या क्यों आ रहा है? टिबन भाई कीबोर्ड आदर चोद मेरे पीछे देख। तेरी मां की। Hey wow friends. रिकॉन Scanning ahead. Nice. Enemy remaining. Very nice. Upper है. Ignore that bitch. 5 seconds. सिटी क्या रे मम्बा? मेन मारा ना ऊपर को। मेन है. Nice dude, nice. खेलो ना प्रीमियर। अरे लोग नहीं, कहाँ से खेलो ना प्रीमियर भाई? वो तो कर्टेसी के लिए पूछा, लेने लोग नहीं वाला चाहिए कि नहीं? बाकी लोग आ गए तो मैं खेलूंगा। स्पैम प्रीमियर से कैसे खेलूं मैं?
packet loss, sir. Get out of my way! Casting ace. Any sound? They're taking mid. Mid में push करके है bro, दोनों जगह से bro. How do I hold this? Market भी आ रहे. You should run. Mid entry by the way. अरे यार. No peeking. You can destroy that cage. Spike planted. You had your fun. My turn. Go. Demon smoke दे सकते हो. अरे ये तो तोड़ मामा. Back side. Close right. Back side. Oh, अरे जल्दी जाएगा डिफ्यूज करना अपने को प्लांट नहीं मामा. Concentrate, Sova. को देख. को देख. Player baby. भाई तीन. अरे बाबा मैं धोनी जैसा खेलता हूँ एकदम लास्ट सेकंड तक समझ रहे. फिनिशर ब्रो. रिकॉन में मैं घुस गया. भाई इतने राउंड से मैं मारो तब कुछ नहीं बोला. ठीक है भाई देख रहे हो गाइस. नीचे है तू. ठीक है भाई टीम के लिए खेलता हूँ तो नीचे बोल रहा है भाई. ठीक है भाई मैं अभी जाकर मार रहा हूँ ट्रैप. मार. देख रहे हो गाइस. Hey, can you like smoke here, you bitch? Can like eco buddy. Did you just call me a bitch? I call you my bitch. No grenade. Mid. अच्छा अंदर. पूरा mid. B में है bro. Nowhere to run. इधर मत आओ रे भाई. Chill out. Get out of here. One enemy remaining. दोनों लो है. Women. लड़ना ही नहीं है मेरे को उससे. जा. पहाड़े बन गए मेरे यहाँ पे पैकेट. Guys, six. धोनी का नाम बदनाम कर रहा है. कौन? एकदम aggressive. धोनी भाई देखो आपका नाम बदनाम कर रही है. कौन? धोनी कहाँ से आ गया? एफ मत बोलो यार, दिल ऊपर नीचे होता. चैट लाइक्स नहीं बढ़ रहे. Then come I mid no. ठीक है. ए डिवन कैन यू लाइक मामा कुछ बेचना. शॉक डट है ऐसा कुछ. Thanks. इमेन इन्फो रिकॉन डाल रहा हूँ. No peeking. शॉट आ रहा है. इमेन. In bro A. Closer sir below Jen. Spike down A. One enemy remaining. Nice main. Nice. Good job. भाई वो अल्ट में कैसे नहीं मरा वो मेरे अल्ट में. प्रीलूड दे दो. माम्बा से टाइप ले लग. King like tens, baby. भाई ड्रॉप दो इसको. दे दो मेरे को. है ना पैसा भी. दे रहा हूँ बीवी जी, दे रहा हूँ. गाइस मैं सुनो ना एक कोई खेलो ना गाइस. एमएन ओपन है. मैं इधर से बी में अल्ट खींचूंगा अगर आए तो. उससे अच्छा यहाँ से या फिर यहाँ से बी में अल्ट खींचता. पहुंचता क्या? मेरे को नहीं मालूम. मैंने क्या सोचा. स्मोक. There. I mid है ओके. रुको. उसके मार पिंकी. W. One enemy remaining. उधर ही है ब्रो. उधर है. जा पिंकी. इधर कॉर्नर. Player standing. Come on पिंकी. वो मार दे. लास्ट राउंड था. बिंग क्या मेरे को तू प्रीलूड दे पहले. मेरा प्रीलूड पे इम्पोर्ट है. बिंग्स प्रीलूड दे जल्दी. Can I get a drop? लव यू. टिबोन ये देना टिबोन.
हाय इसको ड्रॉप दे दिया मैंने। भाई ए शॉट से पहुंचता क्या बी में ना? वाह तू क्या भाई मेरी बीवी को तू करके बोला तू? हाँ भाई ये बताओ पहले ए शॉट से बी में डाल पहुंचता है क्या? हाँ बी आ रहे। big. That's some nice pick, bro. Very nice pick. Pick us in a France. Alright, bro. He's in mid. He might pick. Let him die. Let him die. Bro. Let him die, bro. Let him die. Drone है. Side. एक और सुआ 50 सुआ 50 है। 3 to 1 मर गया. Nice. Spike planted. एक साइड है। Market and side. Last side. साइड जाके डिफ्यूज करना। Back side. Nice. बोल तो हटा दे। Late call mama you bitch fuck. भाई लौटे जब फुट स्टेप आएगा तब बताऊंगा ना। ये बीच फक क्या है अभी? बीच फक का पता नहीं चूत फक सुना है। ए लैंग्वेज रे बड़वे। ये क्या लैंग्वेज है मामा? हाँ और बाद में बोलते हैं मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है भोसड़ी का। नहीं वो तो बिकॉज़ मैं महंगा पड़ता हूँ। भाई मेरे को एक बात बता, टीबोन को मैंने मेरा बिच बुलाया और टीबोन तेरे को बिच फक बोल रहा है तो मतलब आर यू फकिंग टीबोन? नहीं टीबोन अपनी इच्छा दर्शा रहा है भाई। ओ he wants to fuck bitch. Midnight. T-bone in the chamber of bitches. Actually, you know what? I'm gonna go. Wait, B जा रहे हैं कैसे? क्या चीज़ है बताओ मैं रिस्पॉन्ड दूँ उससे। मैं स्ट्रिक्स और अनुज है बाकी तो। बे आजा। मतलब ए शॉट? बुलेट और कॉल दो बाद में स्मोक Ryzen क्या भाई। करना करो अभी बता रहा हूँ। या मिड स्मोक गया लग गया। मैं तो गया। एक और मत जा 120 ए जाओ एक ही बंदा ए पे। लीव इट। राइट कर 40 क्यों चूसने दे रहा है? हेडशॉट का मार हेडशॉट। अरे सॉरी यार। भाई युगांडा से तो है ये। एग्जाम तूने उल्टे इतनी डीले है इतनी डीली। I think my headphones are little off. गाली दिया मुझे ब्रो। गाली दिया वीकेल बोला चाइनीज। सेम बैक किक ब्रो। सुनो फोर्स करो मेरे कॉल सुनो। फोर्स करो सारे। बी पे आवाज करो स्मोक एक ब्लाइंड ड्रोन रिकॉन और ए पे आओ जल्दी फोर्स करो। फुल स्मोक रिकॉन सब ब्लाइंड क्लोज राइट हो सकता है वो। अरे मिड से मत ए पे आना बेस से आना। एक ए शॉट है लो है ठीक है बिंक्स। जरा काम कर अब। स्मोक आएगा। कमिट टू द फाइट यू कैन टेक अ पिक। एक बार फाइट एक आएगा इधर ब्रो। हाँ एक मिनट है। चल अभी मतलब मिड मेन का प्लान दे रहा हूँ पूरा मेन का प्लान दे रहा हूँ। एक शॉट है। नाइस शॉट। मुझे गन चाहिए ब्रो। रिकॉन इन 10। हेवन अरे हेवन मेन का प्लान मत लग हाय बिग्स गाइस दोनों में है। प्लान तेरे नीचे है बिग मार्क पे आधा हो गया है। ए शॉट था लास्ट। क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? मुझे गन चाहिए। हाय क्या भाई वन टैप प्रोफेशनल फेकर वन टैप क्लोज टू 1K शॉट टू आरएन वाइडी मेरी जान। थोड़ा सा ड्रॉप मिल जाता है शेरिफ। ये ले मामा ये ले। अच्छा वो लो। Can I get this? Araxis बुलडॉग भी है? Yes.
क्या सीन गाइस? Let's make him dance. आईजेन कॉल दो. ए फर्स्ट. कौन आईजेन? एक कौन आया? मारो मारो मारो, मर गया. घुसो 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 घुसो. मेरा गन है वहाँ पे. स्पेक्टर एक्सियन पीछे. स्पेक्टर चाहिए मुझे. अरे मेरे पास नहीं है. थैंक्स. नीचे याद रखियो. वॉच बैक स्टेप. अरे तू देखना मामा बैक. हेवन जाके मार, हेवन जाके मार. एंटी रे. कहाँ जा रही है पिंकी स्मोक में? कहाँ जा रही है? मुझे थ्रो मत कर. गार्डन क्या वो? गार्डन में तू जा रही है मैडम. वो गार्डन कैसा लगा मुझे? तू गा रही है गार्डन. मैं पीछे से मारने गई. Scanning ahead. Very nice. Pinky's brain is not brain. बच गया. अरे no, Sachin, भाई I बचा, thought भाई he's बचा. going from here to here. 140 दिया उसने. हाँ 125 for 1. चलो. आईजेन ओपी गाइस, आईजेन ओपी. अनुज भाई इन गेम चैट में अच्छा खेलते हो गाइस. Alarm bot out. Reload. कभी कभी. भाई कुछ रिकॉन क्या लाइन है बात है क्या किसी को? Let's make some chaos. हाँ मैं भूल गया. Nice dude. How about I'm gonna. अरे fuck है. Guys, I put bomb मेरे पास था यार on the other side. Heaven. Pinky chill. रिबोन तेरे पास से एचपी है. Turrets destroyed. नीचे गिरा एक. One enemy remaining. साइड. जेन. हाय क्या है मैं देख रहा हूँ मैं. हाय कितना भाई एकदम रिबन डिसिप्लिन के साथ खेला. ये स्मोक थोड़ा बराबर डालना. बाहर तक क्यों डाल रहा है? मेरा अल्ट है. बात बताओ ये बड़वा है क्या हल्की सी? कौन? तेरी माँ अगर मुझे कुछ बोला ना टीबोन माँ कसम मुंह में हंसूंगा. तेरा मुंह खोल के तेरे मुंह पे बैठ के हंसूंगा. और ये बोले ना कि लाइक करो. गाली का. No prisoners. Reloading. I'm about to flash 3, 2, 1, 0, -0. Yalla. Lols. यहाँ पे जाने मत दो. इसको ढूंढ रहे पिंकी. 0 D10 दे तो. भाई टीम मार्केट है क्या by the way? देखो यार. Wow, Close nice. left. Damn. Goat. Hey Pinky, whom are we going to find there? I like market. Bro, this is like Reina, bro. Yeah, it's like semi-Reina. Bro, that, you know how the Reina got marked? He flashed, my drone was blind. I just shot a random. मेरे को पिंकी का थॉट प्रोसेस जानना. पिंकी क्या चेक कर रही थी साइड? मैं भी सोचा उसने अल्ट किया है. 0 D10 ने. मैं बोल क्या ब्रेन इज नॉट ब्रेन. यार. No, I think my headphones is like. मैं आवाज कर रहा था पिंकी. I'm ready to flash. क्या? जाओ. आ रहा है ब्रो. आ रहा है बंदा. भाई दो. एक आली. बॉम्ब तो उधर ही है. टिबोन सिटी से आ जाएगा. तू रिकॉन दे. यहाँ पे रिकॉन दे और अल्ट मार. मांबा हाँ रिकॉन दे और अल्ट मार.
नाइस मिला इसको। अल्ट है तेरे पास टिबो। गोटी पे अल्ट करके भाग। ऊपर जा ऊपर। हाँ शॉट। आजा लोडो। Player standing. मार मांबा एक कभी। कहां से टीगो ने लव यू मेक माय डे बेटर लव यू। अरे चिप मारी के मेरे को एंगल तो क्या लैंग्वेज है मामा? तू प्लेयर है भाई मामा। टिबुन भाई जरा नीचे से 2 प्लेट प्लीज अक्कल लेके आऊंगा तेरी ऐसी। गॉड। सुन टिबुन, यहाँ पे एक स्मोक डाल और एक यहाँ पे ऐसा डाल कि हम यहाँ से लेफ्ट जा सकते। मुझे एक गन मिलेगा टिबुन। गन मिलेगा तेरे को। वो भी चलेगा। हाँ? क्या लगे ये भीग खुदा। Inside the borders. अरे स्नैप किया। ए जाओ जल्दी ए जाओ। हो गया। भाग के जाओ। मुख सही था। भाग के जाओ। एक डिटेन हुआ ये। वहाँ पे और बॉम्ब लो और वापस भी आओ। एक ब्लाइंड दे रहना यहाँ पे ब्लाइंड दे वापस भी आओ भाग के। वापस भी आओ। अच्छा भाग के भी आओ। मिड रिकॉन दे। मैं शॉट जा रहा हूँ इनको लगे। मैं बी साइड पे हूँ। बी साइड पे है। ये शॉट पे रहना है। एक जोन मार दे भाई प्लीज मार दे उसको। नहीं गया। हक दिया ब्रो। The B is clear now. Have it. 30 seconds left. Easy kills baby. तेरा प्रीमियर का मैच है ना बिक्स। मैं मार के दो आएगा। मैं शॉट की बोट। One enemy remaining. पिंकी शॉट। डायरेक्ट पिंकी डायरेक्ट। साइड के अंदर है चुप रहे। Player standing. यार साइड में आ गया है वो तेरा। Damn shot. गन चाहिए। डेडली डोज बेबी। Match point. ड्रॉप दे दो यार। प्रीलूड दे प्लीज दे। एक ड्रॉप मैं प्रीलूड लेके एस मारूंगा। प्रीलूड मांग रहे बिंक्स। मेरे को ड्रॉप दे दो। प्रीलूड मांगो रे बिंक्स बाय। बिंक्स प्लीज एक सैशन प्लीज। मेरे लिए एक ड्रॉप। इधर यार लाउड है गन दे इधर। मेरा गन कौन लेगा? मिड स्मोक नहीं लिया। मिड स्मोक हेडशॉट जाओ खत्म करो सारे हेडशॉट। मिड स्मोक भाई क्या लैग है भाई ये पीटी है ब्रो है ना। मेरे को बैक लॉस हो रहा है ब्रो। एक और शॉट ब्रो आई एम गेटिंग हिट मैन ब्रो। एस मामा remaining. लास्ट बी प्लेयर मिड आएगा। नहीं है तेरा एम तेरे को भी पता है। होगा गलती में मत जाइयो। तेरे एम नहीं है याद रखियो। नहीं है यहाँ पे रिकॉन दे और ए चले जा। 2 मिनट बहुत सारा लग गया अपना। 2 मिनट ए चले पिंकी ये स्मोक देना। ये भी दे मैं फेक दे रहा स्मोक भी। हाँ ये भी दे। फुल दिमाग बेबी। एंटी हगू क्या भाई वो है पैकेट लॉस दिख रहा है। हेडशॉट जा आरटीबी है। नहीं ये नहीं करने का। आरटीबी है ब्रो। आएगा। रिकॉन छोड़ देगा उसको लग रहा है तो नहीं कर। And oh my god, he was crouching. He wasn't defensive, he was crouching. Brain dead player.
टीवन भाई सुनो, टीवन भाई सुनो, टीवन भाई सुनो, सुनो ना टीवन भाई। pretty well आवाज myself. नहीं आ रहा। Make sure to cover the Disconnected. angles I can't. एक सेव करे। हाँ एक सेव करो, नेक्स्ट राउंड एंड करते हैं। ए पे आ जाओ सारे, ए पे आ जाओ। Exxon, give me a close blind here. There. Yes, ठीक है जा जल्दी। तीन 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 तीन। 90 है तो। मेरे मुंह पे अल्टी हो रहा है ब्रो। कौन गाने तेरे पास? Last player standing. टीफोन लोग 90 है। पीछे ए शॉट। टीफोन ए शॉट से टीफोन को देखो प्लीज। सुनो कॉल सुनो, सिंपल कॉल है ठीक है, वेरी सिंपल कॉल है। मेरा अल्टी भी आ गया ब्रो, आजा। पिंकी अल्ट मारेगी यहाँ पे, सिटी नेड करूंगा, सारे लोग साइड जाएंगे ठीक है। पिंकी जाते जाते एक अलार्म बॉट इधर डाल और अल्ट मारने के बाद है ना मैं सिटी नेड करूंगा, उसके बाद तू 2 नेड इधर डाल देना साइड जाने के बाद। यहाँ तक साइड हाँ ड्रोन कर, वॉक 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 और प्ले और प्ले और प्ले इधर इधर वो है और प्ले। क्यों इतना जल्दी स्मोक टीबोन? रुक जा मत मार आंटी। अरे यार स्मोक ही नहीं है मेरे पास टीबोन, आंटी भी है थोड़ा सा ब्रो। ब्रेंडेड है क्या? ब्लाइंड पे घुस जा, ब्लाइंड पे घुस जा, घुसो स्पाइकर। अरे सब साइड है। टीबोन कर तेरे सॉरी दो साइड करो भाई। क्या करो टीबोन यार, अल्ट होने देना टीबोन। सॉरी मेरी गलती थी, मुझे लगा it was a brain lag moment। अब भी इतना फ्री साइड, 4 लोग जो फ्री साइड था। My mistake, that was my mistake, सच्ची बोल। That was good भाई ओटी मत चैनल को प्रीमियर करके सोना है। कितने साल गए? हाँ हो गया मैं I'm just 16 like kind of stuff। हाँ, सुन 16 साल पहले भी एक गलती हुआ था, याद है? मिड स्मोक डालो और ए शॉट जाओ मत, यहाँ से देखो मेरे मार्कर से ए शॉट मिड ही देखो। भाग गया ब्रो, ये पी मरना करेगा नहीं, ब्रो। हाइड करो ना। हाइड किया। ए में पुश हो सकता है। ये नहीं, इसको दिखाना है ब्रो। क्या कर रहे हो भाई, क्या बीटी ब्रो, क्या देख रहे हो यार? अब ए शॉट था वो भाई बोल भी रहा हो हाइड करो, फिर भी कोई मर गया उससे। कौन मरा उससे? टीबोन। खत्म करने देना गेम यार। सॉरी Don't be, ये लेजिट मेरी गलती, ये लेजिट मेरी गलती। कोई भी प्लेयर्स तेरे को ब्रेन नहीं दे सकता टिपोन भाई, बंद करने बोलो वो। ये मेरी गलती थी, सच्ची वाली गलती थी ये मेरी। वो चलेंगे ये पे होगा। 30 seconds left. स्मोक से क्या? किधर मरा अपना? Last player नहीं standing. यार ये पीक लेके बैठा Spike है। down A. साइट ओनली। हेडशॉट देख सिर्फ, हेवन नहीं आएगा। नाइस खत्म कर दे। अच्छा बंदा इतना डीप नहीं रे। 10 seconds left. प्लीज कंट्रोल ले, सिटी कंट्रोल है, ट्रस्ट मी लाइक क्रेजी, सिटी कंट्रोल है। सिटी कंट्रोल है। दिमाग में है तेरे, 2 मिनट चुप रह जा। टिपोन भाई सच्ची गेमिंग छोड़ने का टाइम आ गया। फिर बोलता है एसेंट इंटू कैसे इतना बेबी सिट करके मुंह में लड़ दे के भी भींचुद हाइड नहीं ले सकता। इतना क्लच किया फिर भी आ रहा है। I was just wasting Binks time so that he doesn't play Premier। बोल रही है तो ये पहले पता था। ये पहले पता था।
छोड़ दो एक्सियन। रोज बेंच 20% बैक लॉस आता है, ठीक है कुछ मत बोल। 57 एसीएस कैसे है तेरा? तू किधर मारा इतना? रस्सी आजा पकड़ बिंक्स कर एक और चल। गुड भाई, अच्छा खेला बे। 250 एसीएस। अच्छा तो मैं खेला भाई। इनवाइट करो। नूब्स थे बे सामने सच्ची। अच्छा टीमन भाई, आपके रैंक के थे तो ऐसा करोगे भी? भाई उसने गलत डिफ दिया मुझे। चलो भाई हो गया मेरा आज का गेमिंग, बहुत हो गया भाई। कितने? 7 घंटे हो गए। अबे सब म्यूटेड क्यों है? जल्दी करो, टाइम नहीं है। रेक्स बुलेट कैसे सब म्यूटेड क्यों है? वेटिंग फॉर यू सर। अनुज भाई मेरे को एक बात बताओ, बोलो। अगर आप स्ट्रीम करके खेले। हे गाइस स्लॉट है, मैं खेल सकता हूँ ये गेम। आगे बोल। हाँ अगर आप स्ट्रीम करके खेले हाँ तो लैग होएगा। हाँ क्वालिफाई हो लो। गया तो क्या करेगा लैग का? कर लेना। गो करो गो करो। अरे बहुत अरे लैग इधर होता है है। ना। ए स्लॉट है मुझे। आ जाओ टीबोन, आपके लिए मैं उड़ जाता हूँ। मैं ओयो भेज रहा हूँ उसको बार बार। आपके लिए उड़ जाता हूँ मैं उसको टीबोन, आ बार जाओ। बार ओयो में भेज रहा हूँ। नहीं चाहिए टीबोन, नहीं चाहिए। हेलो हाँ? हेलो। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छा खेलो, मेरा आशीर्वाद रहे। थैंक यू। थैंक यू मैंस। जल्दी आ जाओ कैजन। इधर ही ऑनलाइन हूँ मैं कब से। अरे तो इनवाइट किया है भाई मैं पानी लेने गया था, गिर गया रास्ते में, इतना दर्द हो रहा हाथ को। सीढ़ी में गिर गया। पानी। हाँ वो कैन का पानी रहता है ना। कैन का पानी? क्या? अरे गिर गया। नहीं नहीं, वो कैन 20 लीटर का कैन रहता है, एक फिल्टर खरीदना पड़ता है और एक कैन चेंज करते रहते हो। 60 रुपीज। नहीं नहीं 90 का लेता बिस्लेरी का। 90 का स्कैम है हाँ दिया तो नहीं नहीं दिया तो तेरा कितने रुपए का है? 60 बट बिस्लेरी है विद होम डिलीवरी। हाँ भाई नहीं सुनो, मेरी भी होम डिलीवरी। आज का प्रीमियर का 2 मेन चीज सुनो। स्ट्रीम स्नैपर बोलना नहीं, होएगा तो भी चलेगा। दूसरी बात, स्ट्रिक्स गार्ड में हाथी का लंड लास्ट टाइम बहुत गंदा खेला। हाँ भी कंटिन्यू भाई, एक मिनट भाई। अरे कौन सा मैप है प्लीज मेरे को एजेंट। लोटस लोटस में लोटस नहीं है, हो गया लोटस ना। लोटस लोटस है लोटस लोटस। एक मैप बचा अपना। ठीक है भाई, रेज ले लेना। अभी मैप अपना Yes, डिसाइड कर लो yes. कौन क्या खेल रहा है। मैं क्लोव खेलूंगा वापस। मैं गेको। गेको ठीक है, गेको क्लोव रेज कौन? मेरेज गेको यार, मैं मुझे विंक्स। दे दो यार गेको। अरे मेरे को नहीं आता इसका। अरे देखो आता है ब्रो, ठीक है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? वही तो झूठा कहीं का। अनुज अगर तेरा रेस अभी खेल तक दो। प्रीमियर का फंडा नहीं समझा क्या रे? सेंटिनल के लिए क्या खेलूं? चिम्बर खेलूं क्या? फॉर्मेट नहीं समझा अभी तक, क्या सीन है किसको? तेरे को? अरे हो गए ना क्वालिफाई। नहीं, कौन सा मैप कब होता है, क्या वो समझा नहीं क्या? अरे वो हाँ, एक प्रीमियर हफ्ते में में जाओ एक वहां होता पे है ना। दिखता है। नहीं, एक हफ्ते में कोई एक मैप रहता है ना। बेसिकली हाँ, एक हफ्ते में एक मैप रहता है और 2 ही बार खेल सकते हो। या फिर तो पहला दिन ही 2 गेम खेल के खत्म कर, या फिर हाँ पहला दिन लाइट चल रही थी, याद है मेरे को। आज भी लाइट गई तो मैं सीधा ऑल्ट F4 ऑल्ट F4 ए 4v5 खेलेंगे। ऑल्ट F4 लास्ट टाइम जीते थे 4v5 भाई, ये ना बने। दर्द नहीं। तो फिर गेको खेल रहा है स्ट्रेक्स, मैं खेल रहा हूँ क्लो, बिंक्स खेल रहा है रेस, काइजन भाई मैं जेट या चिम्बर या कोई सेंटिनल। ए अगर मैच मिला ही नहीं तो क्या होता है? तो फिर मिला ही नहीं। फिर मिला ही लो भी नहीं मिलेगा। बुलेट क्या खेलने वाला है? एक इनिशिएटर चाहिए अपने को। हाँ इनिशिएटर खेल लो क्या? आई डोंट थिंक आज मिलेंगे, क्योंकि वो जो भी वही ना, क्या ग्राइंड खेलता करने अपन वाले लास्ट लोग टाइम? रहते हैं एक ना? दिन खेल खत्म कर देते क्या हैं। खेलता हूँ? नहीं तो ब्रीच खेलता, कुछ भी चलेगा। कोई नई टीम स्ट्रीम स्नैप करो यार प्लीज। ये कौन है ये? टीम LDE गो करो, टीम LDE फाइंड करो, मैच साथ में आएंगे। हां देखो 60 रुपए में बिस्लेरी का पानी मिलता है। मिल गया लोगों को हाँ। प्रीमियर बट बिस्लेरी है नॉर्मल पानी कैन। एक्चुअली स्लोरी है। ये लोग मैच था ना। हाँ भाई कैन लेके गिर गया यार, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बट वो कैन बोलो बोलो। राइट हैंड दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड? इतनी टीम्स हैं, राइट हैंड राइट हैंड। 72 टीम्स है, अपने को एक नहीं मिलने वाली है। मैं फोटो भी भेज सकता चाहिए तो ग्रुप में। वो नहीं कर पाएगा तू, राइट हैंड चोट लगा है तो। अबे वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा तू। हो गया तेरा उधर खत्म। आज के बाद कभी नहीं होगा। शिट भाई
फ्लिक नहीं मार पाएगा बोल रहे हैं हम। फ्लिक वही Yes, लेफ्ट साइड में वही। पकड़ने का ट्राई कर माउस। फ्लिक का बात कर रहे नहीं नहीं चलेगा चलेगा, मेरा हाई सेंस थोड़ा हाई सेंस है तो मैं रिस्ट प्लेयर हूँ। कितना हिसाब हरामी है फोरम। बिंक्स, अभी देखा मैंने टीम एनडी के है। कितना हरामी है भाई, कितना हरामी है भाई। अब भी देखा मैंने एनडी के है। स्टैंडिंग्स में जाके मैंने लास्ट पोस्ट पे क्लिक किया सीधा एक क्लिक से। और अदर्स भाई कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? हाउस कटिंग्स? कटिंग्स नॉट हैपनिंग मैन। व्हाई मैन? रोटी और चावल सब छोड़ने पड़ेंगे। तू भूसड़ी के ना दोपहर को स्ट्रीम करता है बोल के ना रात। अरे आया तो था मैं दोपहर में तुम लोग के साथ वॉच पार्टी बैठा तो था, ग्लोबल का मैच देख के गया, फिर मैं बाहर चला गया था, अब भी आया थोड़ी देर पहले। मैं एक्चुअली आज आने ही नहीं वाला था, लेट हो सकता था इसलिए मैं बोल रहा था। फिर सोचा अभी स्ट्रीम करता हूँ, लेकिन बोला तूने मैच खेलना है तो रुकता हूँ। मैच में अरे बहुत लैग होता है रे बाबा, पीसी दर्द हो जाएगा। तो नॉर्मल मैच में नहीं होता लैग? होता है ना, लैग नहीं खेलते तो फिर बट मैच है ना, मैच को थोड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। भाई क्वालिफाई हो गए, इसके ऊपर क्या प्रायोरिटी दे दे? तेरे को खेलने का है ना, तेरे लिए दे रहा हूँ प्रायोरिटी। मैं तो बेंच बिना डीले पे खेल रहा हूँ स्ट्रीम सब करो करके। तू है तू नेक्स्ट लेवल। चलेगा चलेगा चलेगा। तेरा अगर हम इसके बाद करता हूँ ना स्ट्रीम, होने कितना टाइम है? ज्यादा ये टाइम नहीं, गेम आधा जीतते घंटा तक और हम बाकी। टॉप हो जाएंगे, टॉप इन प्रीमियर। भाई इसके पहले कि मेरे को उल्टी है, जल्दी खत्म कर। उल्टी बहुत डिफिकल्ट है आज भाई ये इतना टाइम से गेम, आई बैठा हूँ, थिंक। मेरे को रात को भी स्ट्रीम करने का है। डिनर में कॉर्न खाया, मेरे को डिनर भी करने का है। क्या खाया? कॉर्न। कौन? कॉर्न बस कैसा था? बाप रे, हाँ फुल हेवी डिनर इसके बाद है प्रोटीन मेरा। ये बढ़िया, वेरी प्रोटीन में इंप्रेस्ड क्या है? भाई। डिनर रखा नहीं, क्या बात है। प्रोटीन में चिकन, ग्रिल्ड चिकन। सही सही है। शिक्स तेरा एग्जाम कैसे गया रे? अच्छा गया एग्जाम था। मिनीबू समझता है अपने आप को। मिनीमम भी एग्जाम दे रहा है क्या? मिनीबू एग्जाम देके फ्लाई करके आया खेलने को VCT। जीतोगे बैंक्स। ये प्रीमियर का जो प्लेऑफ्स है संडे को, अप्रैल 28 को, वो क्या लाइक फॉर्मेट वगैरह रहेगा? ऐसा टॉप 2 जीतना पड़ेगा या क्या सीन है उसका, किसी को पता है? हाँ वाकले भाई को पता है। वाकले वाकले भाई मूवी। वाकले अनुज भाई आपको पता है क्या? अनुज भाई उसे मैप का नहीं पता, उसको लौड़ा प्लेऑफ का पता रहेगा। ये नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं, इसके ऊपर वाला मैच खेलते हैं अपन। स्ट्रिक्स देखो आइडिया है? क्या इतना पता बेस्ट ऑफ 3 होता है ना प्लेऑफ में? पता नहीं बट समझा ही नहीं मेरे को तो। भाई जितना है खेलो, 10 लाख में स्लॉट बेच के मैं घर ले रहा हूँ। दीप राजपूत भाई लव यू, थैंक यू सो मच मेंबरशिप। मेरे इसमें तो दूर दूर तक कोई फाइंड नहीं कर रहा। मेरे में भी फाइंड नहीं कर रहा कोई भी। मिल गया ऑलरेडी लोगों को। नहीं जो लोग मिल गया, हाँ एक हम थोड़ा लेट हो गए ना, हम थोड़ा लेट हो अभी गए। मैं बोलता हूँ, अभी अपने को मैच कभी मिलेगा पता है? 9-10 के आसपास। हाँ तभी एक लोग पहला खेल रहे वही बस्टर वगैरह, बस्टर का दो डाई स्पोर्ट्स वाले लोग। बस्टर को स्ट्रीम करता हूँ मेरे को। अरे गर्व और पिक्सल भी खेल रहे हैं। पिक्सल भी खेल रहा है भाई, ये अलग इंसान है ये भी। कौन सा टीम में? अरे कोई टीम में नहीं है, बस वो खेल रहा है प्रीमियर। टाइम पास के लिए खेल रहा है वो, पढ़ाई परसों कर। हाँ उसका भी पड़ेगा सीन है, उसका हो गया। मेरे को बोला मेरे से ना हो पाए, खेल तू। ठीक है ब्रो। ओ मिल गया 1 मिनट पहले मिला भाई। कैसे मिला? LD प्लीज LD
ये कौन सी टीम है? एलडी लास्ट में एक गेम खेला है 313 आ रहा। तो मैं क्या ले रहा हूँ? मैं जेट ले रहा हूँ, किलजॉय ले रहा हूँ। किलजॉय मैं खेल लो अनुज भाई, ब्रीच लो या स्काई लो। एक्चुअली तू किलजॉय खेल सकता है क्या बुलेट? हाँ तो डबल डुएलिस्ट खेलते हैं ना। डन सीन। बिंग्स भाई ले लो ना, नहीं तो काइजन ले लेगा। अनुज भी लाइक बेंच और इससे अच्छा मैं नहीं आता। हो गया लास्ट टाइम पता नहीं ये बकचोदी में जेट हो गया था। हाँ यही बकचोदी में एजेंट चल रही है। करना उन्होंने पड़ेगा। पिक कर लिया है, जल्दी वो लोग स्टार्ट ने करते हैं। जल्दी चालू कर, मेरे को सोना पिक है। कर लो उन लोग ने पिक कर लिया है, वेस्ट मत करो 30 सेकंड्स भी। मेरा गले तक आ चुका है बोला। अबे कौन डाला भाई मुंबई से? भाई लेवल तो हेवी लेवल है इन लोग के भी। 443 अपने पास बिंग्स भाई है। भाई सुनो 637 है बुलेट का देख 617 भाई। बुलेट भाई 617 के लिए आप हगास हो, ठीक है? अब भी बोल रहा हूँ मैं 637 में इमोर्टल 3 पहुंचा बिना कोई आरआर करे ग्रुप में। तुम भोसड़े वाले 10 रीजन देके बेंचो नहीं पहुंच पा रहे। सही है भाई ट्रिक्स को पूछ कर क्या हुआ है। हाँ वाह देखो अब भी रीजन चालू। अभी चालू हो गया। मत पूछो। कल ट्रिक्स का दोस्त आया था टीम में, सोवा। भाई सुनो पहला राउंड ए रिटेक। हाँ चुपचाप, कोई यूटिल वेस्ट नहीं करना। हाँ मैं किलजॉय के साथ सी खेल रहा हूँ, ए हुआ तो ए रिटेक करेंगे। बिंग भाई के आईजीएल पे खेलते हैं। हाँ, मेरे कॉल पे गेको ब्लाइंड रख देना। फिलहाल गेको यहाँ से ब्लाइंड दे देना मेरे कॉल पे। एक वन वे स्मोक। ए भाई बुलेट एक बी पे तो सामान लगा। एक वन वे स्मोक नहीं वो 2 जन खेल रहे हैं ना। किलजॉय छोड़ेंगे मेरे साथ वो कर। डायरेक्ट निकाल के डाल देगा तो अलार्म बोर्ड। जेट मेरे साथ पिक कर। हाँ जेट मेरे साथ पिक कर मेरे कॉल पे। वन वे स्मोक किधर गया? वहां पे वन में नहीं होता। ब्लाइंड दे पिक कर। तोड़ता हूँ बाप रे ये खा लिया भाई। किल जा मारो उसकी। मारो उसको मारो। ए भाग गया। लो एक खाली वाइपर पीछे गया। वो डिंक है वाइपर 87 आपके पास आएंगे। वाइपर लो है। वाइपर को 87 दिया। वाइपर बोल रहा हूँ ये किलजॉय वाइपर लो है। वो मैं लो मर गया। अरे 87 वाइपर वो किधर से आया पता नहीं। बेंच मेरा गेम लैग हो रहा। उसका तोड़ सकता है क्या फ्लैंक करके? 2 है वाइपर, एक गोली के। इस जगह सामान नहीं था। गेम लैग हो रहा है। लास्ट में 13 HP साथ में गन निकाल के जाते रहो पूरे टाइम। भागते रहे स्ट्रिकी भागते रहे। तेरा लैग हो रहा ना, भागते रहे, गन निकाल के भाग बस। एक गोली मारना। अरे तो भी स्पाइक पे स्मोक करता हूँ। अरे क्या कर रहा है रेस्ट्रिक्सी? भोसड़ी वाले बात भी नहीं करते रे तुम्हारी। एक बुलेट का भाग रहे वो क्या देख रहे भाई? वही बे घुमाओ। मैं खुद एक हिट का हूँ। मैं टैप करके वो किया। एक चीज बोल रहा है लैग हो रहा हाँ ना। ऐसा बोलना कि मेरे को और यहाँ पे तेरे को क्लोज स्मोक डाल के इसको मारना था। स्मोक आ गया तूने जेट। मैंने लेफ्ट स्मोक ही किया था, वो भाग गया। लेफ्ट स्मोक नहीं, क्लोज स्मोक नहीं किया तूने, वो राइट में था। तेरे को ओमेन ने मारा। नेक्स्ट गेम जी दिस गेम आई हैव अ फीलिंग ऑलरेडी। तोड़िए तोड़। और ये बाप नहीं तोड़। स्मोक किया तेरे को, निकल जा। कोई नहीं। बियारे ये तो सामान नहीं है अपना। टर्रेट भी निकाल लिया मैंने। सी से आ सकते, केयर करो। स्पाइक प्लांटेड। अरे राइट चेक कर पूरा। नहीं रुक राइट पे बी में स्मोक कर रहा है 2 सेकंड मैक्सिमम। बी में स्मोक कर रहा हूं। लिंक है, एक लिंक है। दो और एक -9 110 लिंक 110 लिंक। कहां जा रहा है? 110 हो गया भाई। गांड ले। राउंड निकाला तुम्हारे लिए। गांड ने लिया इसने। लकी ए भाई तू स्पॉट नहीं हुआ ना?
ए लो ना, ये कंट्रोल लो ना, हुआ कुछ तो। नहीं होता। भाई जा क्या देखो ए पे कैसे जा, हुआ ए पे जा। भाई? देखो देख रखा है देखो ए पे जा। ले भाई, कैसे लूंगा? हाँ तुम तीनों एक खेलो, मैं रोटेशन खेलता हूँ बस स्मोक दे दूंगा। दिखाता हूँ। जा जा बिंग्स, ए पे जाना, कंट्रोल लेना। आना बिग्स, आ रहा हूँ ना, इधर मॉली डाल रहा हूँ। प्रीमियर डाल लेफ्ट साइड डैश Smoke मार, कर राइट रहा साइड नेट कर रहा साउंड है तो बता। हूँ। एक क्रॉस किया रबल, 80 रेस। दरवाजा तोड़ रहा हूँ। नाइस। फाइट ड्रॉप। Down A. हाँ स्पाइक है दोस्तों। अपने पास स्पाइक है। लिंक देखता हूँ मैं। वो ले सकता अभी स्पाइक। हाँ बी वाला मेरे पास है। अच्छा मार दे। बुलेट भाई क्या हो रहा है? बुलेट भाई बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। गांड में डाल दो 615 लेवल बुलेट। हाँ भाई वो हिल गया भाई। भाई कुछ भी। वापस ए पे गेको ए पे। रिकॉन तोड़ता नहीं है, बड़बड़ कर रहा है। कौन रिकॉन मैंने तोड़ा? 2 नेट मत डाल इधर, एक ही मेरे को डालने दे। नहीं तू इधर डाल रहा है ना, मैं अंदर डीप डाल रहा हूँ, तू क्रॉसिंग डाल। ड्रॉप दो ना, स्टिक्स ड्रॉप दो। अरे सुन उनके पास फ्लैश नहीं है, लेकिन वाइपर वॉल है, तो जब एक कंट्रोल लेके एक जन इधर और एक जन ऊपर खेलना अगर हुआ तो। रिकॉन में तोड़ दूंगा, यहाँ पे स्पिट करके ब्लाइंड दे, तोड़ क्रॉस कर। स्मोकिंग ये आ रहे नहीं देखिए, छोड़ दे जेट को उधर, छोड़ दे। रेज और किल जा। रेज आगे फेड भी है, किल जा नहीं, फेड सॉरी। आगे जा, इधर जा ठीक है। एक्चुअली मैं जाता हूँ तेरे पास वो है ना, नेट नहीं है उस पे। आ रहे हैं, तोड़ दिया मैंने वो। मोलोटो फ्लैश 2 -86 120 120 आ जाएगा रेज 120 Spike down C. स्मोक कर रहा हूँ मैं। ब्लाइंड में खा रहा हूँ। आज इधर से फाइट लेते हैं, तो मेरा ब्लाइंड स्पॉट देखना। मैं दे रहा हूँ, एक ऊपर है। साइड अरे एंटी रेसिंग भाई। साइड वाले को मारना था रे। They're going to scatter from my stuff. इधर कौन था? There. मैं बिना दिखे। अरे भोसड़ी वालों, इधर कौन था? भेड़चोद। रेस था उधर, उनका कि अपना? किसका पूछ रहा है? अपना वहाँ पे कौन? अपना अनुज भाई पे। अरे उन पे कुछ तो आ गया शायद। तो वही पूछ रहा हूँ, क्या आ रहा है, कैसे मरा, क्या आया? मजा आया उधर, जा खेल उधर। मैं खेल रहा। अरे मैं मजा आया। मैं पूछ रहा हूँ उधर कौन मरा, स्पैम पड़ी वहाँ पे। कोई बोल ही नहीं रहा है। बहन तो बोल रहा है रेस मारा उधर, रेस कहाँ से? का 138 मेरे को स्पैम पड़ा है वहाँ पे। कोई ना यार, कोच टॉक्स हो रही है वहाँ पे, कोच टॉक्स। शांत शांत, रिलैक्स। अरे रिलैक्स। रिजल्ट है, वापस से सी केयर करना, रीटेक चले जाना बुलेट अगर आए तो चलेगा। बंक भाई काइसन से अच्छा टीबोन को ले लेते। चैट अपने पास क्या है? अपने पास गेको उल्टे है। What is this? अनुज भाई क्या बोल रहे सुनो तो। I can't have हाँ now. सुनो सी पे रीटेक कर लेना, गेको से वापस लेते हैं। चलेगा। ए पे सेम ही करना ना अनुज भाई। हाँ सेम करो। ये प्रहलाद रंडल किस पे? अरे मेरा काला हो गया गेम। क्या लैंग्वेज है? ठीक हो जाएगा। और टैप करके वापस गन्निया कलर आ गया। चलेगा अल्टी पे मिल जाएगी। Here. ऊपर जा रहा हूँ। Let's go. रुकने के बाद ब्लाइंड देना। No. Nothing ना? कुछ नहीं। उसके डिफॉल्ट हो चुका है। बी पे टरेट तोड़ दिया मैंने। दो लोग थी, बूमबोर्ड थी। ड्यूलेस ये उनको। स्मोक किया सी पे, घुस गए वो लोग। अब क्लोज है एकदम। मैं बी देख रहा हूँ। फीड ने और लिया। मैं लिंक से देख रहा हूँ अभी। इधर खेल रहे तू? हाँ मैं इधर ही खेल रहा हूँ। पिलर्स पे खेलना स्टार्ट। अच्छा फिर से पीछे जा सकते। अपना ए पे है। ए पे आई मीन आया वे। रिजल्ट मारेगा, हवे में ट्राई करता हूँ उसको मारने। आईज ओनली ओके। कितने लोग हैं? एक है एक। मैं दो नाइस। एक ही था। अरे सी आ रहे अभी। देखो गन चाहिए उसको। ले कोई नहीं वहाँ। काटा मेरे को, पीछे जा रहा हूँ।
सिटी जो नेट साइड घुसे है ना? प्लांटिंग लास्ट मेरे क्लोज है। है ना? लोता पे ट्राई कर रहे थे हमें। फ्री गन बोलते हैं उनका इको है गाइस आराम से अराउंड। दीपाई का काइजन ओल्ड स्टफ अपना पुराना इको वाला। ठीक है आता हूं पे। हम लोग का कल का स्ट्रैट है ये बिंग्स, प्लीज डोंट कॉपी ओके। क्या कल का स्ट्रैट है? मैं नहीं बताएंगे नहीं, हम सीधा करके दिखाएंगे। एक यहाँ पे बैठने का, एक जंप पिक आवाज करके। नहीं ऐसा ये सब क्या इतना भी चिपड़ा समझे। चिपड़ा क्या है बे? देखो अभी स्टार्ट देखो आप। क्रॉस सी पे वाइपर वॉल वाइपर नहीं सी आ रहे हैं जो इधर। लेफ्ट में एम लगा के रख, लेफ्ट में लगा के रखा है। आप छोड़ दो मैं टर्रेट मत पीछे जाना पड़ेगा इधर स्टेयर्स। मैं रोटेशन दे रहा हूं ये पे छोड़ दिए ये लोग ने। अच्छा एक जन इधर जाओ। मरना नहीं स्ट्रिक्स। नहीं बुलेट कैरी कर रहे थे तेरे पे। शायद मेरे पे घुसेंगे ये लोग। हो सकता है। बुलेट म्यूटेड ये वाइपर लॉक करेगा। yes, ए बुलेट yes, बुलेट बुलेट वाइपर लॉक करेगा तेरे पे। हाँ है मेरे पास कलम बोर्ड है। 6 अल्ट मार वहां से, अल्ट मार। नहीं है हां वाइपर सी, एक सी, और सी, सी। ठीक है घुसे नहीं वापस जा रहा आजा अल्ट ले। ये जा रहे ए मेरा हो गया रे। सॉरी स्ट्रिक्स बाय भाई मेरा हो गया भाई गेमिंग से। क्या मेरे को डिटेन किया गांडू। अरे मेरे को पीछे लाना था उसको। अनुज भाई इस बार ट्राई करते हैं, भी आएंगे। मुश्किल है। पुश करते हैं, चल पुश करके एटलीस्ट उसका टर्रेट तोड़ देते हैं। ठीक है भाई सोचो अभी हम मास्टर्स में रहते हैं, से लोग कितने हंसते। 5 सेकंड रुकेगा अनुज भाई, आई थिंक वो भागते आएंगे। ओके और तुझे कुछ मार देते बिंग्स तो ऐसे में सामने वाले सामने वाले मार देते तो खत्म था ये। मजा आ जाता भाई। फोरवील पे खेलते थे उसको, इवेंट से घर पे बेचता था। इवेंट से भाई। सी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, कैसे इधर आएगा दरवाजा खोल। और एक पीटी पुश कर रहे हैं। दोनों एक राइट में मेरा कहां से राइट पे अरे बाप रे देखे रे पापा। और तो दिया है मैंने गंदा वाला। भाई मेरा मूवमेंट स्ट्रांग हो गई है ब्रो। चिल रहा है बाबा। अनुज भाई सेम कर दे, तब तक वो लोग नहीं आते। अरे नहीं इस बार आएंगे। 6 सुनना वो करना, गांड देना। बस कौन सा बैंड होना चाहिए? ए ऐसे उनको पीछे भगाओ ना, बी पे हम लोग का ट्रैप सेटअप भाई काइजन को चाहिए। नेड और डालो बोलो वो नेड डालो ना, स्मोक करो। उधर स्ट्रैट्स बन रहे। डबल किल दो सी रेज और पेड़ तोड़ देता उसी। खोल रहा हूं दरवाजा। नेट डाला कुछ घटिया सा। अरे पीछे आ गया अनुज भाई, पीछे आ गया। अरे दो मर रहे और 2 सी और एक बी के बाहर। 2 सी के बाहर उनको मार। एक और था वाइप। दोनों बाइक ड्रॉप है ना अपने पास। हां दोनों भी पे। अल्ट मार सकते हो रे। मार दे सोच में मार दे, जल्दी मार। बाइक है क्या? है ना। तेरा अलार्म बोर्ड ऑन रख। टरेट डाल। केयर बी से आएगा तू देख, आराम से खेल, भाग मत। दरवाजा खोला तो स्मोक कर दूंगा उधर। एक वाटर स्मोक कर रहा हूँ अभी। अरे पीछे नहीं आते ना, ये एस था मेरा यूसी कौन करवाया बड़वा। निकल गया, तूने मार दिया उसको, छोड़ दिया मैंने सीधा। सी पे ऑफ लगा रहा हूं।
आने वाला है अभी। बिंग्स भाई आपके साथ कॉम्बो करेंगे हम? नहीं। बिंग्स भाई ड्रॉप दो एक, बिंग्स भाई आप दे तो। रहा रिस्ट्रिक्ट बड़ा हो गया? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जीत रहा तो बड़ा हो गया। तू उधर कर, मैं इधर नेट करता हूँ। नहीं अरे साथ में मेरे इसका डैमेज के तेरे नीड पे आएगा ना। डन से कर मजा आएगा। अरे तेरी नाइस कॉम्बो। इसी खाली गाइस आ सकते हैं पे वापस। यस मैं ट्री जा रहा हूँ। थोड़ा किया। कैसे हो रहा हूँ। हाँ ये भी किया। रेस सैचल रेस सैचल वाइपर वॉल है इधर। स्पीड अल्ट है। नहीं है कुछ। मूव कर रहा हूँ सामने। लोग आ गए सामने, छोड़ रहा हूँ मैं। ट्री खुला, पीछे आ जाओ साइड पे आ जाओ। लेफ्ट राइट खेलते हैं। वाओ अरे मेरा किलजॉय। वाह बुलेट वो 400 लेवल गांड में कितने डालता? 600। अरे मैं बोला तो छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? ऐसे ही। चलो जीत गए। इधर चलो ब्रो। यार एक कॉम्बो क्या करती है स्ट्रिक्स भाई, वो छोड़ के चले गए। इतनी प्लानिंग के बाद भी। यार आते ही नहीं यार। कोई नहीं है, बिग ले एक ले रहे। बी देखते रहो। बी कह रहे। आ रहे पे वापस। ये एक ले रहे। आएंगे देख बिंग्स बनने वाले हैं। मारा। के बाहर कैरी करो। टी के बाहर। रियल आईजीएल तो मैं हूँ। सी आ गया क्लोज। नहीं तोड़ सकता मैं। टी स्मोक करूं? नहीं मत करो। वेस्ट भी। अरे किल तो दे दो। मेरे को पता था स्मोक पुश करेगा जिससे मेरा गोली खत्म हो गया। अरे बस समझा क्या बिंग? क्या बोली? क्या सुना नहीं मैं। एक लो बहुत ज्यादा पिंकी मेरे को शुगर फ्री हेल्दी आइसक्रीम खिला रही है कैसे। Right there. Come on then. Right there. ये पे नेट भी आएगा। अल्ट ले तेरे लिए रखा है। ले नेट कॉल डीके कर। सी एक अंदर घुस गया। मौत होने वाली बुलेट की। क्यों भाई? ऑफ है इको है बटन का। नेट कर रहा हूं तो मैं। एक साइड है। अरे बी क्या करो। बी तो नहीं है, ए हो सकता है। नहीं भागे, ऑफ लेके भागे इसका। ये पे लॉक किया रहेगा कोई। हां एक पे लॉक किया है, एक के साइड के अंदर है। हां एक खोल दिया दरवाजा। ऑरेंज वाले के साथ खेलो उसको अल्टी है उनका। नहीं हो रहा। प्लांटिंग क्लोब को संभाला। जाने दे पहले। एक रबल छोड़ दे। सिर्फ देखते रहे जा मर पहले मर स्मोक आ रहा 3 सेकंड में। एक ऑफ साइड पे मारे। डबल डेड। ऊपर ट्री स्मोक कर रहा हूं उसको। स्मोक कर रहा हूं। One enemy remaining. मर गया एक इधर। हां अननोन डिफ्यूज कर रहा हूं। डिफ्यूज तेरा गेट ले लो। डिफ्यूज किसको लेना है? ऑफ ले लो मेरा जी वाले से। स्ट्रिक्स को दे वो ज्यादा क्लोज है। बहुत पैसे है रे। 9000 है। 2 ही राउंड दे दूंगा। ऑफ ले लो भाई इसका। नहीं नेवर माइंड। मैंने 4 आइसक्रीम मंगाई, चारों मेल्टेड। गुलाबी नाली लाल लाल। भाई आज तो स्टिक्स का दिन है, सैटरडे नाइट। चेक ना रो। हां क्या बोला? स्ट्रिक्स इधर आ। अच्छा इग्नोर हो फिर। Right there. राइट साइड 2
राइट साइड तू और ब्लाइंड राइट साइड है हां भाई क्या लगे भाई और बुटा ये हो रहा है बॉयज भाई मेरा पैर फिसल गया राइट साइड अभी तू वॉक करके जा स्टिक तेरा पता नहीं है दो राइट साइड वॉक करके जा Spike planted. एक राइट साइड में इधर स्पैम कर अन्य डोमेन ऊपर है टॉप पे मारना चाहिए था गुड्डू है तेरे पास हां गो राइट बोला करेगा अरे उसका अल्टी में वॉक करके जाना था Switching sides. अरे उसका अल्ट भी तो तुक भी था मर जाता इंस्टेंटली तुक बाद में डालो नहीं तू पहले ही था मैं मारा ना तुक से बुलेट भाई 600 लेवल कार्ड में डाल दो आईडी भेज दो आज का आज ओएलएक्स में मेरे को चाहिए बाइक देना बेचारा बुलेट सुनो ऑल सुनो ए पे यहाँ पे रुकेंगे ठीक है फिर बाद में यहाँ पे स्मोक करके रबल लेंगे फिर जब दोनों स्मोक्स आएगा उसके बाद ट्री जाएंगे सारे के सारे सिर्फ किल जाए यहाँ पे रबल रुकेगा ठीक है पहले वो लोग को कांड मराने दो एकदम हेवी सा मैं बी का टरेट तोड़ के आया खुद नहीं फूट जाना फ्लैश में पॉसिबिलिटी है पूछ के रबल वो पता है इधर जंप कर दिया आ जाओ लेते एक रबल और एक जंपिंग कर रहा है कंट्रोल स्मोक कर रहा हूं मैं क्रॉसिंग स्मोक दे दिख जाएगा रुक स्मोक नेडेड गो रबल क्लियर कर रहा हूं लेफ्ट केयरफुल दो स्मोक्स आने को भी है किसी के एक डाला स्टेयर्स ट्री से घुस जाओ ना अभी रुको एक यहाँ पे है ट्री से घुसो डैश करके ले बैक साइड एक ट्री है एक स्मोक में एक स्मोक में एक यहाँ पे एक ड्रॉप पिक करो ना देख रहा हूं फ्लैंक एक बुलेट फ्लैंक हां मैं यहाँ पे लिंक के लिंक और एक मेरे सामने लास्ट इधर ऑन बुलेट ब्रो हाइड है छोड़ ले हाइड मार अभी यार वो आप पे बैठा नाइस डैश रे काइजन खुद को लो किया सेम सबका लो का पता नहीं तू सबका ले रहा जरूर है चारों का भी बाइक पकड़ भाई क्या कर रहे भाई गुड्डू को भेज ये नहीं चाहिए माइकर बुलेट मरेगा भाई कोई बाय करो भाई 3 पिस्टल क्यों ब्लाइंड दिया अरे मातर चोट छूटिया ट्री से चलते हैं ना बॉल के बाद आ जाओ राइजन प्रॉलर डालेगा इधर प्रॉलर है ही नहीं भाई अरे वहां से दे दे अभी साइड बिकाली भी मत जाना एक जाओ ए स्ट्रिक्स यार क्या भड़वा है रे ए जाना बाबा ब्लॉक कर रहा है मेरे को एक लिंक है एक सिटी फिंगर है वाले को स्मोक कर रहा हूं फिंगर है लिंक वाले से फाइट लेना फिंगर रिलोड आजा हां लास्ट इधर है हां बराबर अनुज बराबर हां ऐसा नहीं बी जाए सी जाए नहीं स्पैम लेना है थोड़ा तो थ्रो चाहिए ना स्ट्रिक्स क्यों नहीं वो स्ट्रिक्स भाई को देख के स्ट्रिक्स भाई का गेम देख के थोड़ा थ्रो चलता है डबल सेशन करने नहीं दे रहे पड़ुआ नॉर्मली भी होता नहीं तेरे से ये तेरा बाप के लिए रखा है भोसड़ी के को Go. Spike's there. Reloading. 6.
सिर्फ देना आर्मर बेच के मैं ले दर्द भाई। तो पूछ लिया चिली कर रहा हूँ मैं सी पे पड़ा क्या उसको नहीं डी पे पुश हो रहा है डी पे होल्ड करो ना स्मोक को जान दो पूरा होल्ड करो एक सी आ जाओ उधर मतलब नहीं आ जा सी आ जाओ इन लोगों को फाइट करने दे दो मार्शल मेरे को चाहिए डेलिया रहेगा ना काइजन किधर है सी गाली जा मैं को लेने दो अच्छा तेरा अल्टी नहीं है ना फिर आया जाएगा एक दिखा तेरे को काइसन हां पीछे टिपी मारा निकल जा काइसन निकल जा गन है क्या मेरे पास एक आया क्लोज है 3 है वहां पे रेज लो सिटी मत घूम क्या सिटी से मार अपना प्लांट है वन शॉट है ओपन प्लांट है आराम से वॉक करते हुए जाते रहे बुलेट वॉक कर तेरे अरे वो तो पता है डाउन फ्यूज फाइट लिया इधर फाइट लिया उसको घूम के फिर से सिटी जाना था गाइस ऑल गुड 100 लोग थे यार 11 लाइक कम करके मारा हाँ ना चैट लाइक करो मेरा था सिटी का Okay, I only have like 78 grenades ना left. सी जाते हैं मेरे पास अल्ट जाता हूं पहले चलो वो लोग ज्यादा ए हेवी नहीं खेल रहे ये करना है क्या ये वाला भाई ये एक ट्राई करना है मेरे पास शॉटगन है हां कर सकते हो चलो आ जा क्या सीधा भी लेकिन फिर ये लेना मैं वो लूंगा सुन ये स्मोक दे और ये स्मोक दे मेरा मार्क देख मैं लर करूं क्या ये क्या स्मोक है बोल रहा हूं दे अटक जाएंगे हम लोग दे अभी स्मोक भी नहीं है हाँ गुस्सो डरने का नहीं हाँ नहीं घुस सकता 3 लोग हैं हल्का सा स्टैक हो गया हल्का सा स्टैक हो गया ए लौड़े का कॉल भाई हल्का सा स्टैक कर दे वो लोग ने ड्यूड बुलेट भाई आज तू बताए थे तू बहन चो 600 लेवल की हुआ नाइस एक तेरे पीछे से आ रहा है ओह एक किल के बाद अल्टी सब डिटेल बॉल देना अनुज एक डंक का यार चुप लौड़े सी जाने का तो भरोसा रखो लौड़ा रखो करके कहाँ जाके पहला मर गया बता डिफॉल्ट खेलते हैं अरे अपने पास स्किल जो अल्टी है ना अभी कोई ट्राई कर सकते ट्राई करो अगर सी पे पिक मारा तो अंदर जाके अल्टी मारना पहले नहीं तू वापस से वही करना सी पे वॉक करके हम लोग ए पे प्रेशर डालते हैं जिससे तेरे को 1v1 नहीं मिले उसके साथ चले जाना गेको तू भी सी पे बी पे टरेट यहाँ पे टरेट डालेगा 600 लेवल बढ़वे बी पे टरेट बुलेट तो मत लेट्स डू फेड मेरे पिंग पे है अबे ए पे कुछ नहीं फेड ही अकेला अरे ले देना तेरे फ्लैश क्या कर रहे हो लिंक का दरवाजा भी नहीं टूटा है अनिश भाई लोग ने रोटेशन बोला लिया है मैं दरवाजा जान से ट्री खोल रहा हूं हां तो कर रहे लोग ओमेन और किल जाए सी वाइपर भी आ गया सी ए चलो ओमेन 101 है ठीक है मेरे पास दो स्मोक है आ जाओ ना दरवाजा खोल के छोड़ के चले गए गेको को प्लांट दे दे क्यों कर रहा है हट जाएगा स्मोक कर रहा हूं अबे प्लान लेना एक है फेड है साइड में प्लांट बाप रे स्पैम खा गया स्टेयर्स पे मॉली गया प्लांट पे तीनों स्पॉट हुए अल्ट आएगा एक किल पे मैं नीडू नहीं पागल है क्या
अरे इजी थोड़ा बैकअप मिलता था ना मेरे को। अरे ये मेरे को प्लान देता ना, सब कॉल कर देता। बोला मैंने उसको वो अपना भाई इसने मेरे को लास्ट टाइम अल्ट मारा था यार। चल ना सी चल किलजॉय अल्टी भी अपने पास एक ही अल्टी यूज करना, सब भाम बूम करके एक ही राउंड में मत मार देना, एक किलजॉय अल्टी बस हो गया। आजा सी पे जाते हैं डायरेक्ट, फाइट ले तो फाइट लेते हैं। हाउ अबाउट गेको एंड नहीं हां गेको की अल्टी भी चलेगा, तो किलजॉय की नेक्स्ट राउंड यूज करो। वही तो गेको से मैं ये क्लियर करता हूँ। आगे का पार्ट क्लियर कर ले फिर। एक काम कर, सिर्फ गेको और किलजॉय की अल्टी यूज करते, तो इधर फ्लैश कर, अगर फ्लैश हुए तो अपनी अल्ट मार। अभी फ्लैश करूँ? कर हां नथिंग ये ओपन स्मोक करो। वाटर्स क्या हो? अरे बाप रे डोर खोलो, उसको बैकअप दो। यो टरेट सोने वाला है सीटी एक आलम बट डाल के अल्ट टूटा ना। आराम से, तेरे को जरूरत नहीं बुलेट ऊपर खेलने का, ओपन प्लांट है। नाइस वन गाइस, नाइस वन। 120 ओमन 120 ओमन उसके पास अभी एक और मोलोटोव है क्या? हां डाल दे। डाल ऑल टाइम मॉली उसको मारने दे पहले। 120 है ओमन, पिक करके जा, ऊपर से मारना। एक साइड टिक स्पैम दे। तो नहीं होना। चिल कर। लास्ट 140 है मार। ऑफ ले रहा है। अरे नहीं है 140, झूठ बोल रहा है। ऑफ लिया। नोडी अल्ट मार अनुज, अल्ट मार जल्दी, पैसा चाहिए। अरे ऐसे अल्ट नहीं मार सकते रे, चुप। एंट्री कैसे दे मेरी जान भाई? क्या भाई सब एकदम अपने प्लांट ओपन है, किलजॉय इधर लड़ने जा रहा है। अपन किलजॉय करने वाले थे ना, यार अपन किलजॉय करने वाले थे ना। होगी तीनों अल्टी एक राउंड में यूज की। खेलो मारो जाके मारो। भाई ऑल चैट पे इजीली कोई क्या बहुत चढ़ के अल्टी मार के एंट्री लिए बिंक्स के बहुत चढ़ के ऑपर को गिराया है। किलजॉय अल्टी है, सिम ब्लाइंड दे। सी जाना है तो सिटी कंट्रोल है, वाटर कंट्रोल है। सिटी लेता हूं मैं। वाइपर इधर मैं जा सकता हूं, अंदर स्मोक कर सकता हूं। डैश कर रहा हूं। 2 सेकंड में फ्लैश है। दो एक और स्मोक कर रहा हूं। कर दूसरा होगा। मॉली नहीं खोल रहा। वाटरफॉल हम नहीं आ सकते। कोई ना, एक साइड दो वाटरफॉल, एक वाटरफॉल स्टिंगर है। साइड पीछे एक वाटरफॉल लो है। तेरे पास आ सकता है? नहीं मैं तो रिलैक्स। एम लगा के रख। आ रहा हूं। चिल कर। एक साइड हो सकता है। अल्टी मत लेना पीक, उसको फाइट लेने दे बस। नहीं मैं देख रहा हूं। प्लांट करना, ये लास्ट है ना, बीके बार था। वाटर से आएगा नहीं तो सीटी। तू ही अल्ट लेना, तू छुपे रहे, इसके बाद अल्ट है, इसको फाइट लेने दे। ठीक है, मैं ओपन होके फाइट ले रहा हूं। पीछे का लंबट भी जिंदा है मेरा। बस सही। और कैसे नहीं है बेंच? ये भाई कितना गंदा है। अब चाहिए नहीं ना? हां चाहिए। अरे क्यों? मेरे को चाहिए। अरे बस ड्यूलिट का नहीं सुन रहे हो। बिग फैन बुलेट डोंट नो यू आर प्लेइंग हियर। कनाडा से तेरा एक फैन है क्या? तेरा कैसे नॉक का सीन है ना। फैन बुलेट डोंट नो यू आर प्लेइंग हियर। सुनो ए जाते हैं, लेकिन इस बार ओपन प्लांट करना, दोनों मोलेटोव इधर ही चाहिए। किलजॉय अल्टी है। लव यू ब्रो। फ्लैश दे नाइस 6 मेरा गन चला गया। फ्लैश चाहिए। हां फ्लैश तो चाहिए। स्मोकिंग सिटी जाओ ना, ओपन प्लांट करना, सीधा ऊपर छोड़ दे प्लांट, इधर से निकलो। एक वो प्लान दिया। जाओ उसके साथ जाना पड़ेगा काइजन। मैं ब्लाइंड हूं। एक लेफ्ट में गया तो मोलोटोव डालो। अरे मां की आंख मेरी। एक फ्री है। रिजल्ट आने वाली है। मैं मतलब बाहर रे। वो ये तो दरवाजा तोड़ा। डबल देख, ये देख रहा हूं। ड्रॉप जाना काइजन। वो तोड़ दिया। अरे बॉल डाउन मिलेगा, ड्रॉप पे बैठे रहे, बस मिलेगा तेरे।
You should run. नहीं मिला तो भी इधर ही बैठे रहे, डिटेन होएगा तो भी चलेगा। तोड़ ना ट्राई कर। ओपन प्लांट है, बाहर से खेलेंगे। डिफ्यूज एक मोलोटोव ऑन। नेट या दूसरा भी नेट। ट्रीट 140 है लास्ट। क्या खेला है मैंने, क्या खेला एमवीपी। यूलो ट्रिक्स ये लॉबी में एमवीपी हो भाई, ये लॉबी एमवीपी हो भाई। ये लॉबी में 10 किल है यार। किल से नहीं, मेरे दिमाग से राउंड निकाले भाई 9 घंटा वॉच पार्टी करके भी बेंच में ऊपर। एक बार स्कोरबोर्ड देखे। जी 6 भाई आया बेल बजी, रुका है भाई। जाओ एनिमी के साथ टीम बनाओ 6 भाई। हाँ जाओ भेड़ छोड़। प्लांट भी 4 ही किया है, बाकी टाइम गौ करके कुछ और ले रहा था तू। 20 राउंड में 4 प्लांट है बड़वे का भाई। ओ हम नंबर 1 है अभी। वाओ लेट्स गो गाइस। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ बाहर। कौन सा बार चांदनी। किधर जा रहा है भाई? सैटरडे नाइट क्या? अरे गोइंग टू सम चांदनी ड्यूड। चलो भाई होगी भाई, आज की हेवी कंटेंट होगी। मैं जा रहा हूँ सोने अभी। यस कब आ रहोगे बिंग्स बा? हम अब चालू करेंगे क्या कब आऊं मैं? अभी सीधा 2:30 स्ट्रीम। ओके चलो 2:30 नाइट को। हाँ चल रहा क्योंकि मैं अगर नहीं सोया ना तो इसके बाद मेरे को वापस पैसिफिक है सुबह खत्म होने के बाद। बाप रे ग्राइंड है भाई। क्या अनुज भाई ने अनुज भाई एम आई रेडी फॉर कॉम्पी? यस यू आर कंप्लीटली रेडी मैन। हाँ देख बकचोदी नहीं, थोड़ा बहुत मैंने बिकॉज़ आई हैड सम पर्सनल इश्यूज विद ट्रिक्स देयर। वो मेरे को मेरे साइड पे गांड दे रहा था, मुझे सीज कर रहा था, ये सब हो रहा था। तो आई हैड सम पर्सनल इश्यूज। तो जब तक एक हमारा कोच नहीं आएगा ये सब सॉल्व करने, ये थोड़ा बहुत होता रहेगा, समझ रहे हो? हमको एक इंटरनेशनल कोच चाहिए। चलो बाय बाय। चलो स्ट्रीम करना अच्छे से। लव यू। क्या कर रहे हो दैट अनुज भाई अभी थोड़ा स्ट्रीम करने वाले हैं। हगास गेम प्ले देखने जल्दी जाना वहां पे। हगास हाँ वाह भाई। अनुज भाई देख लो क्या बोल रहे। आज बुलेट मेरे से ऊपर है। लीडर बोर्ड दिखाओ। खुश क्या रहना है? पहली और आखिरी बार। बाय बाय। चलो मैं अभी। तू खुश है ना? बस हो गया। We have a perfect score baby. Bye. We have a perfect score. बाय बाय बिंकी बाय बाय। भाई अगर विनर्स को ये मिलेगा डिसाइड करने के किसके साथ खेलना, मैं चीज करूंगा टीम LDE। चलो गाइस मर जाऊंगा मैं। कितना देर स्ट्रीम किया? 8 घंटा अभी स्ट्रीम, फिर 6 घंटा। गिनाओ मत, चलो गिना रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे रूटर पे नहीं कर रहे फॉलो। उधर मेरे को चाहिए 1000 की वॉचिंग, लेकिन नहीं। शर्म करो गाइस, शर्म करो यार। सिर्फ ओपन करके ऐप में देखने का फिर भी हर बार RR कहूंगा जब तक तुम लोग फॉलो नहीं करते रूटर पे। मॉड्स मैं रो रहा हूँ, रूटर के रिंग स्पैम कर देना थोड़ी देर, क्या पता कुछ लोगों को शर्म आए। मैं रो रहा हूँ गाइस, बाय बाय, लव यू। रूटर करेंगे मोस्टली कभी ना कभी।